and exercising their franchise over here, which includes Congress leader Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and BJP candidate from the New Delhi Assembly seat, Parvez Singh Verma. So, as you can see in the pictures that the security officials over here are taking stock of the situation, and people are yet to come, even as it's just 7 a.m. in the morning, and polling is almost to start over here. So clearly people will start arriving at this polling center, and as you can see, the election commission has also put out the hoardings of the selfie centers. After casting their vote, the people need to come and they can click their selfies over here, and the police can be seen here arranging the barricades just ahead of the crucial polling begins in the national capital. Back to you, Rishabh. Okay, so yeah, that's what's happening. It's heavy security, I can tell you, across Delhi. It's been a dry day for the past couple of days. And like I said, it is the first battle, 70 constituencies, and Arvind Kejriwal, who's been the phenomenon of Delhi politics and has expanded his scope of the Aam Aadmi Party across into Punjab, is the person who has to now be taken on by the Bharatiya Janata Party. The Congress, which ruled Delhi for 15 years before this Aam Aadmi Party phenomenon, before the creation of this very party, in fact, wants to figure out what its future in the national capital is going to be. And well, what do you think? Can the BJP pull off an upset? Can there be a BJP government at the center and of course in the city, or will Arvind Kejriwal, well, form a government once again and defy all expectations regardless of what has happened? Because remember, this time last year, where we were on the running weeks of a national election, there was all sort of pandemonium. Ministers of the Aam Aadmi Party government had been jailed, Arvind Kejriwal himself jailed, then released. The Aam Aadmi Party lost all the 7 seats in the Lok Sabha elections, but right before that, in the MCD elections, they had done pretty well. So what's the pulse of Delhi? Let's hop across now to my colleague Mehendi, who's standing by in Kalkaji, very important constituency in South Delhi, where of course the incumbent Chief Minister Atishi has been holding fort. Ramesh Biduri of the BJP is the challenger. It's pretty quiet where you are standing. Mehendi, show us around and tell us a bit about the constituency and how the battle is shaping up. Well, indeed, Rishabh, we are in the VVIP constituency right now, and we are at Kalkaji Mandir, where all the senior leaders will be coming sometime back. Manish Sisodia came here. Now, just a few moments back, Shikha Rai, the BJP candidate from Greater Kailash, has also went inside to take the blessing. And, very soon, Saurabh Bhardwaj will also be coming to the Kalkaji Mandir. Okay, Mehendi, in fact, I'm going to interrupt you for just a second, because we're going to hop across to Brian in Nizamuddin, where he's in conversation with Sandeep Dixit. Let's listen in. नए कैंडिडेट्स आए हैं, वो क्या ऑफर करते हैं उसको देखेंगे. जैसे मैंने कहा, आज तो मैं सबसे यही आशा करूंगा कि आए, वोट करें और पार्टी को ना देखें, कैंडिडेट को ना देखें, वो देखें उनके मैनिफेस्टो में वो क्या करना चाहते हैं, कौन कैंडिडेट है जिसके अंदर में क्षमता है उनका काम करने की, विकास के लिए करें, एक अच्छी दिल्ली बनाने के लिए करें. Prime Minister took a jibe at vote. Today I am not going to talk about politics and party. It's a date for vote and we should vote. Sir, बड़े-बड़े नेताओं ने आपके पक्ष में अपील की है, पप्पू यादव ने, शशि थरूर ने, नवजोत ने, क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं. मेरे मित्र भी हैं, शायद उन्होंने मेरा काम देखा है और इन लोगों ने अपील की है, तो मैं मतदाताओं से केवल ये कहूंगा कि लोगों की अपील देखें, जो भी कैंडिडेट्स की और मेरी और लोगों की क्षमता है उसे देखें, और उनको जो लगता है कि नई दिल्ली की बात हो तो नई दिल्ली में बात हो तो पार्टी में, जो लगे उनको कि कैंडिडेट काम कर सकेगा, जो पार्टी दिल्ली को अच्छा बना सकेगी, जो ईमानदारी से जिसने उनके बीच में जाकर अपनी बातें रखी हैं, जिसने सही तरीके से कहा है कि क्या दिल्ली बन सकती है नहीं, जिसने आरोप प्रत्यारोप से कम एक अच्छी दिल्ली बनाने का वायदा किया है, मैं आशा करूंगा नागरिक के रूप में हर वोटर वोट करेगा. Thank you. Sir, single ID. Okay, there you have, well, Sandeep Dixit, the son of the late great Sheila Dixit, who was a 3-time Chief Minister of this city. His father, of course, Sandeep Dixit, a veteran Congress person. And he is trying to revive the fates of the Congress party. I think pretty much, I'm pretty sure that's Alka Lamba standing in the polling queue this morning. That was in Nizamuddin East, where Sandeep Dixit lives. That's part of the Jangpura constituency, where of course Manish Sisodia is the person incumbent who's being challenged by Tarvinder Singh Marwa of the Bharatiya Janata Party, and a candidate there. In fact, speak of Manish Sisodia, and there he is visiting a temple early this morning. Mehendi, sorry to have interrupted you. Let's hop across back to you in Kalkaji,
where of course it is Atishi versus Ramesh Baduri. What's happening? Well, indeed, Rishabh, very interesting fight in the Kalkaji Assembly, and right now we are in front of the Kalkaji Mandir where, Manish Sisodia, the Aam Aadmi Party leader, just came and he also, talked with us, and very confidently he said that Aam Aadmi Party is making the government this time, and not only Manish Sisodia but Shikha Rai, the BJP candidate, is also inside the Kalkaji Mandir right now. The Kalkaji constituency. Very close fight between Aam Aadmi Party, BJP and Congress, because the incumbent Chief Minister Atishi is contesting from Aam Aadmi Party. From BJP, the senior leader and former member of Parliament Ramesh Biduri is contesting, but from the Congress Party, Alka Lamba. So yes, all the three candidates hold a very, we can say that strong stand in this particular constituency. So the fight is very, we can say very close, but the issues are a lot in this particular constituency. When we talked on ground with people as well, there are a lot of issues. The traffic congestion is an issue, the bad water quality is an issue here, and people are again and again saying that they are not in the favor of freebies that have been offered. Some people are also going inside. We'll try to have an understanding with them as well. Ma'am, आज वोटिंग है, किस तरीके के मुद्दे हैं आपके दिमाग में फिलहाल वोट करने से पहले? वोटिंग से पहले तो अच्छा ही सोच के आए हैं। क्या पानी मुद्दा है, बिजली मुद्दा है, ट्रैफिक यहाँ पर मुद्दा लगता है आपको बड़े मुद्दे हैं कालका जी? ट्रैफिक वैसे हम दिल्ली के लोकल नहीं है, यूपी के हैं। Okay. So yes, Rishabh, some people are coming here to, take the blessings. But yes, the very close fight is here in the Kalkaji Assembly. And a lot of issues people are talking about, the local issues. And also, yes, Rishabh. Okay, stay with me. There's a lot of static in your mic, man. Ask your camera person to fix it, please. It's distracting. Let me quickly... Brian, meanwhile, is trying to get into conversation with Sandeep Dixit, as we told, as soon as we have him with us. Let me hop across and introduce our guest this morning as well. I can see Alok Mehta joining us bright and early. Brian, if you're with us, do you have Sandeep Dixit with you? सरकार बनाइए, अच्छे कैंडिडेट्स पकड़िए. You are building your future. Think about that. And what are the people hoping for? Are they looking for development? What kind of development? I hope we are looking for development. And will be the local issues or national issues that people will? No, not national. In Delhi, people have always voted for local issues, but local issues are statewide issues, and they will vote for that. Thank you so much for talking to us. So yes, viewers, that was Sandeep Dixit. Okay, Brian, we'll come back to you and we'll play out the detailed conversation. I mean, we know what's going to be said on election morning. Whatever had to be done is already done. It's going to be a busy day across the board because there are elections, of course, happening in Delhi. We're expecting the Prime Minister to be on tour, perhaps even heading down to the Mahakumbh in Prayagraj very, very shortly. Let me hop across, like I said, introduce our guest, Alok Mehta, joining us bright and early this morning. I'm expecting Himanshu Bhatt is also with us. I can spot Sumit Peer, Bhaskar Ghosh is going to be joining us, Nimi Rastogi will be joining us, and Gautam Seth of the Congress Party to be joining us this morning as well. Alok Mehta, let me start with you, sir. Here we are. Okay, now I know it's a tough one because everyone is suggesting don't count out Arvind Kejriwal. He's the political phenomenon in Delhi. He has a lot of support base in the east of Delhi and other places. That don't count him out, but can the BJP pull off a surprise upset? Can they come from nothing to everything in Delhi? So what's your gut reaction telling you? Very good morning, Rishabh ji. I think this is a really historical election because, as you mentioned, Lal Krishna Advani was the Metropolitan Council chairman before even the assembly. So since then I am following this Delhi elections, and Uma Shankar Dixit was Home Minister. And his daughter-in-law Sheila Dixit was also behind the curtain. She was also running politics to some extent. She was helping him. So she's such a stalwart leader were there. Then Madan Lal Khurana, H.K.L. Bhagat, Sahab Singh. But I have not seen such a leader like Arvind Kejriwal in Delhi or even in Indian politics. Because he is not a politician. He is a real, very, very clever, I think, the person who managed everybody from Sam Ramdev to Pranab Mukherjee to Lal Krishna Advani to VHP to Congress to Mamata Banerjee and Sharad Pawar. That's why I think this is a historical in that sense, because the survival of Kejriwal will also turn the politics. Because he won and his party win this election, then certainly it will give him more power to for the alliance also. But you see, at the same time, Rahul Gandhi, I have seen Sanjay Gandhi, Rajiv Gandhi and Rahul Gandhi. So, Rahul Gandhi, 2 or 3
days he just campaigned. Last days he also went to Alkalamba. And that's why this is time a very, very interesting election. Because for BJP, after 25 years, they are fighting with a full strength, but without a face, without a leader. Only Narendra Modi is the real face, and even Amit Shah. I have not seen such a senior leaders campaigning for Delhi election, almost door to door. Day before yesterday, Khud Amit Shah ji was in Jangpura against Manish Sisodia campaigning for a BJP candidate. So they are fighting from worker to Prime Minister itself, and that's why it's a very interesting election. I think it will be difficult for Kejriwal and his party to survive as a majority. Certainly, he some pockets with the Juggi Jopri and all, he's trying his best. But this time, the RSS is also very active. So I don't think it's very easy for Kejriwal to win over what he used to get. If you wanted to set a flavor, well, politicians are out this morning and campaigning. One of them, in fact, at the banks of the Yamuna. There's been a last-minute controversy was whether you'll drink the water from the Yamuna, whether it's poisoned or not. I don't know if it's being poisoned or not, but certainly I don't think any of us are going to dip a glass and drink the water from the Yamuna. It would be an unpleasant experience. Sumit P, let me ask you the same question. I mean, it's difficult to stick our neck out. Who knows what's going to happen, right? Because the last local election in Delhi, we're thinking about 18 months ago, okay, municipal elections happening. By this time, there's already been a long-standing senior minister of the Aam Aadmi Party government who's already been in jail. We are seeing Manish Sisodia being in jail. There is a liquor scam that is being alleged. But the people had none of it. They didn't believe it. They still voted large numbers for the Aam Aadmi Party in the local elections. Then, of course, Arvind Kejriwal himself, just a few weeks before the general elections, goes to jail. The BJP sweeps the general elections. And here we are, another year later. I don't know if corruption is the primary issue, because all I've been hearing the last few days is immigration and minority votes and Yamuna poisoning. Everybody seems to have forgotten pollution. What's your gut instinct telling you? Rishabh ji, good morning. Pleasure to be with you on the election day. Well, the things look like Kejriwal is not what he used to be. He is not that mighty or that high what he used to be. His image has taken a major beating, and I could see that this time he's desperate. All the small little tactics he has been trying to use to get back to the people's hearts and mind. And with that atrocious claim that somebody in Haryana poisoned the Yamuna and there was a genocide planned and 1/3 of the Delhi was supposed to be wiped out, assuming and knowing that there is no way the water could have been sent to a BJP Karyakarta's house or to Aap Aadmi's Karyakarta's house. There was no mechanism even available today. And the same water could have not gone to the parliament, could have not gone to the MPs, could have not gone to the judges, to the police, which is kind of atrocious. And this man is an IITN with an IRS degree. So that talks about the level of desperation. He's feeling the heat. He's feeling the problems this time. And I think his chances have been sizably depleted because Congress is really fighting an election this time. It is the Congress fighting the election. It's BJP coming with the might and his personal image and aura depleting. All the three put together, he is not in a position where he used to be in the last two elections. He knows it's now or never, because if he loses Delhi, which is quite a chance now, then days of Punjab are counted and how the days of Aam Aadmi Party itself are counted. For him to be relevant in the power and to survive in the power, he has to win Delhi come what may. It doesn't matter does he win or lose his seat, but the Aam Aadmi Party has to win Delhi by hook or crook. That is what he was trying to do. Okay. Because if was it's important, but the BJP is also in a very weird scenario in Delhi because they sweep the Lok Sabha elections again and again, twice in a row. 7 out of 7 seats. But when it came to the last Delhi elections, only cobbled up 3 seats. And the Congress was a 0. Himanshu Bhatt. Now, so let me pick up is the Congress in revival mode? We've seen Sandeep Dixit out and about. Is it in revival mode? Because, some of the legends of the Congress, you have Sandeep Dixit, yes, Ajay Maken, these are all, solid Delhi wala. That's where the political futures were built. Well, I think I have a feeling, the solid Congressies have been able to, tell their leaders and make them understand that for Congress to revive in a place like Delhi, they need to get Aam Aadmi Party out. And that's why, when Sumit said, Congress revival is taking place. See, you see the vote share of Congress in 2019. What, 4.67%? With no seats. This time also they might not have any seats.
Let me put it that way. But if that vote percentage increases by 3%, and you will find that the results being flipped at least on 15 to 20 seats. And that is what exactly Congress revival will begin from there. Sandeep Dixit getting 10 or 12,000 votes in his constituency will ensure that Pravesh Verma wins. See, these are the types of combinations and these are the types of equations you have in Delhi. In a small assembly segment, when you have, a third party taking up 8 to 10,000 votes can shift the result from one place to other. And that is what I'm looking at. Okay, but that's all. But that's all bad news for the Aam Aadmi Party. Now, remember, Yes, it is the Aam Aadmi Party that destroyed the Congress in Delhi, not the BJP. The BJP has not been in power in Delhi for the past almost 30 years. Okay, so that's what actually happened. And if a reversal is true, whose benefit you would think the BJP benefits from this? You'd think that every time the Congress comes out, well, in Haryana elections didn't go well for the Congress. The Aam Aadmi Party did enter the elections and wanted an alliance. The Congress said no. And the BJP pulled off what people would say, I wouldn't say a miracle because there are no miracles in politics, but certainly a huge surprise, upset that took place in Haryana. Let's see how this pans out because it is no doubt about it exciting. I love it because I get to sit on the sidelines and watch the contest taking place, and the final examination for all these netas after all their politicking comes into the fourth. Let me get Ahmed Ayaz to get a perspective in. Ahmed ji, what do you think now? I mean, I know it's a long shot, but what's your gut instinct on how is it going? No, undoubtedly this is going to be a very interesting election, and then in fight, this battle will be really intense fight on one or two accounts. One being that the Kejriwal has been, released and he resigned, and that could be one reason that things may change. And then having got many MPs in the recent elections by the BJP, so that way they have also made a good ground in Delhi. As said, the fight is going to be neck to neck between BJP and then what we call it, Aam Aadmi Party, and maybe the win will be very marginal, and then there are possibilities either AAP coming up in the government or the BJP. Well, the Congress may not be fairly doing well. The most important would be seen that the constituencies with 70 constituencies going with 669 candidates, and the most key constituencies being what we call it, that New Delhi and then Kalkaji and then Jangpura, where most important leaders are fighting. So that way this is going to be more interesting, and the result would possibly be that either the AAP will come up with the government which they are fighting off, and then the BJP, which are very seriously looking for coming back after too long, and then the Congress also is trying to see that they are becoming relevant in Delhi now, and but the result as it looks to be that either it has to be AAP or BJP, and even if it comes, BJP comes, it will be with very marginal, maybe with a difference of 2-3 seats as I see, and if AAP comes, and it will be almost within maybe 3-4 seats to okay, so Sumit, okay, so which way do you think is going to be a wave election? That's either it's Arvind or it's BJP and there's nothing in between, or do you really think that this is going to be split down the middle, it's going to be too close to call, and before we do it, before we know, we'll be fighting over every vote on the 8th? It's Rishabhji, it's going to be a close one. It's going to be split in the middle with an advantage to BJP. That is what my assessment said. It was an advantage to AAP a couple of days back, but last few days the things have turned for BJP, and people, if Delhi, are believing one thing,
They have not given a try to a double engine sarkar wherein BJP is in the center and BJP is in the state under Modi ji. That has not happened. So if they do it now, Modi ji has good 5 years at the center and the government of Delhi comes up, which is a BJP government. Now Prime Minister Modi will be kind of in a mood to prove it entire different model of governorship and will be in a mood to prove how he has turned around Delhi from AAP and the Congress era and all. So the advantage is people for Delhi if they understand it, but there are challenges in a way. There are pockets of minority which will vote for AAP. Congress will have only 2 seats where they can do the magic, which are Muslim dominated. So how much of a mark can really Congress make, and how much of a mark is Congress really willing to make, put their heart and soul in the game? That is what is important. People like Sandeep Dixit, Srilampur, Okhla, all, yes, they are fighting. But at an overall level, will they be able to do? Look, 3% vote swing has already happened. 6%, it will be a great advantage to BJP. And if it goes to 9 or 10, BJP will sweep. So we'll be contemplating between 6 and 10, and we'll be really trying to see where does it settle. So 6 will be a clear-cut advantage to BJP. Okay, so let me pick up. I was reading this, yesterday about how the manifestos have changed from 2020, not too long ago, to where we are now. Biggest issue in the 2020 assembly election in Delhi was the Jan Lokpal. Both the Congress, the Aam Aadmi Party were talking about Lokpal. Remember, that's where Arvind Kejriwal came from, Lokpal. No conversation about Lokpal, not the BJP, not the Aam Aadmi Party, not the Congress. Nobody wants to talk about Lokpal anymore. That's been very quietly buried by all the politicians. All of them found it inconvenient and just buried it. But let's look at what the Aam Aadmi Party promised. They said doorstep delivery of ration. This got stuck in the courts, went all the way to the Supreme Court, stuck. Doorstep delivery of other services. This was revived and put together, but then it sometimes works, sometimes doesn't work. So sometimes it's been useful. I myself have used the service for renewing my driving license. So yes, it has worked, but currently in many places, if you try this service, it's not working. Pollution was an issue. Well, I can't say Delhi is pollution free. Okay, not even close. So nobody's figured that out. Garbage free Delhi. No, not really. Free bus rides to students. This did happen. So if you have a student pass, you can get a free DTC bus. Underground electric cables, said the Aam Aadmi Party, for every household. Didn't happen. Not happening. World class roads. You can debate that. Delhi has some good roads and has some really horrendous roads. The deeper you go into the colonies, the worse the roads become. So let's not kid ourselves. And when it came to the BJP, which didn't form the government, well, the BJP was offering double-decker buses returning in Delhi and all sorts. But this time around, it's a lot different. Alok Mehta, this time the primary contest is about freebies. Let's not kid ourselves, okay? Yeah. There is a whole electorate of the Aam Aadmi Party which feels that, listen, we have got our free electricity, we've got pretty much free water, and we don't want somebody, including the BJP, and risk taking that away. What's the BJP's response potentially? Rishabh, certainly this freebie is a real problem for the BJP also, because the Kejriwal tried to convince everybody that yes, he is giving the free Bijli and all. But this time it's a very interesting. Even if they are not very much supporting to BJP, but they are much fed up, because this slogan, I have spoken to so many people in my area in East Delhi, and so they only the tenant, because if you are a tenant as a poor person, you will never get the benefit of the free Bijli, because the owners, they get the benefit. They have the 4 meters and they get the 300 unit and all. They say okay, but you have to pay 500 rupees or 800 rupees. This kind of situation is also there. Then the ready walas. Earlier they used to vote for Aam Aadmi Party, and they say, okay, every month we have to pay so much money. So people who are voting for these people, maybe some extent the woman voter who were moving by free bus, I still feel that this was the help for the Aam Aadmi Party. Still, there are women who feel that, okay, we can go from anywhere. But I think the Prime Minister Modi himself promised that nothing will be withdrawn. They are not going to withdraw such facilities for the woman or for anybody. So these kind of competition, free hospitals also, everybody knows the Mohalla clinic totally failed, especially in the poor area. People know how much medicine they can get there and treatment there. So these kind of slogans, this time,
Kejriwal will face serious problem, not because I still feel the BJP not campaigned since fighting like Madanlal Khurana or the other leaders were fighting earlier. Now they think, okay, Prime Minister Modi is with us, so like Lok Sabha election we will win. That is the only problem with the BJP. No, but that was true. But Alokji, that was true 5 years ago also. Okay, yeah. That was true. But the more local the politics gets, and yes, is there an overarching national issue up for the grounds? I haven't seen one in this election campaign. That this is about security, it's about terrorism. You'd think pollution would be an overarching national issue and a major issue. No one's talking about it. All they did, every party, doesn't make a difference which party, which candidate, all they did was pass the buck. Nobody came up with a plan that this is how we're going to stop pollution. The Aam Aadmi Party knows that the pollution also comes from Punjab, but they don't know much about it there. The BJP, Mon Vrat, nobody wants to talk about where the pollution is coming from. Okay, it's just, it's like doesn't exist. It's the emperor's new clothes. I find it rather strange. Himanshu Bhatt wants to make a point. Himanshu ji, go ahead. Sorry. Actually, what I feel is, this time around, both the parties with the freebie, loaded with the freebies, the voter of Delhi is going to be important because he has to choose who is more creditable among the two. Whether it is Arvind Kejriwal, who is still credible, or whether it's BJP. And though BJP does not have a face, they are talking in terms of Modi. But whereas Modi cannot rule Delhi. Here you have a Kejriwal. So for the people of Delhi, despite getting all these freebies, I have a very specific gut feeling which it says people will have to go through a stern examination to decide who is credible alternative for them. Who is credible? After 10 years, it is still the Arvind Kejriwal with all these false promises. Okay, but we say people of Delhi. Let me reverse the question before I get Emma-ji back into this conversation. Sumit, let me come back to you. So, you live in the neighborhood, all right? So, this budget just 3 days ago has been about the middle class, okay? 1 lakh crore, tax cut for the middle class, right? So, correct. In terms of electricity, water, other services, have your bills gone down in the past 5 years or have they gone up? I think if you look at the overall consumption has increased because with every day our loads are increasing. Yes, the electricity bills and all have not gone down, they have increased. There is a bit of subsidy which comes in, which is not so much important. But if I look at the current budget, what Nirmala ji has given us is 12 lakhs of tax-free income. That is what matters to me. 200 units of power is not going to change my life, but and even after that, there are incremental slabs of tax. One more slab of tax is introduced. I think that kind of an impact is much bigger because now I can plan my money. I can do what I want to with the money and use it where I want to. I can prioritize. I don't want the government to come and prioritize my savings. Okay, I'm giving you a Bijli free. And let's not forget, Rishabh ji, 1 crore households are getting this free solar power panels where they're going to generate power of their own. Even how many households we have around? Not more than 20. Yeah, a carrot in hand is better than 2 in the bush, says the aphorism. Alok Mehta, for the middle class in Delhi, and Delhi has a middle class also, okay, are you seeing electricity bills going down or going up in the past 4-5 years? It is going up. The middle class, the real problem is because if you have more than 300 unit and then again you are facing problem. So the power and the water, you see for middle class, the serious problem of the water is not in the poor colonies. But I think the middle class, that's why the woman voter this time turning to the BJP just because of the drinking water and the higher electricity bill. And they think, okay, because this on the name of the free electricity, we are paying more money. So these kind of serious issues which are the middle class or the lower middle class, they are also facing this problem. And especially what you are talking pollution, that's why I'm thinking. Drinking water is more challenging even than the air pollution. One can say, okay, air pollution, if you go to Ghaziabad, there will also some pollution, or you go to Indore, you will get some pollution. But here, every day, every morning, when people facing problems, and yesterday you have seen in some areas that how the tanker mafia, they are just pipeline going in the poor area.
So this is the major issue in Delhi, wala. Okay. And that's why I think the Okay, so issue for the one people. would think that this is the obvious issue, okay, that for sure it doesn't make a difference if you're rich or poor or middle class, immigrant or long standing resident. The air you're breathing for sure is all the same. Yeah. Okay. Your water purification you can still do. Okay. Air purification is almost impossible. You can put all the machines, but as soon as you open a window, then that's it. No. And you can't lock yourself and only inhale carbon dioxide. So you eventually have to open a window. Okay. So you think it's in every person's issues. Ahmed Ayaz, has anybody really thought about addressing this issue? Or do all the politicians sell us down the river quite literally on this? See, in fact, when we come on the issues facing Delhi, well, Kejriwal may try to claim that health facilities, education, and other services have been done. But the main issues with the Delhi remains to be, mostly the pollution and the water supply, the most important, traffic jamming, and then what you call it, environmental issues, which mostly, people are confronted with, which possibly nobody has been in a position to address so far. And there also, though there are some manifestos speak about all these things, but the mainly voter will be, as we see, they will be, concerned about their electric supplies, their electric tariffs, and then as one of my friends said about this water supplies, and then the Yamuna, the issues coming out, Yamuna development. I mean, people are mostly now concerned about all these daily issues which are confronted with. So that's why the people are looking to see that a better option is available to them. They make a better choice of the leaders to see that they deliver. Despite the fact that the Aam Aadmi Party has a base because of they are easily accessible, but that's not enough. That may help to them to some extent that they are accessible compared to any other leaders of other political parties. Okay, but the Aam Aadmi Party, which fundamentally, sir, just replaced the Congress, lock, stock and barrel in Delhi. It's like the Congress in Delhi just vanished. And you'd think that was impossible. That at that point of time, Sheila Dikshit was very much, alive and I won't say fully into politics, but she did make a comeback, later to try to take on Arvind Kejriwal. That also didn't work. The Aam Aadmi Party replaced the Congress lock, stock and barrel. The BJP was nowhere in Delhi for the past 25 years. Okay, so, it's not like then they brought in Kiran Bedi, that didn't work. Again, they don't have a face. In the Lok Sabha, last time around there's Gautam Gambhir, but now he's no longer in politics. He's now a coach of the cricket team. This time they got Bansuri Swaraj 1 year ago. You'd think she would have become front and center of the campaign, but no, she's not the front and center of the campaign either. So what's going on? One wonders. Let me try to hit reporters on the ground to get a perspective of what's happening. Aditya Kumar is with us. He is in Rohini. Uday Pratap Singh to be joining us from Janpath very, very shortly. We'll be getting those perspectives in. But Sumit, what happened? What happened to the BJP in Delhi that despite now 12 years and counting of Narendra Modi, they don't have a face in Delhi? I think to be an honest answer would be, Rishabhji, there were 3 or 4 major camps in Delhi within BJP. And let's not take the names today, but where the names are, very well better than me. Now, this time around, if you look at the distribution of tickets, there's one clear trend. Either it's a very, very prominent and a strong person from any of the old camps, any of the 4 old camps, or it's altogether a new case. If you can have a National General Secretary like Dushyant Gautamji asked to contest a MLA ka chunav, that talks volumes. You have Pravesh Verma contesting against Kejriwal. It talks a lot of things. And then you will have either those heavyweights which are sure shot to win, or you have given chance to entirely new faces. So the result will be, let's say these new people are able to make it and heavyweights are able to make it. A new party will shape up. So those 3-4 camps which have been kind of going against each other will automatically cancel each other out. And again, there is no CM declared because that will be the discretion of Prime Minister Modi, who he thinks is the best person looking at the combination to lead the flock. So it might be even a surprise like Manohar Lal Khattarji, who was brought in Haryana. Nobody knew. Saini ji was brought in, and all the CMs of last 4 elections which they won, most of the CMs were not known before that. So there might be a surprise like that. It will be a new formation which Modi ji will do. He will use this election to make an
entirely new formation so that he doesn't have to swim with sandbags tied to his legs, if I can be as precise as that. So that is what the game plan is going to be. So in that, it's not important to name the CM. It's important to win as many seats as you can. That will be the first objective. Yes, as many seats. I don't know if a halfway house is what's going to happen. And honestly, this is where it's hinging. That is it. You'd think Arvind Kejriwal is a bit weaker because just practically, for people who wanted to give him a chance, right? That this is a person who's coming up with a new style of politics. He's never been a politician before, and let's give the guy a chance. Now, will there be less people after having seen the last 5 years who want to just give benefit of doubt? New chap, okay, let's give him a chance. Or will there be more? Logic would tell you there'll be less, right? And elections are decided 2-3% of the vote is the difference, okay, between winning and losing. All right. So that's a factor there. So, but Alok Mehta, let me put that practical thought to you. Because after all that Delhi has seen, I mean, Arvind Kejriwal, first time he became chief minister, when he had his old coterie of the Aam Aadmi Party was still there, he was still the dharna activist. He was on the footpath as chief minister, protesting against the central government. Arvind Kejriwal 2.0 in Delhi as a full-term 5-year chief minister was a lot different, but then we had a liquor scam in Delhi. Now, whether there was a liquor scam, there probably was. Whether Arvind Kejriwal and his senior leaders are corrupt or not, that's up to the courts. But something dodgy, Alok Mehta, did happen. Yeah, certainly it's a problem for Arvind Kejriwal because he started with a very clean image and very honest person and all the time. But after this liquor escape, everybody was talking in Mohalla and everywhere. You see that, oh, this man can do this. Maybe for poor people think, okay, everybody is corrupt and all. But for middle class or the other people, they also feel that, oh, what he is doing, just opening shops, liquor shops, also troubled women voters in Delhi. So these kind of image, I think he destroyed himself because he was in a hurry. You remember, Rishabh Lalu Yadav started where the voters came in 90s, but where he ruled because he was from the roots. But the Arvind Kejriwal, he was also in hurry. Remember 5 years back, people used to in news channels also showing who will be the better prime minister. Even his name was also there with other chief ministers. You see, he was trying to image 488 crores rupees in 2021, spending money for the advertising, imaging, and there's the same Nair is in the culprit in the liquor escape. So these kind of people who were thinking that he was in hurry, he's going all over, he was contesting election in Gujarat, Goa and Haryana and Punjab he won in his party because the Aam Aadmi Party was not so much there, but the Congress in fighting and the Akali Dal and all, BJP was not weak there. So maybe this is the problem of the Arvind Kejriwal. He was in hurry, he wanted to be a national leader, and wanted to contest against the Narendra Modi ji. Remember in Varanasi also he started at that time. So I think this. Yeah, but this is a different Arvind Kejriwal. That was an Arvind Kejriwal who decided his first Lok Sabha election in the Aam Aadmi Party. They will contest 400 plus seats. And Arvind Kejriwal himself will go and take on Narendra Modi in Varanasi. But Arvind Kejriwal became a whole lot different. They decided that, okay, we need to conserve our strength. And he did turn Punjab. Punjab, where the people, the voters, the Punjabis have told you, we are sick of the Akalis, we are sick of the Congress, we don't want Sidhu and company and the Badals, we don't want any of them, but we don't want to replace them with the BJP either. So we're going to again give the new man a chance. Okay. And that's what they've done. And under Bhagwant Mann, who's been chief minister now, it's not Arvind Kejriwal did not go. I remember just a few years ago in Delhi, Manish Sisodia's hoardings were everywhere. And the assumption was being made that, okay, Manish Sisodia is going to be, propped up to become chief minister of Delhi, which is not really a full chief ministership. And eventually, an Arvind will shift to Punjab. That didn't happen. As things stand, he is neither chief minister of Delhi nor chief minister of Punjab, but certainly the election is being fought in his name. I need to take a very short break, but I will be, as you're watching voting take place. Vijender Gupta has been voting this morning. He leads the BJP in Delhi. Manish Sisodia is out and about the temples. What on your screen is Sandeep Dixit casting his vote as we speak. I don't know what we're doing with our screens right now. I'll come back to Mr. Ahmed Ayaz. Ahmed Ayaz, what then are the issues this time?
is this going to be a highly charged up election? It's almost felt flat. It's almost felt that there is a very quiet election happening in Delhi. No, as I said, that issues would be the water supply or the issues, and then the traffic jamming is the issue in Delhi, and then pollution and the environment, and then the security issues like safety issues like women safety, which are most concerning. These are some of the issues which concern every individual on the ground, and while people may talk politically many things, but what a common person is concerned about is that what is being done for him or her. See, these are the important issues where people are, even electricity also is an issue, despite the despite the policy of free electricity, etc., etc. Then the bills have been going up in the in Delhi, and then there is no electricity, as I understand, proper electricity in Delhi also. So these are the issues which concern to a common person. So let's not kid ourselves. Delhi, ladies and gentlemen, people watching across the country, Delhi now is a richer city than Bombay. Okay, that of course means large disparities of wealth. But I can tell you that if you're middle class in this Delhi, your electricity bills have skyrocketed. Okay, people who are living in 1 bedroom, 2 bedroom apartments are spending thousands per month in electricity. I have seen Delhi become more expensive. Now, inflation is a reality all over the world, so let's not kid ourselves. But is Delhi, I would say, an expensive city to live in? Yes, it has become more expensive. But that's the natural course of events. But when it comes to core issues of what has changed, I don't know, because in Delhi, a lot has changed. But at the same time, when we look out our windows every November and just see smog everywhere, that's an unhappy change. I promise you, if you look at Delhi before 2016-17, and this got nothing to do with a particular politician, winter was not like this. Okay, this is a phenomenon of the last 7-8 years, that everywhere you are just seeing smoke, and you can see the fires burning. Nobody does anything about it. Sumit, all the politicians, BJP, AAP, Congress, nobody is actually taking on this issue. Nobody cares, seems to care. It's not like the center comes and forms committees to take care of the pollution in North India. It's not like the Aam Aadmi Party does anything about it in Punjab. So, if that is not an issue, what is? AAP came with a brand of politics which was centric towards freebies. AAP came with a brand of politics which was about rotating things in a very, in creating a lot of optical illusions. So what has BJP tasted in Maharashtra and Haryana was you have to get the woman voter on your side. You have to roll out a few schemes with Ladli Behna and others. They did the magic. So in Haryana and Maharashtra, they discovered it. Now here they've got the woman voter on their side. Modi ji is a much more credible face than Arvind Kejriwal in India, and there's a lot of anti-incumbency against Kejriwal. Now the balance is what can you do to get the men and the others to vote for you? Because BJP has realized if you want to win Delhi, you cannot talk of terrorism, you cannot talk of Pakistan, you cannot talk of those bigger issues. They might work at a parliamentary election, but not at a state election. They will not cut eyes, because Kejriwal will go and cut you with those small trivial issues, like he tried to create this fiasco that, I was zapped that BJP government is trying to kill 1/3 of the Delhi population. Knowing very well, when if Yamuna gets poisoned, there is no way you can control this. Pani will go to a Aam Aadmi wala ghar and it will not go to a BJP wala ghar. There is no way you can control this. If he can come up with those atrocious claims, so you have to really come to his level and talk in his terminology and attack his core voter bank, which he was just holding on to those atrocious terms and all those atrocious things. So BJP had to really come down to his level to fight the man, which they have done this time. Okay, but politicians make all sorts of claims. Corruption was the biggest issue, not only for the Aam Aadmi Party in its genesis under the Lokpal movement, but also for the BJP. 2014 was all about corruption. How many people went to jail? I can't really think of many. Even Lalu Prasad Yadav is roaming free right now. So who's in jail? No, not a single. Colgate, CWG was the biggest scandal in Delhi when I was coming out of college and just starting my job. Right, it's the biggest scandal. Right,
This BRT corridor, biggest scandal, right? What happened to it? Nothing. Absolutely nothing. Political whitewashing took place, and let's not kid ourselves. All the politicians seem to work like that. I don't get it. And the same Arvind Kejriwal, who's talking about corruption, well, he was in alliance with Lalu Prasad Yadav just 1 year ago. So all politicians eventually become the same, and I'm making no distinctions, BJP or otherwise, because I've seen no major politician in this country go to jail for corruption. Is the BJP corrupt? I don't know. Has it been accused of large-scale corruption? No, not really. Nothing has stuck. Is the Aam Aadmi Party been accused of corruption? Yes, but have they been convicted? Not really. These are all investigations, not even trials. So let's not kid ourselves. But let me look on the positive side. Okay, that's the frustration of the people that okay, politicians are all the same. But let me look at the positive. Himanshu, but this time around, a quieter election in Delhi. We weren't in the news for all the wrong reasons, and the wrong reasons are generally rioting, something dodgy going on, ugly scenes, guns being brought out, police lathi charges going on. All of this hasn't happened, so it's been a pretty quieter election. Is that happy news? It's a happy news, but there is a shivering undercurrent. You see the last 3 or 4 state elections, and you will find this pattern, The voter not coming out with the open mouth. And that has got a lot to do with the loss of face of a politician. I'm putting it very subtly and saying, every politician, the loss of face has been great. And so the voter is unsure till the last moment. He decides. He waits for it. And then when you see the results, okay, you will understand that entirely, if I am thinking that same way, Sumit is also thinking the same way. And so is Rushabh. And so, when the results come out, you see that happening even in Maharashtra. You see that happening in Haryana. You will see that happening. Okay, so you're saying it's a surprise. Logic would tell you, do not underestimate Arvind Kejriwal's support base. Yes, Logic would definitely. tell you, do not underestimate freebie politics. Yes. And Arvind Kejriwal has mastered those politics in Delhi. So do not underestimate him. Logic would tell you that. But in a wave election, logic gets thrown out of the window. Okay. So it could be that the people in this capital who said, okay, we want to give Arvind Kejriwal a chance, now feel no, actually the double engine sarkar works better for Delhi because this concept doesn't work. Okay. And then it just completely flips the other way. Who knows what happens. So anything is possible. Let's listen in. Speaking of the Aam Aadmi Party, Manish Sisodia catching up with us. Let's quickly listen in. आज वोटिंग का दिन है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को और कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? मैसेज तो यही है कि कालका माई के चरणों में मैंने प्रार्थना की है कि माता रानी सबके ऊपर आशीर्वाद बना के रखे और जितने भी दिल्ली के लोग हैं सबके लिए एक अच्छी काम करने वाली, शिक्षा का ध्यान रखने वाली, स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाली, बिजली पानी का ध्यान रखने वाली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बने। सर कितने कॉन्फिडेंट हैं आप इस बार चुनावों को लेकर? कॉन्फिडेंट हैं, थैंक यू। कितना आंकड़ा अगर माने तो कितना? Karnataka is the 4th largest automobile producing state in India, contributing 8.5% to the nation's vehicle production. The state also has the highest number of EV charging stations, boasting an impressive 5,765 public stations. We were the first to introduce an EV policy in 2017 and will soon unveil a clean mobility policy at our upcoming Global Investors Meet. Backed by our progressive policies, world-class infrastructure and a skilled workforce, Karnataka is paving the way for growth in both traditional and EV sectors. Join us at Invest Karnataka 2025 and be a driving force in the future of automotive and EV innovation. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH. Karnataka has established itself as the leading hub for electronic system design and manufacturing in India, contributing 10% to the nation's electronics output. We are also home to 400 plus MNCs with global R&D centers. With over
100 fabulous chip design houses, and 40% national share in electronic design, Karnataka stands as a prominent hub for chip innovation in India. Invest Karnataka 2025 will bring more global players to benefit from the state's strong and tech-enabled ecosystem. खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। Karnataka is India's ultimate startup destination with over 14,000 registered startups and 45 unicorns. Bangalore, proudly known as the nation's startup capital, ranks third globally in the number of startups, cementing its place as a powerhouse of innovation. The city also has 144 incubators and accelerators and 1,500 plus VC funds. Karnataka's success is further driven by strong industry-government collaboration, a bold entrepreneurial spirit, and cutting-edge R&D hubs of global giants. As we approach our global investors meet, I eagerly look forward to recognizing and rewarding the startups shortlisted through Venturize, our international startup challenge. Venturize is set to boost startup ecosystem and drive innovation and entrepreneurship across the country. Join us as we accelerate growth and shape the future through Invest Karnataka 25. अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और NewsX का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। पिछली बार 8 घंटे वाली बिजली चो कोई कट लग्या नहीं लग्या। कट दी गल तां छड्डो, बल्ब ने चमक्का भी नहीं मारना, चमक्का। सानू बिल्कुल भी बिल नहीं आंदा। असीं बहुत खुश हां कि भगवंत मान सरकार ने साडे ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। जो साडे CM भगवंत मान जी ने उन्होंने हरेक वर्ग ਨੂੰ देखते हुए सारे ਜਿਹੜੇ वादे है वो पूरे करते हुए साडा बिजली का बिल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ वो जीरो आया है। मैं एक दिहाड़ीदार बंदा हैगा ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी आंदा नहीं हैगा जद यह भगवंत मान की सरकार बनी है जी। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था, माँ 3500 रुपया, कहना ऐसी जीरो आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। सर ने जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी उसका क्लेम अप्रूव हो गया है। 2 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। थैंक यू रोहित, आपने और पॉलिसी बाजार ने इनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने में हेल्प नहीं की होती तो पता नहीं मैं ये घर और वेद की पढ़ाई सब अकेले कैसे संभाल पाती। पॉलिसी बाजार पर 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत
हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को All right, welcome back. Let's hit the ground running with our reporters on the ground. 10 of them, Uday, Shubhrana, Mehendi, Aditya, Manohar, Javed, Simran, Sambhav, Anand, Brian, all across the city this morning. Let's hop across, in fact, straight to Uday, who's standing by. He's in central Delhi, where I'm told Janpat is his location, where voters are now trickling in. Uday, back straight across, hopping across to you. बड़े पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर Absolutely. एक second, madam. Absolutely, Rishabh. This, of course, is one of the elderly voters who's come here early this morning. सुबह का वक्त है, ठंड भी है, मगर फिर भी आप आई हैं वोट डाल। 5 years की हूँ। 75 years old. मगर फिर भी आप आई हैं। मन में मेन विषय आज क्या चल रहा था? मेन विषय ये था कि सब लोग कायदे से रहें और अच्छे से रहें और काम अपना सुचारू रूप से करें। क्या आप लोकल इश्यूज देख रही थी, नेशनल इश्यूज देख रही थी? नेशनल भी देख रहे हैं, डेवलपमेंट और ये से लोकल भी। ये दिखाइए जरा, ये पौधा जो आपको दिया गया है, ये so every voter over here, Rishabh, is being given a plant. All of the voters who are coming to this booth so far, ये अच्छा संदेश है आपको लगता है? बहुत बढ़िया संदेश है। ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन चाहिए। अब क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगी और महिलाओं को और लोगों को क्या कहेंगे? जागरूक करना है आप लोग, आप वो करिए करके आगे के ध्यान रखिए सब। Very few voters, of course, over here because this is a VIP polling booth in central Delhi, Rishabh. This is the polling booth where the New Delhi MP Basuri Swaraj will be coming very, very shortly to cast her vote. You can see over here a lot of decorations are in place, although in the first hour of voting from 7 to 8 a.m., just about 8 to 9 voters have been seen here. This, of course, is the high-profile constituency where the former CM Arvind Kejriwal is locked against Sandeep Dixit of the Congress and Parvesh Sahib Singh Verma of the BJP. We have in fact another voter. आप बताइए साहब, आपने भी अपना वोट पहले तो दिखाइए और ये आपकी उंगली। मेन विषय आपके मन में आज क्या था? आज मतदान करना सबसे मेन विषय था। देश के अंदर प्रजातंत्र सुरक्षित रहता है कि प्रत्येक मतदाता अपना मत प्रयोग करे, और यही निश्चय करके मैं रात को बहुत दूर था यहाँ से, परंतु रात को 1 बजे आके मैं सोया और अभी प्रथम मतदान किया है। बाकी देश में और दूसरे काम करें। मेन इशू, क्योंकि आज तो इश्यूज की बात होगी यहाँ पे, कोई पार्टी का नाम तो हम लेंगे नहीं, तो मेन इशू आपके लिए इस बार चुनाव में क्या था? चुनाव में देखिए बहुत चीज़ें बहस में चलती रहती हैं। मैं ये मानता हूँ कि देश को हमें इस दिशा में ले जाना चाहिए जहाँ पर हम सब मिल करके इस देश को आगे बढ़ा सकें, और उसमें ख़ास तौर पे युवा वर्ग जो इस समय बड़ा दिग्भ्रमित भी है, और ख़ास तौर पे उनकी जो बेरोज़गारी है सबसे बड़ी समस्या। दूसरा, मैं एक सन्यासी होने के नाते ये महसूस करता हूँ कि जो भारतीय और पुरानी हमारी संस्कृति है उसको अगर हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक तरह से विकृत हो रही है। जितना सिस्टम है, प्रचार तंत्र है, उस पर इतना ज़्यादा वल्गर चीज़ें और भटकाव वाली चीजें और बहुत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ जा रहे हैं, आज स्नान वहां करेंगे, उसको लेकर भी विपक्ष ने मुद्दा खड़ा कर दिया है। क्या आपको लगता है उचित है नहीं या नहीं? अब ये तो राजनीतिक बात मैं कोई नहीं करूंगा यहाँ पर। मुख्य रूप से इतना ही कह सकता हूँ कि जिसकी जो धारणा है, जो चाहता है उस चीज़ को मानना तो वो कर सकता है, किंतु राजनीतिक इसमें से क्या निकलेगा ये राजनीतिक लोगों से पूछेंगे तो अच्छा लगेगा।
Just a quick question for you. What are the main issues you feel that are important this time in Delhi? I'm just looking for something. Just give okay. So these are of course some of the early morning voters, Rishabh. We'll keep getting you more voices here. Okay, of won't course. really say the crowds are lining up where this is the New Delhi Assembly constituency where of course as Uday has mentioned it's Arvind Kejriwal who is the incumbent. Remember he got 46,000 votes last time to win this election. This time he's up against Sandeep Dixit and Parvesh Verma of the Bharatiya Janata Party. The BJP lost this seat by about 20,000 votes last time around. So let's see what happens this time around. Sheila Dixit, this was her constituency. Sandeep, her son, is now contesting from here. I'm going to request my reporters, all of you guys are live. Remember there's a camera in front of you. So Simran, Mehendi, Anand, please be aware that all your cameras are in front of you and live. I'm hoping that you guys can hear me. I'll be coming to you. Let me hop across down to Kalkaji, which is the other big battleground, as I mentioned, because the incumbent Chief Minister, Atishi, is contesting nearby. Mehendi, what's happening? What are people? Because very quiet. No big lines in Delhi forming this morning. Now, that just could be efficient organization or it could be just we are being slow to start, as you, I think, watching Hardeep Singh Puri casting his vote, Union Minister, on your screens over there. Mehendi, over to you. What are people on the ground saying? Okay, all right. I told Mehendi can't hear us. Let's go to Anand. Anand, I'm hoping people are now coming up to cast their votes. We are well past 8 o'clock now. Yeah, Rishabh, if we talk about the polling here at the Nirman Bhavan, then several of the people have exercised their franchise, and even the NDMC is giving them flower petals after they are voting over here. So I'm joined by two of the voters over here and we'll speak to them and try to understand that what was going in their mind when they went to the polling station early this morning. Sir, आपका नाम और आप सुबह काफी आए हैं वोटिंग करने के लिए? मेरा नाम रविंदर कुमार है और ये मेरी पत्नी पिंकी कुमारी है। सर, क्या मन में चल रहा था आपके, चूंकि आज दिल्ली का चुनाव है, सारी पार्टियां जो है उन लोगों ने यहाँ तमाम बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं, तो क्या मुद्दे आपके मन में थे? बदलाव का मुद्दा था, पोल्यूशन, सुरक्षा और एक बेसिक नीड जो दिल्ली वालों को चाहिए, उसके ऊपर हम लोगों ने मतदान किया। मगर सर, जिस तरह से लगातार तमाम पार्टियों ने यहाँ पर काफ़ी प्रोमिसेस की हैं, गारंटीज प्रोमिसेस की हैं, तो उनको आप कैसे देखते हैं? गारंटीड वो तो राजनीतिक दल आपस में एक दूसरे को पीछे करने के लिए करते हैं, उसमें कितना कौन इम्प्लीमेंट कर पाता है वो तो उनके ऊपर है चुनाव के पश्चात। लेकिन अभी हम लोगों को जिस प्रकार दिल्ली में आज से 10 साल पहले परिवर्तन किया था और जिस अपेक्षा से किया था, वो हम लोगों के अनुरूप मुझे लग रहा है कि सरकार काम नहीं करी। और जो उन्होंने बोला था कि हम आम जनता के बीच में आम लोग बन के रहेंगे, उस प्रकार से नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों ने उसको परिवर्तन करने का निर्णय किया है और मेरा इसलिए इतना प्रातः काल उठ करके मत करने का मन बनाया और मैं अपने परिवार के साथ वोट देंगे। आपकी पत्नी भी आपके साथ में है, आप अपनी उंगली भी दिखाइए जब आपने पोलिंग की है। तो सुबह सुबह उठकर आई हैं, चुनाव आयोग भी कहता है पहले मतदान फिर जलपान, तो खाना वाना खाकर आई हैं इतनी ठंड में? नहीं, खाना वाना खा के नहीं आए। तो क्या था आपके मन में, क्या चल रहा था जब आप वोट करने गई थी? मेरे मन में बदलाव। तो क्या लग रहा है कि मतलब जिस तरह से तमाम पार्टियों ने यहाँ वादे किए हैं, महिलाओं के लिए खास तौर पे गारंटीज दी हैं कि कोई 2100 देगा, कोई 2500 देगा, तो सिलेंडर भी 500 रुपए पे देंगे। आप गृहिणी हैं, तो क्या लगता है आप? नहीं, हम लोग को फ्री का चीज़ नहीं चाहिए, जो अच्छा काम करे वो आए। हाँ, तो क्या फ्री कुछ नहीं चाहिए, बच्चे के लिए जो अच्छा हो वो चाहिए। लोग यहाँ पर तमाम प्रदूषण की बातें भी कर रहे हैं, किस तरह से यमुना प्रदूषित हो गई, पानी किस तरह से गंदा आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही थी? हाँ जी, बहुत बहुत जहरीला है। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छा काम जो करे वो आए। So Rishabh, you heard the voices of the people over here. So they clearly said that they don't need any of the freebies. What they need is the development in the city. And they also mentioned that they have voted for development and for a change in Delhi. So these were the early voters who came here along with their families at this polling center, Nirman Bhavan. Yeah. Back to you, Rishabh. Again, very quiet. It's a slow start. It's not awfully cold in Delhi. The skies are clear. It's I won't say it's unpleasant weather. Yeah, quiet. Where Uday is standing in New Delhi, pretty quiet. Where Anand is standing nearby is pretty quiet. So let's give an attempt to check a completely different part of the city. Simran, my colleague, is now standing by. She's in Patparganj.
Simran, what's happening around you? Well, absolutely. In fact, as you mentioned, that there is some quiet environment in the parts of the national capital, and right now from where I am coming, it's a Trilokpuri seat, ward number 22, where in fact the voting has begun. And if we compare it to other parts of the national capital, this seat is still bustling with a few voters that are coming up early morning and in groups, in fact, to cast their vote. And right now, as the police has also started checking the people who are coming and their documents, the election management committees are here and voters are coming up here. As you can see, there are lines of people who are queuing up to cast their vote. And let me also go across to some of the voters. आपने वोट डाल दिया? आज सुबह मतदान शुरू हो गया है? हो गया है। वोट डाल दिया है? हाँ, वोट डाल दिल्ली के सुधार के लिए, दिल्ली के वेलफेयर के लिए किन मुद्दों पे वोट डाला गया? सुधार के लिए डाला है। आम आदमी पार्टी सुधार के लिए ही 10 साल से दिल्ली में थी। Okay, yeah, Simran, let's get as many people as you can. Okay, otherwise we'll only do one at a time, and this will take some time because as many people gives us a perspective. So let's go to as many people as you can, and of course there's no point leading on the voter. Just ask them what the issue is and what they're voting for, not who they're voting for. That's their business, and we'll find that out in some time from now. Uday, it's pretty quiet where you're standing, but what's the buzz really been around? It seems to have been a quieter election in toto this time around, while Simran figures out what to do next. Uday, over to you. Absolutely, Rishabh. It has been, of course, a quieter election this time around. The parties themselves, of course, took some time to declare the candidates. And then it has been, of course, on issues like, of course, pollution, air pollution, water pollution, the issue of the Yamuna, of course. We saw multiple charges versus counter charges. In fact, even FIRs being filed on that issue. Also, the issue, of course, of the migrants coming into Delhi, slum dwellers. That's something that Prime Minister Modi also referred to in his recent rally at RK Puram in Delhi, saying that unlike what the AAP says, the BJP is not going to destroy slums or shanties. And of course, we've also seen, interestingly, the issue of the Purvanchali voter come up as well, where the BJP, in fact, accused the AAP of actually insulting them. With their comments, because there are a lot of migrants, particularly from Bihar, who, of course, are part of constituencies in East Delhi and Northeast Delhi. We are, as we wait, of course, for a few more voters to come out. Yes, this time around, though, the entry, of course, of the Congress and the more activeness of the Congress, Rishabh, has made things very interesting. In a three-way contest, sometimes you don't know, even who if someone is coming potentially third, who that third is actually cutting into. Is he cutting into votes of the BJP or the AAP, which is what we've seen, of course, happen over here. Sandeep Dixit has, taken off from where his mother left off. Remember, she was the MLA of this seat preceding Arvind Kejriwal. Interestingly, Parvesh Verma, the BJP's candidate, is also a former CM's son. Sahib Singh Verma, his father, although, of course, their main dominance has been in area of West Delhi. But he was put up as a star face against Arvind Kejriwal, is fancying his chances as well. He is looking at potentially becoming a CM candidate if he ends up defeating Arvind Kejriwal and the BJP is anywhere close to the halfway mark. Meanwhile, of course, Arvind Kejriwal himself has been campaigning extensively all across Delhi, but has also spent a lot of time in this seat of New Delhi as well. Also, of course, in the neighbouring constituencies, we are seeing three-way contests as well of Kalkaji and Patparganj. If we can quickly ask you about the main issues. You're a youth, of course. We'd like to ask you the main... 5 minutes. Okay. So some more voters who, of course, are pretty silent over here about their vote. Let's come back to you. Let's get all our reporters lined up. Meanwhile, let me take the opportunity. Praveen Khandelwal of the BJP, who's a Lok Sabha MP, just 1 year ago, is with us. You've been seeing Dr. S. Jaishankar casting his vote. Yes, he's a voter in Delhi. Hardeep Singh Puri, both union ministers there. You see Dr. Jaishankar casting his vote, External Affairs Minister. Guests also joining us this morning. But before that, Praveen Khandelwal ji, now, a straightforward question. Have you done enough? As the centre, at whatever level you could think of, have you done enough to win votes in Delhi today? Well, on the strength of our devoted legs and legs of BJP workers and the dynamic leadership, rather visionary leadership of our worthy Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Home Minister Shri Amit Shah ji,
our National President Shri JP Nadda ji, Shri Rajnath Singh ji, and other senior office bearers and leaders of the party. We are destined to conquer the battle of voting in Delhi. Okay. And BJP is going to... Okay, but Praveen ji, the biggest issue, I mean 1 year ago when you were going to contest was that this is corruption in Delhi. That there's a liquor scam, Arvind Kejriwal is, you said, corrupt. All his people working under him in various posts and portfolios, you said, are corrupt. Now the Aam Aadmi Party says that what happened? That these were all conspiracies plotted by the BJP to derail the governance of Delhi. Is that not true? I'm surprised what kind of development politics the Kejriwal is talking about. We have seen Delhi in last 10 years facing the most difficult times. There was not even any development work that took place. On the other side, if we evaluate the 10 years rule of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and correspondingly the BJP governments in different states, the pace of development can always be seen very easily. So therefore, Kejriwal has no right, or rather he has lost the right to talk about development. He is responsible for highly miserable position of Delhi now after 10 years rule of Aam Aadmi Party. Okay, let's boil it down. Khandelwal ji, it seems to be that the election is about 2,500 rupees to women. It's about free units of electricity. It's about giving out things. Now, you can say in a welfare state, it is the job of the state to give out things. But that's what it's about, because you say the Aam Aadmi Party did all of this, but your manifesto is also promising all of this, the same. We need to understand the thin line difference between what is freebies and what are sankalp. Freebies are those elements which are manufactured keeping the voting politics. Whereas the sankalp, the BJP, all those sankalp which have been enshrined by BJP in its sankalp patra, they are quite backed by sufficient allocation of funds that we have already kept in our mind before making any sankalp. And in case of Aam Aadmi Party, we have seen in last 10 years, Arvind Kejriwal and his government has made several announcements, declaration, promises, but not even a single promise was fulfilled. Whereas on the other side, the BJP has made several sankalps in different states, and it is a matter of record that every sankalp what BJP has taken in any state or even at the central government, it has been fulfilled with utmost honesty and dedication. Okay, so what do you think, as we are watching Rahul Gandhi casting his vote in Delhi, what do you think then the issues have been? Because 1 month ago we were told the biggest issue is, oh look, the Chief Minister is building this grand mahal in the Chief Minister's residence. That was the main issue. Now the issue was Yamuna water. What has been the issue if it's not been the freebies? Voter of Delhi is very brilliant, I say, and the voters practically know what they have to do. They have analyzed enough the miserable conditions of Delhi, the misdeeds done by Arvind Kejriwal, and also the good deeds of BJP and the central government. So on the basis of which we are quite confident that BJP is going to... All right, Praveen Khandelwal, regardless, wish you good tidings for the party in Delhi. Wish all parties good tidings. I wish there were hundreds of seats and everybody could win one, but that's not how politics unfortunately works. But nonetheless, I don't know what the issues were this time around, because the issues should have been about how polluted the air is. The issue should have been of how messed up the traffic is and the roads that are becoming progressively worse. The DTC in this city that has been forever, some case has been going on in some court that the buses were bought by Sheila Dikshit before Commonwealth Games in 2008. Okay. Now we are being told you can't drive a car in Delhi because it's 15 years old.
But bus you can drive in Delhi if it's 20 years old, no problem. Okay, it's a laughable situation. Nobody seems to do anything about it. Nonetheless, Praveen Khandelwal ji, thank you very much for joining us. I'm going to try to go back to our reporters as soon as possible. Siddharth, let's make an effort to stay with our reporters. Okay, I don't know what the issue is, but make sure that they're with us. We have 11 of them deputed on the field, and we want constant feedback from the ground on what is going on, what the pulse of the people is. Rest of us are just then having an academic conversation for the heck of it. Let's take a very quick break. See you in 2 minutes. ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की साख भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। From the banks of the holy Ganga, where millions gather in devotion, a spectacle of spirituality, we dream of exploration. We dream of space travel. India also entered the space age with a satellite program. We are Karnataka. We are the birthplace of India's space program, where efficiency and innovation have taken the world of aerospace to a whole new level, where the ecosystem supports every possible dream, from the most sophisticated defense aircrafts that protect nations, to commercial planes that safely transport millions of people every day, from satellites that help connect the world, to extraordinary machines that travel the universe. What we design and build here impacts global aerospace in diverse, critical ways. The biggest brands come to us because we focus on the tiniest details. Because 1 million parts work together with zero error margins. 1 million parts that need to be crafted with perfection and precision. The smallest ideas turn into larger-than-life creations in our thriving ecosystem. With our artisanal talent,
I'm Uday Pratap Singh reporting from New Delhi constituency for NewsX. I'm Simran Babbar reporting. They say change is the only constant. And when change captures the imagination, it becomes a revolution. We in Karnataka are excited to be a part of the global dream of sustainable transportation. Innovations that will make vehicles cleaner, greener, faster, smarter. We were pioneers in developing electric vehicles. Today, our ecosystem drives the future. We help the biggest names build automotive solutions of tomorrow. The best infrastructure supports the greatest ideas. As brands push to solve the most challenging problems, we empower them. Our network of highly specialized technical institutions is the foundation of our skilled and talented pool of automotive engineers. Our human resources are our greatest strength. They are the ones who create. They are the ones who dream. We are home to some of the most enterprising startups in the world. These innovative minds are pushing boundaries, building on ideas that are redefining the world of automotives, creating change. We want to bring change through our visionary policies, through our robust ecosystem, through our extraordinary talent pool. We want to change the future of transportation. This budget has given us a very good allocation of 2,52,000 crore. मिडिल क्लास को तो टैक्स मुक्ति कर दी. Biggest relief as far as income tax. ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ. ਕੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬੱਲਬ ਨੇ ਝਮੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਝਮੱਕਾ. ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਏ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ. 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ. ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ. ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ. ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾ? ਮਾਂ 3500 ਰੁਪਈਆ. ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ. ਮਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ. All right, welcome back. Let's hit the ground running. I'm trying to get you as much perspective as you can from the ground. Before I get in our guests who are also joining us, let's educate that with perspective. Uday there is on the ground, Brian is there on the ground, Mehndi is on the ground, Anand is going to ground. So guys, I'm going to give you a briefing on what needs to happen. Okay, let's keep our faces on the camera because you're all live. Okay, Brian, okay, you're all live. Mehndi, you're all live on television. This is national television. We're covering a Delhi election here, as you guys well know. Let's get into the lines and rapid fire speak to people on what the issues are so that we get a perspective for our conversations. Okay, let's do this.
I'm going to hop across Uday first because I'm told Basuri is casting her vote. Uday, over to you first. I see more journalists than I do voters. What's going on? Absolutely. Absolutely. Absolutely, Rishabh. We're just going to try and get in a word very quickly from BJP MP Basuri Swaraj over here, who's of course just cast her vote. In fact, कोई नहीं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि लोकतंत्र का महापर्व है, कृपया आइए, भारी संख्या में आकर मतदान करिए, विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी दिल्ली बने, इसके लिए अपना डेमोक्रेटिक राइट जरूर एक्सरसाइज करिए. Ma'am, in English once, very quickly, you've just cast your vote. What would be your message to the voter? We're live right now on NewsX. What would you say to them? We're seeing a very early, slow trickle over here. Would you encourage more people to come? I will request every single Delhiite to come and kindly exercise his and her democratic right today, because this is a festival of democracy in Delhi, and in order to show and ensure that Viksit Bharat का संकल्प उसको हम सिद्धि तक लेकर जाएं, आपका यहाँ आना बहुत जरूरी है. What issue was in your mind, ma'am, when you cast your vote? What issues were in my mind? The fact that I want double engine की सरकार का जलवा in Delhi as well. What English might come? So that of course is Basuri Swaraj. She's just cast her vote over here. She's of course the BJP member of parliament from this seat, where Arvind Kejriwal of course is in the contest, and Parvesh Verma of course of her party. Also of course Sandeep Dikshit of the Congress. Rishabh, she's saying that she's cast her vote on the issue of double engine sarkar. She's cast her vote on the issue of Viksit Bharat development of course, and now we are going to quickly go back. Ma'am, आप अभी वोट कास्ट करके आई हैं, विषय आपके मन में क्या था? विषय आपके मन में क्या था? Sorry, no comments. नहीं, but कोई इशू जो आपके लिए, कोई पार्टी का नाम तो आज लेंगे नहीं, बट कोई मेन इशू इस बार क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेन इशू आपके मन में क्या था जो इस बार दिल्ली के वोटर दिल्ली के इलेक्शन में हावी पड़ा? विकास, एजुकेशन, विमेन सेफ्टी. सबसे बड़ी बात है कि मेन चीज है विकास एंड एजुकेशन, ठीक है, वो दिल्ली में होना चाहिए, और वो अभी तक हुआ नहीं है. अब आने वाली गवर्नमेंट देखिए कौन क्या करती है. क्या ये अच्छा संदेश है कि सबको पौधा दिया जा रहा है? पौधे से तो शायद डेफिनेटली संदेश तो अच्छा ही है. We have another elderly voter of course over here. मैं आपसे पूछूंगा, आप आई हैं, काफी सालों से आप वोट डालती होंगी, सुबह का वक्त है, सर्दी है, मगर फिर भी आई हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? जो अच्छे काम हुआ है उसी को देंगे, और काम विकास के लिए आपने वोट दिया है? हाँ जी विकास के. मेन इशू इस बार आपके लिए क्या था? मेन इशू तो रोजगार का ही है, रोजगार का. हाँ जी. क्या संदेश देंगे आप और महिलाओं को और लोगों को? अपने बच्चों में सब ठीक रहो बस. अच्छा, ठीक है. Okay, Uday, hang with us. Let me hop across to Brian. Brian is standing by. Meanwhile, another part of Delhi, Nizamuddin. There are few voter queues now forming up. Brian, let's speak to some of them. सर, क्या मुद्दे रहेंगे जिसके तहत आपने आज वोट डाला? एक बार वोट का मतदान दिखा दीजिए कि आपने वोट किया है हमारे दर्शकों को. क्या इश्यूज रहेंगे सर? किस चीज के बारे में? वोट के बारे में? हाँ, क्या मुद्दे हैं जिसके तहत आपने आज वोट डाला है, कीमती वोट डाला है आज सुबह? हाँ जी. बोलिए, जोर से बोलिए. उसके मुद्दे क्या होने चाहिए? आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं सर? मुद्दे तो देखो क्या होता, वोट के बूथ पे चलेगी ना जो भी होगा. चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. Ma'am, I'll also be asking you, you voted today. Can you, if you show that you voted? Yeah. So what are the issues that you felt is prevalent that should be addressed that has not been addressed as of now in this constituency per se? See, we just want a general cleanliness. People should follow healthy rules, and they should be all the immunity, basic immunity should be there all the time. Water, pure water, electricity, and general cleanliness. Thank you so much, ma'am. Thank you for talking to us. सर, आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे, क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे इस इलेक्शन, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसके तहत आपने सोचा है कि यार मैं वोट करूंगा, और क्या इश्यूज है जो सॉल्व नहीं हुए आपके हिसाब से, जो होने चाहिए सॉल्व? एक तो लीज-होल्ड प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, का फ्री होल्ड होना जरूरी है, क्योंकि उससे वजह से अनसर्टेनिटी है सबके माइंड्स में. और बाकी एक स्ट्रीट डॉग्स का बहुत बड़ा इशू है हमारी कॉलोनी में. स्ट्रीट डॉग्स जो है वो बहुत हैं. Street dogs. We are really facing a lot of problems with street dogs, because every now and then they are biting to all the kids. Not only kids, we cannot even pass by in the main gullies. We cannot go here and there because all the time street dogs they are sitting, and I don't know who is this, who is really in favor of street dogs. मैम, आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे, what are the issues
that you feel should be addressed, जो अभी तक address नहीं हुए हैं इस constituency की अगर बात करें तो? Cleanliness, maintenance of parks. Yeah. And then what you can think of, maintenance of the roads, and we have flooding. Every monsoon, we have the sewage issue is a major. The Barapulla access is blocked. Yeah. See, the Barapulla, that Nala doesn't get cleaned, so we kind of face a lot of issues because of the backflow from the Nala. Thank you so much, ma'am. So Rishabh, you can also see a bit of visual. Sir, आपसे भी बात करने का कोशिश करेंगे. क्या एक सवाल ले लीजिए कि क्या इश्यूज रहेंगे जिसके तहत आपको वोट करना चाहिए और क्या इश्यूज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है जो एड्रेस होने चाहिए पर हुए नहीं, बता दीजिए सर. Okay, all right, Brian. Let's hop across to Anand, who's also got people. Sandeep Dixit also speaking out for the second time this morning. We listen to what he's saying. Anand, across to you. What are people on the ground saying? What are the voters saying? Yeah, Rishabh, look, I have with two voters with me over here, and just a few moments ago, Rahul Gandhi, the leader of opposition in the Lok Sabha, accompanied by Sandeep Dixit, came over here and he went back after exercising his franchise. So we'll speak to some of the voters here and try to understand that what was going in their minds when they came out to vote in the morning. Sir, आपका नाम और क्या आपके मन में चल रहा था जब आज आप वोट कर रहे हैं? मेरा नाम जुगल किशोर नेगी है. एक्चुअली जो अच्छा काम करे आगे, मतलब दिल्ली के लिए अच्छा कुछ ना कुछ सोचे, हम उसको वोट दे के आए हैं. सर, क्या क्या मुद्दे रहे इस बार आपके हिसाब से इस चुनाव में जो आपके मन में घर करके बैठे कि ये चीज़ होनी चाहिए थी दिल्ली में? आपने पिछले 10 साल 12 साल पहले का भी काम देखा, तो क्या लगता है कितना काम हुआ है दिल्ली में? एक्चुअली देखें सर, कुछ हद तक तो ठीक है, स्कूल्स वगैरह हैं या फिर कुछ हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, और बाकी इस एरिया में तो गवर्नमेंट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है. सारा लुटियन जोन जो है वो एनडीएमसी देखती है. ओके, ना ज़्यादा गलत बोल सकते हैं ना ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं, मीडियम. ओके मैम, आप भी आई हैं सुबह सुबह वोट करने के लिए, तो क्या आपके मन में मुद्दे चल रहे थे? चूँकि लगातार सारी पार्टियों ने तमाम वादे किए हैं महिलाओं को लेकर या फिर युवाओं को लेकर. महिलाओं को लेके वादे किए हैं, पर उसको जीतेंगे तो करना भी चाहिए महिलाओं के लिए, और सब जो जो वादे कर रहे हैं वो तो करना ही है उनको, और इसलिए हमने वोट भी उन्हीं को दे रखा है. इसलिए लगातार अब इस Okay, all right, Anand, we'll come back to you. Let me, we've got a perspective there. Let me hop across from where Anand is standing, literally in Nirman Bhavan, which is a voting booth where, of course, Rahul Gandhi has just voted. Sandeep Dixit, you just saw walking right behind Anand. We spoke to him in this morning. Has just voted. Let me quickly hop across now and go to Shubh. Shubh Rana, meanwhile, is in Chirag, Delhi, I'm told. Shubh, I heard people are with you. Let's listen in. Yes, definitely, Rishabh. NewsX is doing a mega coverage, and we will hop across to the voters who have come here for voting, and we'd like to talk to them. Madam, आप वोट कर आई हैं? आप वोट कर, पहले वो शाही दिखा दीजिए. कैसा लग रहा है आज वोट करके? बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. क्या क्या मुद्दे रहे हैं आपके? मुद्दे तो बहुत कुछ रहे हैं, बट जो कुछ हो जाते हैं उसी को हम देखते हैं. अच्छा, चलिए और लोगों से भी बात करेंगे. सर, वोट कर आए हैं, एक बार वो उंगली वाली तस्वीर दिखा दीजिए. खाना खाकर आए हैं? खाना? हाँ, खाना खाकर आए हैं. अच्छा, पहले मतदान फिर जलपान. जलपान. कौन से मुद्दे हैं आपके, ये बताइए. मुद्दा कोई भी नहीं है यहाँ तो सब सॉल्व है. सौरभ जी ने सब सॉल्व कर रखे. चलिए और भी लोगों से बात करेंगे. मैडम, वोट कर आई हैं? हाँ जी. क्या मुद्दे हैं आपके? क्या बताऊं? अच्छा, महिलाएं तो सबसे फेवरेट वोटर होती हैं. क्या मन में सोचा, आपका एमएलए बनेगा तो आपके लिए क्या काम करेगा? अच्छा ही काम करेगा. हम तो अच्छा के लिए सोच के करे हैं वोट. हाँ. अच्छा सर, वोट कर आए हैं सुबह सुबह, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. जो लोग घर पर बैठे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? हम यहाँ आके वोट करें, घर पे न रहें. घर पे ना रहे. 5 साल बाद ये मौका मिलता है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा, और भी लोग हैं. भाई साहब, आंटी, वोट कर आई हैं आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. किन मुद्दों पर वोट करा आपने? ये तरक्की करेगा देश. अच्छा, तरक्की पर वोट किया. So definitely, Rishabh, people are coming in large numbers, and as you can see, police is also on the roll. They have been checking out the identity cards while giving entry to anyone. Sir, ये बताइए, सीनियर सिटीजन है आप, वोट कर आए, कैसा लग रहा है?
अब करेंगे. अच्छा अभी करने जा रहे हैं. Yes, definitely, Rishabh. And you know, on this seat particularly, there have been politics because a high voltage drama has erupted just a few minutes ago when Saurabh Bhardwaj has come here and he have accused that Delhi police is trying to slow down the voting, and he have said that these barricades were installed earlier there, which was removed when Saurabh Bhardwaj alleged that these barricades are slowing down the voting and people are turning back from this seat. And just a few minutes after this, you know, Rishabh, Saurabh Bhardwaj is about to arrive on this seat, where Saurabh Bhardwaj will first pray offers to Kalkaji Mandir and then he'll come to cast the vote. Yes, back to you, Rishabh. Okay. Saurabh Bhardwaj, of course, casting his vote, the candidate, he's been in the position to win last time around. We'll come back to Anand, Uday, Mehendi. Mehendi, get some people around you and so that we can actually speak to people. It educates our conversation while I pick up our studio conversation as Brian and others have been. Okay, so are you getting a pulse? I'm sitting here and trying to listen into people. Some people are shy. Now let's be clear, okay, in central Delhi, all right, in the Lutean zone of Delhi, lots of people who come from bureaucratic families and other families, okay, political families all there. So you're going to see as Dr. Jaishankar casting his vote, I think predictable who he's voting for. Hardeep Puri, their union ministers, casting his vote. Rahul Gandhi had the strange situation where for the first time in the history of Delhi, in the Lok Sabha elections, Rahul Gandhi probably had to cast his vote for the Aam Aadmi Party because there was no Congress candidate from his city. But there is one today, and there is no friendship between the Aam Aadmi Party and Congress, perhaps anything but that. So there is a contest on, but which way is it going? Let's open up this conversation. Nikhil Jain joining us on the broadcast to get a perspective on what is going on. I'm going to open this up to Nimi Rastogi of the Aam Aadmi Party, Gautam Seth of the Congress joining us, Bhaskar Ghosh with us as well. Okay, so let me get Gautam in and start with Gautam first. Gautam, first of all, good to see at least the Congress trying to make a show of it, make a fight of it in Delhi. You know, there was only the Congress in Delhi for 15 years. Sandeep Dikshit is back. He's fighting from his mother's constituency. Now that the campaigning and all is over, are you a bit nervous today? You see, firstly, we urge the voters of Delhi to come out in large numbers, vote for whosoever they want to, whosoever they think is good for their future, but they must come out and vote and exercise their democratic right. The Congress has fought this election, taking to people the previous 15 years of development and governance model of Sheila Dikshit and committing to bring back the green, good old days that the Delhi saw with Sheila Dikshit as the Chief Minister. Well, for other seats, certainly a contest is going on strongly. But one thing, as per the strong ground reports that we are getting, I must say this on your channel today, that on the New Delhi seat, surprisingly, Sandeep Dikshit is going to be leading and Kejriwal is being pushed to a number 3. The contest has been now between Parvesh Verma and Sandeep Dikshit. Kejriwal has been desperately pushed to a number 3. Okay. And that is what the verdict of Delhi is going to be. Okay, but Gautam, a lot of people say the otherwise. They say that any improvement in performance for the Congress is actually you clawing back votes from the Aam Aadmi Party, and that's a benefit to the BJP, not a disadvantage to the BJP. You are actually gifting potentially seats to the BJP. No, that would have been if the Aam Aadmi Party would have been in any contest. The vote of Delhi this time is against a leader who has been habitually a liar, habitual of giving excuses, someone who failed and miserably failed to deliver in 12 years. So the contest now is actually between the Congress and the BJP. So it's actually the Aam Aadmi Party who rather would be paying a spoil spot and helping the BJP, not the Congress. So I see this as the other way around. You know, Gautam, I know it's a bit tongue-in-cheek of me, but it's such an obvious statement of fact that I have to ask you this. Well, less than 1 year ago, okay, in the New Delhi constituency, Lok Sabha elections, there was no Congress candidate. So the entire senior leadership of your party came out and vote. I'm assumed they didn't vote for the BJP. So all of them would have voted for the Aam Aadmi Party. And now you're saying the Aam Aadmi Party is the most horrible party in the world. How does that make sense? You see, Rishabh, what happened in the Lok Sabha elections, the miserable kind of a pact that we had to have with the Aam Aadmi Party was a big mistake. They had insulted our leaders, most revered leaders like Mrs. Sonia Gandhi, Mrs. Sheila Dikshit, given wrong kind of allegations, nothing that they could prove in 12 years' time in governance.
And every Congress worker in the core of the heart wanted us to fight our hearts out against this man, this fraud called Arvind Kejriwal. We are glad Sandeep Dixit has been put forward. We are glad he is fighting tooth and nail. And we are finally glad that what every Congress worker wanted is happening on ground. Mr. Ajay Makan also admitted that alliance as a mistake. And of course, in politics, okay, but Gautam, help us out with some interesting tidbits, because it was Bansuri Swaraj versus Somnath Bharti 10 months ago, okay, and your party chief, I'm pretty sure he didn't vote for Bansuri Swaraj. Maybe he voted Nota, I don't know. So who did the Gandhis vote for 8-9 months ago, if not Somnath Bharti of the Aam Aadmi Party? I'm just telling you that you see that sometimes in politics there are regrets and there are mistakes that we make. Okay. Mr. Ajay Makan came out in open and admitted to it. But right now what we are doing is what every Congress worker wanted, and that is why you see Congress fighting fiercely on ground and giving tough times to the Aam Aadmi Party and the BJP. So there is a regret, and the regret is coming just months later. And that's the reality of the picture. For the first time in the history of independent India, the Gandhi family members did not have the opportunity to even vote for a Congress candidate for the first time in the history of independent India, because there was no Congress candidate. And I'm assuming the votes either went to Nota or they went to AAP. So let's ask the AAP. Nimi Rastogi is with us. Dr. Rastogi, first of all the best to all of you guys. I know it's whatever it is, it's a tough job that everybody does, and it's not easy dealing with the trials of public life. How are you feeling this morning? Are you a bit nervous? Not at all. Absolutely convinced, happy, content that we have fought this election, rather campaigned with lots of hard work and with lots of dedicated, message towards, certain unique government model that Aam Aadmi Party has been launching, as well as our deep connect with the people of Delhi. We know the in and out. We know people of Delhi and the issues like the back of our hand. So we don't reduce ourselves to third-rate politics of subversion, of distributing money, liquor. We don't have goons. We don't have black money to distribute. But we have this connect, deep connect with the people of Delhi that reflected in 53% of vote last time. And this time also we are very, very convinced that Aam Aadmi Party will emerge as the largest. Okay, so then let me reverse the question. So has been irrelevant, will continue to be relevant. Okay, so let me reverse the question, ma'am, because I remember very clearly exactly 1 year ago, Sandeep Dixit standing outside the residence of Mr. Kejriwal when there was rumors that the police is about to arrive and ED is about to arrive and arrest is going to take place. Then after the arrest took place, there was an alliance between you and the Congress. The same Sandeep Dixit is now out to, he claims to destroy you, to claim back what was a time when his mother was chief minister, whom Arvind Kejriwal replaced. So what happened there? So you should ask the turncoat Sandeep Dixit what gave him the confidence to speak in favor of Arvind Kejriwal, and 6 months hence he's speaking, he's spewing poison for Arvind Kejriwal, whereas AAP stand was clear then, now, and will continue to be clear that we only contest on the basis of calm, key Rajniti and nothing else. Our 15-point guarantee for people of Delhi is the only agenda. And we also want, through your channel, request the voters not to get intimidated. Please come out and vote in whoever's favor, but do exercise your democratic right. Don't get intimidated by the goons and by don't get lured by money, because nobody can find out who you voted. It's your prerogative. It's a democracy, and Aam Aadmi Party is trying to reinstate the faith of people in democracy. But are you concerned, ma'am? And it's a genuine concern. I'm asking just, it's a normal logical thing that, 5 years ago, 10 years ago, there were people who would have said, okay, let's give the Aam Aadmi Party a chance. Okay, you guys are new on the block. You seem to be well-meaning. You want to bring a change in politics, be the change you want to see in everything. But people have seen for 10 years, and some of them might say, okay, we've given you a chance. It hasn't worked out. So Delhi has grown 2.5 times since we took over, but our government models have actually worked. I would suggest the voters who are going to vote in a government school, go after you cast your vote, please go inside and see the difference
in school, in education, in health facilities, in all the other things that Aam Aadmi Party has been able to do, rather than counting the failures or the shortcomings that to some extent we are also admitting that we were not able to clean Yamuna to an extent that we ourselves wanted. So at least try and appreciate the good things that the education has, the entire metamorphosis of education for the future of kids in Delhi has. But most people who either live in Delhi or visit Delhi or happen to pass through Delhi, we don't have to go anywhere. We just have to step outside and take a deep breath, and we can smell the progress for everyone and all the politicians. You can smell it in the air how much progress we've had in North India. Forget Delhi. You can smell it, but no politician wants to talk about it. Be the BJP, Aam Aadmi Party, not necessarily the Congress either. Nobody wants to talk about it. That's a reality check as well. Let me get Bhaskar Ghosh in of the BJP. Bhaskar ji, now it's a very ironic situation here that the BJP should be on the front foot. You have just swept the last election that took place. 7 out of 7 seats once again. So you'd think you are on the front foot, but it almost seems that it's the Congress that might deliver a win by turning away some votes from the Aam Aadmi Party. Why is that there, sir? Yeah, I think we should go by numbers instead of just putting across what we want and what Aam Aadmi Party has done, Congress has done. In 2020, we have got a total 62.59% of voter in the assembly election, which has come down in 2024 56%. And this shows that almost 11%, I think almost 6%, 6.59% of the voter don't turn up at all to vote the Aam Aadmi Party and forget about Congress, who is standing at 4.26% at present. So Congress is never in the race. I mean, they are not in the race and never in the race. Now, the Aam Aadmi Party spokesperson was talking about that Kaam ki Rajniti or something like that. What Kaam they have done? Corruptions, manipulations, malpractices, and to cover up everything is only prevarications. That's what they have done. And over the 10 years, I have been Delhi for last 25 years. So 10 years, Delhi has seen the promise of making Delhi into Switzerland has fall flat. Now the Delhi roads are horrible condition, worse than the village roads. And whichever department you lay your hand, there is a corruptions. Be it buses, be it under the ground. But okay. I want to pick on that corruption. Okay, but because let's pick on two things. Can you, Mr. Ghosh, name one senior political leader who has been convicted of corruption at the highest levels anywhere in this country? I'm not talking about investigations and trials. In 10-15 years since Lalu, can you name one guy who's been convicted? See, conviction is a process of law. We cannot assure convictions. But in last 10 years, rather 5 years, all of the Aam Aadmi Party's top leaders went to jail on prima facie evidence of corruptions, prima facie evidence of malpractice and everything. So what the government could do, the police could bring them in front of the court of law. Conviction is not in the hands of the government. All right. Let me go to the OG. Let me go to the OG scam, the Commonwealth Games scam. We were told. What happened to all those people? Where are they? Yeah, in the Commonwealth Games scam, you see, people was arrested and how many got convicted, sir? How many people being jailed for life for looting this country? Gulati, conviction is not in the hands of the government. It's not a part of governance. It is a judiciary process. And once we hand over to the judiciary process, they will decide to convict, when to convict, how to convict. The Commonwealth Games happened in 2008, 16 years ago. We were not in power since 2000. Since Commonwealth Games, we are not in power. Let us come to the power. This is also one of the sankalp. We have mentioned that all of them who has been involved into the public money corruptions will find its ultimate way. That's what we're talking about. That give us 5 years and we'll make the changes. What changes we have made in Gujarat, we have made in Maharashtra, we have made in Madhya Pradesh, we have made in so many states. We'll make it over here. Okay, let's wish you the best, Bhaskar ji. Let's wish you the best. Let us wish you that the BJP, your party, the party you support, wins the elections in Delhi and forms the government in Delhi. Now, we will have winter will come again, sir. Can you then assure the people of Delhi that if you form a government here in 3 days' time,
there will be no pollution in Delhi by the end of the year. We're talking about the no pollutions, of course, there will be less pollutions because there are factors of the pollution is the illegal construction, is the poor condition of the roads and others which cannot So be. it's the roads, it's not the crop fires that cause pollution, it's only the roads. The crop fire only contribute to very, very low percentage of corruptions. And really, we have made the peripheral roads of Delhi. See the quality of roads we have made in eastern and western peripheral roads. Yes, excellent roads. I've used the roads, so the roads are excellent. Good job to the National Highways Authority. That is the difference. But for people who are going out to vote right now, you are saying the crop fires are not causing pollution in Delhi. No, because the crop fire is causing pollution, but more than a crop fire, illegal construction, the vehicular pollutions and other pollutions also contributing heavily towards the pollution. All right. Now hold your thought. Let me get Nikhil. Nikhil, you know, I know you're not a fan of the government at the union level, but let's just put politics aside. Should we just become cynical that in the end all of them they are the same? Nobody wants to address the causes of pollution. Let's face it, the Yamuna is a mess. We are all choked. The roads are a mess, and all the politicians have all turned out to be the same. Nothing. They're all the same. No, absolutely not, Rishabh. In fact, that is something I keep on telling everybody around me, that to have this notion that all politicians, no matter what party they're from, they're the same. They're here to loot us. They're here to I'm so sorry. They're here to indulge in corruption. I do not buy into it one bit. What I honestly feel is that every political leader, every political party wants to do some of the other good, some more than others, some less than others, some are better at governing, some are not, and that is the choice that you have to make. If you do not like the candidates that are before you, choose the one that that's the least worse. That is what I keep on saying, and honestly what I've been seeing in Indian politics for a long time, and especially from the BJP and Aam Aadmi Party camp, are that when you talk about policy issues, there is very little policy discussions. There is essentially what you engage in is political rhetoric. Like, for instance, look at the Yamuna issue. That ammonia levels continuously rise in the Yamuna beyond the capacity of the sewage treatment plants of Delhi. But what does the Delhi government do? Instead of installing sewage treatment plants, what the BJP government does not, check the water that it is sending to Delhi. But how that issue is raised in the elections, but how is it raised? Yamuna के पानी में जहर मिला के नरसंहार कर रहे हैं, केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं. So even when even when our politicians are talking about the real issues, they are still not talking about it in terms of the seriousness from a policy perspective as it should be from a governance perspective. Okay, so Nikhil, I'll tell you a real issue. Okay, I'll tell you a real issue. Okay, this is as every man as it gets. Okay, public transportation. We have the Delhi Metro, great example for the country. It's being replicated all over the country. Then we have something called the Delhi Transport Corporation. Absolutely. The Delhi Transport Corporation, all the reports tell us that the buses operating, more than 90% of them are unserviceable. You can go onto the street of Delhi, you will see a DTC bus parked on the roadside with a twig tenny at the back because it's not operational. These buses were bought before the CWG games. These matters are in court. It's been 18 years. Now, you and I cannot drive a car that's more than 15 years old in Delhi, but the buses are operating. Now, that's as practical as it gets. But that is governance paralysis, regardless of who's in power. How do we solve these problems? Rishabh, I think the way to solve this problem is for the voters to start talking about the real issues. How many people do you see, when your reporters have been going on the ground, how many people do you see who are talking about the DTC buses? I've been saying this for a very long time, that I remember when I was 10, 15 years ago, I used to see a lot of DTC buses on the road. Whenever you stand on a big crossing, you would see one passing every 1 minute or 2 minutes. And now I simply don't see the DTC buses anymore. The frequency is so low that it is simply not a reliable mode of commute anymore. And these are issues that should have been talked about. But instead of these issues, honestly, I don't even understand what issues are being talked about. It is just political rhetoric. I think the voters in Delhi would have to be more aware about their needs. Okay, and this is what needs to be talked about. So the good news is it's been a much more peaceful election. There's been no rioting. Polarization has happened in the last few days. Okay, no, I'm cynical. So I tell you that riots only seem to happen before an election or before a US president is traveling. I'm a bit cynical about these things. But it's been quieter. But Nikhil, before I go back to the politicians and take a break, in a practical sense, wouldn't it just be easier
if the same government at the center has a government in Delhi? No, I disagree with that, and I'll tell you why. If there is any political party that is deliberately stopping another democratically elected government from functioning at the expense of the people of the country or the people of the state, I don't think that political party has the best intentions of the people of the best outcomes for the people of the state at their hearts. There is no guarantee that if you have the BJP in the state, they are going to work, because whatever they could have done while sitting in the center for the people of Delhi, they honestly haven't. They've tried to stonewall a lot of the works that the Kejriwal government has tried to do. I don't have any sympathies for Kejriwal or the Aam Aadmi Party, but nonetheless, I would have expected more cooperation from the union government, which I have not seen in the past 10 years, and especially so since the past 1 or 2 years. Okay. The kind of things that the Lieutenant Governor has been doing is simply not proper in for the post that he's holding. Okay, it's about niyat for you. Okay, so President of India, Draupadi Murmu, casting a vote this morning. You can see live visuals on your screen. Gautam, quickly to you, and I'm asking a very practical question. Okay, when Sheila ji was in power, there was a Manmohan Singh government at the center. Okay, that does make life easier for a government in Delhi, because let's be practical. That's how the division of power has been done in Delhi, whether people like it or not. If by some chance the Congress forms a government in Delhi, you are going to face the same problems that the Aam Aadmi Party was facing. No, Rishabh, not at all. If you see the first 5 years of Mrs. Sheila Dikshit in power were with Atal Bihari Vajpayee ji as the Prime Minister of India. Correct. And I'll tell you a very interesting incident. When she once went to Vajpayee ji for a metro project, and there happened to be a debate that escalated a lot and seemed that the issue will not be resolved. So before coming out, she said, Vajpayee ji, aap chai aur samosa to khila dijiye hame yahan jaane se pehle. So they served tea, they served snacks, and between having that tea and snacks, the issue was warmly resolved. So it is whether you want to deliver or you want to create events, marketing and excuses out of every opportunity that you get. So it is the will to deliver versus the will to create event management, opportunity and marketing out of everything. The real difference between Sheila Dikshit and Arvind Kejriwal is this, and this Delhiites are really talking about this all openly now, that Sheila Dikshit actually delivered against every kind of circumstances. Okay, Nimi ji, bottom lines, let's discuss bottom lines. What changes? Let's say you reform the government in Delhi, okay, and it's happened, and on 8th you guys are back. I'm assuming then Arvind ji comes back as Chief Minister. But in terms of the governance of the city, what changes? We are just more of the same. You will say the center doesn't work, center will say you are corrupt. We just continue for another 5 years. Not at all. Just like the panelists said that, like the lot of projects of Delhi have been stonewalled by central government and LG, we would expect more cooperation. And despite the resistance and despite their sapping our energy into concocted legal cases and, taking away our powers and, stripping us of our basic governance capacity, we were able to deliver certain key areas that we wear it like a crown on us, that we've been able to transform health, education, and also we've been able to give this free ride to the women so that they can go out and work and economically empower themselves. So our plan and policies are right here. I mean, we have the vision ready, blueprint for the next. Ma'am, the people want you guys to work together. No, they want, the people of Delhi voted BJP at the center. There's no denying that. The people of Delhi 5 years ago voted you in the state. They want you to work together so that when they go out and smell the air, they don't have to choke, they don't have to worry about their babies, they don't have to see schools being closed because the air is too polluted. They want you to work together, and I don't know if changes or not. Okay, so let's not prefer any confrontational politics. We want to be left alone and let us concentrate on the real governance, on the unique government model that we floated. So we want, we would expect better cooperation, and we will also comply wherever this sort of equation is created. So you can take the assurance from me that we only care Bhaskar Ghosh, does it come across as petulant that if only there is a BJP government in Delhi, will the BJP work for Delhi? I think, Mr. Gulati, our panelists are heavily biased. Let me show the living example of couple of states
when the Congress government was in the center, Gujarat, led by Narendra Modi ji, has having immense growth, and it was a growth model for rest of the world, if not in India only. Now, Madhya Pradesh. So there is several states was there where BJP was ruling, but the center was ruled by the Congress from 2005 to 2014. So how do you compare? If you have a good governance power, if you have got a good governance abilities, if you have got a transparency, professionalism and honesty, whether anyone in the center or not doesn't matter. So now these are the lame excuses taken by the Kejriwal, who is always take an excuse not to perform. Okay, all right. You know, of course, I'll draw the caveat that Gujarat and Madhya Pradesh are not exact parallels to Delhi, because Delhi is a special case with a division of power which has been judicially enforced in the last 5 years. I need to take a very short break. Before that, Atishi, who is the current Chief Minister of Delhi, has just speaking out. Let's listen in before we take a quick break. और आज अभी मैंने कालिका माई का आशीर्वाद लिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस धर्म युद्ध में कालिका माई का आशीर्वाद सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, काम के साथ रहेगा और दिल्ली के लोग भी इस धर्म युद्ध में काम को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना वोट जरूर देंगे। आप बाहर थी, आपने बहुत चीजें देखी, क्या कह रही है दिल्ली पुलिस से आपका नाखुश है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया गया है? देखिए, ये बिल्कुल साफ है। इस चुनाव में गुंडागर्दी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की साठ गांठ में गुंडागर्दी हुई है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी, पुलिस ने उनको पूरा सपोर्ट दिया, शह दी, उनको लोकेशन से भगाया। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के ठिकानों पर पैसा मिला, फ्लाइंग स्क्वाड्स तक पहुंचे, पर दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो गुंडागर्दी इस चुनाव में हो रही है, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पिछली बार 8 घंटे वाली बिजली चों कोई ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ? नहीं ਲੱਗਿਆ। ਕੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ,
बल्लभ ने चमक्का भी नहीं मारना, चमक्का। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी जीरो आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। Welcome back. Let's hit the ground running with my colleagues Aditya, who's on the ground, Sambhav is on the ground, Manohar Kesari is in Moti Nagar, he'll be covering West Delhi, Aditya is in Rohini covering that part of the extreme west of Delhi, Simran is on the ground, Uday is meanwhile in central Delhi, Sambhav is also on the ground. Let's kick this off with Manohar. Manohar, अब आपके साथ जो लोग हैं उनसे चर्चा करिए, प्लीज उनसे पूछिए मुद्दे क्या हैं आज सुबह। लोगों में बहुत चीड़ आप है। हाँ देखिए, बिल्कुल मैं सीधे बात करूंगा। अभी कुछ देर पहले ही मनजिंदर सिंह से जो राजौरी गार्डन से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो अपने परिवार के साथ इन्होंने वोट डाला है और हम इनसे बात करेंगे। लेकिन कुछ लोगों से बात कर लेते हैं जो यहाँ पर वोट डाल करके आ चुके हैं। शेषा जी भी फ्री हो गए। शेषा जी, आप लोगों ने पूरे परिवार के साथ वोट डाला है, क्या कहेंगे? देखिए, हमें बहुत खुशी है, इस बदलाव का हिस्सा हम भी बन रहे हैं। दिल्ली में जब एक बदलाव की सरकार आने जा रही है, जो साफ पानी लाने जा रही है, जो साफ हवा लाने जा रही है, जो साफ यमुना जी को करने जा रही है, जो नई सड़कें बनाने जा रही हैं, जो दिल्ली को एक दिल्ली जैसा शहर बनाने जा रही है जो कि बर्बाद कर दिया है 10 साल में, तो हमें भी खुशी, हम उस बदलाव का हिस्सा हैं। लेकिन सीएम आतिशी ये कह रही है कि गुंडागर्दी हारेगी और दिल्ली जीतेगी, और केजरीवाल भी सेम बात कर। हाँ, तो हारेगी, हम तो मान रहे हैं भाई। ये गुंडों की सरकार कैसे बन सकती है जो चीफ सेक्रेटरी को पीट रहे हो, जो अपने एमपी को पीट रहे हो, जो शीश महल के अंदर बुलाकर अपनी लेडीज मेंबर पार्लियामेंट को पिटवाते हो, जो लोगों को नशा बंटवाते हो, जो शराब एक के साथ एक बोतल फ्री देते हो, वो कैसे जीत सकते हैं? हम तो आतिशी जी की बात से 100% सहमत हैं। गुंडों की सरकार जा रही है, भाजपा की सरकार आ रही है। लेकिन जो केजरीवाल ने कहा है कि महिलाएं अगर जोर लगाएगी तो हम 60 से ज्यादा जीत रहे हैं, तो महिलाएं नहीं जोर लगाएंगी ना। महिलाएं भी तो, उनके भी तो बच्चे हैं जिनको आपने नशा दिया, जिन्होंने गंदा पानी पिया, रात को 3-3 बजे तक जागी हैं वो पानी की उम्मीद में, तो नहीं लगा रही ना। किसके लिए लगा रही हैं? मोदी जी के लिए। इसीलिए तो जीत रहे हैं ना हम। सही कहा अरविंद केजरीवाल ने। और आप देखिए, अरविंद केजरीवाल के मुंह से आप कभी देखिएगा, उसके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, गुंडा 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 गुंडा। आप उसको कितना समझाने की, केजरीवाल जी आप पढ़े लिखे, लेकिन वो गुंडा है, उसके मुंह से गुंडा ही वर्ड निकलेगा। वो अपने आप को नहीं बदल पा रहा। अरविंद केजरीवाल जी के बच्चे भी चाहते हैं कि केजरीवाल जी बदलें, ये गुंडा वर्ड को छोड़े, लेकिन गुंडा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उनके मुंह से गुंडा के अलावा कोई वर्ड निकल ही नहीं सकता। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जैसे पैसे के बल पर जीत रहे हैं, रात में पैसे बांटे, कई सामान बांटे, कपड़े बांटे। अच्छा, पहली बात तो ये बार बार कहते हैं हम जीत रहे हैं। हमें एक बात नहीं समझ आती, जब जीत रहे हैं तो ये बहाने क्यों लगा रहे हो आप? दो बातें नहीं है, दो बातों में क्लैरिटी नहीं है उनके। रोज कहेंगे इनके पास सीएम का चेहरा नहीं है। जब हम जीत रहे हैं तो हमारे पास सीएम का चेहरा, हमें चिंता होनी चाहिए। अगर हम जीत नहीं रहे तो तुम्हें क्यों तकलीफ है सीएम के चेहरे की? तो इसका मतलब हम जीत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब को लूटकर अब्दाली के बाद पहला आदमी है जो पैसे दिल्ली लेके आया। अभी तो पंजाब के लोग भी जवाब देंगे, अभी तो दिल्ली के लोग इस साल जवाब दे रहे हैं। कितनी सीटें बीजेपी लाने जाए? 52 से 56 सीटों के बीच में ऐतिहासिक 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत के आएंगे। बिल्कुल ऋषभ जी, ऐतिहासिक जीत बीजेपी Manohar, let's listen to voters. I'm going to come back to you in a second, and let's get in voters. Aditya Kumar meanwhile is in Shakur Basti. Aditya, what are people around you saying? क्या बोल रहे हैं वहां पर, मुद्दे क्या हैं?
जी, मैं अभी एक परिवार के साथ में हूँ जिनके स्पेशल चाइल्ड जो हैं वो आए हैं, अभी देखेंगे ये वोट के लिए। क्या नाम है आपका? रजत मलिक। पहली बार बात करती हैं? हाँ हाँ क्या नाम है आपका? समीक्षा मलिक। समीक्षा मलिक। Okay, all right, Aditya, your network is not working wherever you're standing, so get that sorted out. Meanwhile, Aditya, let's listen to people where you're standing, please. Sambhav, if you can hear us in Mustafabad. Sambhav, why don't you get in people with you? Yes, yeah, absolutely. Here I am joined by a few people. आपने वोट कास्ट किया? प्लीज दिखाएं वोट का साइन। और आप मुस्तफ़ाबाद की इस सीट पर हैं और मुस्तफ़ाबाद में जिस तरह से मुस्तफ़ाबाद लगातार खबरों में था, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के राइट्स की वजह से खबरों में था, तो इस बार किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? किन मुद्दों पे वोट किया है? काम के ऊपर सर वोट दिया जाता है हमेशा। जब भी वोट देता है आदमी तो काम के ऊपर वोट देता है। काम के ऊपर वोट देता है। हाँ। तो आपको लगा है कि हाँ काम हुआ है मुस्तफ़ाबाद? हाँ जी, मेरे हिसाब से केजरीवाल सरकार ने बहुत अच्छा काम करवाया है। महिलाएं काफ़ी बड़ी संख्या में आ रही हैं। आपने वोट कास्ट कर लिया? दिखाएं, आप अपना साइन दिखाएं, पहले वोट कास्ट किया। अच्छा, बुधवार की ये सुबह और लंबी संख्या, बड़ी संख्या में पीपल आर कमिंग हियर and I request my video journalist to pan the camera and show you the queue, show our viewers the queue here, the long okay, queue. all right, Sambhav, I promise you, as much as we want to see the sights and sounds which are important, we just want to listen to people what their issues are. It just gives us an education what's happening. So just listen to people and what their issues are. Let's go back to Manohar while Sambhav figures out the voter lines. Manohar, क्या मुद्दे हैं, क्या लोग बोल रहे हैं? सिंह सिरसा से बात की और उनकी पूरी फैमिली हमारे साथ है, उनकी पत्नी है, बेटे हैं और बेटी है। सीधे हम सतविंदर जी से बात करेंगे। सतविंदर जी, दिल्ली में महिला वोटर्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, एक महिला की जहन में क्या चल रहा है? आपने वोट भी डाल दिया है, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जितने दिन भी मैंने प्रचार किया है इस दौरान, सब इलाकों में जाके मैं अपनी बहनों से मिली हूँ, मैंने उनकी समस्याओं को समझा है। क्योंकि एक आदमी है जो तो वो तो काम पे चला जाता है, एक महिला मेरी बहन को इन समस्याओं के साथ जूझना पड़ता है। पानी नहीं आ रहा, अब लाइट नहीं है, अब गंदी सड़क है, कोई घर पे आ रहा है, बच्चों के आगे जो रिश्ते हैं वो नहीं हो रहे, क्योंकि तुम निकलते हो सड़क तो कहीं नज़र नहीं आती, खड्डे ही खड्डे हर जगह। इतना बुरा हाल है कि मैं जब पूरे इलाके में जाती थी, घर आके मैं इतना सैड हो जाती थी देख के कि ये हाल कर दिया केजरीवाल ने हमारी दिल्ली का। इतना सुंदर था, 10 साल पहले भी मैं उस इलाके में गई हूँ, तो ऐसा नहीं था, जैसा बदतर हो चुका है सारा। धर्मेंद्र, आप क्या कहेंगे? आप युवा भी हैं और आप चुनाव प्रचार में भी गए थे। सर, एक तो मैं जो आपने बात करी कि विमेन इश्यूज़ क्या हैं, इस बार मुझे लगता है सबसे बड़ा इशू तो ये है कि देखिए जो स्वाति मालीवाल जी के साथ हुआ वहाँ पे, जो हमारे रजौरी गार्डन में कैंडिडेट हैं हमारे सामने जो हैं, उनकी पूरी फैमिली पर वो लोग सब मर्डर एक्यूज्ड हैं, उन पे रेप के केसेस हैं। तो जो लोग आदमी कहता था कि मैं पॉलिटिक्स को चेंज करने आया हूँ, आई वांट टू मेक पॉलिटिक्स बेटर, अब वो भी ऐसे गंदे कैंडिडेट्स को टिकट देते हैं हर जगह से, जिन पे मर्डर जैसे गंदे केसेस, रेप जैसे गंदे केसेस लगे हुए हैं। तो आई थिंक लोगों को समझ आ गया है कि भाई इस आदमी ने सिर्फ झूठ और बहाने करने हैं। देखिए, अगर हम पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ दें कि एक युवा वोटर क्या चाहता है? सर, युवा वोटर यही चाहता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ गुड़गांव में और नोएडा में, और उसमें पार्टी पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये है, अगर कोई पार्टी नहीं परफॉर्म कर पा रही तो क्या मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ, कान बंद कर लूँ, बोलो आम आदमी पार्टी को नहीं बोलूँगा क्योंकि बीजेपी पे है मेरे पापा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कि हो सकता है ऐसा? तो आम आदमी पार्टी परफॉर्म नहीं कर पा रही तो मैं तो बोलूँगा ही भाई, गुड़गांव में सारी बड़ी बड़ी कंपनीज गुड़गांव में है, बाकी सब नोएडा चले गए, फिल्म सिटी नोएडा आ गई, नया एयरपोर्ट नोएडा आ रहा है। मतलब डेवलपमेंट दिल्ली में किधर है? दिल्ली जहाँ थी 10 साल पहले, दिल्ली आज भी वही है। मुझे एक चीज़ बता दो भाई, 10 साल पहले ये नहीं होता था, 10 साल पहले अब टैप में कोक के अलावा तो कुछ नया यहाँ पे हुआ नहीं है। और युवा की भी वही इशूज़ हैं, युवा और मिडिल एजेस की कोई इशूज़ में डिफरेंस नहीं है। अपॉर्चुनिटी सबको चाहिए, स्पेशली यूथ को चाहिए। बिल्कुल मलिन, मैंने देखा कि आप अपने फादर के साथ एक पॉडकास्ट की हैं, एक अलग ढंग से आपने इंटरव्यू भी किया है, क्या कुछ दिखाया और ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि हम जब भी मैं इलाके में जा रही थी तो जैसे सवाल पूछते थे, क्योंकि जनता का ना
भरोसा ही उठ गया है। मतलब केजरीवाल जी ने ऐसा करा है, लोगों को इतना बुद्धू बनाने की कोशिश करी है, वादे कर हर वादा, एक वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, हर वादा उनका झूठा था। तो लोगों का सवाल था कि आप भी कह रहे हैं बट कैसे होगा। तो ये बैठ के मैंने पापा से पूछा कि हम इलाके में जाते हैं, लोग इन बेसिक उनके मुद्दे हैं, चाहे पानी का मुद्दा हो, साफ़ पानी पीने वाले पानी का मुद्दा हो, चाहे कचरे का, चाहे रोड्स का, वेस्ट मैनेजमेंट तो है ही नहीं। इतने दिन में मैंने एक जगह एक डस्टबिन नहीं देखा है। तो आपको सफाई रखने भी नहीं दे रहे, मतलब खुद आपके लिए कुछ नहीं कर रहे बट रखने भी नहीं दे रहे। तो ये मुद्दे बहुत लोगों के बहुत सवाल थे। तो मुझे लगा कि ये मुझे डायरेक्ट बैठ के अपने पापा से 1-on-1 इन बारे में हमारी रोज बात होती है। All right. Okay. क्या सोच कर? Okay. On Manohar, on the basis that the election campaign is now over, we of course speaking to Manjinder Singh Sissa, his family members, we would also like to hear from the people who are actually voting whether they think that there is an issue or non-issue. So Manohar will come back to us with the voters. I am hoping that my colleagues will also have the voters with us. So let me give it a shot and hope for the best. Sambhav, if you are with us, we don't want to see the inked fingers. We trust people when they say they voted. We want to listen to mudde kya hain, that's all. Yes. हाँ, किन मुद्दों पर आपने ये वोट कास्ट किया है? एक परिवार हमारे साथ यहाँ है, आप हमें तो सर बिजली, पानी, बस में यात्रा महिलाओं के लिए फ्री है, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। अच्छा, और आप पूरे परिवार के साथ सुबह आए? जी जी जी। अच्छा, सुबह आए अपने सभी, हमने 9 मतदान है। हाँ। हमारे घर की 9 वोट है, तो 9 के 9 वोट हमने अच्छा दे दी। हाँ, मैडम यहाँ देख रहे हैं कि महिलाएं काफ़ी संख्या में वोट डालने आ रही है। मुस्तफाबाद की ये सीट है। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दिया? बस ये बिजली पानी की सबकी सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है, हमने इसी पर। सुबह सुबह जल्दी ही आप आ गए यहाँ? हाँ, जल्दी नहीं आए, बस हमारी वोट डालनी चाहिए। पिछली All right, well, like I said, some people are subtle, some people don't want to talk, some people just tell you in the face who they're voting for, and that gives you an understanding of how politics happens in this country, okay? That the family goes, listen, I control 9 votes, so therefore I have a say in what goes on, and yes, that matters. Every single vote matters. Let's hop across to Simran. Simran, we're going to talk to people, okay, on the ground, not one person, as many as you can, please. Well, absolutely. In fact, as my colleagues are also speaking about the people who have voted, and this morning I am right now here. जिस तरीके से मयूर विहार में, पटपड़गंज में प्रचार हुआ है, अब वोट कर दिया आपने, किन मुद्दों पे वोट किया? देखिए, डेवलपमेंट पे वोट किया है हमने। जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने अच्छा डेवलपमेंट किया है, तो हम उसके हिसाब से वोट कर रहे हैं। पटपड़गंज ईस्ट दिल्ली के मुद्दे जो हैं उनको रखते हुए सामने वोट किया गया। हाँ जी। Well, absolutely. In fact, as more voters are also coming up at this point of time, and right now I'm in Mayur Vihar, where in fact Arun Singh will also vote. माता जी, आपने वोट किया है सुबह सुबह? हाँ, कर दिया। किन मुद्दों पे वोट किया गया है? दिल्ली की महिलाओं की इस समय पे बहुत चर्चा हो रही है, मुद्दे क्या है दिल्ली वालों के लिए? मुद्दे रोज के यही है कि पानी, बिजली और फिर हमें ये सफाई का मुद्दा बहुत अहम है। एजुकेशन है, इतना अच्छा काम है, एजुकेशन नहीं कर रहा। केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल से काफी पता चल जाएगा। Well, in fact, voters are coming out here, and after casting their vote, many are speaking up, and women also have come up at this very polling booth in the morning. And as we have just tried, we'll come back to you. Let's hop across now to the other part of older Delhi, in Balli Maran, in Chandi Chowk, where my colleague Javed is standing by, and he's actually got voters he's speaking to. Let's listen in. दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 पूरे 70 सीट पे हो रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली के बल्ली मरान विधानसभा सीट पे, मेरे साथ वो एक शख्स हैं जो इस वक्त वोट डाल के यहाँ से निकले हैं। सर, क्या नाम है आपका और आपने वोट डाल दिया? रईसुद्दीन। वोट डाल दिया? जी सर। और जरा फिंगर दिखाएंगे। इस बार जो बल्ली मरान के लोग हैं, किन मुद्दों पर अपने उम्मीदवार को चुन रहे हैं? मुद्दे यही है, सफाई सुथराई, पानी, बिजली होनी चाहिए, बस मेन मुद्दे तो यही है। क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा, या फिर जो इस बार मुद्दे हैं बल्ली मरान का, उसको लेकर यहाँ के लोग आएंगे? ये तो एंड में पता चलेगा। बदलाव होगा तो एंड में ही पता चलेगा, अभी शुरुआत में कुछ पता नहीं है। बदलाव होगा तो आखिर में पता। क्या है इस बार लोगों का जो मुद्दा क्या है इस बार बल्ली मरान के लोगों का? मुद्दा है सीवर का है,
सफाई का है और पानी का मसला है। ये 3 मसले हैं जो जिसको क्लियर करने हैं। तो इस बार क्या लगता है कि जिन मुद्दों पर आप लोग अपने उम्मीदवार को चुनेंगे, तो क्या इसका होगा विकास या फिर कुछ अलग? विकास तो वही मुद्दा तो है, वो बोले हैं कि नहीं इस बार हम काम करेंगे और मुद्दा तो वही है। क्या इस बार बल्ली मरान का क्या हालात है? अब यानी कि अब तो आज वोटिंग होना है, 8 तारीख को इसका रिजल्ट आना है, तो बल्ली मरान के लोगों की इस बार क्या उम्मीद है, यहाँ के विधानसभा लोगों की? सफाई वगैरह साफ हो, जैसे भाई ने कहा है, सीवर वगैरह, पानी वगैरह, बिजली वगैरह, इन सब में सुविधा हो इंसान को। All right, okay. Javed, there in Balli Maran, we've been listening to perspectives from people because I just don't want to have just a conversation with guests and just opinions. Now, like I said, some people will just tell you in their face what's in their heart and mind. We don't ask them who they're voting for, we ask them what the issue they're voting for. Who they're voting for is their own business. Some people don't want to talk, some people are shy, some people, you know, in front of a camera, you know, they say what's the politically correct thing to say, that we are voting for Vikas. It might be because of identity, we don't know. But it gives you an education on what the pulse is and what the people think are the issues versus what the politicians want us to think what the issues are. Delhi is quieter, remember, 62% about voter turnout. It will pick up more towards the day as it progresses. So, we are 9:30 right now. We've still got a chunk of another 7 or 8 hours of voting to go. We hope we beat the 62% mark. It's been a quiet election. Does that mean more people will come out and vote or less people will come out and vote? Let's pick up this conversation where we left out. Dr. Pooja Tripathi of the Congress joining us on the broadcast. Piyush Pant is with us. Dr. Vijay Khera is with us. And Nibin Rastogi back with us. Piyush ji, let me start with you. Now, let's address this from a very practical sense. Does it make a difference who forms a government in Delhi? Because if the Congress forms a government in Delhi, they'll be at war with the centre. If the BJP forms a government in Delhi, they don't have a face particularly. If the Aam Aadmi Party forms a government in Delhi, they are also going to be at war with the centre. So, does it make a difference? Piyush ji, yes. Yes, I think Rishabh, there will only be a the difference of change in the government. But I think practically the things will be the same, because still the Delhi was being run by LG through LG, and most of the powers of the state government were taken away by the centre through LG. So most of the decisions were in the hands of the LG, and he was taking, whether it was appointment, transfer, or finalizing the decision regarding executive orders. So I think there will not be much difference unless the power of state government is restored to them, as was directed by the Supreme Court. But still the people feel dissatisfied, and the anti-incumbency is always there. So they want to change the government, and they expect more things to be done. The other issues which have been left uncared for, like the pollution, like the Yamuna cleaning of the Yamuna. But Piyush ji, who cares? Now, in the end, the people of the country, the people of the city, I am assuming, would want all the politicians to work together to solve these problems. None of them ever work together to solve these problems. So, yes, none of us, not you nor me, are going to take a glass and drink water from the Yamuna anytime soon. If you want to see the progress in Delhi, step out into the balcony and smell the air. That's progress for you. Okay, it's just amazing. What progress? Wow. Okay, but nobody wants to work together, Piyush ji. They're just going to pass the buck to each other. So why should we be cynical? That's true. Because these problems are which require that all the political parties, they should come together and think over it, because these are the very serious problems of Delhi, affecting all the people of the Delhi, irrespective of to which party you belong to. But as you said, yes, of course, because the parties have their own vested interest, they have their own political score to make, so they hardly they come together and solve the problems. So I think these things has to be addressed, because moreover the infrastructure problem is also there.
the You know, road. I and don't want to complain about the infrastructure in Delhi because I know there are parts of the country that have it worse. We are the national capital. We have broad roads and big highways. Yes, maintenance of roads is a problem. Yes, garbage is a problem. Sewage is a problem. Flooding is a problem. Pollution is a problem. Water is a problem. We have all these problems. I don't get it. We had major floods in Delhi. It rained for like one day. I don't know, the rain was bad, but Delhi was flooded. Okay, now who's solving Yes, these problems? yes. We don't know. When the flood happens, it's because some other government didn't open some barrage or didn't open too many barrages. When there is lack of water, then also somebody else's problem. We see epic pass the buck, and I'm not taking any political parties. All political parties pass the buck. So let me turn the politics into this. Pooja Tripathi ji, who are you against in Delhi? Are you fighting the BJP or are you fighting the Aam Aadmi Party? I think, Rishabh, we are fighting for the people of Delhi. You actually raised issue. We just go out in the balcony and we can't breathe the air. We turn the tap water on and it's dirty as hell. And this is the same Delhi. You just said that, everybody is at war. I want to remind you, Sheila Dikshit ji worked under Atal Bihari Vajpayee for 5 years. And in her 15 years tenure, she actually turned around Delhi into the greenest capital, full of flyovers and metro rails and CNG buses and whatnot. And this is the same Delhi in the last decade that we have seen an absolute misgovernance, broken promises. I can go on and on about the anti-corruption crusade which Arvind Kejriwal came on the power with, and he just threw it off the window. But the problem here is we are literally living in a gas chamber in Delhi. And Delhi has turned into a waste dump with 3,000 metric tons of waste being dumped every day. Yamuna has been turned into a literal sewage drain. There, the Supreme Court says there's no fresh water in Yamuna. Okay. And I think these are the issues that people would vote out for. Okay, People so go out- Pooja Tripathi, let me wish you great tidings. Okay, that today you sweep and you get 65 seats and the Congress forms the government. Sandeep Dikshit becomes potential next Chief Minister of Delhi. Let's wish you great tidings. Now let's assume that on next week you are swearing in. If you form a government in Delhi, how will you fix the air? How will you fix the water? Because you'll do the same thing. You'll blame Haryana, you'll blame UP, you'll blame Centre. You'll do exactly the same. I don't think so. We have delivered in Karnataka, we have delivered in Telangana, and if you read our manifesto, Rishabh, we have an actual climate action plan. We are actually working on, we'll not be making excuses of LG and things and, making insane excuses like Haryana is polluting Yamuna. No, we will get into the action on day one if we get to swear on, coming days. And that's where Delhi Congress has delivered to Delhi in the last 15 years. Please remember that. And Sheila Dikshit has been an exceptional chief minister, and we will repeat the same because it's the people of Delhi deserve better. People of Delhi deserve air, water, which is the fundamental. No, people of Delhi deserve better for sure because it's a laughable joke. Okay, the union government sits in Delhi. Okay, and there's a winter session of parliament that happens in the peak of pollution. Okay. Yeah. The Delhi government sits here, chief ministers travel, foreign dignitaries travel, all the diplomatic missions are in Delhi, and Delhi chokes. And no politician wants to tell you why. I'm being told today that Delhi chokes not because of farm fires, but because of construction activities. That's why Delhi chokes. No, it's not nothing. Okay, I'll let the people judge. But I have to ask you, Pooja Tripathi, this obvious question. I was asking a previous colleague earlier in the morning. Okay. Less than 10 months ago, for the first time in the history of independent India, the leadership of the Congress party, the Gandhi family, did not have a Congress candidate to vote for in a Lok Sabha election. They either voted Nota or they voted AAP because we saw them go to vote. I am assuming they voted Aam Aadmi Party. So the people that Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Sonia Gandhi, Robert Vadra voted for, that man was Somnath Bharti. Okay, you guys voted for him, and today you say they're all useless. How does that make sense? I want to drop Robert Vadra's name because he's not the Congress leader. So fair enough. Please correct that. Okay. He was there with the family voting, but fair enough. Yeah, let me answer you. In Lok Sabha elections, we went together as an India Alliance, and Aam Aadmi Party was a formidable partner of our India Alliance. And we voted for the India Alliance candidate, the leaders that you named, they voted for Somnath Bharti. But what happened in, let's come to the Haryana elections, let's come to the next state elections.
we were still discussing as the biggest alliance partner, the biggest political party in the India alliance. We were discussing giving seats to AAP and sharing, and Aam Aadmi Party comes, chief convener comes out of jail and say we'll contest in all the seats of Haryana. And this is we went on to see what happened with Aam Aadmi Party contesting all the seats in Haryana. They went in to favor BJP. They actually polled lesser votes than Nota. So we are not a NGO, Rishabh. Let me be very clear. We have political aspirations, and this is the elections of Delhi, and we will fight the incumbent. The government that is in power in Delhi and government that has failed to deliver in Delhi, and that's our political. You can't expect the Congress to be the largest alliance partner to always go on sacrificing, and Aam Aadmi Party can go on contesting in Goa, Uttarakhand, Haryana, and things like that. So yes, we voted for the India Alliance candidate in Lok Sabha elections, but state elections are a different game altogether. We are fighting Aam Aadmi Party. It's not just for political relevance. I am saying we are fighting for the people of Delhi. People of Delhi deserve better. But it's different for the politicians. It's not necessarily different for the people. The people, I'm assuming, just want good governance. And I find it hypocritical. You say, no, it's not hypocrisy. That because the same Sandeep Dixit was standing outside the house of Arvind Kejriwal blaming the BJP for arresting him and saying that he's innocent, okay, and then there should be an inquiry. The same Congress party is the one that started the inquiry into the liquor gate. So it's hypocritical, but nonetheless, okay. Let me get the others in. Mr. Khera, Dr. Khera, in a practical sense, how are you digesting the conundrum that the people of Delhi voted for you just less than a year ago in the Lok Sabha elections, but you are not sure if they'll vote for you this time around? Arvind Kejriwal still has some popularity going for him, sir. We are very, very much sure the people are going to out Kejriwal government by any means, because there's so many problems he has created in the last 10 years. I do believe, and you may see also, the first thing I must say about the Congress party, which very lately realized that they have been feeding the milk to the snake. That snake has been biting the Congress party for the last 10 years. Only once they have supported the UP party and made his government in 2013. Though UP party got less percentage of vote than BJP, got less candidates than BJP. But because of the Congress mistakes, because they could not understand Kejriwal in the beginning, then the first thing he did, that Sonia Gandhi could send her jail. Modi doesn't dare to send her jail. I will do it. Then give me if we can't do Modi. Still the Congress has been feeding the milk to the snake. Now they have realized, they have come, right from 24% vote to 4% in last 10 years. Now Congress has realized, and probably this is the biggest thing the Congress has done, and Kejriwal's vote. Okay, but Dr. Khera, let's be inside your mind. Let me be blunt. Aren't you hoping that the Congress recovers a few percentage of vote, because every vote they win is a vote away from the Aam Aadmi Party, and that helps you, helps your guys? That is not my concern. That is your analysis and others' analysis. My concern is only this, that at least the Congress realized to send this man away. He has to be thrown away. Rahul Gandhi has been talking much more against Kejriwal than Bharatiya Janata Party, because he realized now it's the public has been suffering. You have seen it right now. Many people have said about it. Now you have seen the escalated will by AAP government in last 10 years in connivance with the electricity suppliers and the agencies. And this has been proved by the commission recently, which has given the report that more than 40% have been charged by this AAP government just on some of the other pretexts like line laws and new names. But Dr. Khera, you have the years on me, so more experience. My memory is short, but I remember when I was starting my career that there was something called the CWG scam in Delhi, and there was Suresh Kalmardi, and all these guys were accused of looting. I mean, they were selling umbrellas for 50,000 rupees. And all of this happened. What happened to the conviction, sir? You are saying Arvind Kejriwal is corrupt, but not even a trial is begun. None of these guys were convicted of anything. I have a lot
lot of things to discuss, whatever the point you bring out. But right now, because we are facing the daily problems, so the bill which has been approved by the commission, right now on 26th December, they have submitted the report, and now the bill have been reduced up to 40% by the Delhi government. So that means what is about the Arabs and crores of rupees which have already been taken in connivance with the agency? One. Number two, they could not supply the drinking power. People has been thirsty for days together. The poor people could not get the proper water, which he has promised in the earlier. The bad roads, forget about it. Pollution, forget about it. Everything is no, let's not forget about it. Let's talk about it. What, according to you, Dr. Khera, causes air pollution in Delhi? What's the reason behind air pollution in Delhi, Dr. Khera? So you are asking me? Yes. You see, the traffic jam. Traffic. Not widening the road. Listen to me just now, please. So the farm fires do not cause air pollution, according to you? You have been hearing so many things, Parali, Tharali, Dhikana, but just listen to me as a doctor, what I have been realizing all these days. Because I have seen the patient dying in the ambulance. It's my pain. I have seen he could not supply the oxygen in the hospitals. I'm asking you about air pollution, not about traffic jam, sir. What causes air pollution in Delhi? Is air pollution in Delhi a problem? If you don't listen to me, then you tell me. No, but if you don't answer the question, what do I listen, sir? You are talking. I'm saying air pollution, you're saying traffic jam. You just question me traffic jam. You don't listen me completely. I am saying this is because of traffic jam for hours together and burning of diesels more than 100%. The diesel just burning, the petrol is just burning on the roads of lakhs and lakhs of vehicles. So Parali burning does not cause pollution. That is one reason. Parali, you know all those things, but you don't know this thing. Because Kejriwal failed here for two reasons. He didn't bother to widening the road anywhere and to remove the bottlenecks. I'm telling you the new truth. But one should know, the people should know it. He could have avoided the bottlenecks of the traffic at many places. If the land belongs to government, he must have taken it. If land belongs to private people or some other agency, they should have paid and take it, that land, and make the road wider on all the way. The 5 lakhs vehicles running for more than an hour on the road doesn't matter at all. Okay, no, I'm sure it matters. I'm sure it matters, but I'll tell you what matters. If you take something and you light it on fire, okay, as much as you light it in an internal combustion engine, it causes smoke. All right. Now, what you're seeing, ladies and gentlemen, in the middle of an election, it's called gaslighting and whitewashing. All the politicians will tell you that Parali burning does not account for much pollution, less than 1% of the pollution. Okay, it's your car that is killing you. It's not the fact that all of North India is on fire. That is not the problem. Okay, there's a story we were told when we were children. It was called The Emperor's New Clothes. I'd recommend you read that story because it'll tell you about the state of politics. Nimi Rastogi, I'm coming to you in a second. Piyush ji, here's a reality check. Now, none of the politicians will even accept that the farm fires are a problem because nobody wants to say the farm fires are a problem. What do we do? Actually, this is kind of a ducking the real reason, ducking the real problem. Parali is a... Dr. Khera, hang a second. Let Piyush ji. Dr. Khera says it's the car pollution that's killing people more so than the farm fires. What's your opinion, sir? No, I think both have... Dr. Khera, one second, sir. One second. Piyush ji, go ahead. Both have some contribution to it. Parali is also one of the factors, as well as the traffic jam because of the emission of you can say the emission which comes out Dr. from Khera, 1 second, sir. 1 second. Vehicles. Piyush. So that vitiates the air, that pollutes the air. But Vijay Khera was pointing out the traffic jam, but he was not pointing out the broader policy which has been followed because every day we see more and more vehicles are coming on the roads. Newer vehicles are coming on the roads. So people, and moreover, what is the role of the citizens? That's very important. Do they realize it, or just they do blame the government? Because the vehicles are being driven, single-handedly. One person is driving a single vehicle. So there is no policy as such, and there is no responsibility on the part of the people as well. Ladies and gentlemen, it's your fault, is what you've just been told. Okay,
Fair enough. We all have to live in the world and we all cause pollutions. Every time I breathe in, I breathe out carbon dioxide. So, literally living also causes pollution. It's a reality check. Okay, but jokes apart, let me get Dr. Nimi Rastogi back in. Dr. Nimi Rastogi, in a practical sense, I just want to ask a practical question to you. Okay, for a person in Delhi, won't it just be easier to have a BJP government? Because you guys will keep fighting, it will never stop. Okay, it's not going to stop next year or 2 years from now. Wouldn't it just be easier, even if the people like you, wouldn't it just be easier for them to have a BJP government? So I'll not go ad nauseum about the false claims, unpractical ideas, and the narratives that my competitors or my fellow panelists are saying, because I want to respect the sanity of the viewers as well as the airtime. What I would like to say is that the larger picture is that center and state should work in coordination to solve this overwhelming problems of pollution. And we want, and we are very confident that when we come to power, we would extend all cooperation to center and be very humble with them and allow us to practically implement this, the continuous policies that we have made the blueprint for. So you can take the assurance from us that we have this whole plan for pollution, and that has but worked. Ma'am, it's hypocritical because you will also tell me that this the cars in Delhi, and if you switch them off in the red light, you know that there are fires burning in Punjab in the winter season that cause pollution. I agree. Farm fires are the major contributor to pollution, and because of Punjab government's cooperation, there has been 60% reduction, and Parali has been put to better use. So we should continue using technology and new ideas to sort the problem rather than gaslighting or shifting the blame. The center needs to step in. There is pollution in Bareilly, there is pollution in Alwar, there is pollution in Lucknow. So it's not AP government that's causing it. It's an over-compassing problem that we need to, stop blaming others, and like all the stakeholders should sit together and form a plan, and Delhi government will play its role to ladies and gentlemen, why it's laughable? Okay, because when the pollution happens and literally the satellites are recording the farm fires, there is pollution in Lahore because of the farm fires in India. Okay, Lahore does not have as many cars as Delhi. Now imagine what a laughable situation that all the political leaders, including a good doctor, are telling us that the burning of the farm fires does not cause the pollution. It's the cars only that cause the pollution. Well, Dr. Nimi Rastogi, but in a real sense, Delhi's governance has been a headache for you. It's not been easy for you, whether you like it or not. And you say the center doesn't let you work. The center says it's your job to do your issues. It's not their problem. And they have a LG that deals with his matters. This is your responsibility. So what do you take responsibility for? What was your job? We want to concentrate only on Kaam Ki Rajniti, and we have been able to deliver certain key areas. So we will continue, we will work hard, we will use all kinds of professional consultation in making life of our average citizen in Delhi better. BJP has done disservice to Delhi by stopping most of the things that they could have contributed towards. Delhi could have been 10 times better had center had cooperated, but no regrets. Okay. Let's now Okay, practical question, ma'am. No politics. Practical question. If the Aam Aadmi Party forms a government, will it be Arvind Kejriwal returning as chief minister? Yes, of course. Why did he need to take a break? Why Atishi for a few months? On moral grounds, because certain false accusation has been put on him, and he feels it imperative to be responsible and accountable for those people who vote for him. So for now, he is a CM face, and there's no legal hurdle in this. As our legal there's no legal hurdle, absolutely not. But isn't it a practical hurdle that the cases are still pending, and then there might be more court cases, more face-offs, more arrests? Won't that disrupt governance in Delhi? Easiest thing is to accuse someone. They have not been able to prove even a single paisa corruption on any of our leaders. So
it is in front of the people now. They know Arvind Kejriwal is honest. These are false cases. This is all concocted narrative. So based on that, we'll come back to power and Arvind Kejriwal will be our Let me ask Pooja Tripathi the impossible question. Okay. According to you, who is worse, BJP or Aam Aadmi Party? But before I answer you, let me tell Nimmi Ristogi, it was not on moral grounds. Court barred Arvind Kejriwal from signing any file, attending the office meetings, and that's why he had to step down. And that's the irony that the party that claims Aam Aadmi Party cannot make an Aam Aadmi Aurat as a chief minister. She has to turn down. She has just been turned into a temporary stopgap arrangement before Arvind Kejriwal again takes up office. And I think that speaks volumes about this party. So, which party is worse? You are saying? I think both are worse. The Aam Aadmi Party at the state needs to be removed because they are making a mockery of democracy. The way they have derailed all their promises, the way they have turned Delhi into a dump yard, that they have turned Delhi into a mess of a capital city. I think so will you be happy if the BJP removes the Aam Aadmi Party? No, Congress will remove the Aam Aadmi Party. Why are you getting into this conclusion that BJP? Okay, could happen. Anything is possible in politics. I've seen parties wiped out to zero and come back with a bang. Think DMK, all the people, 2G scam, all of them became members of parliament again. Okay, A. Raja was back, Kani Modi back. Okay, you thought 10 years ago that it was a total disaster. So politics, anything is possible. I'll leave the last word with Dr. Khera. Dr. Khera, now let us assume that the BJP forms a government in Delhi. Let's take it as a hypothetical. We'll find out in 3 days. How will you then fix the problems we are discussing? Actually, we have proved it in central government. If you remember, only a day ago, Prime Minister Modi has spoken in the parliament that he has built 12 crores Shauchalaya toilets to the poor and 40,000 crores have been given to the poor directly in their accounts. That means we work it. We know the job. We will add ethanol. Suppose we are talking about pollution. So that time, of course, parali is there. But when there is no parali, then also we face the pollution every day. This was what I was going to tell. And if this stagnation of traffic is removed, we will be more comfortable traffic and running fastly. So at least lakhs and lakhs of vehicles will not burn their oil. Because oil burning does create the pollution. This is what I say. So yes, our priority will be the water, toilets, public toilets for ladies, better schools, and of course taking care of the poor and the patients. As I was telling you, for want of treatment, number of patients have died on the road in the ambulance because, and more than that, they have not been given this Ayushman Yojana. We provide 5 lakhs rupees, even now more, about 10 lakhs rupees, and lakhs of people have got this kind of help in all over the states in the country. Okay, Dr. Khera, straight question. For the people voting for you today, some of whom are the recipients of free electricity, will you, as the Bharatiya Janata Party, withdraw the free electricity, yes or no? No. Any facility which has been given to the poor, we will never withdraw. It doesn't matter who did it. If anything, he has given it, why we should withdraw? We should not. So should we then give free electricity under 200 units to everybody in the country, sir? Why only people of Delhi? Whosoever is required, who really needs this kind of benefit. This is the only difference between the revenue or freebies and other helps. We have been helping the people to bring them. But you are saying that the people of Delhi can get free electricity, but the people of India should not? How is that fair, sir? Maybe. We have been providing to the farmers all over the states. So many farmers do get free electricity. Okay, but nonetheless, households should not get. Okay, last word, Piyush ji. I have Vijender Gupta standing with me. Piyush ji, I am asking a very straightforward question. Won't it just be easier to let the BJP have a government in Delhi? Things will work better, Gati Shakti will come in and things will operate better. Because if Congress forms a government, Aam Aadmi Party forms a government, the chaos and the confrontation will never end. It seems
that they will work better because, you know, double engine sarkar as they call it. But what we are seeing practically in other states, it is not happening like that. Moreover, in Delhi, you know, the confrontation has been between the Aam Aadmi Party and the BJP government at the center. Earlier, when Sheila Dikshit was in Delhi, she was ruling Delhi, then there was no conflict between the center and the state government. So it depends on the party which is ruling the state, how far it wants to take the cooperation of the central government and bring relief to the people. So I think it was a sort of a characteristic of Aam Aadmi Party, or we may say the Arvind Kejriwal, that he loves you know, clashing with the powers that are, so that he can derive some mileage out of that. So that has been the kind of working for the Arvind Kejriwal. That's why these problems came up. Had he been a little bit cooperative, a little bit submissive, then these problems would not have cropped up. Yes, so but I think you answered your own. I mean, you made your point. But what the center expects is that the government of Delhi accept that it is a junior government in, and Arvind Kejriwal refuses to accept that he is the junior government in. Okay. Now, ladies and gentlemen, here's the bottom line. You are the boss today. Okay. You are the manager of all these people. You have one day to be the boss. Now, the judgment call that the people who are voting have to make is, does competition bring out the best? That does it help that the BJP, Congress, Aam Aadmi Party are competing in Delhi, so that brings out the best in them? Could be. Okay. Or does the competition actually cause paralysis if everybody is fighting? That's the judgment call that you are going to have to make today. Your call to decide which way it lands. So I'm going to thank my guests. We have Vijender Gupta of the BJP, who's the state president, speaking with us. Then we take a quick break. Let's listen in. Polling has commenced in the national capital, and it's in fact the early morning hour. Joining me right now is Delhi BJP President Virendra Sachdeva ji. सर, मतदान शुरू हो गया है और आज दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव के लिए जो जंग है वो छिड़ चुकी है। आपने मतदान किया है, मतदान दिखाइए और बताइए कि दिल्ली में अब जो लहर है वो किस तरीके से आने वाली है। देखिए, दिल्ली इस बार बदलाव चाहती है और मैं आपके माध्यम से सभी दिल्ली वालों से अपील करता हूँ, बाहर आइए, अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, बेहतर दिल्ली के लिए, विकसित राजधानी के लिए डबल इंजन की सरकार बनाइए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए वोट दीजिए, गंदे सीवर, गंदा पानी, बढ़े हुए बिजली के दाम, टूटी हुई सड़कों के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट कीजिए। कल जिस तरीके से शाम को देखा गया है, शाम को आप लोग भी गए हैं, कंप्लेंट भी आपने रजिस्टर कराई है, ईस्ट दिल्ली की ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर आपने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? और देखा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। कल लक्ष्मी नगर में हमारी एक पूर्वांचल बहन है विभा झा, उसके साथ मारपीट की गई है, एफआईआर दर्ज हुई है, तीनों आम आदमी पार्टी के गुंडे हैं। उसी तरह से हमने देखा मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, उनका सहयोगी 5 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा जाता है, साथ में जो दूसरा व्यक्ति पकड़ा जाता है वो दिल्ली के शिक्षा विभाग में कर्मचारी है। तो पूरी की पूरी अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर गुंडई, शराब और पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहती है तो दिल्ली की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। और दिल्ली के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इतने वोटर्स आ रहे हैं और इतनी बड़ी जंग छड़ी हुई है। ईस्ट में भी पटपड़गंज से लेकर मयूर विहार, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बड़े बड़े दावे हैं। बीजेपी के लिए क्या उम्मीद रख रहे हैं? पूरी दिल्ली में आप नरेला से शुरू कीजिए और करावल नगर तक जाइए, पूरी दिल्ली में बदलाव की लहर है। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट कर रहे हैं, लोग अरविंद केजरीवाल के झूठ के खिलाफ वोट कर रहे हैं, लोग विकास चाहते हैं और विकास और विश्वास का एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। इसलिए लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पिछली बार 8 घंटे वाली बिजली चो कोई कट लग्या नहीं लग्या। कट दी गल तां छड्डो, बल्ब ने चमक्का भी नहीं मारना, चमक्का।
ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ 3500 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ पूरे इंडिया बनना चाहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH A state that has been transforming human curiosity into innovations for more than 100 years. We are Karnataka, a global hub of innovation. From 5G technology to high-performance chip designs for supercomputers, from cutting-edge medical technology to indigenous fighter helicopters, from designing and developing satellites to building greener and cleaner automobiles, from apps that make our day-to-day lives easier to technology that will drive the future. In reality, what we do here directly impacts the world. Our talent pool is our biggest strength, and together with our commitment and vision, Karnataka is uniquely positioned as a global innovation hub. Join us to shape the future. अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और NewsX का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। Welcome back. You're watching NewsX. I'm Rishabh Gulati. Rolling coverage at the elections taking place in Delhi as we speak. The fate of what happens to Arvind Kejriwal. Does he win? Does he form the government once again in Delhi? It's crucial. This is his base. Let's not kid ourselves. It's really important. The BJP less to lose but all to gain. The Congress is out gunning and ironically in this case gunning for the Aam Aadmi Party. So how is it shaping up? 62% of Delhi registered voters turned up 5 years ago. How are they turning up early this morning? It's been a bit slow. Pia, my colleague standing by. Pia.
Indeed, Rishabh, let's take a look first up at the overall early voter trends. We have up until now 8.10% of the electorate that has come out to cast its mandate. Let's go by constituency wise. In New Delhi, 7.41% of the people have inked their finger this morning till 9 a.m. In Kalkaji, the number stands at 6.19%. Let's also take a look at Jangpura, where 7.33% of the people have inked their finger. Let's also in fact take a look at Malviya Nagar, where 6.73% of the people have cast their mandate. Remember this early voting trends till 9 a.m. 8.70% of the people have cast their vote in Patwakanj. In Rohini, 7.64% of the people have inked their finger till 9 a.m. this morning. In Rajouri Garden, the statistics stands at 5.89%. Meanwhile, in Greater Kailash, 6.80% of the people have inked their finger. This is data, of course, that has been released by the ECI. In Shakur Basti, 7.01% of the people have cast their mandate. Meanwhile, in Okla, 7.90% of the people have inked their finger. In Ballari Maran, meanwhile, 6.97% of the people have cast their vote. Back to you, Rishabh. Balli Maran in Chandni Chowk. Pia, thank you. It's been quiet this morning, okay? But we are just a couple of hours in. We still have a good 7 hours of voting pending, and it'll creep up to the 60% mark. Now, does it matter? Yeah, of course it does. Number of people who show up and vote matters, okay? The traditional wisdom, if you study this, tells you that if a lot of people come and show up, okay, then that's when they are upset. Being upset drives more people to vote than being happy. That's what traditional wisdom tells you. We have got many examples that tell you the opposite, and they tell you that people sometimes do pro-incumbency voting. We are told that they're very happy with the present government. They want them to stay because they fear change. So that's why people come out and vote. We don't know, okay, but we will know one thing: what the wisdom of the crowd is telling us in Delhi. It had a ruling just less than 10 months ago, and it said at the center, % we want 7 out of 7 seats going to Narendra Modi's BJP. This time around, what do they say? Let's open this up, because we keep having the political conversations, the analyst conversations, and we have me putting in my perspective, whatever that might be. But the only thing that matters is what is being said on the ground. So let's hop across to our reporters. You can see them all around me. They're all in various parts of Delhi. 12 of them are reporting here. It helps, of course, that our studios are also right here in Delhi. Brian is standing by. I see a lot of voters behind him. Brian, let's hop across to you. Let's speak to voters, as many as we can, as fast as we can, and find out what the issues for them are this morning. वेल डेफिनेटली ऋषभ मैम, सर पहले दिखा दीजिए कि आपने वोट किया है, क्या इश्यूज थे जिसको मद्देनजर रखते हुए आपने वोट किया है, जो आपके नज़र से एड्रेस होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो साफ़ सुथरी सरकार होना चाहिए, सुशासन होना चाहिए, है ना, या जो भी पोल्यूशन की समस्याएं हैं दिल्ली में वो ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। और अपना जो वैसे तो है ना बहुत सारी समस्या है, लेकिन अभी हम फेस कर रहे हैं कि जो लुटियंस में बंदर का आतंक हो रहा है इतना, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। सर आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे, क्या ऐसे प्रॉब्लम्स है जो आपके हिसाब से एड्रेस होने चाहिए, जो नहीं हुए हैं? देखिए, प्रॉब्लम्स नहीं हुए हैं इस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि समस्याएं भारत जैसे इतने वृहद देश में आती रहेंगी और सरकारें उसका समाधान भी देती रहेंगी और नई समस्याएं जूझती रहेंगी। पर हम चाहते हैं कि समाधान जल्दी हो और दिल्ली का भी विकास उसी तरह से हो जिस तरह से किसी अन्य विकसित देश की राजधानी का होता है, क्योंकि हमें विकसित भारत की ओर जाना है तो राजधानी भी विकसित होनी चाहिए। शुक्रिया सर, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, आप वोटर है, ठीक है मैम, आपसे जानने का कोशिश करेंगे, आपने वोट डाला है, क्या लग रहा है, एक स्याही दिखा दीजिए अपनी, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए आपने वोट डाला है? क्या मुद्दे हैं? अब बीजेपी आएगी। नहीं, मुद्दे क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, इश्यूज क्या है? हाँ, हम तो कुछ नहीं बता सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ऋषभ, वेल वी विल आल्सो बी अटेम्प्टिंग टू टॉक टू मोर पीपल हु आर हियर। सर आपसे जानने का कोशिश करेंगे क्या मुद्दे हैं, ठीक है, यू सी अ लॉट ऑफ पीपल विल बी हेजिटेंट आल्सो टू टॉक। सर आपसे जानने का कोशिश करेंगे, आपने वोट दिया है, क्या लग रहा है, क्या इश्यूज है जिसको मद्देनजर रखते हुए आप वोट डालेंगे? एजुकेशन के पर्पस में मैं कहना चाहूँगा कि अगर जो सरकार हम चुनेंगे वो एजुकेशन के लिए बहुत आगे काम करे और जस्टिस के लिए, वुमेन की हेल्प के लिए, और जो वुमेन जितनी भी हैं उनके अच्छे विकास के लिए हम सरकार जो काम करे जो आएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए. नो यू सी देयर अदर पीपल आल्सो विल बी अटेम्प्टेड टू टॉक टू. सर आप वोट डालने जा रहे हैं, आपने डाला है वोट या आप डालने जा रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या इश्यूज थे जिसको मद्देनजर रखते हुए आज यू हैव वोटेड? सही से पूछिए. आप बोलिए. आप डाल कर आप बताओ ना. क्या इश्यूज होंगे जिसको मद्देनजर रखते हुए यू विल बी कास्टिंग अ वोट? कुछ पता नहीं साहब. क्या इश्यूज है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर मैं बात करूं? इश्यूज मतलब बोले तो मीन्स इश्यूज मतलब प्रॉब्लम्स, अगर सड़कें हो गया, पानी नहीं है या कुछ नहीं है. कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक तो कुछ नहीं है. थैंक यू सो मच. The most truism that from that person, that in the heart of the ruling bylanes of Delhi, in Lutyens Delhi as it was once called, he's not facing any problems. The lady has given us the latest problem. First time I've ever heard, covering 20 years I've been covering elections. Too many monkeys, quite literally. Okay, there's nothing figuratively, nothing tongue in cheek. Too many monkeys is a voting issue for the lady on the ground over there. Let's hop across to all our other reporters who are talking about this. But yeah, Lutyens Delhi you're facing less problems, but it doesn't mean Lutyens Delhi does not face pollution. Absolutely it does. Maybe garbage and flooding and lack of water and electricity are not the problems over there. Let's hop across to Anand. Anand, what are people telling you in another part of Lutyens Delhi, in the heart of the governance district of India? Yeah, Rishabh, look, just moments ago we spoke to several of the people over here, as this is one of the high profile polling booth over here. So several of the top bureaucrats are coming and with their families. So they are feeling shy to speak to media. But even when we spoke to several of the voters over here, in which we included several of the people who were brought on the wheelchairs, the elderly people, they spoke of the number of issues that deals with them, including that of the pollution, which they mentioned that is one of the biggest issues in this election, and none of the political parties have spoken on that part, that how they are going to deal with it. And they even mentioned that how in the last 5 and 10 years no work has been done to curb pollution in the Delhi, and even they mentioned that how the contaminated water that is being supplied to several of the households over here is also one of the major issues. Question, Anand, even of course, being okay, that of course Delhi has a lot of union ministers who are residents and the voting residents. You saw Hardeep Puri casting his vote, Dr. Jaishankar casting his vote. A lot of the bureaucrats at the central government level doesn't necessarily mean they'll have to vote for the BJP. They can be voting. They are free to cast their votes also. But you're seeing it's very quiet there. Now, the quietness can be great organization, or quietness can be low turnout. Right now, it's a bit of both. Let's hope more people come and turn out. Guys, come on. It's not that cold outside. The sun is shining. The weather is better. There is less pollution in this month of February than there was certainly in December. Hop across to Mehndi. Mehndi, I think people are around you. Let's speak to them. Let's listen in. Well, indeed, Rishabh, we are in Greater Kailash Assembly right now, and a lot of voters have joined us. We'll try to have an understanding with them as well, who are going to cast their vote. Sir, आप अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं. फिलहाल क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में फिलहाल वोट डालने से पहले? सेवा और ये सफाई वगैरह, सफाई अभियान होना चाहिए. मेन चीज तो ये पानी होना चाहिए. यानी कि मेन मुद्दे है हमारे की सफाई हो और ये जो भ्रष्टाचार ना हो. मेन तो मुद्दे यही होते हैं. मैम, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे. आपने वोट कास्ट किया, अगर आप अपनी इंक भी दिख सके, और साथ ही साथ कुछ काम हुआ है यहाँ पर? हाँ, बहुत काम हुआ है जी, किया है, वो सब भी जानते हैं. मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे कुछ और बात है, लेकिन मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ. Okay, let's take the opportunity. I've lost the connection with you, Mehndi, again. Shubh Rana, let's listen to people around you, please. Yes, definitely, Rishabh. NewsX is doing a mega coverage on this Delhi elections, and we'd like to talk to the people over here. Although there is a very slow turnout, which I'm seeing at this particular point of time, people are going, and we'd like to talk to them also. Sir, वोट देकर आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो यही हैं कि सब सुविधा होनी चाहिए, पानी, बिजली, सब चीज़ की सुविधा. बात खरीदी नहीं है, सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए. ये बताइए, महिला सबकी फेवरेट वोटर होती हैं, आपको लुभाने के लिए तमाम मैनिफेस्टोज आते हैं, आपके दिल में क्या है? मेरे दिल में तो कुछ नहीं है, बस मेरा काम हो रहा है. जो पानी बिजली सब मिल रही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, सब मिल रहा है? बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं. कोई टेंशन नहीं.
तो देखिए दिस इज अ फ्यू ऑफ द वोटर्स। मैडम वोट करने जा रही हैं, आप कैसा लग रहा है आपको? क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा ठीक है सर आपके? ठीक है सब कुछ। सर बहुत स्लो वोटर टर्नआउट हम देख रहे हैं, जो लोग घर पर बैठे हैं उनको क्या कहेंगे? नहीं सब आ जाएंगे धीरे धीरे, अभी तो टाइम है। अच्छा अभी टाइम है, टाइम अभी बाकी है। दिस इज व्हाट द वोटर्स ऑफ द नेशनल कैपिटल आर सेइंग एंड विल आल्सो लाइक टू टॉक टू फ्यू। सर आर यू अ फर्स्ट टाइम वोटर? आर यू मैडम आप वोट करने जा रही हैं? जी। क्या दिमाग में कौन से मुद्दे हैं ये बताइए? दे देंगे भाई। आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं ये बताइए? हम वहीं जाएंगे तो पता लग जाएगा जी। किसी अच्छा पहले बटन दबाएंगे उसके बाद। सर सीनियर सिटीजन आप घर से निकले हैं, बड़ी इंस्पिरेशन है आपको देखकर। जो लोग घर पर बैठे हैं उनको क्या कहेंगे? वो गलत आदमी वोट डालना चाहिए। वोट डालना चाहिए। हाँ। खाना वाना खा लिया? नहीं कुछ नहीं। अच्छा पहले मतदान फिर जलपान। हाँ। So definitely Rishabh, although there are also many people who are coming from this side, we'll also like to talk to them. Senior citizens especially are coming at the first front because they are showing their responsibility, and right beside me is also a Shiv Mandir. Madam वोट कर आई हैं आप, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लोग अभी भी घर पर बैठे हैं, आप सुबह सुबह आ गई वोट करने? सवेरे आ गई बेटा, देख ले तेरे सामने। वो शाही वाली उंगली दिखाइए, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। See, this is the beauty of democracy, Rishabh, which we are showing on NewsX. मैडम जो घर पर लोग बैठे हैं उनके लिए क्या कहेंगी? मैं बोलूंगी जाके। बोलेंगी? हाँ अभी जाके बोलूंगी। अपने घर के बच्चों को भी भेजेंगी? बच्चे तो आधे गए आधे आगे हैं। शाबाश। तो देखिए आप वोट कर आ गए भाई साहब? हाँ जी। बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे बहुत है। कौन से मुद्दे बताइए? पानी की मुद्दे हैं। हाँ। सीवर के मुद्दे हैं। सीवर यहाँ हर गली में भरे रहते हैं और पानी आजकल गंदा आ रहा है कई हफ्तों से। यानी मुद्दे ही मुद्दे हैं, पानी का मुद्दा है। भैया वोट कर आ गए? आ गए। क्या दिमाग में है? दिमाग में यही है थोड़ा सा बदलाव वगैरह हो जाए। अच्छा बदलाव की राजनीति चाहते हैं। ये बताइए पूरा विश्वास है जिनको आप वोट देकर आए हैं वो आपके लिए काम करेंगे? अब देखिए आगे पता लगेगा क्या है नहीं है। काम करे नहीं करे वो तो उनके ऊपर है। अच्छा हाँ तो देखिए मैडम 5 साल बाद ये मौका आपको मिला है वोट करने का, क्या सोचती हैं इस बारे में? न्यू कोई नया चेंज आए, नया कुछ करे, यही हम चाहते हैं और क्या। अच्छा यानी दिल मांगे चेंज। देखिए और भी लोग हैं। मैडम वोट देकर आई हैं? हाँ नहीं। अच्छा वोट देके नहीं आई। अच्छा ठीक है। और लोगों से भी ऋषभ बात करने की कोशिश करेंगे बिकॉज दिस इज अ बिग उत्सव। मैडम वोट देकर आई हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। खाना वाना हो गया आपका? सब हो गया, सब परफेक्ट करके। घर में सारे लोग आ गए वोट देने? नहीं अभी आ रहे हैं। हाँ। अच्छा वोटर जो लोग घर पे बैठे हैं आपके सुन रहे हैं NewsX के जरिए, उनको क्या कहेंगे? मतलब वोट डाले, अच्छी बात है। वोट डालना चाहिए। अच्छी बात है। So definitely Rishabh, you can see we are at this polling center and people are turning out with a high percentage here. Although senior citizens, Rishabh, were among the first. Sir, ये बताइए वोट डालने जा रहे हैं, मैडम कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा क्या मुद्दे हैं दिमाग में? कोई मुद्दे नहीं है। कोई मुद्दे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है सर कोई मुद्दे ना हो? नहीं कोई मुद्दे नहीं है। अपने MLA से कोई काम नहीं कराना चाहिए? नहीं, जो काम कर रहा है वो करेगा पब्लिक। अच्छा चलिए ठीक है। देखिए हमारे साथ आप भी मैडम वोट डालने आई हैं, बेहद खूबसूरत लग रही हैं, खाना वाना खाकर आई हैं? हाँ जी। अच्छा आप ऐसे वोट देने, क्या उम्र होगी आपकी? 82। अरे वाह 82 की उम्र में आप वोट डालने आई हैं। ये तो बहुत खूबसूरत तस्वीर है लोकतंत्र की। मैडम तो जरूरी है देना। ये जरूरी है। हाँ ये तो बहुत जरूरी है। और क्या कहेंगे जो लोग घर पर बैठे हैं? दे आए उनका हम अपना वोट। अच्छा मनमोहन सिंह जी भी ऐसे पार्लियामेंट गए थे। आप ये बताइए आपके दिमाग में ऐसे क्या मुद्दे हैं? बस ये है सब ठीक चलता रहे, काम जो है रुके हुए हैं वो सारे काम हो जाए। जरूरी है वोट करना। सो ऋषभ डेफिनेटली अवेयरनेस अमंग सीनियर सिटीजंस एंड दे हैव आल्सो सेड दैट दे विल आल्सो इंडल्ज। मैडम वोट देकर आई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हर बार लग रहा है। हर बार देती है। अच्छा घर में बच्चे हैं उनको भी लाएंगी? आए हैं सब आए, डाल के भी चले गए हैं। क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? दिमाग में मुद्दे तो यही है, सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए। आपके हिसाब से मैडम क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हैं कि सबको सब तरीके की सहूलियत मिले और विकास हो हमारे एरिया का।
Acha, Vikas, on the basis of development, you will cast your vote. Also, we'll also like to talk to some of the people. You can see the full, this is being decorated by balloons Yes, and, okay. there All is right, also Shubrana, a just stay with me. Let me use an opportunity to hop across to another part of Delhi where Brian is speaking to people. Brian, let's take it away. Let's listen to more voices. वैसे स्टेट इलेक्शन है तो इसमें लोकल इश्यूज रहेंगे कि एग्जैक्टली आपके लिए काम कौन कर रहा है ऑन ग्राउंड, क्योंकि अगर नेशनल इशू देखा जाए तो वहाँ पे तो आप सेंट्रल को वोट देते हैं, बट यहाँ पे आपको देखना है कि आपके लिए आसपास आपके काम कौन कर रहा है। वैसे अभी के टाइम पे ये है कि आप एजुकेशन पे ध्यान दो, स्कूल्स बनवाओ, एजुकेशन पे ध्यान दो, एंड देन आप जैसे पब्लिक फैसिलिटीज़ जितनी प्रोवाइड करोगे पब्लिक के लिए उतना अच्छा है। एंड सेकेंडली दूसरी चीज़ ये है कि आप देख लो टैक्स कहाँ लग रहा है, कौन सी स्टेट में ज़्यादा लग रहा है, कौन सी स्टेट में कम लग रहा है, तो आप उस हिसाब से कंपेयर कर सकते हो कि अभी तक दिल्ली में जिस हिसाब से फैसिलिटीज़ दी गई हैं और क्या दे दी जानी चाहिए, तो उस हिसाब से आपको वोट देना चाहिए। यही है बेसिकली। इशू तो लोकल इशू रहेंगे अभी जो विधानसभा के चुनाव हैं उसके लिए। और मैं जो अभी यहाँ पे एज्यूम किया है, इतने साल से रह रहा हूँ, थोड़ा सा जैसे पानी सीवर लाइन ब्लॉक हो जाती है, ये सब चीज़ें पानी का इशू है, मेजरली अभी पानी का इशू है। और बाकी तो बहुत सारे छोटे छोटे इशू हैं। फ़िलहाल जो है मेरा मानना ये है कि अभी जो गैप चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो पूरा होना चाहिए, कंबाइन होकर तभी गवर्नमेंट ठीक से काम कर पाती है। हमारे यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा, जैसे बारिश हुई थी बहुत पानी भर गया, तो ये सीवेज का है, ये सामने डी ब्लॉक में हमारा सी ब्लॉक है, हमारा नहीं आता इस बार ही आया, पर लास्ट बहुत लोगों का नुकसान हुआ। हमारा ही जिसमें नहीं आता, फर्स्ट टाइम बहुत कम आया था पानी, फिर भी 20,000 का नुकसान हो गया। और सामने वालों के तो सारे फर्नीचर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो बहुत नुकसान हुआ, लाखों का लोगों का नुकसान हुआ। वो नहीं होना चाहिए, उसमें तो ज़्यादा होना चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात तो ये कि जो फ्री वीज है ना, हम तो इससे परेशान हैं। हम टैक्स पेयर जो है अननेसेसरी देते रहते हैं और हमारी कॉलोनी का डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि फ्री वीज में सारा बांट देते हैं और एडवर्टाइज में अपनी सेल्फ प्रेस करते रहते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वी आर टोटली अगेंस्ट इट। ये अबॉलिश सुप्रीम कोर्ट से हो जाना चाहिए, मतलब दे शुड नॉट बी अलाउड। दूसरी बात ये है कि जो जिनकी कैंडिडेट्स की इमेज टार्निश है, उनको मतलब परमिशन नहीं मिलनी चाहिए इलेक्शन करने के लिए। You think the issues will be local or national? This time it is of course local, I mean for Delhi, but what I said, it is valid for the whole India. Okay, let's hop across to Mehendi, who's in Kalkaji. That's the constituency where, of course, remember, neighboring constituencies, one constituency, Saurabh Bharadwaj is the incumbent, the other one, of course, where she is standing, Atishi Singh, the current chief minister's incumbent. Let's listen to voices from there. Do you feel after casting your vote? What is the experience? What is the feel? I feel very proud and I feel that I have completed my duty as a citizen to cast my vote, because one should not waste their vote. It is a very important right which has been given to you. You must exercise your right to vote and vote for the party or the candidate you think would be capable enough and accomplish your desires as a nation. And also, I feel that I'm a student. I'm a college student. I'm enrolled in Lady Shri Ram College of Women, and one thing which I daily face is traveling. When I have to travel, the road is not good. It is unhygienic. There's a lot of water which gets accumulated. There's no cleaning. So that is a problem which I... So the sanitation, traffic congestion and also the broken roads are a major issue in the national capital as well. Sir, I would like to understand with you as well, if we talk about the national capital as a whole, Delhi as a whole, what do you think are the major issues right now here? Before talking about the problem issues, I would commend the one good thing I have seen in the city. I have moved to the city just last year only on transfer. Metro is really good in Delhi. So public transport is very good. That is commendable. Road condition, as my daughter said, it is not good. Sanitation issues are there. Hygiene issues are there. Those are things. Major issues. Ma'am, do you think that pollution is also a very big concern as of now in the national capital? जी, pollution तो बहुत ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो एकदम free होके रहें और Right. Sir, have you casted your vote? Yes. So what were the major issues in your mind before casting your vote of this particular constituency? Future
of India. That's what I always, give preference to. So it should be in the safe leadership hands, in the hands of, good leadership. That's what I always. Sir, talking about the local issues, what do you think are the issues here, the local one? There are hardly any. Greater Clash is a very progressive locality. There are no local issues. I don't think so. Okay, no issues whatsoever happening in GK where Saurabh Bhardwaj has been there, and of course right next door is where Atishi Singh has been the MLA from, of course, Chief Minister. Both have been ministers in the state cabinet. Let's hop back across to central Delhi now to get a different perspective, a different area of Delhi where my colleague Anand is standing by speaking to people. Anand, take it away. किसी ने उठाया ही नहीं, वही तो मुद्दा उठाना चाहिए था, किसी ने उठाया नहीं, सारी रेवड़ियों पे ही बात कर रहे थे। प्रदूषण मेन बड़ा मुद्दा है, उस पे कोई बात करे, कोई तो बात करे उसके ऊपर। नो पॉलिटिकल पार्टी स्पीक अबाउट इट। आप सिर्फ पानी की बात कर रहे हैं, हम लोग रोज पॉइजन ले रहे हैं, रोज। हमारे बच्चे जो है, मेरा बच्चा यहाँ पे पिछले 5 साल से पॉइजन ले रहा है। हमारी सबकी हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है इस चीज़ का। इस चीज़ को क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी ब्यूरोक्रेट को ये दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये मुझे बड़ी अजीब सी चीज़ नज़र आती है कि वाई इज़ दिल्ली द वन ऑफ द वर्स्ट ऑफ द सिटीज़ इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। सेकेंड थिंग इज़ महिला सुरक्षा। आप महिलाओं को पैसे देने की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए क्या सरकार कर रही है? तो ये 2 बड़े मुद्दे हैं जो मैं चाहूँगी कि जो भी पार्टी पावर में आए, इन चीज़ों को ये प्रायोरिटी पे ले। बदलाव का मुद्दा था पोल्यूशन, सुरक्षा और एक बेसिक नीड जो दिल्ली वालों को चाहिए उसके लिए। आपके जहन में क्या बातें चल रही थी जब आप वोट देने के लिए आए थे? जीवन जीने के लिए 2 मूल चीज़ें हैं, हवा और पानी। ये दोनों शुद्ध होने चाहिए। बिल्कुल ही खराब स्थिति में है इस समय दिल्ली में। तो क्या लगता है पिछले 10-11 सालों में काम नहीं हुआ है? क्योंकि सारी पार्टियां जो हैं उन लोगों ने सबने काफ़ी वादे किए हैं दिल्ली को लेकर। इन दोनों मुद्दों पे कुछ भी काम नहीं हुआ। पिछले हम 30 साल से इसी एरिया में रहते हैं और इन दोनों मुद्दों पे कोई भी काम नहीं हुआ। पानी भी और ज़्यादा प्रदूषित हुआ है, हवा आप सब लोग देख रहे हैं। आप भी सुबह सुबह आई हैं वोट देने के लिए। चुनाव आयोग भी कहता है पहले मतदान फिर जलपान। तो क्या मन में चल रहा था आपके जब पोलिंग के लिए आई? पहला नंबर तो सब लेडीजों के लिए मतलब सुरक्षा, बच्चों के लिए सुरक्षा, पढ़ाई लिखाई का मतलब यही बिजली पानी और हवा तो बहुत बड़ी मुद्दा है। आपने अपनी इंक भी दिखा दी। तो क्या मुद्दे थे जब आप गए थे पोलिंग के लिए अंदर? तो क्या आपके मन में चल रहा? मैंने अपना वोट प्रदूषण को साफ करने के लिए दिया है। इसलिए हर कोई इंसान चाहता है कि प्रदूषण साफ हो जाए। इसलिए मैंने वोट जिस तरीके से जितनी जल्दी दिया, मैं चाहता हूं कि इतनी जल्दी मेरी दिल्ली का प्रदूषण साफ हो, इतनी जल्दी मेरी यमुना साफ हो। इसलिए मैंने वोट सबसे पहले अपने परिवार के साथ आके पूरा वोट डाला है। मैं आगे भी जनता से अपील करूंगा जल्दी से जल्दी आए, जल्दी से जल्दी मेरी यमुना को साफ करे, जल्दी से जल्दी प्रदूषण साफ करे, जल्दी से जल्दी मफलर को हटा दे। मेरा वोट मेरे नाम के अनुसार, मेरा वोट कमल को। ये पौधा आपके हाथ में है, ये किसने दिया और क्यों दिया? एनडीएमसी ने दिया है। एनडीएमसी ने फर्स्ट वोटर होने के नाते मुझे ये पौधा गिफ्ट। Right, you heard a lot of perspectives there, a lot of people speaking. It just educates us, some of them being very forthright about what they think the major issues. It educates us, okay, what is going on. Does it necessarily tell us who's winning? Absolutely not. It's anecdotal. Remember, in Delhi, in a particular polling booth, just a few thousand votes are going to be cast, okay. So there are going to be hundreds of these polling booths across the 70 constituencies. It's geographically a very small area, but the population, of course, is very large. Think about it, about 15 million people qualify to vote in this election in Delhi. Roughly about 60% will show up. So about 10 million people will cast their vote today. Raghav Chadda, let's listen in. आ रहा एक उज्जवल भविष्य के लिए, बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर वोट दें। दिल्ली का मतदाता बेहद समझदार मतदाता है। वे हमेशा
मुद्दों की राजनीति करता है, मुद्दों पर वोट देता है, बहकावे में नहीं आता, झूठे प्रचार में नहीं फंसता और बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रख के वोट डालता है। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सर्दी का दिन है और बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, तो अपने अपने घरों से निकलें, थोड़ी धूप भी सेकें और वोट देकर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों। चुनाव हैं, इलेक्शंस हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि पहले आप लोग वोट करें, उसके बाद घर जाकर नाश्ता करें। क्या लगता है कितनी सीटें आने की उम्मीद है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है, तो किसी भी प्रकार से हम कोई वोट मांगने की अपील जनता से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत मेहनत से, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आम आदमी पार्टी ने ये चुनाव लड़ा है। जैसा कि मैंने कहा, हम लोग मुद्दों की राजनीति करते आए हैं, बुनियादी मुद्दों पर लोगों से वोट मांगते हैं और दिल्ली का मतदाता काम के नाम पर वोट देता है। जो पार्टी ने काम करके दिखाया है, जो काम कर सकती है, जिसके वादों में दम है, जो लगता है कि हाँ ये लोग ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, उन लोगों को वोट देती है। तो दिल्ली की जनता ने हर बार की तरह हमें प्यार आशीर्वाद दिया है। मुझे विश्वास है कि हम इस बार भी जनता का प्यार आशीर्वाद हासिल करने में सफल होंगे और एक बार फिर से दिल्ली की सेवा में लगेंगे। क्या लगता है आम आदमी पार्टी इस बार हैट्रिक बनाएगी? पिछली बार सरकार ले आ रहा है। देखिए, मैं जैसा कि मैंने कहा, ये साइलेंस पीरियड है, इसमें कोई वोट की अपील नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में खूब बड़ी तादाद में शामिल होंगे, घरों से निकलेंगे, वोट डालेंगे और अपने भविष्य को ध्यान में रख के वोट डालेंगे। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, अच्छी शिक्षा प्रणाली के लिए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डालेंगे और एक ऐसी पार्टी को वोट डालेंगे जिसने काम करके दिखाया है, जिसके काम से दिल्ली खुश है। क्या लगता है जरूरत पड़ी तो कांग्रेस? Okay, so reflective of the gamut of politics, you heard a lot of voices. Now, some people have gone out upfront, they're telling you, listen, I'm getting my free electricity, I get my free water, I'm very happy with the status quo. Okay, I don't want that to go away. Others are going free electricity, free water, leave it. If my house is flooded because nobody cleans the sewer, I've had thousands of rupees of damage. What am I going to do with the few hundred rupees I save for free electricity? Okay. Others are saying, no, look, hey, listen. Pollution is the problem and none of the political parties seem to want to deal with it. So, you are getting a perspective, okay. Delhi is quintessentially, obviously, this is an urban constituency, okay. They are urban voters, the issues are going to be about sewage and garbage and cleanliness and pollution and basic management. That's an obvious. Does that then necessarily translate into some sort of wave we are seeing developing? We don't know. And we find out only in 3 days' time. Let me open up this conversation. Xavier Rodriguez is joining us. He's a journalist, also member of the BJP. Siddharth Sharma representing the Aam Aadmi Party. Tanvi Purti is joining us. Mahima Singh representing the Congress. And Sumit Peer is on the broadcast with us as well. Sumit, let me jump in on this conversation. So we are getting a perspective now, speaking to people on the ground. There is a constituency, Sumit Peer, okay, who is going out to vote. And is going out to vote on number one, that I get my free electricity, I get my free water, and I don't want anybody to jinx it and mess around. Yeah. Bishop ji, can you hear me? Yes, yes. Look, there is a very, what we are seeing, what I have been watching all your people who are doing is indiscriminately and live. What I can tell you for sure, based on my experience of all these years and years, what we have been doing for years, that it is not a way for Aam Aadmi Party. It's not like that. People have different issues: pollution, water, sewage, treatment, and local issues are there. So what we used to see in the previous election, that it's a Aam Aadmi wave, it doesn't look to be that. There seems to be this anti-incumbency which has crept in. BJP is doing a fine job, and Congress is also fighting an election this time, which is also giving it a run for money. So what I see, that it's a mixed bag, and my take on it is that it is not going to be a sweep for AAP. That is what I can give you writing today. It cannot be a sweep for AAP. What we are seeing, the trend on the ground. So it's something which Aam Aadmi has to worry, and BJP, because Congress is fighting a good election, so we think that is an advantage to BJP. That is what initially okay, it looks just like. hold your thought, because everything I've heard, not one person has said since morning, and you said this is live, so this is not, no one's filtering any reaction, okay, it's happening live on the fly.
Not one person has said, Sumit Peer, I am worried about Arvind Kejriwal being corrupt. Not one person has mentioned corruption as an issue. What is that telling us? That is telling us that, they have made up their mind. They are not talking about it. They have made up in their mind. The perception is there. They will not talk about it. They say, okay, that, you're not able to deliver or you're able to deliver, because all those scams what have happened, they have dented the image. And Aam Aadmi, which the image which they had, that Kattar Imandar, wherein I print my Imandari ka certificate and put it outside my door to say I'm self-proclaimed Imandar, that image is not there. Yes, they have their vote share, they have their pockets of influence, they will remain to be there. But the way what we had seen earlier is not going to happen, and wave cannot happen this time, because Congress, I believe this time, is fighting an election and giving them a run for money. Earlier, Congress used to give it a miss, literally give it a miss. The vote used to shift to up. Well, last election, most of the candidates lost their deposit. So, I don't know. But okay, on a practical question, before I bring the others in, on a practical question, if there are people who are upset because just a few months ago there was severe flooding in Delhi right after a severe water shortage. Okay, literally 1 week there was a water shortage, 1 week later there was flooding. Now, correct, if you are angry because your scooter has got damaged, or your motorcycle has got flooded, or your car has got flooded, or your house has got flooded, and because of bad sewage, not just because of heavy rainfall, do you accept the Aam Aadmi Party saying, no, this is not our fault, this is the centre's fault? Well, Rishabh ji, then you hang your boots and call it a day. Why are you there? I mean, Archie ji, we have seen her protesting and she was on a dharna, bhai, sukha ho gaya. Now you are not giving us water. Then after that, there was 1 week of flood, even her house got flooded, and then you are nowhere to be seen. Then now, if you can't control sukha, if you can't control flood, then you can't control nothing, then what are you doing there? I mean, then it's God's will. Then let God decide which way the Delhi will go. Then what is your role in the bigger scheme of things? That is, people will ask. Okay, so I will bifurcate it. Delhi does not control how much water comes into the Yamuna, okay? It does not, period, it does not, okay? Yeah, but yes, how the nallas work, how the sewage systems work, how often the drains are cleaned, that comes under local governance, and the Aam Aadmi Party has a preponderance both at the municipal level, as well. Doesn't mean all the municipal commissioners have been theirs in the past, but they've had a preponderance of leaders who have been in positions of power in local governance. But let me take on the other issue. Tanvi, before I bring the politicians in. Now, one voter there is saying, not a single political party wants to discuss pollution. Nobody wants to do it. I have been speaking to political party spokespersons in the run-up this morning. None of them want to address it cleanly. Does not the BJP, not the Aam Aadmi Party, not the Congress. Nobody wants to talk about pollution, because as soon as you mention pollution, you will have to address parali burning, and they think addressing parali burning is somehow anti-farmer. So, does it make a difference whether BJP wins, Aam Aadmi Party wins, Congress wins? Will any of them be able to tackle pollution, in your opinion? I think actions speak louder than words. So when Sheila Dikshit ji was in power, she took quite good steps to improve, tree plantation in the capital, the national capital, and make it more beautiful. But right now, the Supreme Court's judgment that how the construction work should happen, and you should, install the guidelines that were given by Supreme Court in its judgment, even they are not implemented in the national capital. So I think in all these, nobody needs to particularly come out and speak on it. I think actions, they depict. Mr. Sandeep Dikshit have been, talking about it in his campaign, that we need to work on pollution, that we need to take care of our environment. So I think we have to look at how, individual candidates are dealing it. Okay, all right. Individual candidates, I don't know. I believe in the policy of common sense. If it looks like fire, smells like fire, it's probably a fire. Okay. Now, people are telling me construction is causing the pollution. Yes, of course, that causes pollution. Cars are causing pollution. Yes, of course, they cause pollution. But in a particular period, in October, November, Lahore is polluted. Now, please try to convince me that in bankrupt Pakistan, there are more cars and more pollution than Delhi. Okay, come on. So, the pollution happens in that particular period because of a particular reason. It's called burning of farms, burning of standing crop waste. Okay, what we call parali. All right. Nobody wants to address it. The Aam Aadmi Party doesn't want to address it because, people in Punjab will get angry. Why? The person who lights the fire is the one person who's going to die from breathing in the smoke. His family is also breathing in the smoke. Okay. You have to provide solutions. Nobody does. BJP doesn't do it either. So let's
I'm going to put that aside. Let me get in Siddharth Sharma into this. Siddharth ji, first of all, wish you all the best. I know it's a lot of hard work, whether people agree with your politics, don't agree with your politics. All you politicians put in a lot of hours into an election cycle. Are you a bit nervous today, sir? Is this a bit more touchy than it was 5 years ago? Well, Rishabh, it was a little bit of a pleasant surprise to us today in the morning when we found out that a lot of affluent people of Delhi who came out to vote early in the morning, because today being a holiday, they might have planned a drive with family outside. They were very surprised to go to the world-class schools in Delhi, which are also incidentally polling booths. And after seeing there, the swimming pools there, the lifts there, they were pleasantly surprised, and there is a flooding on social media of these kind of posts which say that the Delhi schools are really world-class and people are showing it first-hand experience. So that was a bit of a surprise to us. It was in fact a very pleasant surprise. The second thing, when you surveyed people on the ground, most of the people, whenever you spoke to youth, they were speaking about education, and whenever you were speaking to women, they were speaking about facilities. So that makes it clear that this kind of voting, this is the Hindi mein bole to rujhan. The tables with Aam Aadmi Party and the tables which BJP has put the people in front of them is a very clear, stark proof here that Delhi is voting towards Aam Aadmi Party. Why is it voting so? Because पिछले 10 साल में झाड़ू को वोट का मतलब है दिल्ली के हर परिवार को 25,000 रुपए की बचत हो गई है। मतलब पिछले 10 साल में 30 लाख बच गए हैं। फिर लाएंगे झाड़ू से अगले 5 साल, हर महीने अब 35,000 बचेंगे। मतलब कुल मिला के 21 लाख बचने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि झाड़ू के बदले कोई दूसरा बटन दब गया। Okay. So let me ask you a question which was pointed out by a voter, that our sewage system is blocked. We had flooding, 20,000 का नुकसान हो गया लोगों का. These are not rich people, sir. Okay, for them 20,000 rupee नुकसान is a major thing. It's probably a monthly income going away. So अगर आपने 35,000 रुपए बचाए और फिर सुअर साफ नहीं करके 20,000 का नुकसान करा दिया, तो what is the sum total then that you've saved for people? Yeah, I think I'll tell you what the sum total is. It's called a denominator, Rishabh. When a student, even a first-class, top-class student who cracks an IIT or UPSC doesn't score 100% percentile marks, he scores 95, 96. So you cannot hold him responsible for 4 marks that he didn't get, although he would have said that I try to do my best and in the next examination we'll get those 4 marks. So there are issues in Delhi which 100% cannot be covered, but most of the issues that your voters you were speaking to, the youngsters were speaking about education, and the women were speaking about facilities, and that is why BJP has gotten so spooked that right now I am showing you a small video here. BJP की गुंडागर्दी ऐसी हो गई है. This is the prestigious New Delhi Assembly booth number 61 and 62 of Aurangzeb Lane. भाजपा की गुंडागर्दी यहाँ पे इस हद तक है कि आम आदमी पार्टी का टेबल भी हटा रहे हैं, and not just that, advocates are being manhandled. So it's surprising that in the national capital, in the prestigious New Delhi Lok Sabha seats, BJP's gundagardi has gone to a level where... All right. So you are saying that if you did not score 100%, you scored 95%. Most of the issues of Delhi have been sorted. That not all, but most of the issues of Delhi have been sorted. That's the denominator I am speaking about. Okay, most of the issues of Delhi have been sorted. Okay, fair enough. Just like Kumbh being handled, millions of people are taking holy dip in Kumbh. करोड़ों लोग जा रहे हैं. बीजेपी तो कह रही है कि 100 करोड़ लोग जा रहे हैं. अब उसमें से 1000 लोगों को मोक्ष मिल गया करके भाजपा ही बोल रही है, तो मैं क्या करूं? मैंने नहीं बोला, भाजपा ने बोला. Okay, so I'll leave it, sir. You have, I mean, there's no doubt about it. The Aam Aadmi Party has been a phenomenon in Delhi for the past, let's say 12 to 13 years. And you have people who support you through thick and thin, but we'll let them judge today whether most of Delhi's issues have been sorted or not. I'm sure the Congress and the BJP will disagree with this, but let me get Mahima Singh into this. Mahima ji, now I've been asking your colleagues there since morning, and you know, no matter how you put it, I find it difficult to digest. It's difficult to understand. Less than 10 months ago, the leadership of the Congress party, which is Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Sonia Gandhi, all came to vote. For the first time in the history of independent India, they did not have a Congress.
So they had an option between BJP, Aam Aadmi Party, Somnath Bharti and Nota. They all voted. So either they voted BJP, Aam Aadmi Party or Nota. I am assuming they voted Aam Aadmi Party. They voted for Somnath Bharti. In less than 10 months, you say that they are all horrible. Why? Jai Hind, Rishabh, I'd start with this couplet from Krishna Bihari Noor with all your discussion that has gone in so far. सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं. So you see this entire narrative, before I come to answer your question, this entire narrative has become a slugfest between the BJP and the Aam Aadmi Party. We trusted the Aam Aadmi Party when they urged the India bloc to come and be a part of it months ago, when we were fighting for the constitutional values. In fact, our tallest leader stood by the wife of a wrongfully restrained chief minister, that was Mr. Arvind Kejriwal at that point in time. We did what we felt was right. Still we are doing what we feel is right. You see on the floor of the parliament when Rahul Gandhi ji speaks, he represents this thought, this idea called India bloc that represents a fortification of constitutional values in this country, and we stand up for that. When Aam Aadmi Party goes and fights a vile election, takes the discourse to newest lows every single day, we are compelled to reciprocate in the same manner. What you've just asked, I think, is representative of the federal structure of this country. Months ago, we were fighting a general election wherein it was very important to restrain the BJP's malicious intent to rectify, to amend our constitution, to rather change the constitution when they said 400 पार करेंगे क्योंकि संविधान बदलना है, and we successfully did that. We did fracture their mandate, we did deteriorate their mandate. But today when we are fighting for Delhi, we are fighting against a chief minister who has just days ago admitted to his failures in Delhi. We are fighting against the BJP that has misled the entire country, whose candidates go out and give cash for vote, whose candidates do not leave any stone unturned in hate mongering, fear mongering. With the Aam Aadmi Party, you see when the Aam Aadmi Party talks about its erstwhile promises, it is important to remind the voters today that years ago when Aam Aadmi Party was seeking vote, it said if we'll fail to, if we'll fail to correct the issues regarding pollution, if we'll fail to, provide good roads, good schools, good hospitals, then we will not come back and ask. No, but that's the problem, ma'am. But ma'am, that's the problem. You're all hypocrites. You're a hypocrite. We say no, 10 months ago it was different, today is different. Arvind Kejriwal is a hypocrite. The BJP also end up being hypocrites. All of you are hypocrites. Why should we believe you? No, not at all. Not at all. Rishabh, allow me to complete my thought. I'll take you 15 years back where, 11 years back, where we ruled the National Capital Region for 15 years and successfully so, until the Aam Aadmi Party came riding on the chariot, prepared by the Congress Party, the chariot that the Congress Party had paced up to make Delhi a successful model, where there was a revenue, which was a role model for the rest of the country. But today you see the Aam Aadmi Party... I'll give you the example, ma'am. You say they came riding on the chariot of Delhi. The Aam Aadmi Party owes its genesis to the Lokpal movement. Now today the Aam Aadmi Party does not speak about Lokpal. You don't speak about Lokpal. BJP, it's been buried. All of you politicians are all the same. Nobody speaks about Lokpal now. Properly, please. You asked me a question, allow me to answer it. You are talking about pollution. You said that no party is talking about pollution. I disagree, and strongly so, Rishabh. Because Mr. Rahul Gandhi has not only been talking about pollution, has not only been, taking an oath along with all our representatives in Delhi that we will resolve this problem, but has also gone to the ghats of Yamuna himself to speak with the voters there, to speak with the people whose livelihood depends upon the cleanliness of Yamuna. So here we are walking the talk. Here we are making policy basis, strategy and research. Practical question before I get the BJP. I'll just if we take 5 seconds more. Yeah, finish. Unlike the BJP and Aam Aadmi Party that have converted the National Capital Region into the National Crime and Riots Region. Okay, all right. Practical question, ma'am. Because if you are
reviving the party in Delhi, because last time the scenario was pretty bleak, zero. If you're reviving the party, the assessment is that you are going to take votes away from the Aam Aadmi Party. That benefits the BJP, and you're no fan of the BJP either. No, we are working on the ground. We are working in tandem with the voter, understanding their issues, and so building a plan for that. I would rather say that the BJP and the Aam Aadmi Party are hand in glove. It's a slugfest going on. Both the parties will do gaslighting. Both the parties will do mudslinging, hate mongering, whereas the Congress party is giving an alternative vision. You heard the BJP when they said all the public welfare schemes will be continued. Okay. So their plan is to copy the Aam Aadmi Party's existing schemes. Sentiment. And Aam Aadmi Party's plan is to evade accountability yet again, as they've been doing all these 11 years. You know, you can, some great politicians have told me along the years that sentiment and emotion is far more important in politics than any real world program you can show to people. Savio Rodriguez, sentiment and emotion does matter. That's what people feel in the moment, whether they are upset or they are happy or they are aghast. It does matter in politics. Now, at this present moment, are you in the BJP, and I know a bit removed from the active politics in Delhi, but you've been in Delhi for the past, for the recent past. Are you hoping that the Congress does pretty well? Because the other thing that matters in politics is cold hard arithmetic. If the Congress takes away 5-6% of the vote from the Aam Aadmi Party, that's it, you're home free. And having traveled to Delhi over the last 1 month and having interacted with people of different walks of life, I can clearly tell you, whether it is Aam Aadmi Party, BJP or the Congress, the voter is now not really looking at what the political parties are going to be saying. They're going to be looking at what the political parties are going to deliver. They are looking at action on the ground. You know, that's what they're looking at. They're looking at commitment from political leaders and political parties to deal with problems. You are right when you said issues of corruption. Even one of the panelists said that they have not been raking up issues of corruption. That's not the problem. The Delhi voter is primarily looking at, is my life getting better? Are we getting better healthcare? Are we getting better education? Are we getting, a polluted free city? Are we having good transportation? Are we having, the garbage taken care of? These are the matters that are really affecting the people, not only the upper middle class, but also the middle class and the lower middle class. They are aspirational. That is what many of the politicians are missing the mark as far as Delhi is concerned. Delhi voters have suddenly, compared to what we have seen in the past, I think the Delhi voters become very aspirational at this point of time. But the Delhi, I mean, Savio, as for a person in Delhi, person in North India, you step out and you can smell what is happening to us. You can see it. Yes, precisely. But what is the BJP doing about it? Nothing. The Aam Aadmi Party, nothing. None of the politicians do nothing. Rishabh, I do agree with you on that point of view. I certainly believe that whatever limited access I have is to tell the BJP to work on issues based on pollution, because that is a serious concern. And for somebody like me who travels out of Delhi and comes into Delhi, I can assure you, each time I'm in Delhi, the next week I'm terribly sick with a bad throat. That's the reality. And these are issues that are plaguing the people. Now, as far as the political aspects of it are concerned, I think at this point of time, no political party knows which way the wind is blowing as far as Delhi is concerned, because a Delhi voter, a large concentrate of the Delhi voter, are absolutely silent in who they are going to vote for, number one. Number two is there will be whoever wins this election will be the ones who have been able to work very closely with the low income middle class women. I believe whatever research that I managed to do over the last month and a half or so, I've been able to understand that the lower middle class women are the key to the voters as far as Delhi is concerned. It could be, but is it true, Savio Rodriguez, that this is actually a scorched earth policy? Delhi has been left to rot because
a percentage of its citizens elected Arvind Kejriwal. That in the pollution, no comment from us. If the sewage is blocked, no comment. Water is messed up, no comment. It's the national capital, for God's sake. Unfortunately, Rishabh, let me give it to the Congress where it's due. When there was a Congress government at the center and you had Sheila Dikshit as the Congress minister, as the chief minister, there was a certain amount of progress that Delhi was seeing. Not that Aam Aadmi Party is bad, it's just that the conflict between the center and the state is where a lot of work that could have been done with Delhi actually gets stalled for their own conflict within each other. And I think that is where the people of Delhi actually lose out. Okay. The art of the deal, Donald Trump teaches us, Sumit Peer. Okay. So now time is short. So in a real sense, Arvind Kejriwal 1.0, first time he became chief minister, sitting on the footpath doing dharna. Okay. The CM's office was set up on a footpath. Arvind Kejriwal 2.0 was different. I won't say completely different, but he was different. He was less combative. He tried to reach out and say that we want to work together. I can tell you that a compromise formula had been fought. A leader of the Aam Aadmi Party was sitting with the union cabinet minister every week, and they would at least get the crucial files, the crucial things sorted out. That leader in the cabinet is no longer with us. And since then, who do we blame for the face-off? Is it the BJP who has just left the city of Delhi? Or is it the Aam Aadmi Party who just instigated them? You see, Rishabhji, to be very honest, Aam Aadmi Party's politics is based on confrontation, accusations and running away with it. I mean, I'm taking you just 1 week back. Mr. Kejriwal came and said they have put poison in Yamuna. They want to kill 1/3 of the Delhi. Tell me, for the sake of God, how do you trust this man? Who comes on TV says, मेरे को पता है जहर डाला है 1/3 दिल्ली को by BJP मारना चाहती. You want to eliminate 1/3 of Delhi's population. You want to kill crores of people. You want to do a genocide in the capital of Delhi, and then the water comes into Delhi. There's no way you're going to know it's going to enter a BJP nalka or a Aam Aadmi nalka or a Congress nalka. Is it going to go Prime Minister's office, to the Army Chief's office, to the Supreme Court judge, or to the Delhi police? You have no way of controlling it. But if you have these kind of allegations which are coming that BJP put poison in Yamuna from the Haryana government, what can you do with that man? It's very difficult to work with him. Even if you work with him, let it be Congress, let it be BJP, let it be any other party. Didn't he go to the India Alliance and told them कि Congress को बाहर फेंको? I mean, look at his stature in India Alliance. He's nobody, but he went to them and said, Congress को बाहर निकाल दो. He did that. I mean, it's on record. So with this kind of a person, it's very difficult to work. But Sumit, no matter, do we give it to an Arvind Kejriwal that no matter what is thrown at him, it doesn't stick? I mean, look at people today. It might be in the back of their minds, but nobody is talking about corruption. You had 2 or 3 senior ministers in jail in the last MCD elections, municipal elections. The Aam Aadmi Party won. It doesn't stick. Rishabhji, that will figure out after 3 days, or today at the exit poll we'll have an indication. After 3 days we'll figure out. Because if people made their mind, they are not going to talk about it. They've already made their mind. Baat kya karni is pe? Okay, all right. We just touch base. Tanvi, quick thoughts on this, then I'm just shifting focus. Because as we speak, of course, the Prime Minister is on tour in Prayagraj. Tanvi. My take on this election is that this is such a hyper-localized election that we cannot even think of that how many issues are there. Every constituency has its own issues. Every candidate, is picking up its own battle in their constituencies. But this election, we have to, the onus is on the Congress, to build up its vote bank, to get some seats, to prove that they have that skin in the game in the Delhi election, because it's been long due. And I think Sandeep Dixit ji is doing phenomenal job in, by calling Mr. Kejriwal to Jantar Mantar to debate and, getting him to speak on the issues, which Arvind Kejriwal ji is currently, just running away from the real questions. But you're right, Rishabh, when you say that there is no competition because we don't know, because Congress cannot get that much of seats and BJP has no CM candidate. So the question Kejriwal versus who still lingers. And that's what gives Aam Aadmi Party the Tanvi, straight question. As well. It's a straight who question. Will be the chief minister? That rest of it doesn't matter. There are only 2 things that matter in this election. So I'm going to ask you a straight question. Number 1 is that the people who will be getting the freebies, whether they want to risk losing them, even though the BJP says you won't. And number 2, that there is a minority vote. Is that all that matters for Arvind Kejriwal today?
I disagree, Rishabh. What matters in this election, the key to the chief minister will be in the hands of the women voters. We don't know where they are going. We don't know where the Muslim women will vote. We don't know where the upper class women will vote, and they will decide where this election will go. Okay, I'm going to thank our guests. Wish you all the politicians all the very best with the battle that continues in Delhi. There are still a few hours to go. We've had about 10% voter turnout this morning as we head into noon. So come out and vote. We had 62% last year. Surely we can beat that number. Yes, there is pollution in the air, but comparatively, relativistically, the weather is not so bad. Let me hop across to my colleague Arzu, meanwhile, who's standing in Prayagraj, where the Prime Minister, accompanied by the UP Chief Minister, have arrived on board a boat, waving at the crowds who are gathered at the Triveni Sangam on the banks to do the Snan. Narendra Modi there waving at them. Arzu, let's hop across to you. I'm sure the wind has now come that the PM has arrived. A lot of people will, of course, be excited to catch a glimpse. Absolutely, Rishabh. Right now, we are at the Arel Ghat, from where the Prime Minister has taken a boat, and from here, he has moved to the Sangam Nose, the particular place where he will be taking a holy dip on the occasion of the Magh Ashtami, and it is a very auspicious occasion on which the Prime Minister is going to take a holy dip, and also we can clearly see a mesmerizing view on the banks of the river Ganga, where the Prime Minister has just now reached along with the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. He, in fact, yesterday also took the stock of the arrangements for the Prime Minister visit, and now also 45-day long spiritual and cultural celebration in Prayagraj. Mahakumbh is overwhelming display of the faith, devotion and spiritual unity, creating a spectacle of the spiritual grandeur witnessed every 144 years, and this is a massive, till now for more than 38 crore people have already taken a holy dip, and today Prime Minister himself have arrived at the Mahakumbh to be the part of the world largest spiritual gathering. Also would like to show you around as amid the tight security, Prime Minister has arrived in the Prayagraj. The NSG and as SPG has also taken over, and also as far as the public is concerned, it has been kept in mind that the devotees also doesn't have to face any disruption in their religious activities, and that's why Prime Minister has chosen a different route this time. So he has chosen this Arel Ghat. From here, he has moved to the Sangam Nose, where he is performing the several rituals, and at the same time, just few meters away from here, the devotees, the public is also taking a holy dip in the Triveni Sangam. So this is a massive view we are giving here from the Prayagraj, where the Prime Minister has arrived, and he is also performing the rituals, taking part in the Mahakumbh activities. Also, we can clearly see, after taking a boat ride and also having a conversation with the Uttar Pradesh Chief Minister, Prime Minister Narendra Modi has now reached to the Sangam Nose, and there he will be taking a holy dip, and he will be staying there from 11 a.m. till 11:30. So for half an hour, he is going to take a holy dip, performing the rituals, doing the Ganga Aarti, along with the conversation with the sadhu and seers, the sadhu and sons. So this is a massive, and also as far as the devotees is concerned, people from across the world, the worldwide devotees have come to the Mahakumbh to witness this this spiritual gathering, and in fact they have appreciated the efforts that the government has made. Also, if we see, Stay with me. Watching on the left side, of course, is this visual that happened just a short while ago. We'll get that frame from Arzu back. That's the boat where you can clearly see the PM along with the Chief Minister of UP. It's been something, I can't say unprecedented, because the Mahakumbh, of course, has happened but a century and a half ago. So in modern times, certainly unprecedented, and numbers with the sheer population. The last time the Mahakumbh took place, ladies and gentlemen, would have been under British rule, when the population of the Indian subcontinent was around about 150 million people. The population of the Indian subcontinent is now 10x. Just India alone is nearly 1.5 billion people. People have come from all over the world for this, and we've seen them, we've spoken to them. There has been tragedy that has taken place, and in the overall sense, potentially in a single day,
in a single day, you've had maybe 4 million people, 5 million people at one place at one time. Okay, think about it. Arzu is back with us. Arzu, now what are the numbers now telling us? How many people have now visited in total? This goes on for another 3 weeks. There are a few more auspicious days coming us. Give us a full brief while we wait for the PM to begin Isnan. Arzu, if you can hear us. Okay, I can well understand that it's a bit chaotic with that phone line over there. I'll get it patched. 5 seconds, 10 seconds, whatever it takes. We'll get it patched. I have my guest with us. Meanwhile, Joyita Basu joining us in the studio. Joyita, here we go. The Prime Minister is in Prayagraj. I know there has been tragedy. Okay, let's be serious about when something goes wrong and people die. But the scale of the event which we've just seen, it's one for the ages. Yes, absolutely. And Rishabh, it's actually 50 million people at one go, 5 crore. You know, on Mauni Amavasya day, which was I think 29th of January. So they were saying estimated crowd was basically 50. Just under 50 million. Yeah, just under 50 million. So the thing is that itself, you know, I mean, the very fact that, I mean, anything is bad, any stampede is bad, but then you have to think in terms of also the people, how the people behave. You know, they have tried their best, utmost, and we have been covering it, we have been looking into the situation, they have tried their best, but at some point even the responsibility lies with the people. They need to behave a little more responsibly, but then mob mentality is difficult. So, like I said, I don't want to skim that over. Exactly. But in terms of putting it together and not leaving it only to God's graces, you know, as Yogi managed to, you know, show his administrative skills. Absolutely, there is no doubt about it. I mean, think of in terms of the number of people visiting every day. I am certain there would be at least over 100 crore people would have visited the fair. I mean, they are talking about 40 crores or something. I would not be surprised if the number actually goes up to 100 crore. And to cater to all those people, to ensure that they have a place to stay, and you see the human needs that are things like that are there, and then to ensure that this kind of a huge, it's mega. It's mega, and the thing is, you see, nobody would have ever imagined something like this even 10 years or maybe 15 years back. Okay, so let's not, I don't want to overplay it, okay, but I don't want to underplay it either. Something like this has never happened anywhere before. It is unlikely to happen anywhere again. We are talking about over the course of 2 months, to a particular few square miles of this Triveni Sangam, which is in Prayagraj, it could potentially actually be that you are talking about 70 to 80 crore people visiting. Could potentially, okay. It's nearer the 15-17 mark right now, but that could easily double in the next month. So we are talking about population scales. We are talking about the population of Europe having visited this one spot in the scope of 45 days. It cannot be easily underestimated. Arzu is back with us. Arzu, talk us through what do we know about the numbers? How many people in total have come to the Kumbh? How many more days? And of course, how many more pious days are left? These really special ones. Well, Rishabh, yes, this is a once-in-a-lifetime experience that the people are witnessing, and in fact, we have interacted with a lot of devotees who have come here, and they have shared their experience that, you know, no country is able to do this, what the India has done, and in fact, the foreign devotees are appreciating the arrangement that the government has done, and they in fact said that we also want our country to do something like that, but it's not easy to, deal with such a massive influx of devotees.
devotees also till now, more than 38 crore devotees have already took a holy dip in the Triveni Sangam. The expectation was 40 crores, but yes, it is going to cross, and this will be a history, history will be recorded because this is the first time when such a huge gathering will be taking a holy dip. And behind me also, as Prime Minister is taking a holy dip, behind me you can see a massive crowd that have come here to see the Prime Minister Narendra Modi and also the Chief Minister Yogi Adityanath. And in fact, the both of them, the Prime Minister and the Yogi, has shown them, have waved them, and now you can see this grace. प्रधानमंत्री खुद आए हैं, कैसा लग रहा है आप लोग? Okay, you can well imagine the signal is disrupted there for obvious reasons. Okay, but let me get Joyita back in. Joyita, so she's giving you a figure now just under 40. So 38 crore people is the estimate. Now the estimate, of course, is vary. They're not counting every single individual there. So let's give ourselves a 10% margin of error. So let's say 35 crore people. 35 crore people, that means that logically, if the number of foreign participants have not been in the millions, almost 1 in every 5 Indian, potentially 1 in every 4 Indian will have visited Prayagraj in 2 months. What is that telling us? I mean, this is the population. Say, for example, a state like West Bengal has 10 crore population. Okay, so you can imagine one state already visited thrice. Okay, so it is unimaginable scale. I think the Europeans, you are absolutely right when you say this something like this. So they've come in their tens of thousands, okay, but they haven't come in their millions. But the millions is so this is, we're looking at that, yeah, that a quarter of India would have gone. Yes, of course. And if you even look around and talk to people, you will find this is such a huge scale that there is already someone who has already been to the Kumbh. No, that is what my experience is. I mean, inside this office itself, Rishabh, I have met people who have already been to the Kumbh and come back. Among my friends, I know people. So, yes, once it happens, once it starts, when people start saying that this is happening, then I would say, yes, you are right. Yeah, I would not be surprised 2025. Yeah, it's quick visit. You 24 hours, yes, you show up, you take a dip, and then you try to leave as soon as possible. Maybe spend a night somewhere nearby, and the unprecedented number of flights are landing, trains are landing, buses are going. It's the scale, and if you're flying in from different parts of the world, or in fact in different parts of the country, Delhi is the entry port. Okay, Delhi, Lucknow are the entry port. So people are coming down here, where they're taking flights, and from here taking trains and buses to go. Now, what you're watching on your screens is just a few minutes ago. We're expecting the Prime Minister to actually stop, get off the boat, and he will be doing his Ganga Snan. Remember, Yogi Adityanath has been pretty much there every alternate day, and he's already been there since the beginning. Obviously, his administration is responsible for ensuring that things are sorted. There have been issues, of course, but again, we are not processing the scale of this. It seems like a statistic, but it's far more than a statistic, ladies and gentlemen. It's actual people that have shown up in historically human scales. By the time we are done, this will have been the largest gathering in the history of the world, and I think it will probably be the largest forever. That it's never going to be surpassed. So let's not underplay the scale of what has happened. It's something truly mind-blowingly phenomenal that is taking place. Joyita, go ahead. I just want to read out the statistics in terms of our top 4 states in terms of population. UP is almost 20 crores, Maharashtra is 11 crores, Bihar is 10.41, West Bengal is almost 10. So this itself, I mean, think of it like this: population of around 4 states have already visited the Kumbh. Yeah, so 26th February is the last day. There is another Shahi Snan, I'm told, which is scheduled on the 12th. We are expecting the President of India to be travelling to Prayagraj also. That will probably happen on the 10th. The Prime Minister was scheduled to travel on the 5th. Today is the 5th, and he's there. I believe this is going to be a short visit. It's only going to be an hour or so that he's going to be there. And what you're watching, of course, on your screens is just him arriving a short while ago. We'll get live shots of him doing the Snan very, very shortly. And on the left side, you're getting the scale of the people that have been that are there. It's literally kilometers of just a sea of humanity, and some people are staying there for the long haul. They're there for a week. They're there for a couple of weeks. Some are going to be there for the entire duration. But for most people, they're going in
for a day and coming out. So that's a sea of humanity changing pretty much every day. It's a whole different set of people almost in its entirety every day, and just I mean, it's incalculable. We are making a best guess estimation to suggest that an expectation was that 40 crore people, 400 million people would show up. Well, we are now being told that more than 350 million have already come, and there are still 23 days left before the Mahakumbh actually ends, and eventually the crowds dissipate from a once in a 1.5 century kind of gathering. So, Joyita, you know, it's there is a religiosity to it, but I can also imagine that there is also a feeling that regardless of what has happened, it's well organized and safe to go, because if people were feeling hassle or unsafe, the numbers would be reducing. The numbers are actually increasing. The numbers are increasing, and not only that, Rishabh, there in certain cases, because especially on Mauni Amavasya day and even otherwise, people are being, because they do not want any repeat of that stampede, they do not want any vehicles to crowd that place. People are walking 9 to 10 kilometers. The cars and buses, they are being asked to stop outside the city, and from there, you know, people are walking, on an average people are walking 10 kilometers to come to the thing. So think of the feeling and think of the belief, and of course this belief that yes, Yogi can do it, yes, the center and Mr. Modi of course is there. The thing is that you see, they can pull it off. This belief is very much there among the people. You talk to ordinary people, and that is why you know, start realizing the immense faith, not only the immense faith they have on these two gentlemen. Okay, all right. Himanshu Bhatt is with us. Himanshu ji, have we been able to, I mean, this is not, it's not a political show, okay? You can be cynical and say, oh, the PM is there on the day of Delhi elections. Yes, you can be, but it's not a political show. In the organization of the Mahakumbh, the last one happened under British rule. By the time the next one happens, you know, our grandchildren will be dead and gone. So, assuming that 350 million people have showed up, I am assuming that all 350 million were not necessarily BJP voters, that this was something beyond that. Have we transcended the very bitter political polarization of our time, sir? It has. I'll tell you, Rishabh, one thing. You know, you yourself said, you know, but then we are the ones, me and you, and rest of us who are the 140 crores are the lucky ones, you know. Because in 2 years' time, we are seeing two events which we could not see in a centennial for the 1,000 years. You know, so, and together, 2024 Ram Mandir, 2025 Mahakumbh. And you know, that faith or a belief that the time for Bharat has come. You know, when that happens, you know, a common man like me and you, when we can walk for 10 kilometers a day, I may have my morning walks for 2, 3, 4 kilometers, 5 kilometers, but a man 65, 70 years of age, when his bus is parked outside Prayagraj, he walks 10 kilometers, you know, faithfully, quietly, without any issues. He might have a lot of joint pains as an ailment, you know, he might be. But he does that. And he doesn't complain, he doesn't grump about it. That is basic, you know, astha or a belief. And that has come back in India. And that's what I call, you know, India becoming Hindustan to Bharat. The Bharat is being reborn. Okay, so culturally, yes, so yes, there has been government change in center and state, you know, but let's face it, the police officers, the administrative officers, the sanitation workers, you know, a lot of them, the same people who were there 25 years ago are going to be there today. Other than the obvious tragedy that's already happened, sir, have we managed to process 350 million people effectively? Yes, we have, no? See, it's something like it tells. Nowhere in the world this has happened. In the last 100 years, nowhere in the world you will get a figure where 35 crore people have already visited a place in 30 days' time. Yes, tragedy did happen. It could have been avoided. It should have been avoided. The culprits, they are investigating. I'm not going to speak anything about that. But then, you know, when I see the mass of people going there,
And I wish I will be one of the fortunate ones before the culmination of the Kumbh Mela comes, that I will go there. Because it's going to be once in a lifetime opportunity. And people do not want to leave that. And it is irrespective of a common man who is not educated to a person who visits foreign countries twice or thrice a year. He even wants to go there. That's the basic faith. That's the basic astha. And these are the things, this cultural uniqueness of Bharat, actually it unites us rather than dividing. Okay, so we are about to break records. Sumit, the figure I have just been given is 38 crore attendees. I'm leaving a margin of error and saying, okay, let's say 35, because it's not like every attendee is being counted. So we'll have to do an estimate. Let's say 35. That's 350 million people have already gone. We still have 23 days to go. That number is not going to double, but it's going to go up substantially. It'll probably hit the nearer 500 million mark. I don't think we can. That is like saying that the entire continent of Europe plus a little bit of North Africa came here to the Triveni Sangam. I think the numbers we're not processing. All in all, what's that telling us? Rishabh, the first thing is that this Mahakumbh which is happening is not only a Mahakumbh, this kind of a formation is happening in 144 years. This is now or never, first thing. Second thing is, more than the population of United States of America has already taken a dip. And we are expecting a Europe and Africa and the complete South American continent to come and go. This kind of humans getting together has never happened in the planet Earth, and it will never ever happen in planet Earth. And it went seamless. This talks about the great culture of Bharat, the unity of Bharat, and not even Bharatiyas. If you look at Steve Jobs' wife, you look at, I am going to go to the Kumbh. I have not been yet, but my plans are firm. I'm going to go there, and what I'm being told that every 10th person is a Gora. So that what we commonly refer to as Gora is the foreigners which are coming there. And this kind of formation, this kind of energy was never seen ever before. We have seen the greatest event of human history where spirituality breaks the, barriers of religion, breaks the barriers of caste, breaks the barriers of region, is the greatest proof of the divinity of Hinduism. It's the greatest proof of the divinity of Sanatan Dharma, wherein even people from more than 150 countries are coming and taking the holy dip. They might be Christians, they might be Jews, they might be whatever religion they have, but they have the belief in that. And nobody is talking about pollution, nobody is talking of hygiene, nobody is talking of anything else, and everything is working to perfection. And let's not forget, sir, they are not those concrete streets which have been built. They are not stadiums which are being built. 10,000 laborers did not lose their life building that. We had a FIFA stadium in Qatar where 10,000 people lost their life. We are building a tent city, and after 2 months, after Mahashivratri, after 2 months, you will see nothing has happened there. The Mother Earth will get back what it deserves. Everything will be pulled back, and you will have the greatest ever human formation or the human get together or whatever you want to say it, for the lack of better words, to come there, work and move out seamlessly. If this is not magic, if it is not divine power and divine blessings, do you think without divine power, divine blessings and the impeccable on the ground is possible? Well, let's assume all of these. Live shots on your screens. Let's blow them up. That is the Prime Minister taking his dips at the Mahakumbh as we speak. So, Varthastave Sivangiritarataං Kuruma Higungsi Purukan Jagata Sive Navachasa Tvagirisa Chabadamasi Jathana Sarvamidjagada Yachmagung Somana Asata Adhyavochadadhi Vakta Prathamo Daibhyo Bhikaka Ahyucha Sarvanjam Bhaya Sarvasu Jatu Dhanyo Dharachi Yato Yatah Samihase Tato No Abhayam
गोरोसण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानिदेवासवितद्दुरितानि परशुभ जडवदरान्तर्न अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव भूतोत इघवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनीतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरु मा हि गुंसीः पुरुखं जगत शिवे न वचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अह्युश्च सर्वञ्जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गोरोसण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानिदेवासवितद्दुरितानि परशुभ जडवदरान्तर्न अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव भूतोत इघवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनीतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरु मा हि गुंसीः पुरुखं जगत शिवे न वचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अह्युश्च सर्वञ्जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गोरोसण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानिदेवासवितानि परशुभ जडवदरान्तर्न Are you watching on your screens? Was the Prime Minister taking his dip at the Sangam in there? Sumit Peer wants to make an interjection. I have others also waiting by. Sumit, go ahead. Ji, a lot of people will be wondering why the Honorable Prime Minister is there today and what is the relevance of the day. It's very important that we get that thing clear. Look, there have been two important sanans which have passed by. One was recently the Moni Amavas one. There's one which is going to come on 26th February. That's the Mahashivratri. But today, as per Hindu religious beliefs, is something called as Gupta Navratra, which is happening. And today is the Ashtami of the Gupta Navratra. So if you go by the logic, today is the most powerful day after Moni Amavasya and between Mahashivratri to take the holy dip. So if Prime Minister is today there right now, it is the peak of Gupta Navratra ki Ashtami, and this is the reason, this is the date and time why Honorable Prime Minister has chosen to take the dip. So I thought to make this small introduction. Okay. Fair enough. Appreciate that. And Joyita, we can well imagine. I mean, for people who are coming, that we are still very much in winter. I know it's the end of winter, but very much in winter. It's going to be cold water, refreshingly cold. One is hoping, but cold nonetheless. It's nice, of course, to see all the security taking a step back. They're standing, but they're standing at a distance in knee-deep water. I'm certain it is freezing. It's out in the open, and it's the Prayag confluence of at least two rivers. The third is invisible. I mean, it's going to be freezing, and you can make out, even from the Prime Minister, you can make out that that it is very, very cold. But yes, as Sumit said, it is one of the holiest days. So yes, I think if those who believe in Sanatan Dharma, so obviously they are there. And the Prime Minister, I would say, this is the best part about, one of the best parts about Narendra Modi is that
he has made, if I can use the word cool to suit the young generation, he has made religion, Sanatan Dharma, cool for a lot of people. And not just that, earlier people would, yes, of course, everybody is a Sanatani, everybody is a Hindu, they practice their religion, but they never really wore it on their sleeves. They were never really going around saying that yes, we are Hindus, we are going to do it. There was, because we had all been kind of mind washed and brainwashed into believing, you have to be, if you say that you are a Hindu, you are not a secular anymore. But the very fact that you are a Hindu, that means you are a secular. Okay. All right. So I think this is something, he has actually made it acceptable to the whole mass of people. This is what I would say, that revival of Indian heritage, Indian Renaissance. If you remember, Rishabh, last week only you were discussing it. So this is all part of that. Okay, Raman Malik, obviously we have to process the numbers. We're talking about just, Sumit said more than the population of the United States of America. Are we comprehending the scale of what has just happened? Rishabh, thank you for getting me on. Yes, the numbers are great, numbers are big, and by the time this entire festivity would start for the new journey to come back again after 12 years, I believe that probably as of right now, we are standing at about a quarter of India. Just imagine the numbers, a quarter of India has already taken a dip. And if you go further, the entire of USA, and more than that. You correctly said the Europe and African nations also. But you must understand there's another important factor which is there, which has to be understood. That by the time the 26th of February is over, the Mahashivratri, my strong belief is that over 1/3 communal people are going to be there in India, because they participated in this holy Hindu festival, which is a very supposedly a very secular as per Hindus, but for some people the Hindu tag or the Sanatan tag becomes a communal. So there would be probably some certified 1/3 population of this country approximately who will be communal. So that is one part of it. The second most important part of it is, what has to be understood is, barring the scientific and the religious and Vedic facts of the Kumbh Sanan and everything, I believe that a confluence of such magnitude, which has been handled in such a manner, gives the very certificate of administration to the people involved here. There have been incidents which are regretful. Those are under investigation. There were certain videos and other things which depict that there may be certain angle of conspiracy. But let's not go into that angle till the time the investigation comes out with proper charge sheets, if any. Now, Rishabh, another major important factor which needs to be understood here today is that not just that the fifth was important because of the Gupta Navratra and the peak of the planetary position when the Prime Minister has taken the dip. It also is with the intention which he always says, that my every work, my every speed, my every execution is for my nation and the people of India. He only wishes well for them. And he wishes well for humanity all across. But also, it shows a very important factor that he has done his job not just as a prime minister, but also as a member, a Karyakarta of the BJP for the elections that he was supposed to do, and then went off. It is not like some other people who every small little incident and they run off for a vacation, or they try and hire a private plane to get off to some Vipassana, and then they send back that plane because the seat may not be clean as per their standards. So
this is something which Stay on shows with me. why. Yes, you've made your point. Joyita, I'm coming back to you and understanding from you the significance of Prime Minister Narendra Modi's visit to Mahakumbh at Prayagraj. He has attended previous Kumbh ceremonies as well. Does this show his devotional, spiritual mindset, and what is the message that goes out to the countrymen? Well, the thing is, first of all, as Sumit pointed out, today is one of the holiest, after Mauni Amavasya, today is one of the holiest days in this whole Snan. So, obviously that is the reason why the Prime Minister is there. Mauni Amavasya being there on that day would have ensured too much disruption, you know, for the VIP movement and all. So, he chose this day. Now, the thing is, the very fact that he is never, you know, one of the best things about him is that he is never shy of showing what his heritage is, what the tradition that he follows. And you know, as I was just telling in the previous segment, that he has made Sanatan Dharma, Hinduism, Sanatan Dharma, to the young people in particular, religion and all, cool again. You know, it was never, we are no longer shy or hesitant about saying that we are Hindus. I still remember there was a time before his government came to power into 2014, and you know, BJP, one of their campaign points was that गर्व से बोलो हम हिंदू हैं. Okay, and the thing is, so this is one sense that had been sucked out of our civilizational ethos, out of our life, our culture, because we were constantly told, if you tell the world that you are Hindu, you are no longer secular. So, the very fact, when the fact is that your Sanatan Dharma is ultimately the epitome of secularism, primarily because it does not exclude anyone, it is a religion, that it is a dharma that does not convert anyone. It is like, you know, we actually believe in the equality of religions and all. So, ultimately when you look at what we follow, our faith is the epitome of secularism, but we were never told that, you know, that we were told that if you mention this, if you flaunt it in public, then you become communal. So, the very fact that the Prime Minister came in, and if you remember those artis at Vishwanath Dashashwamedh Ghat in Varanasi, starting from that, so all that gradually brought the confidence back in people that yes, you can be a Sanatan, follower of the Sanatan, without being discriminatory towards other religions, without feeling bad about it. Okay, so this is, and this is very, and one of the reasons why there is, I would say, he has taken a pioneering role, a leading role in terms of, I would say, enthusing people to participate in these such mega spectacles. And so, be it in Varanasi, think, I mean, religious tourism in India is now one of the biggest revenue earners. So, and all this is because of Mr. Modi. Okay. Sumit, I am going to come back to you. Do you think the Mahakumbh has got an international stamp? When you see diplomats from countries like France and Germany who are arriving at Mahakumbh and taking the holy dip in the Sangam, we've seen Chris Martin of Coldplay, a very popular pop figure across the globe. When we see Lawrence Powell Jobs, the wife of late Steve Jobs, does this then give an international stamp to Mahakumbh and perhaps you know, stops the opposition from taking jibes at the Prime Minister or the current political class for quote unquote making India into a Hindu nation? I think opposition is frustrated, they are rattled, they are confused, and they are literally running hatter-scatter. They don't know what to do. I mean, imagine a situation, even if we are talking of 38 crore people, Meghaji, that every fourth person, har chothe aadmi, Kumbh ho chuka, has been to Kumbh, has taken a dip. That is broadly what talk I'm taking. Now, I'm talking about the billionaires of the world, I'm talking about the most powerful people of the world, I'm talking about the ambassadors of the world, I'm talking about the people who don't, as a religion, are not Hindus, but they have come there for the mere aspect of the spirituality and the power of it. This is the endorsement of the power, believe the system which Sanatan Dharma brings. This is the sheer
value we bring to the table, because these all people have literates, they have done their research. After they have been convinced, after they know what they are going to do there, look, it's not a 5-star resort, it's not somewhere in the Alps, it's not Davos where you have the 7-star facilities. It's going to be a bit of hardship going there, and you have to manage through crowds and you have to juggle your way through. But admits that if you have the billionaires, you have the ambassadors, and if you have all these people coming, you have the entire UP cabinet coming, you have Yogi ji coming, and now you have the Honorable Prime Minister going there today, it talks a lot. And we have already 38 crore people who have taken a dip, and by the time it ends, another maybe 10-20 crore. So we are talking of 50 crore, half a billion people taking a dip is not kidding. It talks about something more. And what I'm going to go there, Meghaji, but I've been talking to the people who have been there. They say har 10वां banda gora dikhta hai. There are so many foreigners. I was looking at the numbers. People from more than 150 countries have taken visa. They've spent their money and they have come and just to take a dip in Sangam. It is not so straightforward. If it is not any prachar, it is not anything. It is the sheer belief, and we are not sending invitations. Government is not paying for their tickets. Government is not paying for their accommodation. We are not doing anything. If I'm spending my money from a Denmark, paying for my ticket, my transport, my food, living, and I'm going to take a dip, that means my astha or my belief in what is being told there. Once you understand once you understand the magnificence of Sanatan Dharma, the people are attracted like a needle is attracted to a magnet. That is what the Kumbh basically has proved. And we are not stopping people from any faith. You're a Christian or whatever, you can come and take a dip. That is the greatness of Dharma. And they're absolutely safe. They are fine. It is not if Hindus were bigots and Hindus were those communal beasts. What some of people try to protest is, how can you have those billionaires and those 400 million beasts come and walk away scot-free? It's not possible. So these all myths have been shattered, and they have been shattered for good. And this Hindu unity across caste, color, region, and religious, ethnic divides, and those linguistic divides, those food divides, the color of skin may change, but Sanatan Dharma brings us together. This Hindu unity rattles the opposition. Anywhere where you have Hindu unity across caste, creed, and ethnicity, that is a political problem from opposition, and they will find issues, they will find reasons, they will find those teeny many reasons to put those jibes. But again, it is like कहते हैं ना हिंदी में कहावत है मेघा जी, चांद पे थूकना. I mean, you know what happens after that. Let them try. It's their good luck or bad luck. They are losing election after election. Now some of the political parties have a name, have a defined image. You are anti-Hindu. They carry that image with it. And in Hindustan, you cannot get away with the Hindu. I am being very candid here. Hindu ke bina Hindustan nahi hai. You cannot get away with that. You can have your imperial values. You can have your Western education. But Dharatal is Hindu. Bedrock of the civilization is Hindu. That point has to be amply clear, loud and explicit. There is no debate, no discussion, and no negotiation around it. The people who understand good, the people who don't understand, time will decimate them. They will become history. They will not even remain on the history books if they continue like this. Okay, coming back to you, Himanshu, but unfortunately an incident took place just weeks ago, and there was a stampede, and that led to the death of several people, the devotees who had gathered over there at the Sangam to take the holy dip. But do you think that has that dissuaded people from all across the globe? Because I don't see so. Because when you say the king of Bhutan was at the Kumbh just 24 hours ago taking the holy dip, the chief minister was present with him, escorting him, making him understand what the rituals of the Mahakumbh at Sangam were. I don't think this has dissuaded people from across the globe to be part of these mega festivities, a spiritual moment that comes after 144 years. Yes, Megha, on the contrary, what has happened is, the inflow has increased. You see, actually the initial estimates which suggested that in total Mahakumbh, there will be about 45 crore people. But what's going to happen now is, it's going to cross 50 crore mark. What you have every day, if you look at the numbers, and if you look at the people, despite hardships, a 65-year-old man walking 10 kilometers to have a dip and going back to his bus and walking another 10 kilometers. Now that can happen only in Mahakumbh. And that's why I say, basically what happens is, when you have a set narrative being run for a very, very long time, it's something like a spring. When you suppress it so much, we have been suppressed for so many years. A Hindu or a Sanatani is not been allowed to call himself a Hindu. The moment you say, I'm a Hindu,
People say you are a communal man. When that happens, it goes out like a spring. And गर्व से कहो हम हिंदू है, what Joyita was referring was a catalyst in that. And on top of that, today you are seeing, 2025 Mahakumbh, 2024 Ram Mandir. And what has happened is, it has brought the Indian culture into the limelight of the world. Now today, a few individuals going to Cambridge and talking nonsense about Bharat doesn't matter. It just doesn't matter. Because people know what Bharat is. The same white man has come to Mahakumbh and seen what exactly Bharat is. He's had a holy dip in the freezing waters of Triveni and he's understanding what this Sanatan culture is all about. All inclusiveness is not being taught. It is learned. And the people, the world converging into India is learning what all inclusiveness is. And that's why entire world is willing to believe what Modi says. What Narendra Bhai says, you might not know. But Narendra Bhai on his first trip as a Prime Minister to USA was during Navratri. And he was only on a Nimu Pani at that time. Now today is a Gupt Ashtami. Navratra is a very, very big festival, holy festival as far as Narendra Modi is concerned. Whether it is Chaitri Navratra, whether it is Aswa Navratra, or whether it is Gupta Navratra. Today is Guptashtami. And on a Guptashtami day, he takes a holy dip, not for Delhi elections. Delhi election is a small thing. But remember that next week. Yeah, exactly. in But 7 days' time, he's going to go no to France and political US. party or leader has the gumption to talk about Narendra Modi taking a dip at the Sangam and collating it and linking it to the Delhi elections. I don't think there has been any politician, anybody in the opposition who has been able to make a statement and target Narendra Modi, but because it's just not feasible for them politically as well. Joining me also on the telecast, let me quickly get in Raman Malik. Raman Malik, I would like to equate it to a couple of years ago when the new parliament building was inaugurated. There was the presence of the religious Sangha in the parliament building. There were Hindu priests from north and south and east and west who had gathered together to perform and conduct the religious rituals, to conduct the rites, to conduct the Havan, and there was a lot of criticism that came in from the opposition that it subverts the very ethos of India, which is a secular India. And when you take a comparison to when the oath taking ceremony of President Trump took place, there were 4 reverends who invoked the name of Jesus multiple times. It was almost like a Christian ceremony. And every single time the President of America takes oath, he takes oath on the Bible. There have been instances where Hindu origin leaders, lawmakers, for example, Rishi Sunak, when he was the Prime Minister, took oath on the Gita. There have been other lawmakers from within the American government who have taken oath on the Gita. Is the opposition now backtracking on the narrative it had built that secular India is under threat because of the BJP and its propaganda of Hinduism and Hindutva? India is secular because India has Sanatan Dharma. Sanatan Dharma is the parent of all dharmas. And what is Dharma? Dharma is doing right. Right by not just conduct, by morals, by ethics, by planetary positions, by science, by medicine, everything. And we knew each and everything before the world even knew about what they were. So please understand, our rishis knew the planetary positions much before the telescope was built, or for that matter, they could communicate between themselves even before the telephone was built. So we are a religion which is based on science and all possible scientific facts. Having said that, you must also understand that these people who are
into these very people who are wanting to talk about secularism in danger because of Hindu and proud Hindu being a danger to this and that. They must understand that every time a Western power came to this land, it was greeted peacefully, it was welcomed, but at the same time, where a small portion of the world from Middle East started expanding its horizon, it took just few hundred years to capture about 55, 56 countries. But this is one country which they tried capturing for over 1,000+ years and they could not. The other fact which one must not forget is that when you talk about secularism, you must not forget the words of Pandit Nehru. He categorically stated the Abrahamic religion, namely, and I'm quoting him, namely. I will just interrupt you. I'm sorry, but I'll have to interrupt you. Just actually, let's take a look at what's happening on the ground. Prime Minister Narendra Modi is offering his prayers at the Sangam. मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिलता है तुझको मां संसार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हम सब तेरी माँ उतारे आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनो आपदा हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ओम सुजात ज्योतिघासः संभवरूथम सदस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमर्देशः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिलता है तुझको मां संसार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार
हम सब तेरी माँ उतारे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं मैया तेरी आरती। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे, मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं, आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजात ज्योतिघासः सन्भवरूथम सतस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णो द्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमृद्देशः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि सर्वदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं मैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिलता है तुझको माँ संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे चेड़ बीड़ा तान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब तेरी माँ उतारे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं मैया तेरी आरती। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे, मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं, आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजात ज्योतिघासः सन्भवरूथम सतस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णो द्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमृद्देशः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि सर्वदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। All right. So Prime Minister Narendra Modi has conducted those rituals, taken part in the religious ceremony, and now he's heading back to the Ghats. The Prime Minister was there for 2 long hours. That was the designated time that he had allocated to be at Prayagraj, and he has conducted the prayers and the ceremonies, and he is now going to be headed back to New Delhi. All right. On that note,
I'll take a short break, come right back, because we are covering for you the Delhi elections, the voting that is currently taking place, and of course Prime Minister Narendra Modi, who is in Prayagraj for Mahakumbh. Thanks for watching. अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्ट। पिछली बार 8 घंटे वाली बिजली चो कोई कट लग्या नहीं लग्या। कट दी गल तां छड्डो, बल्ब ने झमक्का भी नहीं मारना, झमक्का। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ 3500 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨਾ चाहिए। This budget has given us a very good allocation of 2,52,000 crore. मिडिल क्लास को तो टैक्स मुक्त ही कर दिया। Biggest relief as far as income tax. Invest Karnataka 2025 is our chance to showcase Karnataka's best to the world. The business community, startups, academia, and even youngsters, I invite everyone to be part of this mega platform. From February 11th to 14th, let the world witness why Karnataka is the best destination to invest. केजरीवाल जी जरा अपने झूठ के जाल में थोड़े लपेट में आ गए। पिछली बार 8 घंटे वाली बिजली चो कोई कट लग्या नहीं लग्या। कट दी गल तां छड्डो, बल्ब ने झमक्का भी नहीं मारना, झमक्का। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ
माँ 3500 रुपया कहना ऐसी जीरो आया माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। From the banks of the holy Ganga, where millions gather in devotion. Welcome back. You're watching NewsX. I'm Megha Sharma, and let's straight away go across to Mahakumbh at Prayagraj, where Prime Minister Narendra Modi has now offered his prayers. He is being accompanied by Chief Minister Yogi Adityanath. They are now headed back to the Ghats, and from there he will be returning to New Delhi. The Prime Minister and his team had allocated 2 hours to be present in Prayagraj. He was there at about 10 a.m. and from 10 a.m. to up until 12 p.m. he has performed all the ceremonies. This is not the first time that the Prime Minister has offered prayers and conducted religious rites at the Ganga. Arzu on the telecast with me. Arzu, what is the schedule of the Prime Minister now? Now that he has offered his prayers to the Ganga at the Triveni Sangam, when is he now going to be returning to New Delhi? Do we have any indication? Well, if you talk about Prime Minister Narendra Modi today, came here. All right, we'll get Arzu in just a moment, but there you have it. After having conducted the prayers, he took a holy dip in the Triveni Sangam, and now he would be heading back to New Delhi in just a short moment. Prime Minister has been escorted by none other than the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, and that was just about a 15-minute prayer ceremony that Prime Minister Narendra Modi conducted with the help of the priests that were also surrounding him at the Triveni Sangam. He has offered milk and flowers and other things at the Triveni Sangam as he conducted prayers. Remember, today is an important day for devotees to take a dip in the Ganga. Arzu is back on the telecast with me. Arzu, what is the itinerary of Prime Minister Modi now that he has conducted the prayers? Well, after he took a holy bath in the Triveni Sangam, he returned back to the Aral Ghat, and from here, after taking a boat, he returned to the Aral Ghat, and then he will be traveling back to the DPS helipad, the Delhi Public School helipad, and from there he will proceed to Prayagraj Airport. The Prime Minister to depart Prayagraj on an Air Force plane at around 12:30. So from here he will be leaving for Delhi at around 12:30. So this is the itinerary for the Prime Minister today. So for the 2 hours he remained in the Mahakumbh area. He reached Prayagraj at around 10:30, and from then he was performing several rituals. He arrived at the Aral Ghat. From here he took a boat along with and both by taking a view of the mesmerizing view of the Triveni Sangam, the reach to the Sangam knows the particular point, the murder of Ganga. There he performed the rituals, also did a Ganga Aarti, and also took a holy dip in the Triveni Sangam. We can clearly see, all those rituals that the Prime Minister performed to give a message of the, unity, and a big message was sent to the world through the Sangam city. In fact, till now, more than 38 crore people have already took a holy bath, and the expectation was around 40 crores. But yes, this mark is going to cross very soon, and this will be historic when, if you talk about the devotees are also mentioning, the foreign devotees are in fact also mentioning that we also want something like this to happen in our country. But yes, it's a very big task, but the successfully conducted by the Uttar Pradesh, also successfully conducted by the Bharat, and this is only Bharat can do such a massive event where crores of people are coming together to perform these rituals, these pictures. This is a 45-day long spiritual and cultural celebration in the Prayagraj Mahakumbh, and over
overwhelming display of faith, devotion, and spiritual unity. Creating a spectacular view, grandeur witnessed once in every 144 year, and that's why we can clearly see from every be it Home Minister, Defense Minister, and now the Prime Minister himself coming along with the devotees. There was a separate route that was chosen for the Prime Minister so that the devotees doesn't face any problem. There should be no disruption for the devotees also. So that's why he chosen a separate route, and from there he went to the Aryal Ghat. By boat he reached to the Sangam Node. So all these rituals Prime Minister performed, and we also saw the people worldwide are coming here to be the part of the Mahakumbh, and the number are continuously increasing because the people understand the significance of the Mahakumbh. Right. Which is considered Stay on one with of me, the Arzu. I also largest- have with me Mr. Alok Mehta. Thank you for joining us. Alok Mehta, first of all, the significance where the entire country is watching Prime Minister Narendra Modi take the holy dip. What is the message that is sent out to the countrymen? You see, it's a very historical moment because the democracy, one side in Delhi, we are seeing this election polling in a big way, and at the same time, the religious people in India, the millions and millions, they are there, and Prime Minister represent the Indian culture with modernity. You see, this time you see his dress, the track suit, and this kind of dress you will not find with Prime Minister when he will go to Sangam or Ganga. You see, this gives a message to the world because how we mix with the modernity and the Indian culture, Indian religion, and that's why I think this is a message for not only for India, but it's a message for the world. Same time when you do the Surya Puja, Surya means solar energy. What we are giving a message to the world. Next week he is going to Paris and then Washington. You see, this kind of message goes that how India is a very strong, very united country, and every religion, we respect every religion because in Prayagraj, this is not only for Hindus. Number of millions and millions people in India, they are also the Muslims, Buddhas, Christians, and that's why the Prime Minister, when he goes in such a way, and people are talking why this is today. Earlier also he went to Kedarnath. If we go to Kanyakumari, say election day, certainly when there is there is no schedule in Delhi, and he planned to visit, it's not necessary that in election day he is always in Delhi. So these kind of politics. But unfortunately, you see, I see in the same time, Kejriwal thought that maybe if I should also get the catch of the media. So same time when the Prime Minister Modi was taking dip in Sangam, same time he went through the polling booth. He could have on in the morning also. Sonia Gandhi also went. So these kind of politics, very petty politics, I think, because they want to disturb any religious person. They want to disturb the parliament. They want to, especially the Kejriwal. There is an allegation about it that he wants anarchy. He himself told us. If you remember, you can see, find his bite that, I am an anarchist. So he is real anarchist. He wants to disturb even the Ganga, Sangam, religious, like millions and millions of people out there, and he wants attention for his voting. People should vote for him. So this kind of politics is also going on. But I think the basic purpose is that after some incident there, the Baghdad and all, but even then Prime Minister went there, and today millions and millions were also watching there. Nobody was disturbed. They were also on the other ghat. They were also bathing. So I think this gives a message that how we can manage. India is capable to manage themselves. The people are also disciplined. They also want to see the Prime Minister. They also want to bath in Ganga, Sangam, and at the same time we also want to strengthen the democracy. This is the message what the Prime Minister, I think, why he planned this way. I think this is because at the time he wanted to go maybe on Vasant Panchami, on Sunday or Monday also he could have planned. But no, he thought that after the Vasant Panchami he will go. So he will not disturb the crowd at the time. Yeah, so because there were a lot of brickbats that had been, the BJP, Yogi Adityanath,
The central government had been the target of just very recently because of the stampede that took place that led to the death of many people, and they were targeting the BJP, the state government, saying that why are VIPs being allowed to enter Mahakumbh, which is hugely inconveniencing the masses, the local devotees, the people that have come from all across the world to take the holy trip, to offer their prayers, because there is cordoning off that takes place. There are huge number of SPGs that are present, the guards that are present, security that has to be provided to these VIPs, which then inconveniences the locals, the masses to a large extent, because at the end of the day, Prayagraj is a very small area. And there are as of now 38 crore people who have arrived at Prayagraj at some time or the other in the past several weeks and taken the holy dip until now. I think what you are talking about, because there is no disturbance. That's why I mentioned earlier, maybe because of the bureaucrats, a number of people were going. They're not because of the VIP arrangement, but millions and millions of people, you remember, since 1954, after the independence, in Kumbh Mela, earlier also there was an incident of this kind of crowd and then some disturbance, some death also. Very unfortunate. There was so much law and order problem is also there. But I feel, and everybody feel very bad what happened recently also. No incident should take place. But I think today, when Prime Minister went there, all the security, but he went from the other route, by boat. Not disturbing to anybody where the people are crowded there. So I think nobody can compare him. I can say at a local level, I know that even the MPs and MLAs or the bureaucrats, when they go, they never bother the public and they create a problem too. But the incident which took place at after midnight, must be because I still feel there was some mismanaged by the bureaucrats, the police officials. They were not imagined that how much people will be there and how they should control it. They were not trained. But ultimately, Prime Minister was also monitoring from Delhi, and he supported by the special forces there, and they monitored and they controlled in very few hours. Everything was normal. So I think this kind of monitoring is also necessary, and precaution. The bureaucrats, I think they should have sacked few people in police and other officials. At least, because people are alleging about Yogi Adityanath because he was also monitoring. He said he was monitoring, but you see next day on Vasant Panchami, he was monitoring from his room in Lucknow itself. So I think they should have taken more precaution, because it always give a bad name to the administration. And there is a nice judicial inquiry is there, but inquiry, these kind of, everybody knows that you can't get any result, and afterwards you can just say sorry about it. People died, people are still in the hospital. So I think this was a very unfortunate incident, and the administration failed some extent, the local administration, and even the instructions were not proper. So we can't say that everything was good. But opposition taking advantage of it, I think the Akhilesh ji and other Congress people also, they should have supported, they should have given some suggestions before that. I think the assembly was also there. Otherwise also, if Rahul Gandhi as a member of parliament, or Priyanka Gandhi or Sonia Gandhi or Akhilesh Yadav or Lalu Yadav, if they write something to the Prime Minister or to write to Chief Minister, certainly they will also look after their suggestions. But I think they just wanted and see that if something mishappened, then they will cry and blame the Yogi Adityanath or the system or the government. So I think here we need political unanimity for the people. The democracy in parliament also, we see how much they take disturbance and all. So I think both systems, either at Sangam or in parliament, what we see, the politics is very unfortunate nowadays, and it gives the wrong message. But other way, Prime Minister Narendra Modi always agenda is development and the image of the India, and for 2047, he is targeting, want to strengthen the unity, want development, and want progress for the people, awareness. Okay, all right. Coming back to you, Shekhar Vijayan. Again, the significance of Prime Minister Narendra Modi's visit to Prayagraj during Mahakumbh, as much as it is a public display,
I mean, whether Prime Minister likes it or not, he is a public figure. He is the Prime Minister of the country. He is a world-renowned figure. But it is also about his spirituality, his personal beliefs. You know, see the Prime Minister has always made it a point to showcase India at the world stage, going with the ideals of Viksit Bharat, going with the ideals of making India a developed country by 2047, and we are on the track for that. Now, the Mahakumbh is a big event. It's a huge event. We had crores and crores of people coming in for this event, not just from India but from all parts of the world, who know about India through the Mahakumbh. So the Prime Minister doing what he did today in terms of going to the Sangam and taking the dip, we've all seen that. I think it was expected. The fact that it was done without disturbing anything around the Mahakumbh speaks for itself. The second thing is the Prime Minister is this is a bold new avatar of the Prime Minister, where he's gone out and showcased what India is all about, India's cultural identity and what India really stands for in terms of diversity, in terms of the dynamic religions we have, and how we can all work together in terms of Sabka Saath, Sabka Vikas. This spiritual quotient of the Honorable Prime Minister is there for everyone to see. It just goes to show that the Prime Minister is above all. He's trying to showcase India as a place where everything can come in together. We all can work together and we can all be successful. Now, for detractors, they could look at it from a different perspective. They could look at it from a myopic point of view and say that, oh, he's talking about religion. But the point is, if our cultural identity is strong, why should we not showcase that? Why should we not showcase India as a destination for our culture? It's happening all across the world, and India is at the epicenter of all this right now. And it goes without saying, it's happening well, it's being done well. And the Prime Minister is always, I have noticed, he's always done this, be it in the Parliament, be it at a place of cultural significance or religious significance. He's always tried to put the best foot forward in showcasing that this is what India is all about. This is an India which is equal. This is an India which is very diverse, which is very dynamic. This is an India which wants to move forward. This is an India which manages so many religions, heterogeneous in nature, but is still able to achieve what it wants to achieve. So I think that's a great leadership skill, and that's something which everybody needs to emulate, be it world leaders across the world, from India especially. Okay. And I think. Alok Mehta, I'm going to come back to you. Amit, it's so unfortunate that there are public figures, political party leaders who have such low reverence to what Mahakumbh is all about, to the spirituality that surrounds the country, because of this phenomenon that takes place after 144 years. So, a century and a half is the time when people from all walks of life, public figures, celebrities from all across the globe have waited up until this time, and they are fortunate enough that it is in their lifetime Mahakumbh has taken place, and still there's commentary like how the dead bodies of the victims of this stampede are thrown into the waters, into the Ganges at the Triveni Sangam at Mahakumbh. It was Jaya Bachchan who came out with this really irresponsible remark. What do you have to say to that? See, Jaya Bachchan or any of these other detractors have made it a business of always speaking ill of India in India or at the world stage. I think the larger population knows what is true and what is untrue. For example, we are talking about the Mahakumbh, where crores and crores and a lot of people came. It is humanly not possible to manage an event of this nature. The government did what they could. The UP government did what they could. Yes, there were mishaps in between, but instead of pointing out mistakes, everybody could have come in together, especially the opposition, and could have also spoken about the religious significance of the Kumbh in terms of how much employment does it generate, how much, how many people come in from all parts of the world, what is the religious tourism we have out of this, because everybody benefits from this. If India looks good at the world stage, it benefits all of us, including our opposition, including our ruling party. I think that leadership skill is missing. I think they hate the Prime Minister so much that they find every reason to bring India down. They really don't understand that the Prime Minister and India are spoken at the same breath. And that's where they're going wrong. And that's why they're not winning elections, because they don't understand what the normal Indian wants. The normal Indian wants an India which is developed. The normal Indian wants an India where people talk about us in a positive manner. But if we still keep talking about things which have gone wrong,
if we still keep talking about the deaths which have happened, which is very unfortunate, and you make up stories, or you comport stories, and you talk about things without any facts, this is picked up by the world media, and then it paints India in a bad picture. I think it's very important when somebody paints India in a bad picture, we should also have strong facts and figures to back them up and say, boss, to tell them very clearly they're wrong. And we have noticed that these are the same people who make stories all the time, always. Like people like Jaya Bachchan, they always come up with these negative stories around India. Yeah, absolutely. Alok Mehta, again, are there going, at this point of time, questions are being raised on Prime Minister Narendra Modi and the BJP central leadership that will this impact the polling that takes place in Delhi and of course the Bihar assembly elections that are also on the anvil? Megha, really it's very interesting because in today's election also, this kind of just a hurdle or the hue and cry, I think again is damaging them. Even Rahul Gandhi's statement in the parliament today, what they are doing, the Kejriwal did yesterday also, and they are abusing the Prime Minister. I think it is damaging their image and damaging the Indian democracy also. And in Bihar, you see, for this religious purpose, again I will tell you, Megha, you see Sangam Ganga is also there in Patna. Yesterday I was, my driver was telling me that near the Begusarai, the religious place is there also they will also have build this ghat, because Ganga also go in those sides in Bihar and it go to Bengal, goes to from Uttarakhand to Bengal. So I think these kind of religious sentiment from all over India, not only the Delhi question, the Bihar election will be also affected by, because they know how corruption in the Kejriwal or in Lalu Yadav. So I think ultimately it's damaging them. And one thing, this water, remember Megha, there were, even not in India, but all over the world, experts say that if there will be some world war, it will be for water. People are energy. Same thing, the message of Indian religion, what Prime Minister is promoting everywhere in the world, when he go to World Forum, he says how we are protecting our water, like Ganga, Narmada, Kshipra, Godavari. It's in our culture. That's why I give a message to as a Vishwa Guru, what we call the world Guru, just because, and then the solar energy. When we talk the nuclear energy, pollution free, less oil, less pollution, then the solar energy in India can give a message to all over the world. Earlier, now we have our own solar panel from Chhattisgarh or northeast to all over India, in Delhi or Mumbai. People are using the solar energy now. They are giving special benefits, and thousands and thousands, crores are spending on the solar energy. This kind of message with our Indian culture and religion. That's what I'm telling. On this issue, all parties should be united, because ultimately it helps. But unfortunately, I again condemn the earlier government when they were not giving money for the solar energy. They were not bothered for the pollution. What Kejriwal did in Yamuna, all over the world, people are laughing about it. The pollution in Delhi is worse than Beijing. So in Beijing, they controlled himself. The President Xi Jinping, he was traveling when I went there for a few years back. He was just control the industrial, some industries closed down for a few months. So these kind of action we need. Sometimes the Rahul Gandhi talk about the China, but we can't do in the same way. We can't close the industry. But at least the local administration, the state government, the responsibility of the Delhi government or the Maharashtra government or any Uttar Pradesh government or Karnataka government, they should also do something. Prime Minister can give the guideline, the parliament can give the guideline. So these kind of religious purpose is also with a modernity and culture. India is such a supreme power now, becoming superpower because of this. Absolutely. Absolutely. And before I conclude this conversation, Shekhar, it is so heartening to know that only yesterday the King of Bhutan was escorted by Chief Minister Yogi Adityanath. He prayed at the Triveni Sangam. We have seen diplomats from so many countries traveling from New Delhi and arriving at the Triveni Sangam and offering their prayers and talking about this spiritual experience that they were able to participate in. There is, the Coldplay pop sensation who had arrived just a few weeks ago. He has a fan following of millions of people across the globe. We saw the late Apple CEO Steve Jobs' wife, who was amongst the first public figures who had arrived
at the Triveni Sangam in Prayagraj. We also saw Gautam Adani, one of the richest men in India, to pay his homage to the gods and at the Ganga. What is the message that goes across to the world at large? I think this is India's answer to all the problems. See, all the people you mentioned are leaders in their own right. They are the 1%ers. They are the people who have seen success at various points of time in their life, and they are coming to India for a spiritual reason, for a spiritual quotient. Now, India provides them the answers. Especially taking a dip in the Mahakumbh is not just a celestial experience. It is not a circus. It is a spiritual experience for them. It's a spiritual experience for anyone who's ever been there. And the fact is, and we've got so many spiritual experiences in India. It's not just a Mahakumbh. We've got spiritual experiences which happen in northern, southern, eastern, western part of India. Now it's imperative for the government to also build on this and to work through it in terms of how can we improve medical tourism, employment, and how it can be generated. But I think the larger picture here is with all these, with all these dignitaries coming in, with all these 1%ers coming in, with all these people who really made a difference in their lives, successful people coming in, it just goes to show what India is for them. And at the end, you'll always have detractors who will speak negative about India within India. But that's besides the point. I think India should just keep focusing, keep fostering on, keep probing on, keep winning. I think there hasn't been such criticism that is coming from international media and people across the globe as much as it has come from local politicians within the country. And that is what that summarizes how the world is seeing India as the spiritual hub, Prayagraj, and hordes of people, hundreds and thousands and millions of people from across the globe arriving at the Mahakumbh in Prayagraj. And today Prime Minister Narendra Modi himself took the holy dip in the Ganges. I'll conclude this conversation. I thank all my panelists for joining me on the telecast, and thanks for watching NewsX. On the other side, we have the Delhi elections. There is almost 20% voter turnout that has now happened. Is there going to be increase in the number of people who come out to vote after the half of the day has been completed, the former half of the day has been completed? We'll keep a close track, rolling coverage of the Delhi elections in just a short while. Stay tuned. Invest Karnataka 2025 is our chance to showcase Karnataka's best to the world. The business community, startups, academia, and even youngsters, I invite everyone to be part of this mega platform. From February 11th to 14th, let the world witness why Karnataka is the best destination to invest. I'm Uday Pratap Singh reporting from New Delhi constituency for NewsX. I'm Simran Babbar reporting. ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की साख भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का
व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। केजरीवाल जी जरा अपने झूठ के जाल में थोड़े लपेट में आ गए। Invest Karnataka 2025 is our chance to showcase Karnataka's best to the world. The business community, startups, academia, and even youngsters, I invite everyone to be part of this mega platform. From February 11th to 14th, let the world witness why Karnataka is the best destination to invest. From the banks of the holy Ganga, where millions gather in devotion. A spectacle of spirituality, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬੱਲਬ ਨੇ ਝਮੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਝਮੱਕਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था? माँ 3500 रुपया। कहना ऐसी जीरो आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। केजरीवाल जी जरा अपने झूठ के जाल में थोड़े लपेट में आ गए। Invest Karnataka 2025 is our chance to showcase Karnataka's best to the world. The business community, startups, academia, and even youngsters, I invite everyone to be part of this mega platform. From February 11th to 14th, let the world witness why Karnataka is the best destination to invest. Hello and welcome. You're watching NewsX. I'm Megha Sharma. And Delhi has witnessed 20% voter turnout till 11 a.m. Voting remains bleak in the early hours of the day today. In the 2020 Assembly elections, Delhi had recorded a voter turnout of 62.59%, while only 56% of the voters have participated in the 2024 Lok Sabha polls. The big wigs have already voted in Delhi, with Arvind Kejriwal bringing his parents in a wheelchair. Rahul Gandhi voted in Nirman Bhavan and JP Nadda voted as well. Our focus is on the voters and the voter issues as our reporters are on the ground. And let's go straight across to them. Anand on the telecast with me. Anand, you are at Nirman Bhavan. What is the update? Are there more people trickling in now that half the day has already gotten over? Yeah, Megha, look, if we talk about the polling at this polling booth of New Delhi Assembly seat, that is the Nirman Bhavan. So several people over here have exercised their franchise since morning, and now also you can see, as I can show you in the visuals, that several of the voters, they have come out after voting earlier, just moments ago. Sir, can you show your inked finger in the camera? So you can see the people, those who have voted
voted, they have came out from the polling booth over here. So we'll speak to them and try to understand that what were the issues that went on in their mind before they went for polling inside this polling booth of Nirman Bhawan. Sir, आपका नाम? राजन कुमार। राजन कुमार जी, आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है दिल्ली के लिए, आप लोग नई सरकार चुनने के लिए आए हैं, तो क्या आपके मन में चल रहा था जब आप वोट करने गए थे अंदर? सर, वोट का मतलब ये होता है कि हम वोट एक अपने लिए नहीं, हम अपने देश के लिए डाल रहे हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी का नाम ले। देखो, पार्टी का रिजल्ट आता है जब वो जीतने की बात होती है, क्योंकि हम बिना देखे बोल दे फलानी पार्टी जीत रही हो, बेकार है, क्योंकि हम तो अभी वोट डाल कर आए, पब्लिक को पता हमने वोट डाला आज। अब रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, उस दिन पता चलेगा कौन सी पार्टी जीत रही है। सर, तो मुद्दे क्या थे इस बार चुनाव के, आपको क्या लगता है जो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है? आपकी मुद्दे ऐसे थे ना, आपकी जो इलेक्शन हुए, आपकी पब्लिक को सबको कुछ समझ में ही नहीं आया। ज़्यादातर पब्लिक ये बेगाए में रहे, क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं खुद ही, उनके बेरोजगारी इतनी है, कहीं नौकरी नहीं है। जितने भी कोई भी नेता हो, अगर उनको बच्चों को पढ़े लिखों को नौकरी लगा दे तो सबसे अच्छी बात है, वो झूठ बोलते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हम और we will go across to some more people over here and try to understand that what was in their mind when they went out to vote early in the day. सर, आप छोटे बच्चे के साथ आए हैं पोलिंग के लिए, तो क्या आपके मन में चल रहा था जब आप वोट देने के लिए अंदर गए? मेरे मन में ये चल रहा था कि जो भी दिल्ली की व्यवस्थाएं हैं, इसको सुधारने की ज़रूरत है, और शिक्षा और दूसरा जो बिछड़े हुए काम जो दिल्ली में रह गए, जो कि दिल्ली की जनता को काफ़ी उससे परेशानियां हो रही है। तो मैं इन आने वाले विधायकों से जो भी है, मैं यही चाहूँगा कि दिल्ली की व्यवस्था और से अच्छी हो सके, अच्छा एजुकेशन मिल सके, लोगों को जो भी फैसिलिटियां हैं, जो जो की हकदार हैं उसके, वो उनको मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। लगातार शीश महल की बात हुई, करप्शन की बात हुई चुनावों में, कहीं ना कहीं लोगों के मुद्दे कहीं दबते हुए दिखे, फिर पॉल्यूशन की बात हुई, यमुना की पानी गंदी है, लोगों को वो सप्लाई हो रहा है, पानी में जहर मिला देने वाली बातें ये भी आई, तो कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों? नहीं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये लुटियन जोन है, लुटियन जोन में भी पानी की तंगी है, तो ऐसा कोई ये ना कहें कि और जगह में पानी की किल्लत है और यहाँ नहीं है, तो पानी की किल्लत हर जगह है। और रही बात जमुना की बात देखें तो आप भी देखो, और रोज़ उस जमुना से क्रॉस कर रहा, वाकई में गंदी है, उसके नाम पे क्या राजनीतियाँ की गई मुझे उससे मतलब नहीं, बशर्ते कि हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो जमुना जैसी है, एक साफ़ सुथरी और एक स्वच्छ होनी चाहिए। काफ़ी गारंटियां भी इस बार चुनाव में लॉन्च की गई, सारे पार्टियों ने तमाम गारंटी दी है लोगों के लिए, महिलाओं के लिए भी खास तौर पे, तो कैसे देखते हैं? मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि गारंटी सभी पार्टियों ने की है, मगर ये ऐसा ना कोई पार्टी समझ ले कि ये गारंटी केवल इन्हीं 5 सालों के लिए, फिर 5 साल बाद या जब भी सरकार बदलेगी तो फिर मुद्दे वही रहेंगे, फिर जनता जागरूक है, जिस विश्वास पे लेके जनता इस समय दे रही है, वो फिर उस 5 साल बाद फिर इनसे वो सवाल करेगी। और बीजेपी जो लगातार क्वेश्चन उठा रही है करप्शन का दिल्ली में खास तौर पे, तो उसको, उस मुद्दे को कैसे देखते हैं? करप्शन एक है बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए चुनाव में? इस समय अगर कहीं ना कहीं वो जरूर चीज़ें हैं, मगर किस हद तक हैं वो अब किसी के बहकावे पे ना जाके आदमी अपने आप से भी स्वतंत्र देख सकता है कि हाँ, कहाँ करप्शन है, कहाँ नहीं है। तो इसका जवाब भी फिर किसी भी पार्टी को वो 5 साल बाद फिर मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। मगर हाँ, अभी जो 5 साल का किसी को भी मौका मिले तो अपनी गलतियों को ज़रूर वो सुधार ले। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। सर, आप भी वोट देकर आए हैं, क्या नाम है आपका? राम क्लब। सर, जब आप वोट देने के लिए गए तो आपके मन में क्या चीज़ें चल रही थी, क्या मुद्दे थे दिल्ली के? क्या लगता है आपको कि पिछले 10-12 साल में अच्छा काम हुआ है दिल्ली के अंदर? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ जी। जैसे कि एक तो महंगाई भी ज़्यादा है सर, और बेरोजगारी ज़्यादा है। इस पे जो भी पार्टी आई, इस पे ध्यान होना चाहिए जो भी है। मगर दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र सरकार उनको काम नहीं करने देती है, केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है, तो ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, इसको कैसे देखते हैं? ये सर तो गलत है। जो भी पार्टी आए, अब नई मतलब चुन के आए और उस पर काम होना चाहिए बस, और रोज़गार देना चाहिए, बेरोजगारों को रोज़गार होना चाहिए, और महंगाई में थोड़ा कम होना चाहिए। सर, आप भी अभी वोट देकर आए हैं, क्या मुद्दे चल रहे थे आपके मन में जब आप वोट देने के लिए गए दिल्ली की विधानसभा? फिलहाल तो देखिए, वोट तो दे दिया है, बाकी ठीक है, जो अच्छा काम करेगा अब तो उसमें रहते हैं। सर, केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी है, लगातार वो दावे कर रहे हैं कि 10-12 साल में उन्होंने काफ़ी काम किया है दिल्ली को लेकर,
मगर वही जो ऑपोजिशन है उनकी बीजेपी और कांग्रेस, वो कहते आ रही है कि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, करप्शन में ये डूब गए। ये कहे थे कि लोकपाल बिल लाएंगे, लोकपाल बिल नहीं लाया। यमुना की सफाई करने की बात कही थी, वो भी नहीं हुआ। पानी गंदी मिल रही है लोगों की, हवा यहाँ की काफ़ी जहरीली है। तो इन सारे मुद्दों को आप कैसे देखते? मुझे तो ऐसा लगता नहीं है वैसे तो, क्योंकि मेरी जो नज़रिया है उस नज़र से मुझे तो लगता नहीं आएगा। बाकी काम सभी अच्छा करते हैं, जो भी पार्टी हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, काम सभी के अच्छे रहते हैं। बाकी अब देखेंगे अब क्या होता है। बीजेपी लगातार कह रही है कि मतलब हम 50 सीट लेकर आएंगे, केजरीवाल भी दावा कर रहे हैं कि वो 60 सीट के आसपास आएंगे। तो क्या लगता है कैसा लड़ाई है, कैसी लड़ाई है यहाँ दिल्ली में? कोई बड़ी बात नहीं, हो भी सकता है ऐसा। दोनों के बीच है तो कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर, या 60 इधर या 50 इधर। और गारंटीज सर सारी पार्टीज दे रही हैं, अनाउंस कर रही हैं, तो कैसे देखते हैं इन गारंटीज को? क्या ये सही है लोगों के लिए? जो सरकार जिसकी बनेगी, जो आएंगे, जिनके चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अब वो अगर करेंगे जो उन्होंने बोला है तो लगेगा लोगों को, नहीं तो फिर उसके बाद ही 5 साल और आने वाले हैं। ठीक है जी। So Megha, you heard the people over here as they mentioned that how the several issues they mentioned, and the biggest one among them was the issue of unemployment, that how the youths of this city are facing the challenge of getting employment after completing their studies. And beside that, even the issue of pollution and corruption is also one of the prominent ones in this assembly polls. As we are stationed at this Nirman Bhavan polling station, earlier in the day at this polling booth, Rahul Gandhi and CPP chairperson, even Sonia Gandhi exercised their franchise, and even BJP candidate from the BJP, Parvez Singh Verma, also exercise his right over here at the same polling booth. So it's a very interesting fight at this New Delhi assembly seat, which is one of the high profile seats in this assembly elections. Back to you, Megha. All right, thanks Anand for giving us all those updates and talking to people and getting us the pulse of the voters on the ground. Let's take a look at this exclusive where NewsX was able to speak to the Aam Aadmi Party national convener Arvind Kejriwal, who then urged the people to come out and vote in large numbers. Listen in. सब लोगों को निकलना चाहिए, वोट डालने के लिए सब लोग निकलें। The voter will pick out in a while now. Yes, I am very sure. What do you have to say about that? सब लोगों को निकलना चाहिए, वोट डालने के लिए सब लोग निकलें। The voter will pick out in a while now. Yes, I am very sure. All right, so that was Arvind Kejriwal. We also, let's take a look at this Aam Aadmi Party candidate from Greater Kailash, Saurabh Bharadwaj, who has alleged voter fraud. He has accused the Delhi police of stopping people from casting their vote. Listen into what he said. वहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने लगवाया है, आप बताइए ना। ये इस तरीके से आप वोटिंग को यहाँ पे प्रभावित करने के लिए सुबह से लगे हुए हैं। सुबह सुबह आप लोगों ने बोला कि हम हटवा रहे हैं, फिर आपने वहाँ पे जो है बैरिकेडिंग कर दी। आप सारा का सारा मीडिया आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए वहाँ पे पूरा जैम लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है और जानबूझ के वहाँ पे बैरिकेड बंद कर रखा है। कोई भी आदमी जो यहाँ से आएगा उसको बोलते हैं उधर चला जा, उधर से जो आदमी आ रहा है उसको बोल रहे हैं इधर चला जा। आमने सामने नहीं आने दिया है ना, पूरा जाम लगा दिया वहाँ पे। आप देखिए सामने दिख रही है आपको बैरिकेडिंग। आप बताओ ये बैरिकेडिंग क्यों लगी हुई है यहाँ पे? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है, और देखिए कोई सीनियर अफसर जो है ऑन रिकॉर्ड पे आने के लिए तैयार नहीं है कि बैरिकेडिंग किसके। अब बताइए आप कह रहे थे ना आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है, किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहाँ पे कि बैरिकेडिंग लगा दी आपने अभी मुझे बोला कि आपके सीनियर ऑफिसर ने बोला है और उनसे बात करिए। सीनियर ऑफिसर आपके भाग रहे हैं छुप के, तो ये तो बदमाशी हो रही है ना पूरी की पूरी। ये सर मेट्रो वाला भी बंद किया, वो देखिए वहाँ से बंद कर रखा। देखिए वहाँ से सारे लोग मेट्रो से पैदल चल के आते हैं, वहाँ बंद कर रखा है। सिर्फ जो है गरीब गांव वालों को परेशान करने के लिए ये पूरी की पूरी बदमाशी कर रखी है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे मेरा वोट है, तो इसलिए ये बदमाशी करेंगे। अरे यार ये कोई काम है? तुम काम करो, काम से जीतो ना, ये सब करने से क्या। और देखो भाग गए, छुप के भाग गए सारे के सारे। सुबह भी मैंने ये बोला आपको, सुबह भी मैंने यही बोला आपको। देखिए क्या है, जहाँ हमारे स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे आम आदमी पार्टी के स्ट्रांग होल्ड हैं वहाँ पे बदमाशी पुलिस के एसीपी खुल के करा रहे हैं आपके सामने। आपने देखा यहाँ के मालवीय नगर के एसीपी और मालवीय नगर के एसएचओ
यहीं पे करा के गए। और एक बात और बताता हूँ, रात को इन्हीं SHO साहब ने हमारे प्राइवेट प्रेमिसेस पे छापा मारा। इन SHO साहब ने, इनसे पूछिए कि भाई आप किसकी परमिशन से छापा मारा आपने, आपको कोई इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी थी? नहीं दी थी। सिर्फ इन्होंने रात को छापा इसलिए मारा, इनको लगा कि जैसे दूसरी पार्टियां होंगी हमारे यहाँ भी पैसा मिलेगा, शराब की बोतलें मिलेंगी। गांव वाले बूथों पे कर रहे हैं, जहाँ जहाँ गांव है, जहाँ जहाँ वोट ज्यादा डलती है वहाँ पे परेशान करने के लिए। और देखिए, मन में जो चोर होता है तो ऐसे ही छुप के भागते हैं। ACP और SHO आपके सामने, मैंने उनसे प्रश्न पूछा, जवाब नहीं दिया, भाग गए। कितने बूथों पे आपने दिया? भाई यहाँ पे 21,000 वोट। All right, those are big allegations coming in from Saurabh Bharadwaj, who is also a candidate fighting the Delhi Assembly elections. He is accusing the Delhi police of barricading the areas, stopping people from coming out and vote at the polling booth. Simran Babbar on the telecast with me. Simran is in Patparganj. Simran, what's the development on the ground right now? Well, absolutely, Megha. Right now we are in Patparganj, where BJP's Ravindra Negi is facing the Aam Aadmi Party's new entry, Awadh Oja. Ravindra Negi जी हमारे साथ हैं। सर, आज मतदान अच्छे बहुमत से हो रहा है लोगों का। पटपड़गंज में हम अभी प्रस्तुत हैं। क्या आपको लगता है दिल्ली के वोटर्स की अभी किस तरीके से मन में चल रहा है और क्या सोच के लोग वोट कर रहे हैं? दिल्ली इस टाइम बदलाव चाह रही है और वो चाह रही है कि दिल्ली की जो बदहालत है उस बदहालत को बदलाव करने के लिए दिल्ली में बदलाव करना पड़ेगा, इसलिए मतदान कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर मतदान हो रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार बदलाव की लहर चलेगी और दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनेगी जो डबल इंजन की सरकार भी होगी और विकसित दिल्ली का जो सपना लेकर चल रहा है उसको पूरा करेगी। बदलाव की आप बात कर रहे हैं, पर लोगों के लिए बदलाव के जो मुद्दे हैं वो क्या समझ आते हैं? स्पेशली पटपड़गंज में देखा जाए तो अवध ओझा हैं आपके सामने, कांग्रेस के भी हैं, तो इस तरीके से जो ऑपोजिशन फेस कर रहे हैं उसको कितनी बड़ी लड़ाई देख रहे हैं अभी? डिप्टी CM 2020 में लड़े थे मेरे आगे, दिल्ली के मालिक थे, डिप्टी CM थे, शिक्षा मंत्री थे और उनके फेस में चुनाव लड़ा जा रहा था और जिनको शिक्षा का जनक कहा जाता है। 4 बजे तक केजरीवाल जी को जश्न मनाने नहीं दिया हमने, हमारे कार्यकर्ताओं के बल पे हमने चुनाव लड़ा और वो हारते हारते बचे और मैं जीते जीते बचा। और उसके बाद इन्होंने जिनके गले में घंटी टांगी तो मुझे लगता नहीं है वो कुछ कर पाएंगे। भारी व्यक्ति है, यहाँ मैं स्थानीय हूँ, 5 साल से जनता के बीच में रहा हूँ, जनता के लिए संघर्ष करा है, तो जनता मुझे खूब आशीर्वाद दे रही है। और दिल्ली में इन मुद्दों की भी अगर जब बात करें तो ये लगता है आपके ऊपर आरोप भी बहुत लग रहे थे, कांग्रेस भी आगे आके बोल रही है, देवेंद्र यादव, ये सब लोग आपको आके बोल रहे हैं कि किस तरीके से बांटा जा रहा है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है बीजेपी धल्ले से। शुरू से जब इनके बस के कुछ नहीं होता था ये तो आरोप लगाते हैं, ठीक है, वो खारिज भी करती है आरोप, चुनाव आयोग ने कंप्लेंट करने गए थे ये लोग, तो इनकी बौखलाहट है, हार की बौखलाहट है, दिख रही है, इसलिए ये लोग बौखला रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इस बार कुछ होगा, इस बार कमल ही खिलेगा। और कल रात को FIR भी रजिस्टर हुई है दिल्ली के अंदर, जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं वो आए थे, जाके पुलिस के पास भी गए हैं, तो ये ऐसे मुद्दों को इलेक्शन की प्रक्रिया में आते हुए लगता है कि एक तरीके से अटेम्प्ट होता है कि जिससे वोटर्स की एक्सरसाइज को रोका जाए। ये कुछ ना कुछ ये लोग करते हैं सड़ी, मैंने फिर कहा ये लोग आम आदमी और कांग्रेस, टीम A और टीम B है, ये दोनों मिलके प्लानिंग करके बीजेपी को रोकना होता है इनको। बीजेपी मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, बीजेपी जो दिल्ली की बदहालत है, गंदे पानी से जूझ रहे हैं जो लोग, जो सीवर जाम की मार से जूझ रहे हैं, जो कूड़े के ढेर से जूझ रहे हैं, जो गंदे बदहाल, जो सड़कें टूटी हुई सड़कों से जूझ रहे हैं, उसके लिए बदलाव चाहती है जनता और जनता चाहती है इस बार बीजेपी आए और दिल्ली में काम हो, आरोप प्रत्यारोप ना हो, सिर्फ आरोप और ब्लेम की राजनीति जो पिछले 12 साल से केजरीवाल जी कर रहे हैं, जनता भी चाहती है कि उससे निजात मिले, दिल्ली का कुछ तो काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बीजेपी's Ravindra Negi from Patparganj is in fact joining us live and he has been there with us on the please broadcast. let us know also Awadh Oja, who's from the Aam Aadmi Party, he's fighting the election from Patparganj. Has he already come out and cast his vote? Well, absolutely, Megha. As we are at the polling station right now, this is the contest which the Aam Aadmi Party is directly in with from the Patparganj Assembly constituency, and we have already spoken to many voters across this constituency, and right now we can also speak to some of the voters who have cast their vote. दिखाइए आपने वोट करा है। दिल्ली में जो मुद्दे हैं और मुद्दों को किस तरीके से देखा गया है, किन विशेष मुद्दों पे वोट और मतदान किया गया है? सबसे इम्पोर्टेंट दिल्ली की सड़कें, बिजली, पानी, ये फ्री कर करके लोगों की जेब काट रहे हैं। सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों को सिर्फ उन्हें मिलता है फ्री का,
और जो मीडियम क्लास आदमी है वो ज़्यादा पे कर रहा है जितना उसे करना चाहिए। तो सबके सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों को और ऑटो वालों को सिर्फ उन्हीं को फायदा है, उसके अलावा किसी को फायदा नहीं। और सड़कें के गड्ढे देख ले आप, 1-1 फुट गहरे गड्ढे हो रहे हैं। दिल्ली लगती नहीं, इससे ज़्यादा आप नोएडा जाके देखें, नोएडा की सड़कें कितनी बढ़िया, कितनी चौड़ी, कितनी साफ़ सुथरी है। आप नोएडा से कंपेयर करें, आप फरीदाबाद से, हरियाणा से कंपेयर करें, दिल्ली तो 12 साल में ऐसे हो गई जैसे कि किसी नरक में रह रहे हो। Well, absolutely. In fact, BJP's candidate from the same constituency who has exclusively spoken to us right now has also said that right now people are looking for change. दिल्ली में आपने वोट किया है, वोट करने के लिए जा रहे हैं, और अभी ये बताइए कि लोगों के मन में किस तरीके की मंशा है, ऐसे मुद्दे कौन से हैं दिल्ली में जो सिर्फ मतदान से पहले बहुत मैटर करते हैं? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और पिछले 10-12 वर्षों से जो दिल्ली की हालात हैं और दिल्ली की जो हालत कर दी है, जिस सरकार ने, जो अभी वर्तमान सरकार है, उस सरकार ने जो दिल्ली की हालत कर दी है, गंदा पानी, टूटी सड़कें और एक के साथ एक पौवा फ्री, तो उससे दिल्ली की जनता अब उस बदलाव की ओर इस बार वोट कर रही है और मैंने भी उसी को ध्यान में रखते हुए वोट किया है। हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर एक साफ़ सुथरी सरकार बने जो सब लोगों का ध्यान रखे, केवल एक ही वर्ग को आगे ना बढ़ाए, सब वर्गों का वो लोग ध्यान रखें। Well, absolutely, Megha, as you can see, what right, we are tracking absolutely. is the This heart is of the sentiment. interesting feedback coming in from the voters. The voters at this point of time that you spoke to have particularly mentioned that the subsidy schemes, welfare projects that have been launched by the Aam Aadmi Party government in the last 5 years have only benefited the auto rickshaw drivers, the poorest of the poor, but it has not done anything to the middle class, the lower middle class, the middle class, the upper middle class, and these are the grouses that people have at this point of time who have come out to vote. And let's take a look at this development coming in where after the allegations that have been made by Saurabh Bharadwaj, he has spoken exclusively to my colleague Shubrana. Listen in. दिल्ली संग्राम के बीच में ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि उनके चुनावी क्षेत्र में दिल्ली पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह आम आदमी पार्टी का जहां स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको नेविगेट करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए जन समर्थन की ये तस्वीर है। सर, क्या कुछ अपडेट है इस पे, क्या कुछ आपको कहा है? देखिए, चारों तरफ चिराग दिल्ली के, शाहपुर जेट के, जहाँ जहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं वहाँ पे इस तरीके की बैरिकेडिंग करके जाम लगाया गया है। चारों तरफ जाम लगाया गया है ताकि कोई आदमी अंदर ना आ सके। कोई आदमी बाहर चला गया तो फिर आ ही ना सके वोट डालने। और बहुत सारे लोग उधर से घूम के आते हैं गांव में, कुछ लोग उधर से स्कूटर पे आते हैं। आप लोगों ने वहाँ जाम लगा दिया तो वोटर कैसे आएगा? और सिर्फ हमारे यहाँ पे जो हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ लगाया गया है। साउथ एक्स में क्यों नहीं लगाया आपने? हौस खास में क्यों नहीं लगाया? नीति बाग में आपने क्यों नहीं लगाया? तो ये सीधा ये इलाका है और भी कहीं से ये शिकायत मैं किसी और इलाके में नहीं गया, मेरे को तो अपने इलाके का पता है और ये खुल्लम खुल्ला पुलिस की तरफ से बदमाशी की जा रही है। The Deputy Commissioner of Police South Delhi has now responded to the allegations that have been leveled by Saurabh Bharadwaj, emphasizing that there is an exception for the elderly and those who cannot walk, and for them bringing their cars inside is allowed. This is the rule that is being implemented everywhere during the Delhi elections. He has also stated that they will investigate the places where Saurabh Bharadwaj has raised such a concern. Listen into what he said. जो एल्डरली हैं उनके लिए एक्सेप्शन केस है, जो ओल्ड पीपल हु कैन नॉट वॉक उनके लिए अलाउड है गाड़ी अंदर तक आना, अदरवाइज 200 मीटर की गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन। ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग बाकी इलाकों में ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ सब जगह एज अ मैटर रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर जहाँ बता रहे हैं वहाँ विल सी, और जो पीछे जाम बता रहे हैं उसकी जो इनकन्वीनियंस बता रहे हैं उसको विल रिजॉल्व। All right, on that note, I take a quick break. Stay tuned on NewsX. In just a few seconds, on the other side of the break, we are on the rolling coverage of the Delhi Assembly elections. Don't go anywhere. विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल।
आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले LPG पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। LPG गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में LPG गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले MCB ESCB का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। From the banks of the holy Ganga, where millions gather in devotion, a spectacle of spirituality. I am proud to highlight Karnataka's crucial role in driving innovation in the aerospace and defense sector. Karnataka contributes to 65% of India's aerospace-related exports and caters to 70% supplier base for India's aerospace and defense industry. Supported by robust infrastructure, skilled talent, and global partnerships, Karnataka is shaping the future of India's aerospace aspirations. Invest Karnataka 2025 will further solidify our state's position as a preferred investor destination for aerospace and defense companies. I'm Uday Pratap Singh reporting from New Delhi constituency for NewsX. I'm Simran Babbar reporting. ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬੱਲਬ ਨੇ ਝਮੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਝਮੱਕਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ 3500 ਰੁਪਈਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ। केजरीवाल जी जरा अपने झूठ के जाल में थोड़े लपेट में आ गए। I am proud to highlight Karnataka's crucial role in driving innovation in the aerospace and defense sector. Karnataka contributes to 65% of India's aerospace-related exports and caters to 70% supplier base for India's aerospace and defense industry. Supported by robust infrastructure, skilled talent, and global partnerships, Karnataka is shaping the future of India's aerospace aspirations. Invest Karnataka 2025 will further solidify our state's position as a preferred investor destination for aerospace and defense companies. This budget has given us a very good allocation of 2,52,000 crore. मिडिल क्लास को तो टैक्स मुक्ति कर दी। Biggest relief as far as income tax. ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬੱਲਬ ਨੇ ਝਮੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਝਮੱਕਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
बहुत इस सरकार ते माण है। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ 3500 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ 0 ਆਇਆ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ। Hello and welcome. You're watching NewsX. I'm Megha Sharma, and there has been 20% voter turnout in New Delhi for the assembly elections up until 11 a.m. Have the people now woken up after the first half of the day has already concluded? Let's take a look at the figures, the overall turnout as well as specific assembly segment numbers. Pia on the telecast with me. Pia, take us through the numbers. Indeed, as you aptly put it, Megha, the overall voter turnout till 11 a.m. stands at 19.95%. This, of course, early trends as we continue to monitor the voter turnout over the course of the day. If we can go a little bit faster, the team upstairs can move a little bit faster. Yes, New Delhi, the voter turnout stands at 17.56% till 11 a.m. today itself. Let's take a look at other constituencies. Kalkaji stands at 16.28%. Meanwhile, in Jangpura, 18.13% of the voters have come out and linked their finger. In Malviya Nagar, 16.26% of the electorate has cast its mandate. In Patparganj, 20.50% of the people have cast their vote till 11 a.m. In Rohini, 18.35% of the people have come out and inked their finger. In Rajouri Garden, the voter turnout stands at 16.64% till 11 a.m. this morning. Meanwhile, in Greater Kailash, 16.26 is the statistics that has been recorded by the Election Commission of India. In Shakur Basti, the voter turnout stands at 17.57% this morning till 11 a.m. In Okla, the number stands at 18.30. In Balimaran, it stands at 78%. Back to you, Megha. All right, those are the numbers. Let's quickly bring in Shubrana. Shubrana is in Chirag, Delhi. Shubrana, what is the update on the ground? Are there more people who are now trickling in? We've had a slower day today in Delhi as compared to what was expected. Okay, before I actually go to Chirag, Delhi, where Shubh is joining me on the telecast, I also have with me Simran. She is in Patparganj. Simran, you have spoken to the BJP candidate who just a short while ago came to Patparganj and cast his vote. We have also seen the Aam Aadmi Party candidate who had earlier cast his vote. What's the update on the ground? Are there more people now trickling in? Well, absolutely, as the voter turnout has clocked over 20%. Right now, let me also bring in a view of these voters who have just in a fresh mood have cast their vote. As you can see, these wing fingers, the women cadre, Megha, that we are in fact standing with, along with the few family members as well. The women force is right here. And let me also get across to these people. As you can see, even a person on the vehicle is showing me that they have cast their vote. So huge participation, by the way. But right now, let me firstly go across to these voters and speak to them about what are the core issues on which the vote are being casted. आज क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? दिल्ली वालों ने बहुत सोच समझ के वोट दिया है या फिर उनके जो मुद्दे हैं वो ही पुराने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत सोच समझ के वोट दिया है। और मुझे जहां तक लग रहा है ऐसा कि पहले लोग सोए हुए थे, अब जाग गए हैं। बिल्कुल जाग गए हैं। और इस बार 101% में तो खुल के बोलूंगी कि बीजेपी ही आएगी। हमारे मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो मुझे लगता है कि एक साधारण इंसान है ही नहीं, वो कोई अवतार ही धरती पे आए हैं। जैसा कहा है ना, कल की आने वाले हैं उसमें। तो मुझे तो वो ही लगते हैं। इतना रात दिन मेहनत करने वाला दूसरा बंदा कोई हो ही नहीं सकता। बीजेपी ही आएगी इस बार, मोदी जी की ही जीत होगी। और फिर देखिएगा आप डिफरेंस अब में और तब में। आजकल आप देखिए, हम शाम के टाइम अगर चिल्ला गांव की तरफ जाते हैं, लोग शराब में धुत रहते हैं। उनकी लेडीज से पूछे ना कितना बुरा हाल है। वो बेचारी ना कमाती हैं, दिन भर वो मेहनत करती हैं, घरों में जा के काम करती हैं, लेकिन पैसा कौन ले जाता है? पैसा सारे वो
बस क्या बताऊं कौन ले जाता है, झाड़ू पे ही झाड़ू फिर रही है इस बार। जैसे वोटर्स के मन की बात हो रही है, महिलाओं के मन की और बात करते हैं। माता, आपने वोट दे दिया है आज? हाँ दे दिया वोट, मोदी को दिया। क्या माता जी, क्या सोच के आपने किन मुद्दों पे सोच के दिया कि हमें खाने को मिले। अच्छा, और का भूखे में नहीं मर रहे हैं हम सब। रोजगार, हाँ, और का रोजगार मिले, बच्चों के लिए नौकरी। हाँ, बच्चे के लिए नौकरी मिले। अच्छा, हाँ। और औरत के क्या विषय हैं दिल्ली के अंदर? अब के विषय बतावे। महिलाओं के क्या इंटरेस्ट और हित की बात है? दिल्ली में देखा जाए तो महिलाएं बहुत ज्यादा भारी मात्रा में जब वोट करती हैं तो वो सरकार बनवाती हैं। हम तब भी यही सोच रहे हैं बीजेपी आ जाए, हमारी दिल्ली का भी विकास हो जाएगा, बच्चों की भविष्य बन जाएगा अच्छी खासी इन्हें, और कुछ नहीं। जैसे सबका जैसे मतलब विकास होगा हमारा, बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। हाँ, हम यही सोच के कमल पे ही वोट डाल रहे हैं। और इस समय अब और बात करते हैं तो अगर हमारे पास विमेन वोटर्स में काफी यंग वोटर्स भी हैं, एंड लेट मी आल्सो ब्रिंग इन दीज वोटर्स। यू हैव कास्ट योर वोट ऑन व्हाट इश्यूज एग्जैक्टली द यंग वोटर इन द नेशनल कैपिटल इज लुकिंग टू कास्ट देयर वोट, एंड व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट इश्यूज व्हिच हैव नॉट थॉट ऑफ अर्लियर? We vote for education and like health and such policies. And we vote for really true development, not just a narrative of. What is the true development by the eyes of the youngsters? We see that schools have gotten better and better, and we see that the people who didn't have many things in the past, they are getting a lot of things now, and we believe that in the last 10 years a lot of change has come, so we voted for betterment of the people, truly. But what are the core issues given from a young perspective? What is that core issue that comes to your mind when you think of voting in Delhi? I always think about education and unity and like health benefits, health policies or in sab baaton pe. And what do you think in the area of Patparganj has become also the important dinner table issue before you cast your vote and think for the party that you're voting? A dinner table issue? Yes. The issue is that many people, they have been told that, you have to vote on the basis of your religion and all, and we don't believe in that. As a young generation, we care that people should be benefited from the taxes that we are paying, and we don't believe in polarization and all. So this is quite a conflict that is there in, some generation, young and old. All right. I also have one young voter with me right now. You have voted, and can you show the finger to the cameras and also let us know what are the core issues by the perspective of a young person who is also wanting to see the change and bring in some development? What is that issue? For us, Delhi elections are more localized, so we generally tend to see of who would like to do groundwork and who would work for the people. I think there's been a lot of development here in the area especially. So I voted for like who I believe would be working again for the people here in this area. So yeah, that's majorly. Is pollution an issue for the young generation? Yeah, definitely. Like I think this generation really is very health centric and they're very health oriented and they have a sort of idea of what they want in life and what might be harmful for them. So pollution is a big issue, and I think because of Delhi's geography and how it's located, it's a very complicated issue as well. So I hope it gets resolved. There's state governments, central governments involved there. So I hope that gets resolved in Delhi and people can breathe clean air. Clean air is also one of the very important issues before the young generation thinks of casting the vote. That they do? Yeah, they do. All right. In fact, the young voters are there, the women voters are there. There are, of course, voters from all across the region wanting to put their minds forward, and that is the sense that we are tracking from the ground. Here in Patparganj, from the East Delhi constituency, where there is a hot contest between the three parties. But what remains to be coming out as a result and who remains to be getting ahead in the race is what we are going to look forward to on February of 8th. But the voters here so far have been very excitedly and enthusiastically coming forward and casting their vote and exercising their right I see a lot of young faces also who have now started to come in. Maybe they had, decided to sleep in the early hours of the day because it is a holiday that has been declared by the Election Commission, by the Delhi government, because it is
the voting day. Therefore, they want more and more people, all Delhiites, to come out in huge numbers to cast their vote. So now we see, perhaps, hopefully, the voter turnout may improve as we go into the latter half of the day. Also with me on the telecast is Shubrana. Shubrana is in Chirag, Delhi. Mehndi Garg, she is in Malviya Nagar. And Simran, of course, is joining me from Patparganj. Shub, I'll come to you. Chirag, Delhi, how is the voter turnout like? Megha, a high voltage drama has erupted in this seat particularly because Saurabh Bhardwaj, who is the health minister of the Delhi, has come twice in this seat and he have been targeting Delhi police. That Delhi police have put the barricades on this particular road, and I would like to show you the visuals over here, Megha. At first, this drama 1.0 erupted when Saurabh Bhardwaj have said that this barricade, which you can see in the visuals, Megha, this was placed at this particular way, which has blocked the way. In the morning, Saurabh Bhardwaj came here and he have complained about this, and then this barricade was, put aside. Second time, when he have just come, when NewsX had exclusive chat with Saurabh Bhardwaj, he took us to the end of the road and he said that why Delhi police have placed barricades over there just to navigate the election result, but now the barricade seems to have removed from this particular area. Saurabh Bhardwaj is making this seat a high political drama seat because a few minutes ago Saurabh Bhardwaj was here and he have alleged that Delhi police have done this, but Delhi police have its own stand. The DCP have said that this comes under the code of conduct, that where election is taking place at 200 meters you have to make that area isolated, but Saurabh Bhardwaj have come here, he have made that complaint. Now this area remains to be opened. Although what we are learning at this point of time is that he have not casted his vote yet. That means that he can come again at this particular place, making it a hot seat wherever the BJP candidate Shikha Roy has also come here, and she have said that this is nothing but a haar ki bokhlahat. This is what Shikha Roy have said, and I would like our viewers to feel the pulse of this state and would talk to them. भाई साहब, मैडम आप वोट कर आ रही हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, मैं वोट करके नहीं आ रही, मेरा उधर का। अच्छा, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि जान पाए। हैव यू वोटेड? मैडम आप वोट कर आई? हाँ जी। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। खाना वाना खाकर आई हैं मैडम? हाँ। अच्छा, ये बात बताइए, महिला सबकी फेवरेट वोटर होती है, आप मुस्कुरा रही हैं, क्या लग रहा है इस बार? हमारा हक है ये, हम इसलिए अपनी वोट डालने के लिए खुश है, एक यही तो हमारा हक है। अरे वाह, ये आपका हक है। मैडम आप भी बड़ी खुश नजर आ रही है, इधर आइए। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट दिया? जो गांव में जिसने काम करवाया हम उनको वोट देखा है। अच्छा, गांव में जिसने काम किया उस पर वोट किया। बहन जी खाना वाना बना कर आई है घर पे? हाँ, खाना तो मेरी बहुएं हैं। अच्छा, मेड है, बहुओं की वजह से मजे हैं। अच्छा, ये बताइए, इस सीट पर आपको क्या लगता है, किन मुद्दों पर आपने वोट दिया? काम पर। अच्छा, पूरा विश्वास है कि जिसको वोट दिया है वो काम करेगा? क्योंकि एक बार, दो बार, तीसरी बार भी पहले उन्होंने बहुत काम करवाया। चलिए, अब आप हिंट्स मत दीजिए हमें, ठीक है? भाई साहब वोट कर आए हैं? नहीं, अभी भीड़ है, अभी थोड़ी देर में जाएंगे। अच्छा, वोट जरूर करिएगा, लेकिन वोटर टर्नआउट कम आ रहा है, वोट जरूर करके जाइएगा। और लोगों से बात करेंगे। बहन जी वोट कर आई हैं आप? अभी नहीं। अच्छा, क्यों? पूछने गई थी कि कौन से वहाँ पर कहाँ पे डलेगी, हमारे उधर वाले मंदिर में भी है ना, टंकी वाले में भी। अच्छा, वो कह रहे पहले वोट। चलिए, वोट जरूर कर आइएगा। मेगा, वी आर कंटिन्यूअसली अपीलिंग ऑन द ग्राउंड जीरो फॉर द वोट। आप वोट कर आई हैं दादी? हाँ, कर आए। अरे वाह, कर आए। क्या उम्र होगी आपकी? 70 साल। 70 साल की उम्र में आप वोट करने आई हैं। अभी भी जो लोग घर पर हैं दादी, वोटर टर्नआउट बड़ा कम है, उनको क्या कहेंगे? वाह, हमारे तो सब गिर गए। हाँ, सब बच्चे गिर गए, जो घर पर बैठे हैं। हाँ, मैं रह गई, मैं अब आ गई। अच्छा, आप अब आई हैं। So definitely from ground zero what we are learning at this point of time, आपने वोट कर दिया? वाह, देखिए ये वो लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है। मेगा, क्या बोलना चाहेंगे, किन मुद्दों पर वोट दिया? एजुकेशन और मेडिकल और आपका जितना भी ये लगा लो कि साफ सफाई, काफी मुद्दे हैं कहने के लिए, तो पर जब कोई पूरा करे। अच्छा, आप भाई साहब आपका क्या? सेम ही है।
सेम कैसे हो सकता है, दोनों की वोट तो अलग अलग। मेरे विचार भी मिलते हैं इनसे। अच्छा, आप दोनों के दोस्त हैं? हाँ, दोस्त साथ। चलिए, Okay, all बहन जी right. वोट So कर she- कराइए। while she continues to speak, two people who are gearing up to cast their vote, or some of them have already cast their vote. She said that Saurabh Bharadwaj, who is also belongs to this constituency, is going to be casting his vote. There has been a high voltage drama that has erupted over there simply because of the fact that he is now accusing the Delhi police of subverting the election process. The Delhi police, he has accused, said it has put up barricades which is not allowing the people to come and reach the polling stations and cast their vote, to which the DCP of South Delhi has clarified, said that this is part of the code of conduct. There is no unnecessary barricading that has been put up, and this has been a row that has been kick-started by Saurabh Bharadwaj of the Aam Aadmi Party for unnecessary reasons. I also have with me Mendi Garg. She is in Malviya Nagar. Mendi, what is the update? Do you think more people are now trickling in after a more than expected, a less than expected voter turnout that was witnessed in Delhi throughout today? Well, yes, Megha, we will try to have an understanding with the people as well, because we are in the one of the VVIP seats right now in Malviya Nagar, and some people are going inside to cast their votes. We'll try to have an understanding with them as well. Ma'am, have you casted your vote? Yeah. So what were the issues in your mind before casting your vote? What are the major issues that you think are here in the Malviya Nagar constituency? I believe it's the infrastructure development that needs to be taken care. One is the red light, which is not available at this corner. And I believe that there are, because of the traffic that has been, currently that we are facing, it's tough for the commuters to cross the road. So it's more of the infrastructure development that I took into consideration and casted my vote. Yeah, so infrastructure, Megha, is a big problem right now in Malviya Nagar as per one of the voters. Some of the people are also here who are going inside to cast their votes. Ma'am, आप लोग अभी वोट डालने जा रहे हैं, डाल चुके हैं, तो क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में वोट डालने से पहले? क्या मुख्य मुद्दे हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। जो वर्किंग पार्टी चाहिए, जो काम करे, सीधी सी बात है, उसमें कोई ये थोड़ा छुपाने वाली बात थोड़ा है कि while Mendi talks to more and more people, voters who have come to cast their vote, already have cast their mandate. Let's take a look at the star candidate Alka Lamba, who has come out, and she is at this point of time at Kalkaji. And thank you, Ms. Alka Lamba, for joining me on the telecast. And a big question, of course, what is the strategy of the Congress this time around to revive itself in this election from point zero? देखिए, कांग्रेस ने पूरा टाइम एक संघर्ष किया लोगों के मुद्दों में, लोगों के बीच में जाकर। आपको मालूम है, श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा का असर ये हुआ कि 400 पार का नारा देने वाली भाजपा को देश में बहुमत के लाले पड़ गए, बैसाखियों के दम पर आ गई है सरकार। तो ये साफ है कि तानाशाही जहां होगी, अन्याय अत्याचारों को उसको रोकने के लिए सिर्फ कांग्रेस ही है। यही हाथ दिल्ली में है। पिछले 10 साल में शीला जी की आबाद दिल्ली को बर्बाद किया है। बीजेपी आम आदमी पार्टी 10 साल से लड़ रही है, शासन प्रशासन 10 साल से लड़ रहा है, सरकार केंद्र की और दिल्ली की लड़ रही है। जनता के लिए नहीं लड़ रही है, सत्ता कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। अब भी लड़ रहे हैं, थानों में पहुंचे हुए, जबकि कल वोट होना है। बेहतर होता आप लोगों के मुद्दे पर लड़ते, लोगों के मुद्दों पर लड़ते तो आज हवाएं जहरीली नहीं होता, पानी पीने का दूषित ना होता, अपराध ना होता, महंगाई ना होती, बेरोजगारी ना होती। आज ये जो दोनों की लड़ाई है मात्र लोगों के मुद्दों से भटकाने के लिए, और लोग तरसते हैं, तंग आ चुके हैं इनकी तू मैं लड़ाई से। और ये इनका एक मकसद है कि मुद्दे पर ना आने दें, तू मैं लोगों को उलझा दें और लोग कल भूल जाए कि किन मुद्दों पर बटन दबाना था। सो कांग्रेस मुद्दों पर लड़ी है, मजबूती से हम इस चुनाव को लड़े हैं। कल अंतिम फैसला लोगों का आएगा। जो सर अलका जी, हमने यहाँ पे देखा है इलेक्शन कैंपेन के तहत आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान युद्ध हुआ है। दे हैव बीन टारगेटिंग ईच अदर। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस यहाँ पे साइडलाइन हो गई है? देखिए, वो हमारा नाम लेते हुए कांपते हैं। वो जैसे ही हमारा नाम लेंगे, जैसे ही कांग्रेस का सी बोलेंगे, तो ऐसे शीला दीक्षित याद आएंगे।
शीला दीक्षित के काम याद आएंगे। इसलिए उनका बेहतर है कि कांग्रेस का नाम ही मत लीजिए, ना शीला कांग्रेस का नाम लेंगे, ना शीला जी की याद आएगी, ना शीला जी के काम और ना शीला जी की बर्बाद दिल्ली पर सवाल पूछे जाएंगे। सो दोनों ने अपनी नूरा कुश्ती दोनों ने अपने बीच में खेल को रखा हुआ है, लेकिन इस खेल में जो इनके आपस में फुटबॉल का खेल है वो जनता उठाकर ले जाएगी इनकी गेंद और इनको पता भी नहीं लगेगा और इनका गोल होना तय। अब कांग्रेस ने बार बार आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को टारगेट किया है। आपने कहा है कि दिल्ली को रेवेन्यू सरप्लस से रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट बना दिया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा। आपने कहा है कि काफी सारे झूठे वादे किए हैं, चाहे वो औरतों को कैश देना हो, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो, पर आपने खुद कांग्रेस ने खुद अपने मैनिफेस्टो में रिलीज किया है कि वो 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी देंगे। आपको ये जब दिल्ली एक फिस्कल डेफिसिट से गुजर रही है, अगर आप गवर्नमेंट बनाती हैं, आपकी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, तो आप इन सब फाइनेंशियल क्राइसिस के मामलों से कैसे जूझेंगे और ये प्रॉमिसेस कैसे पूरे करेंगे? देखिए, जो सत्ता में है और वो कहते हैं हम करेंगे और वो नहीं करते, धोखा तो वो करते हैं। धोखा तो भाजपा कर रही है, धोखा तो आम आदमी पार्टी कर रही है। दोनों 10 साल से सत्ता में हैं। कितनों को रोजगार दिया, कितनों को बेरोजगारी में राहत दी, क्या दिया? आपने कुछ नहीं दिया। आज चुनाव हार रहे हैं तो बीच चुनाव में आप ये घोषणाएं कर रहे हैं, तो लोगों को समझ है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की घोषणा और कांग्रेस की घोषणाओं में क्या अंतर है। हम सत्ता में नहीं थे, लेकिन हम अगर कह रहे हैं हम आएंगे तो हम राहत देंगे महंगाई से, तो हम राहत देंगे, क्योंकि हम कर्नाटका में दे रहे हैं, हम हिमाचल में दे रहे हैं, हम अपना तेलंगाना में हम राहत दे रहे हैं। आप कहाँ राहत दे रहे हैं? पूछिए, कहाँ है 500 का सिलेंडर? मोदी की गारंटी 450, कौन से राज्य की, कौन से सरकार में? पूछिए अरविंद केजरीवाल से, पंजाब की महिलाओं को 1000 मिल रहा है, जब पंजाब की महिलाओं को आप 1000 नहीं दे रहे। यहाँ आपने 10 साल में 2500 नहीं दिया, अब क्या 2100 देंगे आप? सो फर्क है। लोगों को साफ समझ आ रहा है कि किसने कह कर एक मौका करके धोखा दिया है। हर मौके पर मौका मिला, लेकिन अब लोग धोखा नहीं। 2 शब्द हैं जो दिल्ली और कालका जी में चल रहे हैं। पहला शब्द है बदलाव और दूसरा है विकास। अब लोग बदलाव करेंगे और विकास की तरफ बढ़ेगी मेरी दिल्ली। कांग्रेस ने बार बार ये वादा किया है कि कास्ट सर्वे किया जाएगा दिल्ली में अगर कांग्रेस सरकार आती है। क्या आपको लगता है कि वोटर्स आपके इस आइडिया से, कास्ट सेंसस करने से आपके साथ मेल खाते हैं? बिल्कुल। देखिए, लोग चाहते हैं जनगणना होनी चाहिए, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, किस जाति धर्म, कितना, जिसकी जितनी आबादी संसाधनों में उसका उतना हक होना चाहिए। आज देश की सारी संपत्तियों पे 2 पूंजीपति मित्रों का हक है, बाकी करोड़ों की आबादी गरीब, मजदूर, किसान, दलित, इनकी भागीदारी कहाँ है? संविधान ने तो बराबर के हक दिए ना। आपने विषमताएं पैदा कर दी। जब जातिगत जनगणना होगी तो जिसकी जितनी आबादी होगी, सरकारी नौकरियां हो, सरकारी संसाधन हो, सरकारी खजाना हो, उसके ऊपर उसका उतना हक बनता है। अगर एक आदमी है, आप उसे पूरी रोटी खाने को दे रहे हैं और दूसरी तरफ 4 लोग भूखे मर रहे हैं, यही तो हो रहा है फ्री के राशन में। हम उसको बैलेंस करेंगे। अगर 1 रोटी है तो 4 टुकड़े होंगे, चारों को 1-1 टुकड़ा मिलना चाहिए। और हमारी तो कोशिश है कि 4 लोग हैं तो 4 रोटियां मिले ताकि पेट भर खाएं। रोजगार हमें पैदा करने, हमें बेरोजगारी पर लगाम लगाना। अब अगर हम इलेक्शंस के बाद की बात करते हैं, रिजल्ट्स की बात करते हैं, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 36 का मैजिक फिगर पे नहीं पहुंच जाती है, क्या कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो जाए और गवर्नमेंट बने कोएलिशन की? मैं फिर कहूंगी, ये भविष्य के गर्व के सवाल है जो आप पूछ रहे हैं। किसी को नहीं पता अगले पल में क्या होना है, लेकिन हमने मजबूती से, कांग्रेस ने 70 सीटों पर बिना समझौता किया। दिल्ली के मुद्दे पर श्री राहुल गांधी जी यमुना का जहर जाकर दिखाते हैं, हवाएं जहरीली दिखा रहे हैं। केजरीवाल के हाथ में 10 साल दिल्ली बर्बाद हुई है। सो स्वाभाविक है, कांग्रेस ने 70 सीटों पर मजबूती से ये लड़ाई लड़ी है। 5 तारीख 50 का हम टारगेट लेकर अभी भी चल रहे हैं और अब लोगों का जो फैसला होगा, मजबूती से हम नई दिल्ली हो, कालका जी मेरी विधानसभा है, दूसरी विधानसभा में मजबूती से लड़े। लास्ट में तो प्रियंका जी, राहुल जी लगातार लोगों के बीच लोगों के मुद्दे उठाते हुए। जी बिल्कुल। अब हमने जब इलेक्शन कैंपेनिंग देखी, कांग्रेस के, बीजेपी के, आम आदमी पार्टी, सब लीडर्स, पॉलिटिशियंस, कैंडिडेट्स ने बाहर आके प्रचार किया है। आपको क्या लगता है
जो मुद्दे हैं लोगों के, दिल्ली में जो लोग वोट डालने आ रहे हैं आज, उनके क्या मुद्दे हैं, और क्या वो यमुना की पोल्यूशन का मुद्दा है, क्या वो एयर पोल्यूशन का मुद्दा है, क्या वो सीवेज का मुद्दा है, क्या मुद्दे हैं जिसको मद्देनजर रख के लोग आज वोट डालेंगे? देखिए, इस बार विकास का मुद्दा सबसे बड़ा था। गोविंदपुरी की गलियां, गोविंदपुरी एक्सटेंशन की गलियां, नवजीवन कैंप, भूमिहीन कैंप, नेहरू कैंप, कालका जी, श्रीनिवासपुरी, आपका ईस्ट ऑफ कैलाश, महारानी बाग, पॉश एरिया भी है, और हमने स्लम भी देखा है। नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर हैं लोग। अब उनकी कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि कल वोट होगा और बदलाव होगा। पीने का साफ पानी नहीं दे पा रही, ये अलका लांबा के सामने जो मेरी है विधायक बनती है तो सबसे बड़ी चुनौती है कि लोगों के घरों में पीने की साफ पानी लाइन हो और लोगों को स्वच्छ पानी मिले। हवाएं जहरीली है, धूल और मिट्टी प्रदूषण, गंदगी भरी पड़ी है। बेरोजगारी और महंगाई के लिए हमारा वायदा 2,500 रुपया महिलाओं को देंगे, महंगाई से राहत के लिए। हर पढ़े लिखे युवा बेरोजगार जो है उन्हें 8,500 दिया जाएगा। 500 का घरेलू सिलेंडर महंगाई से राहत के लिए दिया जाएगा। 25 लाख रुपए का जीवन बीमा दिल्ली की सरकार कांग्रेस की बनते हुए हर नागरिक को दिया जाएगा, क्योंकि इलाज का मोहताज कोई मध्यम वर्गीय गरीब मजदूर ना रहे, उसका हक है। तो 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा का हमारा वायदा है। तो ये हमारे वायदे हैं जिसको लेकर दिल्ली में हम आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है लोगों के पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि लोग बदलाव ना करें, क्योंकि लोग दुखी और परेशान हैं। बदलाव के लिए कांग्रेस एक मजबूत विकल्प बनकर पूरी दिल्ली और कालका जी में मैंने इन लोगों की लड़ाई को लड़ा है। Thank you, Alka Lamba, for joining me on the telecast, and wishing you all the best for the Congress, that you are able to make a dent in the Delhi Assembly elections this time around. On that note, I slip into a short break. Stay tuned. On the other side, more updates on what's happening on the ground all across Delhi on voting day today. Karnataka is the fourth largest automobile producing state in India, contributing 8.5% to the nation's vehicle production. The state also has the highest number of EV charging stations, boasting an impressive 5,765 public stations. We were the first to introduce an EV policy in 2017 and will soon unveil a clean mobility policy at our upcoming Global Investors Meet. Backed by our progressive policies, world-class infrastructure and a skilled workforce, Karnataka is paving the way for growth in both traditional and EV sectors. Join us at Invest Karnataka 2025 and be a driving force in the future of automotive and EV innovation. From the banks of the holy Ganga, where millions gather in devotion, a spectacle of spirituality, Karnataka has established itself as a leading hub for electronic system design and manufacturing in India, contributing 10% to the nation's electronics output. We are also home to 400 plus MNCs with global R&D centers. With over 100 fabulous chip design houses and 40% national share in electronic design, Karnataka stands as a prominent hub for chip innovation in India. Invest Karnataka 2025 will bring more global players to benefit from the state's strong and tech-enabled ecosystem. I'm Uday Pratap Singh reporting from New Delhi constituency for NewsX. I'm Simran Babbar reporting. Karnataka is the fourth largest automobile producing state in India, contributing 8.5% to the nation's vehicle production. The state also has the highest number of EV charging stations, boasting an impressive 5,765 public stations. We were the first to introduce an EV policy in 2017 and will soon unveil a clean mobility policy at our upcoming Global Investors Meet. Backed by our progressive policies, world-class infrastructure and a skilled workforce, Karnataka is paving the way for growth in both traditional and EV sectors. Join us at Invest Karnataka 2025 and be a driving force in the future of automotive and EV innovation.
This budget has given us a very good allocation of 2,52,000 crore. मिडिल क्लास को तो टैक्स मुक्ति कर दिया. Biggest relief as far as income tax. Karnataka has established itself as the leading hub for electronic system design and manufacturing in India, contributing 10% to the nation's electronics output. We are also home to 400 plus MNCs with global R&D centers. With over 100 fabulous chip design houses and 40% national share in electronic design, Karnataka stands as a prominent hub for chip innovation in India. Invest Karnataka 2025 will bring more global players to benefit from the state's strong and tech-enabled ecosystem. From the banks of the holy Ganga, where millions gather in devotion, a spectacle of spirituality, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਬੱਲਬ ਨੇ ਝਮੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਝਮੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ 3500 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਮਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ I'm Arvind Kejriwal reporting from New Delhi constituency for NewsX. I'm Simran Babbar reporting. ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता खंड। Hello and welcome. You're watching NewsX. I'm Megha Sharma. Joining me on the telecast is Javed Hussain. He's in Okhla Vidhan Sabha. Javed, what's the voter turnout? Are there more people now trickling in as compared to the early hours of the day?
देखिए ओखला विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर जो इस वक्त जो वोट का जो परसेंटेज है, यहां पर दोपहर का समय हो रहा है और यहां पर लोगों की भीड़ काफी बढ़ गई है। देखिए यहां पर लोग काफी तादाद में इस वक्त यहां पर वोट डालने आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लोगों में काफी इस चीज अपने चुनाव को लेकर काफी लोगों में सरगर्मी है और लोग यहां पर इस वक्त ओखला विधानसभा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मेघना की यहां पर तीन जो पार्टी है उनके बीच यहां पर जो टक्कर है, जिसमें बीजेपी के मनीष चौधरी और आम आदमी पार्टी के अमातुल्लाह खान, जो कि इस वर्तमान में भी आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके हैं और इसके अलावा कांग्रेस की अरीबा है। और जो यहाँ पर एमआईएम की जो एंट्री हुई है, एमआईएम की एंट्री के बाद जो है यहाँ के शिफा और रहमान जो दिल्ली एनसीआर और सीएए एनआरसी और सीएए के जो मामला हुआ था, जो प्रोटेस्ट चला था, उसके बाद दिल्ली दंगे में जिनके ऊपर मामला चल रहा है उसको लेकर इस वक्त यहाँ पर वो भी इस कैंडिडेट हैं। लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर यहाँ पर वोट कर रहे हैं। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी सुरक्षा रखी गई है। और ये ओखला ये नूर नगर का इलाका कहलाता है, ओखला विहार का, जहां पर इस वक्त जो है दिल्ली पुलिस और जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो अपने अपने मतदान को करके यहां पर आ रहे हैं। और तमाम जो लोग हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सेंटर है मेघना, जहां पर इस वक्त भारी संख्या में जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और यहां पर वोट डालने आए हैं। क्या आप लोग बताएंगे कि इस बार क्या मुद्दा रहा है आप लोगों का इस बार वोट डालने का? थैंक यू। कोई मुद्दा है वोट डालने का? बहुत सारे। इस बार क्या है आप लोगों का? बहुत सारे, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। जीरो पॉलिटिकल्स पार्टी है जो हमारे मुद्दे पे काम करे, कोई भी नहीं है। तो इस बार कोई खास मुद्दे को लेकर फिर आप लोग अपने जो किसी भी तरफ जो जाएंगे आप लोग? नहीं, प्राइवेट है यार, पर्सनल है। देखिए लोगों के अपने मुद्दे हैं और भी लोगों से। क्या वोट डाल दिया आपने? जी जी। क्या मुद्दा रहा इस बार आप लोगों का? कुछ नहीं, बस शफर रहमान को वोट डाला। नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं पूछ रहे कि किन मुद्दों पर इस वक्त आप लोगों का रुझान है इस बार? एग्जैक्टली मेरे को मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने शफर रहमान को वोट डाला। तो सबके अपने अपने जो है मुद्दे हैं उस पर लोग वोट डाल लें। लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर जो मतदान की अगर हम बात करें तो मेघना आप देख सकती हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस जिस तरीके से एश्योर किया था चुनाव से पहले कि किसी तरीके के कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तत्पर है कि कोई भी किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। जी, यहाँ पे जो ओखला विधानसभा है, यहाँ पे कितने पोलिंग स्टेशंस बने हुए हैं? यहाँ पे इस बारे में भी हमें बताइए, कितनी पुलिस डिप्लॉयमेंट है अप्रॉक्सीमेटली? 2000 से ज्यादा जो दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको डिप्लॉय किया गया है और यहाँ पर 282 से ज्यादा जो पोलिंग स्टेशन है। इस जगह पर यहाँ पर 5 पोलिंग स्टेशन है और ये सर्वोदय कन्या विद्यालय, इसके पास ही एक और स्कूल है। सर आप लोग ने वोट डाल दिया, इस बार क्या मुद्दा है सर आप लोगों का? पार्टी नहीं, मुद्दा क्या मुद्दा रहा है? मुद्दा तो लोकल मुद्दे इश्यूज पे आप लोग? हाँ, इस बार लोकल। क्या लगता है कि जो इश्यूज है उस पे लोग का जनाधार मिलेगा? क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जब आज तक नहीं हुआ तब क्या होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद है। देखिए सबके अपने अपने हैं, लोकल इश्यूज है, मेन डेवलपमेंट है, सफाई है। इसके अलावा जो एमआईएम के जो कैंडिडेट इस बार क्योंकि जामिया से हैं और जामिया का भी एक बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, तो एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस है, तो चार यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है जो आपस में सारे के सारे नेता, सारे कैंडिडेट्स, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, क्या इन सारे नेताओं ने यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रेकी किया है? क्या वो यहाँ पर आके देख कर रहे हैं? क्या ये यहाँ पे जांच कर रहे हैं कि वोटिंग किस तरह चल रही है? मेरा देखिए यहाँ पर जैसे एआईएम के जो कैंडिडेट है शिफा और रहमान, वो उनको कस्टोडियल पेरोल मिला था 3 तारीख यानी 5 दिन का वो यहाँ पर आए थे पुलिस कस्टडी में। उन्होंने भी अपने रोड शो किया, लोगों के बीच अपनी बात रखी। वहीं आम आदमी पार्टी के जो पहले विधायक रह चुके हैं अमातुल्लाह खान, वो भी लोगों के बीच रहे। कांग्रेस से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की बेटी अरीबा खान, जो कि शाहीनबाग वार्ड से काउंसलर भी हैं मौजूदा, वो इस बार कैंडिडेट है। तमाम कुछ लोग हम उनसे जानते हैं क्या इस बार जो आप लोगों के मुद्दा क्या रहा है, किस मुद्दे पे क्या आप लोगों ने वोट डाल दिया? जी, वोट जो सभी डाल के ही आ रहे हैं। क्या आप लोग यूथ का क्या इस बार मुद्दा रहा है?
यूथ का मुद्दा तो यही है, जो जैसे हर जगह देखना आप शाहीन बाग वगैरह जाएंगे, रोडें खुदी हैं, सारी चीजें जाने में दिक्कत होती है, परेशानियां होती है, इन सबसे रिलेटेड चीजें हैं कि जब देखो कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, काम कंप्लीट नहीं होके देता। इस बार 4 कैंडिडेट हैं, एमआईएम की भी एंट्री हुई है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है और बीजेपी है। तो क्या यहाँ पर क्या मुद्दा रहा और किस मुद्दे को लेकर इस बार आप लोग का चुनाव जो मतदान आप लोग कर रहे हैं? मुद्दा तो वैसे मतलब वही है कि वही काम वाम होने का, काम नहीं करा था पिछली बार, तो जो नए आए हैं इस बार तो हमने उन्हीं को दिया है जो नए आए। क्या सारे कैंडिडेट आप लोगों के बीच आए हैं इस बार अपने वादों को लेकर, अपने बातों को लेकर? एक बीजेपी का कैंडिडेट छोड़ के बाकी तो सभी आए, और बाकी वोटिंग भी बहुत स्लो हो रही है इधर सी ब्लॉक। अच्छा, वोटिंग स्लो हो रही है? वोटिंग बहुत स्लो हो रही है, काफी वोटर वापसी भी गए हैं एक ब्लॉक में से, सी ब्लॉक में से। कोई कहने सुनने वाला है ही नहीं कि थोड़ा फास्ट काम करें, वो बहुत स्लो काम कर रहे हैं जो अंदर बैठे हुए। देखिए, आमतौर पर ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो पोलिंग में जो वोटिंग है, वोटिंग कई बार स्लो हो जाता है मशीन के जरिए। जो लोग बली मरान में भी लोग इसकी शिकायत कर रहे थे और मेरे साथ कई यूथ हैं जिन्होंने ये बताया कि सबके अपने अपने मुद्दे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सफाई है और जो सड़कों का काम है उसको लेकर भी लोगों में नाराजगी है। लेकिन अब देखना यह कि सभी तमाम लोग अपने अपने मुद्दों के साथ यहाँ पर वोट डाल रहे हैं और सभी उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर वोट डालना है। सर, आपने वोट डाल दिया क्या? जी, डाल दिया। किन मुद्दों पर इस बार वोट डाला आपने? मुद्दे तो ये है, देखिए वोट डालना हमारा अधिकार है, डाल दिया है, बाकी नेता तो सारे एक से। अच्छा, लेकिन फिर भी आप अपने एक मत से अपने मुद्दे पे डाला आपने? ये है कि दिल्ली की भाई, दिल्ली के हक में जो इस बार जामिया के लिए क्या मुद्दा रहा? क्योंकि इस बार एएमआईएम की भी एंट्री हुई थी, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी भी है। काफी लोग बट गए हैं। मुद्दा रहा है सिंपैथी का, थोड़ा जो ज्यादा चला रहा है वो सिंपैथी का रहा है, और सिंपैथी के अलावा डेवलपमेंट का भी रहा है। तो काफी दोनों तरफ वोट पड़े हैं, एमएम को भी मिला है और देखिए इस बार जो है एआईएम के जो कैंडिडेट है शिफाउर रहमान, उनको भी सिंपैथी के लिए बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 4 कैंडिडेट है, 4 पार्टी है, जिसमें एआईएम ओवैसी की पार्टी है, उसके अलावा कांग्रेस, उसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी। 4 पार्टी यहाँ पे लड़ रही है। अब देखना ये कि कौन जो तमाम जो मतदाता है वो अपने किन किन मुद्दों पर अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सुरक्षा की बात करते हो, सुरक्षा आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से सुरक्षा को यहाँ पे रखा है। जी, ओके, यहाँ पे मुझे एक बात और बताइए आप जावेद, यहाँ पे आपने लोगों से बात की, हमने अगर पिछली इलेक्शंस की बात करें 2020 में अमानतुल्लाह खान भारी मतों से जीते थे, बीजेपी काफी पीछे रही उनसे। अमानतुल्लाह खान की वोटिंग परसेंटेज 66%, बीजेपी 29% और कांग्रेस तो बहुत ही पीछे 2.5% के वोटों से उनको मतदान मिला है, उन्होंने लोगों को वोट किया। क्या लोग दोबारा अमानतुल्लाह खान को, आम आदमी पार्टी को सराहना दे रहे हैं? क्या ये उस पार्टी से खुश हैं? मेघा, देखिए इस बार यहाँ ओखला विधानसभा और मुस्तफाबाद अगर चुनाव के विधानसभा की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पर एएमआईएम की एंट्री हुई है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने सिंपैथी वोट का जो है वो एमआईएम के कैंडिडेट जो कि जामिया के स्टूडेंट भी रह चुके हैं और दिल्ली एनआरसी और सीए और दिल्ली दंगे में वो इस वक्त जेल में बंद है, जिनको कस्टडी पे रोल मिली थी। तो वही दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो पिछले चुनाव 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको 58,000 वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी के जो विधायक अमानतुल्लाह खान जो उस वक्त थे उनको 1,31,000 वोट मिला था और कांग्रेस को चौंकाने वाला जो आंकड़ा है वो 5,001 वोट मिला था। लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर, क्योंकि जो लोग हैं, कुछ लोगों का रुझान हालांकि जो है वो एआईएम की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि एक सिंपैथी वोट है जो यहाँ के लोगों की अपनी सोच है। लेकिन जो सीधा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी जो है, जो अपने मुद्दों के साथ एक बार फिर से यहां पर आई और जो काम को लेकर जो अमानतुल्लाह खान वो लोगों के बीच आए, वहीं दूसरी तरफ शिफाउर रहमान भी लोगों के बीच आए क्योंकि उनको 5 दिन की कस्टडी रोल मिली थी। दूसरी तरफ मनीष चौधरी है जो कि मौजूदा जसोला से, जो कि ओखला विधानसभा में ही पड़ता है, वो बीजेपी के काउंसलर हैं, वो भी लोगों के बीच आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ओखला विधानसभा की अपनी एक अलग कहानी है कि यहां पर जो हिंदू और मुस्लिम जो 2 समुदाय के जो वोटर्स हैं, दोनों वोटर्स को एक दूसरे के कैंडिडेट को दोनों वोट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी एक तरफा किसी भी अकेले सिंगल वोट से यहाँ पर विनिंग हासिल नहीं करता है। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो those are important interesting developments coming in from Okhla Assembly constituency. I also have with me Brian Thomas. He is at the New Delhi Assembly constituency. Brian,
voter turnout is the number one concern. You know, up until now, it's a little more than a 33% overall voter turnout. How is New Delhi constituency voting? Well, Megha, you know, definitely the voter turnout has been low in terms of the election battle that has happened. We are at the New Delhi, you know, Vidhan Sabha constituency, and also we'll be talking to few. Ma'am, you've come to vote. What are the issues that you feel should be addressed that has not been addressed? Crime. Crime. So according to you, crime is one of the issues there. And ma'am, according to you, what are the issues that you feel should be addressed? Is there any issues as such that you feel? You know, you see there are less people also here who are hesitant to speak also, Megha. This is a VIP seat also at the New Delhi Vidhan Sabha, but yes, the voter turnout has been, you know, comparatively less also. We've also had the opportunity to speak to Arvind Kejriwal also to urge the voters to come out and vote, and he even said to NewsX exclusively that yes, there should be a large number of voters also that should come out and vote as well, and here as well. Yes, Megha. Okay, stay on with me, Brian. Let's go back to the Okhla constituency. Javed is still on the telecast with me. Javed, give us details. People on the ground. It's interesting to know that the AIMIM has made an entry this time around. You said that this could be, you know, a problem that could be faced by the Aam Aadmi Party. But you spoke about the people. People have spoken about what their issues are. Some of them have been hesitant in airing their views, airing their problems, issues on the basis of which they've cast their vote. My most important question. Can Okhla Vidhan Sabha constituency finally be able to overcome the lag that it has been facing in terms of the voter turnout in the first half of the day? है ना, यहाँ से शुरू करता है, ये दिल्ली दिखेगी, फिर हम वहाँ जाएंगे। का इस वक्त है जो ये चार जो लीडर्स है, जो चार पार्टियां लड़ रही हैं, सभी के खाते में यहाँ पे वोट जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मौजूदा यहाँ पर विधायक अमातुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के, जिनकी विनिंग 1,31,000 वोट से हुई थी, जिनको टोटल 1,31,000 वोट मिला था, उन्हीं के मुकाबले सेकंड नंबर पे बीजेपी के उम्मीदवार जो थे ब्रह्म सिंह, जो पिछली बार के उम्मीदवार ब्रह्म सिंह थे, लेकिन इस बार मनीष चौधरी है, जिसे 58,000 वोट उन्हें मिला था। और कांग्रेस के जो कई बार के जो विधायक थे, यहाँ के विधायक रह चुके पूर्व परवेज हाशमी, वो इस बार पिछले बार विधायक उम्मीदवार थे, उनको 5,001 वोट मिला था। लेकिन इसके बाद जो इस बार जो है मौजूदा पूर्व जो एमएलए आसिफ मोहम्मद खान, उनकी बेटी अरीबा, जो कि इस वक्त काउंसलर भी है और इस वक्त कांग्रेस की उम्मीदवार है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो AIMM यानी कि ओवैसी की पार्टी की अगर बात करें तो शिफाउर रहमान इस बार चौथे उम्मीदवार हैं। शिफाउर रहमान के आने से कहीं ना कहीं ओखला के वोट है, उसके वोट के परसेंटेज में कुछ फर्क पड़ा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अगर हम देर रात की बात करें तो पॉलिटिकल स्टंट देखने को मिला। अमातुल्लाह खान की बात करें तो उन्होंने AIM पे आरोप लगाया, वहीं दूसरी तरफ BJP पे आरोप लगाया गया पैसे को लेकर। तो ऐसे में अब जो यहाँ के मतदाता है, उनकी अपनी क्या सोच है, क्या सिंपैथी वोट वाकई यहाँ पर गेन कर रही है, या फिर डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, वो यहाँ पर सिंपैथी के ऊपर भारी पड़ने वाली है, या फिर डबल इंजन की सरकार का वादा करने वाली BJP की सरकार की बात करें तो। और उसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें कि राहुल गांधी भी ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी पे यहाँ पर आए थे, यहाँ से लोगों को अपनी बात रखी थी। तो फिलहाल ये कह पाना भी मुश्किल है कि I'm being told that Manohar Kesari is also on the telecast with me. Now Manohar is in Moti Nagar. Manohar, what's the update? Were there lesser number of people during the day, during the early hours that had come out to vote? क्या इस समय हम देख रहे हैं कि ज्यादा लोग ग्राउंड पे आ रहे हैं, पोलिंग स्टेशंस पहुंच रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, दिल्ली वासियों में जोश बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और अभी हम मौजूद हैं मोती नगर विधानसभा में, और मोती नगर विधानसभा का एक कर्मपुरा इलाका है। और यहाँ पर आप दोपहर में अगर आप देखेंगे तो सीधे आप देखिए लोगों की भीड़ साफ तौर से दिख रही है। लोग जो सेल्फी पॉइंट बना रखा है चुनाव आयोग की ओर से, लोग सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं ताकि वो पोस्ट कर सके और लोगों को बता सके कि आप लोग अगर घर में बैठे हैं तो आप भी वोट कास्ट करें। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। आपने वोट डाल दिया है? जी। एक बार दिखाएंगे? जी जी। आपसे हम ये नहीं पूछ रहे हैं आपने किसको दिया, लेकिन क्या मुद्दे इस बार आपके लिए रहे? आप जब वोट डालने के लिए गए तो उन मुद्दों को सोचे होंगे। जी बिल्कुल,
इस समय तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार ऐसी आए जो इस समय जो महंगाई है आज के साथ में, और जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं उस पर मेरा सबसे ज़्यादा वो रहा सबसे, तो उसी आधार पर मैंने वोटिंग किया है। अब देखिए क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि कई लोग यहाँ पर और आ चुके हैं, क्योंकि लोग अलग अलग अपने अपने इलाकों को, एक बार रुक जाइएगा आप लोगों ने वोट डाल दिया है, एक बार इंक दिखा देंगे। ये आप देखिए सभी लोगों ने, दोपहर का वक्त है, लोग आ रहे हैं। आप किस इलाके में रहते हैं? हम इसी इलाके में रहते हैं, न्यू मोती नगर में। आप जब वोट डालने के लिए गए तो क्या आपने सोचा? हम तो घर से सोच के आए थे कि किस पार्टी को वोट देना है, जो सबके लिए खड़ी है, जिसने सब काम किया है, उसी को दिया हमने वोट आज। हम ये नहीं कहेंगे कि आपने किसको वोट दिया, हम पूछेंगे भी नहीं, हमारा राइट नहीं है, लेकिन आप कौन कौन से मुद्दे को लेकर के वोट कास्ट किया? हम मुद्दा ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर हो जाए, और जो महंगाई है वो थोड़ी कम हो जाए, और वैसी पार्टी आए जो सबके लिए काम करे। आप क्या इशू रहा? इशू सर इधर सबसे बड़ा इशू पानी का ही है। पानी का, अगर यहाँ बारिश हो जाएगी तो यहीं झील बन जाएगी, हमारे एरिया में यहीं बन जाएगी जहाँ आप खड़े हो। यहाँ कोई निकासी नहीं है पानी की, पानी का निकासी नहीं है। और लोगों से बात करेंगे। आप लोगों ने वोट डाल दिया? हाँ जी, डाल दिया। क्या मुद्दे हैं एक महिला के लिए, क्योंकि चुनाव के पहले हम जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो लोग कह रहे थे महिलाओं के 2500, 2100 फ्री बिजली पानी, ये सारे मुद्दे रहे आप लोग के लिए? हमारे लिए ये मेन नहीं है, हमारे लिए मोहल्ले की सफाई, विकास वो जरूरी है। जरूरी है। और गंदा पानी, और गंदा पानी, उसके लिए गंदा पानी जो है ना, सबसे बड़ा इशू ये है। जो गंदा पानी आ रहा है उसको सबसे पहले ठीक किया जाए, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। तो आपने बदलाव के लिए डाला है? नेचुरली बदलाव के लिए डाला ही है, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा था। तो जिस हम और लोगों से बात करते हैं। आप लोगों ने वोट डाल दिया? हाँ जी, हमने वोट डाल दिया। एक महिला वोटर के नाते, क्योंकि कई लोग महिलाओं को लुभाने के लिए लगे हुए थे, कई वादे भी किए, तो क्या इशू आपका रहा? कोई वादे वैसे तो पूरे नहीं होते, हम वैसे ही कहें, हमें तो अपनी गली की सफाई और मेंटेनेंस वगैरह चाहिए, जो हमारी प्रॉपर नहीं हो पाती। करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वोट तो डालना ही है, ये तो ज़रूरी काम है वोट। अब भ्रष्टाचार, फ्रीबीज, ये सब सारा इशू रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे हमारे यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। वोट डालना बहुत ज़रूरी है, सबको वोट डालना चाहिए। बिल्कुल, सभी लोगों को वोट कास्ट करना चाहिए। और NewsX लगातार दिल्ली के वोटर्स को, 1,55,00,000 वोटर्स को लगातार अपील कर रहा है कि वो आए, बूथ पर पहुंचे और अपना मतदान जरूर करें। आप लोग रुक जाइए। आप लोगों ने वोट डाला है? वोट डाल दिया आप लोगों ने? डाल दिया जी। एक बार इंक दिखाएंगे आप। वीर जी, आपने वोट डाला है, क्या सोच करके वोट डाला है? काम को वोट डाला है, जिसने काम किया उसको वोट डाला है। काम के आधार पर, विकास के आधार पर? हाँ जी, काम के आधार पे, विकास के आधार पे वोट डाला हूँ। आपने किस आधार पे वोट डाला है? यही काम जो ठीक कर रहे हैं उनके आधार पे ही डाला है मेरा वोट। हाँ जी। और क्या होना चाहिए आपके लिए? यही काम अच्छा होना चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए। किस तरह के प्रोग्रेस? जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको थोड़ी सुविधाएं मिल सके, उनका काम अच्छा हो सके, उनको बेनिफिट मिल सके। बिल्कुल, आप देखेंगे सभी वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, सभी लोग। आप जाइए, आपने वोट डाल दिया है? आपने क्या वो सोच करके वोट डाला है? क्या मुद्दे आपके लिए है इस बार? क्या मुद्दे बताऊं? हाँ, आप बताएंगे। आपने वोट डाला होगा ना, हाँ। कि हमें विधायक को बदलना है या हमें अपने एरिया का विकास करवाना है। सबसे पहली बात ये बताओ, कोई भी बाप ये चाहता है सहूलत दे बच्चा, वही बाप ही एक तरीके का जो संभालेगा, सहूलत नहीं देगा तो बेकार है। और बिल्कुल जो जनता के लिए you've spoken to a lot of people. It gives us an indication of what is it on the basis of which that the people of Moti Nagar constituency are casting their vote. Stay tuned on NewsX. In just a short while, we'll come back and provide you an update on what's happening on the ground, how many people have now come out, whether they are in large numbers or still the voter turnout continues to be less than expected. Stay tuned on NewsX. Karnataka is India's ultimate startup destination with over 14,000 registered startups and 45 unicorns. Bangalore, proudly known as the nation's startup capital, ranks third globally in the number of startups, cementing its place
as a powerhouse of innovation. The city also has 144 incubators and accelerators and 1500 plus VC funds. Karnataka's success is further driven by strong industry, government collaboration, a bold entrepreneurial spirit, and cutting-edge R&D hubs of global giants. As we approach our global investors meet, I eagerly look forward to recognizing and rewarding the startups shortlisted through Venturize, our international startup challenge. Venturize is set to boost startup ecosystem and drive innovation and entrepreneurship across the country. Join us as we accelerate growth and shape the future through Invest Karnataka 25. अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV, इंडिया न्यूज और NewsX का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आप पिछली बार 8 घंटे वाली बिजली चो कोई कट लग्या नहीं लग्या। कट दी गल तां छड्डो, बल्ब ने चमक्का भी नहीं मारना, चमक्का। सानू बिल्कुल भी बिल नहीं आंदा। असी बहुत खुश हाँ कि भगवंत मान सरकार ने साडे लिए ये उपराला कीता है। जो साडे CM भगवंत मान जी ने उन्होंने हरेक वर्ग नूं देखदे होए सारे जिहड़े वादे है वो पूरे करदे होए साडा बिजली दा बिल जिहड़ा हैगा है वो जीरो आया है। मैं एक दिहाड़ीदार बंदा हैगा ते ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी आंदा नहीं हैगा जद आप भगवंत मान की सरकार बनी है जी। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था, माँ 3500 रुपया, कहना ऐसी जीरो आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। केजरीवाल जी जरा अपने झूठ के जाल में थोड़े लपेट में आ गए। Karnataka is India's ultimate startup destination with over 14,000 registered startups and 45 unicorns. Bangalore, proudly known as the nation's startup capital, ranks 3rd globally in the number of startups, cementing its place as a powerhouse of innovation. The city also has 144 incubators and accelerators and 1500 plus VC funds. Karnataka's success is further driven by strong industry, government collaboration, a bold entrepreneurial spirit, and cutting-edge R&D hubs of global giants. As we approach our global investors meet, I eagerly look forward to recognizing and rewarding the startups shortlisted through Venturize, our international startup challenge. Venturize is set to boost startup ecosystem and drive innovation and entrepreneurship across the country. Join us as we accelerate growth and shape the future through Invest Karnataka 25. From the banks of the holy Ganga, where millions gather in devotion, the spectacle of spirituality once every 12 years, we delve into the heart of the Mahakumbh Mela. Hi, I am Arzu Seth reporting from Kumbh in Prayagraj, the world's largest public gathering and collective act of faith. Watch the rituals, the celebrations, the profound devotion. Real-time updates. Hello and welcome. You're watching our rolling coverage of the Delhi elections. Delhi has witnessed 33.31% voter turnout till 1 p.m. as voting, of course, now remains rather bleak. In the 2020 assembly polls, Delhi had recorded a voter turnout of 62.59%, while only 56% of the voters participated in the 2024 Lok Sabha elections.
The bigwigs have now voted in Delhi, including Arvind Kejriwal, who brought his parents in a wheelchair. Rahul Gandhi has voted at Nirman Bhavan. JP Nadda has voted as well. But before that, we quickly have a look at the voter turnout till 1 p.m. Over to my colleague Pia Man. Indeed, let's take a look at the statistics that have been released by the ECI. Up until now, 33.31% people in the national capital have cast their votes. Let's take a look at the constituencies. In New Delhi, 30.86% of the people have come out and inked their finger. In Kalkaji, the number stands at 28.75%. In Jangpura, 31.24% people have cast their mandate. Let's also take a look at Malviya Nagar, where the number stands at 29.14% till 1 o'clock. In Patparganj, the number stands at 33.73%. Let's also take a look at the statistic from Rohini, which has been recorded at 33.56% till 1 o'clock. In Rajouri Garden, 30.67% of the population has inked their finger. In Greater Kailash, 29.16% of the electorate has cast their mandate. In Shakur Basti constituency, 31.01% of the people have also cast their vote. In Okla, the voter turnout stands at 31.20 till 1 o'clock. In Balli Maran, the voter turnout stands at 31.25%. Back to you, Devika. All right, Pia, thank you so much for giving us that update. We now quickly go across to my colleagues who join us from across the national capital with the voters' pulse. Let me quickly firstly go across to Manohar Kesri, my colleague, joining me from the Moti Nagar area. We also have with us Aditya Kumar, who's joining us from Shakur Basti, and Mendi Garg, who's standing by in Kalkaji. But let me begin with Manohar. Manohar, क्या हाल है अभी दिल्ली का? It's already 2 o'clock and the voter turnout does not look very positive compared to last time around. There are just about 4 hours now remaining till the voting officially closes in the national capital. What's the situation like where you are? Let's also speak to some people. मनोहर, बात करते हैं लोगों से, समझते हैं कि जो लोग बाहर आए हैं वोट करने के लिए वो क्यों आए हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं गवर्नमेंट से। देखिए, बिल्कुल मैं मोती नगर विधानसभा के कर्मपुरा इलाके में हूं और यहां पर लगातार वोटर आ रहे हैं। अगर हम इस सीट की बात करें, अब तक 1 बजे तक करीब 29.5% वोटिंग हो गई है। आप देखिए यहां पर लोग जो है सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग घरों से बाहर निकले इसके लिए इनसे हम बात करते हैं। आप लोगों ने वोट डाल दिया है? एक बार आप दिखाएंगे, आप लोगों ने वोट डाला है, क्या सोच करके वोट डाला है? सर, डेवलप होगा हमारा एरिया, जो हमें जो प्रॉब्लम हो रही है उस सब के लिए होगा, कुछ करेंगे तो सही। किस तरह के दिखते होंगे? सर, यहाँ पार्क साफ नहीं है, चोरियाँ इतनी होती हैं, पानी की प्रॉब्लम है। अब वोट दिया वो करेंगे ना हमारी, इसलिए जो भी सीट पे यहाँ पे आए वो अब फर्स्ट नंबर यहाँ पे पानी की दिक्कत है बड़ी, ठीक है, चोरी है, और सबसे बड़ी चीज़ है पशुपालन। जो गाय के लिए कोई भी जगह नहीं है, यहाँ पे जगह बनी थी पीछे तो फिर वो हटी, सबसे बढ़िया मेन बने अब पशुपालन के लिए। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल, पशुपालन के लिए पहले, हमारे लिए बाद में। जैसे गाय हैं, कुत्ते हैं, कुछ भी है, उनके लिए कुछ बने पहले। बिल्कुल, यहाँ के वोटर्स अपनी समस्याओं को लेकर के वो वोट कास्ट किया है और लोग आ रहे हैं। आप देखिए कि लगातार दोपहर में भी लोग आने शुरू हो गए। आप लोगों ने वोट डाल दिया है? रुक जाइए। हाँ जी, वोट डाल दिया आप लोगों ने? हाँ जी। क्या इशू है? मैं ये नहीं पूछ रहे हैं आपसे कि आपने किसको वोट डाला, ये आपका राइट है। पानी की समस्या है, पार्क की समस्या है, एमसीडी के अंदर जो है नालों की समस्या है, सफाई है ही नहीं बिल्कुल यहाँ पर। पार्क है लेकिन सफाई नहीं होती, इतना कूड़ा है कि जाके हम वॉक भी नहीं कर सकते। सामने पार्क है लेकिन उतर नहीं सकते, मेन इशू है। क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों ने अलग अलग घोषणाएं की, चाहे फ्रीबीज की बात हो या महिला सम्मान की बात हो या पैसे देने की बात हो कि 2100-2500, ये सारे इश्यूज हैं। बिल्कुल है। फ्री किस बात का? लोग कमाएं और खाएं, कमाने के लिए आए हुए हैं, कमाएंगे खाएंगे। किस बात की? जब आप कहते हो कि आदमी और औरत बराबर बराबर हैं तो उसके अंदर फ्री क्यों दे रहे हो? बस सर्विस फ्री क्यों है? किस लिए है? मेट्रो फ्री क्यों है? किस लिए है? वो क्या लेडीज जो है वर्किंग नहीं है? आप क्या कहेंगे? सेम यही इशू है, ऐसा नहीं होना चाहिए डिफरेंस। वैसे सब इक्वल हैं तो इक्वल ही होना चाहिए। जो काम पैसे हैं काम में लगाएं, ब्लॉक साफ करें, इतना जगह जगह कूड़ा है, पार्क साफ नहीं है, वॉक नहीं हम करने उतर सकते, हमें इतनी दूर जाना पड़ता है अगर हमें जाना है तो
तो नहीं है ये सब। तो बिल्कुल जो जनरल समस्याएं हैं, चाहे पानी की बात हो या पार्क की बात हो, क्योंकि ये आप देखिए लोकल समस्याएं, हालांकि एक विधायक का काम नहीं होता है, कई साफ सफाई एमसीडी का काम होता है, तो ऐसे में कई लोग हैं, इनसे हम और बात करते हैं। आप लोगों ने वोट डाल दिया? हाँ जी सर। क्या सोच करके वोट डाला है आपने? अच्छी सरकार आएगी सर, इसीलिए वोट डाला है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके लिए? देखो सर, वो तो सरकार आने के बाद पता लगेगी। काम अच्छा हो, बस बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना स्कूल वगैरह सब अच्छे। आप लोग रुक जाइए, आप लोगों ने वोट डाला कि नहीं? डाल दिया है जी। क्या सोच करके डाला है, क्या मुद्दे हैं आपके लिए? डेवलपमेंट ही है मेन, तो दिल्ली का विकास होना चाहिए और बाकी जो है लेडीज़ के लिए जो है फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए और उनकी सुरक्षा जो है वो तो प्रायोरिटी तो है ही भाई। आप बिजनेसमैन हैं? मैं तो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ जी। तो एक रिटायर्ड कर्मचारी क्या चाहता है? रिटायर्ड कर्मचारी तो उसको पेंशन जो है वो जैसे भी, अब ये 8 पे कमीशन आ रहा है, उसका जल्दी से जल्दी यानी कि जो भी उसका डिसीजन हो वो मिले, उसकी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए जो भी गवर्नमेंट कर सकती है वो हो। मतलब ये सब सारे मुद्दे हैं आपके लिए? मुद्दे तो हैं ही हैं ये। आपके लिए क्या मुद्दा है? सर मुद्दे यही है जो मेरे फादर साहब ने भी बताया है कि अभी जैसे हम बिजनेसमैन हैं, ठीक है ना, तो हम क्या है कि हमारे एरिया में एक तो हमारे साथ यहाँ गाड़ी चोरी बहुत होती है। गवर्नमेंट से हमारी यही है कि यहाँ पे हमारी पूरी सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए जाए। गाड़ी हमारे यहाँ बहुत चोरी होती है, आए दिन हमारे यहाँ पे डीलर्स हैं, हम सारे परेशान रहते हैं यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि हमारे सबसे सुरक्षा पहले बढ़ाई जाए यहाँ पे। तो ये हमारे मुद्दे हैं कुछ गवर्नमेंट से लेकर। जो बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल सर, बदलाव तो आना चाहिए। जिस हिसाब से आज का हमारा यहाँ पे फॉल है, हमारे यहाँ पे बदलाव तो सर आना ही चाहिए। बिल्कुल, लोग विकास के नाम पे, बदलाव के नाम पर ये लोग वोट डाल रहे हैं जी। Okay, all right, Manohar, thank you so much for joining us. Stay on with us. We also have my colleague Mehendi Garg joining me from Kalkaji. Mehendi, over to you. What is the situation like in Kalkaji? It's a very crucial constituency. From where incumbent Chief Minister Atishi is contesting the elections. A lot of female, voters are here who have casted their vote. We'll try to have an understanding with them that what all issues they had in mind before, casting their vote. माता जी, आपने अपना वोट डाला? हाँ, वोट डाल रही हूँ। क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में वोट डालने से पहले? कालकाजी में क्या सबसे बड़े इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं सबसे ज्यादा? ये तो हमें जानकारी ना है। क्या आपको लगता फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब चीजें मिल रहा है आपको, या फिर आगे आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं? ये उम्मीद है मिलना चाहिए फ्री। हाँ, सब कुछ मिलना चाहिए। तो लगातार महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाओं का ऐलान किया गया हर एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, तो आप लोग क्या किस चीज के लिए वोट डाल रहे हैं आज? हम लोगों को सुविधाएं मिले इसी वजह से डाल रहे हैं वोट। बस यही है कि थोड़ा परेशानी की, बस वाले रोकते नहीं है और महिला को देखते तो चला देते हैं, बस रुकते नहीं है। हाँ। So yes, Mega, people are voting on the basis of the local issues that are here. So a lot of people are coming out of the voting centers as well. आपने अपना वोट कास्ट किया? हाँ जी। आप यंग वोटर हैं दिल्ली के, कालका जी के, तो क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में वोट डालने से पहले? क्या चाहते हैं कि आगे आने वाले 5 साल में होने चाहिए? आगे आने वाले 5 साल में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि 10 साल में काफ़ी कुछ काम हुए नहीं है जो अब होंगे, तो इसलिए हमने परिवर्तन की तरफ। लेकिन क्या काम है वो? यहाँ पर सबसे बड़े मुद्दे क्या है, क्या दिक्कतें आती हैं इस विधानसभा? बड़ी समस्या इस विधानसभा में नाली की है जी। नाली का पुनर्विकास करवाना चाहिए सबसे पहले, जो भी जीते। और बारिश में यहाँ पानी भर जाता है और कभी कभी पानी भी गंदा आ जाता है। बस सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ नाली का है। So Mega, yes, we heard that sanitation and not proper drainage are also the issues that people have in their minds right now. मैम, आपने अपना वोट डाला? Yes, मैम। क्या मुद्दे हैं दिमाग में वोट डालने से पहले? क्या मुद्दे रहे यहाँ पर कालका जी को लेकर? मैम, यहाँ पे ये होना चाहिए कि ऐसे मैं सच बताऊं तो मैं हर बारी कमल को देती हूँ। आप ये बताइए कि मुद्दे क्या है यहाँ के, क्या समस्याएं आपको होती हैं यहाँ पर? मैम, हम तो ऐसे झुग्गीरिया में रहते हैं, तो हमें तो मतलब यही सारी चीजें अच्छे लगे कि जो मतलब झाड़ू वाला ने भी हम लोगों के लिए करा, तो जो आपके लिए विकास का काम करे। सो येस, पीपल विल वोट ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट दैट द पॉलिटिकल पार्टी विल डू। यू कैन सी दैट Mega, less voter turnout has been observed in the national capital, because till 1 PM 30.3331% have been
30.31% have been observed right now, but yes, still people are coming, and it's 2 p.m. already, but a lot of people are coming in this particular polling booth that is in the Kalkaji right now, and you know the turning out is expected to increase a bit more, but yes, the voter turnout is less right now as compared to the last assembly polls. Yes, Devika. Okay, Mehendi, thank you so much for joining us. I also have with me my colleague Aditya Kumar joining us from Shakur Basti. Aditya, take our viewers through what's happening where you're standing. जी मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ ये जो व्यवस्था की गई है, क्योंकि आने वाले जो लोग हैं उनको बहुत पहले ही 200-300 मीटर दूरी पे ही उनको रोका जा रहा है, इसलिए ये इस तरह की व्यवस्था की गई है जिसमें जो बूढ़े लोग हैं या जिनको चलने फिरने में दिक्कत हुई, जैसे आंटी जी आई हैं, तो उनका एक बात तो कर लीजिए, क्या क्या अरे भाई क्या प्लान है, कैसे वोट करेंगे, क्या सोचा है दिमाग में? नहीं, दिमाग में सोचा वो बताते थोड़ा ही है। कोई मुद्दा तो होगा, कोई मुद्दा तो नहीं, मुद्दे तो जो आम रोज लोग बता रहे हैं मुद्दे वही हैं, और जो अपना वोट डालने का जो है वो तो किसी को भी नहीं बताना चाहिए ना। वोट मत बताइए किसी को, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। यही मैं पूछने वाला था कि कहीं घर से किसी ने कहा तो नहीं है कि किसको? नहीं, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड कभी नहीं पूछते, और मेरा मन करेगा वहीं डालूंगी। ये एक महिला की जो इच्छा शक्ति है वो बता रहा है, और भी लोग आप देखेंगे इधर जो पूरा एरिया है, पूरा ये एक स्कूल है जो जिसको सेंटर बनाया गया है, और वहाँ पे लगातार जो है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। जैसे शुरुआत में ही दर्शकों को हमने बताया कि क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? राजेश कुमारी। तो मतदान दे दिया? हाँ, दे दिया। कैसी व्यवस्था है अंदर? ठीक है। ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था ठीक है? बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छी। क्या मुद्दा रहा इस बार, क्या मन में प्लान करके आई थी, क्या सोच के आई थी, किसको वोट देंगे? मतलब मुद्दा, पार्टी का नाम मत बताइएगा, लेकिन मुद्दा क्या सोच के आई थी? मुझे तो देन न दिया, वो बहू ने डलवा दिया। अरे बहू ने डलवा दिया, ये तो आप अपने मन से दिया कि बहू ने अपने? मैंने नहीं डाला, उन्होंने कह दी तुम्हें दबा दो, उन्होंने दबाया। अच्छा, लेकिन बताया आपने जो किसको वोट देना है? मैंने कुछ ना बताया भैया। अच्छा चलिए ठीक है, या वोट दे दिया? दे दिया। क्या नाम है आपका? एसके त्यागी। कहाँ के रहने वाले हैं? सरस्वती विहार। मतलब दिल्ली के ही रहने वाले हैं, है ना? सरस्वती विहार। बिहार। तो इस बार क्या मतलब क्या आपको करा, जैसे कि अभी वो अब 8 तारीख को पता लग जाएगा ना सारा। मुद्दा तो देख लिया। आपका क्या नाम है? विनीत नागपाल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सरस्वती विहार। ठीक है, तो आप तो यूथ हैं, युवा कह सकते हैं, युवा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। तो युवा क्या इस बार आप लोगों के जो ग्रुप के लोग क्या विषय उनका? चेंज चाहता है। चेंज चाहिए। चेंज चाहिए। अच्छा, चेंज, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, बदलाव। 10-15 साल से थक चुके हैं, इनकम्बेंसी आ चुकी है। बाकी जय श्री राम। आप अभी वोट देने जा रही हैं? हाँ जी। क्या कुछ महिलाओं के लिए इतने वादे किए गए हैं, उन सब पे लालच आया है कुछ? लालच आएगा तो पता चलेगा ना, ऐसे कैसे पता चलेगा हमको? ये मतलब मतदाता बहुत चालाक हो गया है, अब जो अंदाजा नहीं लगने देता है किसको वोट दे रहे हैं ना। ये वोट तो हमारे हम कट्टर। अच्छा, कट्टर है। कट्टर है। समझ गए किसको वोट? मोदी 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 मोदी। आप साथ में हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आप कौन रिश्तेदार लगती हैं? मेरी मदर इन लॉ है। तो बताया है कि क्या किसको वोट देना है कि अपने मर्जी से? बीजेपी जी, बीजेपी। अरे तो आप देख रहे हैं ये किस तरीके से आप वोट देने जा रही हैं। आंटी जी आप वोट देने जा रही है ना, बात कर लेते 2 मिनट ना। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाँ? सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी वोट देने जा, ठीक से वोट दे रही है ना, किसी ने बोला तो नहीं है ना? मेरे से बोला नहीं जा रहा, मैंने सुना कम है भैया। कोई बात नहीं, कोई बच्चे बात बोले नहीं, चलो ठीक है। दादी चलिए अच्छे से वोट दीजिए, ठीक है। वोट देकर आइएगा तो फोटो खिंचवाएंगे आपके साथ में, ठीक है? आप साथ में आए। तो ये है जो आप आम जो मतदाता है वो देख रहे हैं कि बहुत ही स्पष्ट है उनके मन में कि क्या है, किनको वोट देना है, किस मुद्दे पे वोट देना है। वो पूरी इनकी जो मानसिकता है वो साफ है, किसी के दबाव में नहीं है। ये दिल्ली की जनता है, और जैसे लोगों ने कहा कि हम बदलाव चाह रहे हैं, किसी का कुछ अपनी डिमांड से, कुछ महिलाओं के लेकर के डिमांड है। आप वोट दे दिए? अच्छा, आपने दबाया है, दिखाइए कुछ। अरे वाह, तो आपकी उम्र भी नहीं हुई, आपने कैसे वोट दिया? साथ चली गई थी। अच्छा, मतलब आपने बताया वोट, आपने बटन आपने दबाया? हाँ, मैंने झाड़ू का ही दबाया है। अरे झाड़ू पे दबाया है, और क्या पढ़ाई वढ़ाई स्कूल में कैसी व्यवस्था है? स्कूल जाती हैं आप? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 6 क्लास में। कैसी व्यवस्था है स्कूल में? अच्छी है, पूरा बड़ा खुला ग्राउंड है। खुला ग्राउंड है, तो ग्राउंड में पढ़ती है कि क्लास में पढ़ती हैं? क्लास में। क्लास भी अच्छी है बहुत। ठीक है। आप आंटी जी क्या नाम है आपका? उर्मिल गर्ग। उर्मिल गर्ग। तो मतदान कर दिया? हाँ जी। किसी के दबाव में दिया है कि अपनी मर्जी से दिया? अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से दिया है।
जो पैसा महिलाओं के देने की बात है उसके लालच में तो नहीं दिया ना? नहीं, अपनी मर्जी से दिया। हाँ जी। आप रिश्तेदार हैं इनकी? मैं इनकी देवरानी हूँ। देवरानी है। मताधिकार हमारा अपना अधिकार है, किसी के दबाव से देने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। और सरकार बनेगी तभी तो देश चलेगा, बिना सरकार के कैसे देश चलेगा। ये कितने दूर से आई हैं, कहाँ रहती हैं आप? मैं पीतमपुरा ही रहती हूँ। पीतमपुरा ही रहती हैं। हाँ जी, पुंडरिक विहार अपार्टमेंट। पूरी फैमिली आई हैं आप? हाँ जी, पूरी फैमिली आई है। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो पूरे परिवार के साथ में, और एक आज छुट्टी भी इन लोगों की थी तो मतदान के बाद में और भी जो काम है उनका और वो भी करने की कोशिश में रहते हैं। तो ये है, अभी 31% के आसपास में वोट इस सेंटर में पड़ा था। लोगों का कहना है कि अभी क्योंकि ठंड का महीना था तो धीरे धीरे लोग निकल रहे। दिन के समय में, सुबह के समय में यहाँ पर भीड़ कम थी, लेकिन अभी जो है लगातार जो है भीड़ बढ़ रही है। बात करेंगे आप ना? प्रकाश जी है ना, क्या नाम है? इंडियन सुरेंद्र अग्रवाल जी। सुरेंद्र जी, किस वोट दे दिया आपने? दे दिया। कैसी व्यवस्था लगी? आइए आप भी। अच्छी है व्यवस्था, बढ़िया है। अच्छा व्यवस्था ठीक है, बहुत बढ़िया। किस तरीके से कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं आई, 5 मिनट में वोट डल गई। 5 मिनट में वोट डल गई। पूरा पूरा आप समय बच गया पूरा। कोई दिक्कत। अब क्या प्लान दिन का पूरा? अब दिन में पिक्चर देखेंगे। छुट्टी है और छुट्टी है, वोट साथ हो गई और लोगों की वोट डलवा दी। जितनों अगल बगल के जो लोग थे सबकी वोट डलवा दी। किसी को जबरदस्ती तो नहीं डलवाया ना अपनी मर्जी का? जबरदस्ती कोई किसी के कहने से डालता है? हाँ, ये भी बात सही कह रहे हैं। कौन किसके कहने से डालता, बताओ आप? जबरदस्ती आप इस बात करेंगे ना? क्या नाम है आपका? संजना गुप्ता। आपने मतदान कर दिया? हाँ। आप वाइफ है। इन्होंने जबरन तो कुछ नहीं करवाया ना? नहीं, अपनी मर्जी है वोट तो। अपनी मर्जी से वोट। ये महिलाएं लेकिन ये जागरूक हुई हैं कि अपनी मर्जी से हम वोट देंगे। मर्जी है, दे ना दे, मैं तो आ नहीं दी, मैं तो जबरदस्ती आ गई, फिर मैं चल दे ही आती हूँ वोट तो। दिवाने के लिए लेके आए हैं जबरदस्ती आप? नहीं, जबरदस्ती मैंने कहा चल आज दे ही आती हूँ, मैंने मना कर दी, छुट्टी एंजॉय करो। बहुत अच्छा क्या वोट दे दिया आपने, ठीक है। वोट, एक वोट बहुत कीमती होता है, ठीक है। आपसे बात करेंगे जरा। तो क्या नाम है आपका? संजय नाम है। अरे उनका भी नाम संजय था। संजय। 3 लोग मुझे मिल चुके अभी इस लाइन में संजय नाम के। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही। ठीक है। तो कैसी व्यवस्था अंदर है? सुरक्षा व्यवस्था ठीक है? अच्छी व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं। ईवीएम को कोई दिल की बीमारी तो नहीं हो रही है ना? अभी तो दिल ठीक है। दिल ठीक है, कमजोर हो जाए पता नहीं। शाम तक होते हो सकता है। अभी तक तो ठीक है, शाम को 6 बजे कमजोर हो जाएगा ना। आप साथ में हैं? मीरा रानी। आप मतदान कर दिया? बिल्कुल। महिलाओं के लिए इतना कुछ कहा गया, ऐसे यमुना के ऊपर बात करना बेहद जरूरी है। यमुना को भी माँ कहा जाता है और स्त्री आप भी हैं, तो यमुना को लेकर के क्या सोचा? यमुना एक मुद्दा रहा है आप लोग चुनाव के समय? साफ होनी चाहिए यमुना, बस और तो क्या है। लोग जागरूक नहीं है, लोग साथ नहीं देना चाहते, कूड़ा करकट वहाँ फेंकते हैं, तो नहीं फेंकना चाहिए। लोगों को भी तो देखना चाहिए कि अगर ये एक धार्मिक चीज है तो इसको बढ़ा के रखें। ये अच्छी बात कही कि हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है, वो जिम्मेदारी जो है पूरी की जानी चाहिए। आप बात करेंगे आंटी, जाइए। तो क्या नाम है आपका? सुमन गर्ग। सुमन गर्ग, मतदान कर दिया? हाँ जी। देखिए, संजय नाम के भी 3 लोग मुझे, सुमन नाम के भी 2 लोग मुझे मिले। अच्छा। सब अगल बगल में एक ही साथ नाम रख लिया है क्या आप लोगों ने? ये तो पता नहीं, तो हमने क्या पता, जिसने कल ना पता होगा। मतदान किया? हाँ जी। ठीक थी व्यवस्था अंदर? हाँ जी। आप साथ में या अकेले? हाँ जी, साथ में। क्या नाम है आपका? रघुवीर। कैसी लगी अंदर की सुरक्षा व्यवस्था? भीड़ कितनी है, कितना देर लगा? देर कुछ नहीं लगे, सीनियर सिटीजन है, देर किस बात की थी। आज गए और आ गए। और सीनियर सिटीजन का क्या मुद्दा रहा इस बार चुनाव का? सीनियर सिटीजन का मुद्दा क्या है? कुछ भी मुद्दा नहीं है किसी प्रकार का भी। पेंशन की बात कही गई, इलाज की बात कही गई। अरे कुछ नहीं है, फ्री में सारी दुनिया लुटाने तैयार है सारी पार्टी। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए? फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए, विकास पे काम होना चाहिए। रुकिए जरा, बात करेंगे ना। क्या नाम है आंटी जी? ललिता गुप्ता। ललिता गुप्ता। ललिता गुप्ता। तो कितनी उम्र होगी आपकी? 74। लेकिन एक बात बताइए, जब से हम यहाँ आए हैं ना, जितने भी बूढ़े लोग हैं यही आ रहे हैं। पूरे दिल्ली के बूढ़े का यहीं के सेंटर है क्या? ये देखिए, अभी वो थे, अभी देखेंगे और भी दिल्ली के एजुकेशन सेंटर है ये, पूरा टीचर्स कॉलोनी है, तो सब अपनी जिम्मेवारी संभालते हैं और आके वोट करते हैं। मुझे लग रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, अभी भी देखिए जितने बूढ़े लोग आएंगे। पूरा टीचर्स कॉलोनी है, डी ब्लॉक, पूरा सरस्वती आर्टिस्ट टीचर्स कॉलोनी, तो यहाँ का हर नागरिक जिम्मेवार नागरिक है। तीनों जो प्रत्याशी हैं, पढ़ाई वढ़ाई आर्टिस्टों के साथ किया है उन लोगों ने, या स्कूल में कुछ ऐसा? नहीं, हम तो यूपी किया था। अच्छा, यूपी किया। तो प्रत्याशी आए थे, आप लोगों से मिलने आए थे कि नहीं आए थे? नहीं, कोई प्रत्याशी मिलने नहीं आया? नहीं। तो मुद्दा मतदान अपने मर्जी से किया होगा? हाँ जी। चलिए ठीक है, तो अच्छा लगा। बहुत 74 साल की उम्र में आप आई हैं मतदान करने के लिए। जी, ये व्यवस्था आपने देखा, और लगातार जो है सो लोग
आ रहे हैं और संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। आपको हमारे विजय दिखाएंगे कि देखेंगे आप दूर से कितने लोग जो हैं लगातार आ रहे हैं और भीड़ उनकी जो है वो कम जो है नहीं हो रही है, लगातार संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और भी कुछ लोग हैं, उन सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। और आप, क्या नाम है आपका? तो इस बार का जैसे घर में कह रहे हैं कि आपकी बजट जो है, खर्च जो है कम हो जाएगा, 20,000 25,000 तक पैसा बचेगा फ्री बिजली के बाद, क्या लग रहा है सही? इसका फ़र्क है, मतलब मिडिल तबके को बड़ा बेनिफिट है इस चीज़ का, काफ़ी बेनिफिट है। जो केजरीवाल सरकार ने जो सुविधा दी है, औरतों को बरस फ्री बस है, और जो नई स्कीम आई 2100 रुपये की भी स्कीम अच्छी है। और सबसे बड़ा पॉइंट इनका संजीवनी योजना। नहीं, बस में एक बात है ना कि बस हर महिलाओं से बात करते हैं, महिलाओं की शिकायत होती है, बस वाले रोकते ही नहीं है। वो एक होता है गवर्नमेंट की स्कीम, एक होता है इम्प्लीमेंटेशन तो होना चाहिए ना, कार्यपालिका का काम करना, ठीक है ना। उसके ऊपर सुधार करेंगे गवर्नमेंट। अगर शिकायत आई है तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को संज्ञान लेगी इस चीज़ का। लेकिन सबसे बड़ी जो स्कीम आई है अभी, संजीवनी योजना, जो आम आदमी पार्टी लेके आई कि 60 साल से ऊपर का सबका फ्री इलाज, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। वो तो केंद्र सरकार का भी, हम नाम किसी पार्टी का नहीं लेंगे। और इसी तरह इन्होंने जो बीजेपी ने किया है 2100-2500 दोनों स्कीमें फ्री हैं। जन कल्याणकारी योजना वोट मतदान होना चाहिए। मैम बात करेंगे आई तो, हाँ इधर आ जाते, सही कह रहे, सुरक्षा बल कह रहे हैं उनको। क्या आपका क्या नाम है? मनोज। जैसे अब ये कह रहे थे कि स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा रहा है, दूसरी बात की पॉल्यूशन की वजह से और स्वास्थ्य आपका खराब हो रहा है, ये कैसे देखते हैं इसको? ये एक मुद्दा तो है ही कि स्वास्थ्य 2 इलेक्शन इसी बल पर जीते गए उन्होंने कि भाई हम यमुना को सफाई करेंगे, पॉल्यूशन कम करेंगे। तो साफ नहीं हो नहीं हुई ना, यही तो बात है। हाँ, ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे अभी बने हुए, अगले 10 साल तक फिर बने रहेंगे। वो तो धीरे चेंज जरूरी है। आपका क्या नाम है? इला भारद्वाज। आप लोग साथ में सेम मुद्दा आपका यही है कि कुछ अलग सोच रखती हैं? सेम ही है। ये भारतीय महिलाओं का ये बड़ा होता है, जैसा पति कह दे वैसा ही है। और क्या, इतने सालों से यही तो करते आ रहे हैं इतने सालों से। हाँ, घर में तो उल्टा ही होता है वो सेम ही होता है मोस्टली। हाँ, हमारे लोगों को अब डरा रही है, घर में उल्टा होता है। आपसे बात करेंगे। आप, क्या नाम है आपका? सुरेश गुप्ता, पुंडरिक बिहार से। पुंडरिक बिहार के ट्रेजरर हैं हम। हाँ जी। तो इस बार का मुद्दा जैसे स्वास्थ्य वाला बड़ा रहा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी बात जो है वो कही गई, क्या मुद्दा आपको लगता है कि वो सब आगे भी प्रासंगिक रहेगा या कम ज्यादा कुछ होगा? देखो, ये तो हालात बताएंगे कि इनके लोगों के पास फंड्स की क्या स्टेटस है। आगे आधे कर देंगे, आधे छोड़ देंगे, बाकी तो राजनीति है। फंड्स को लेकर के आपका क्या नाम है? आशा गुप्ता। साथ में आप? हाँ जी। इन्होंने फंड को लेकर के बात कही है, लेकिन जब जिस तरीके से फ्रीबीज की बात जो की जा रही, तीनों पार्टी जो कर रही, फिर से अब मैं पहले हट जा रहा हूँ आपको, आप इधर आ जाइए, रास्ता वो ब्लॉक हो रहा है ना। तो जैसे फ्रीबीज की बात होती है, फिर बजट तो स्टेट का खराब हो जाएगा। जो फ्री सर्विसेज दी जाती हैं, एक्चुअली हम लोग तो फ्री सर्विसेज में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को फाइनेंशियल लॉसेज हो, उससे क्या, जो फैसिलिटीज और फैसिलिटीज दे दें, एजुकेशन से रिलेटेड दे दें, बच्चों के और डेवलपमेंट से दे दें। फ्री सर्विसेज से हम लोग इतना खुश नहीं होते। All right, Aditya, thank you so much for joining us with those updates. We have some breaking news coming in as well. AAP MP Sanjay Singh has condemned the detention of Valmiki community leader Uday Gill, alleging that he was being held at a police station without any reason. Sanjay Singh has urged the community to respond to the alleged hooliganism through their votes. He further alleged that the BJP was distributing cash to influence voters, claiming that rupees 2,000 to 3,000 was distributed in North Avenue N block and people's fingers were inked to pretend that they had voted. He said that when he reached the spot, the perpetrators fled in a vehicle with a Haryana registration plate. Let's quickly listen in to these allegations. की खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। वाल्मीकि समाज के चौपाल के हेड रह चुके उदय गिल जी, जिनकी एक बहुत अच्छी छवि है अपने पूरे समाज में, वर्षों से वो काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए, उनको बिना किसी कारण के 8:30 बजे से उठा के थाने में बंद करके रखा हुआ है। कारण पूछो, कारण कोई बताने के लिए तैयार नहीं। दिल्ली के वाल्मीकि समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, इस गुंडागर्दी के खिलाफ वोट कीजिए, इस तानाशाही के खिलाफ वोट कीजिए। आपके लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, बिना किसी कारण के उनको गिरफ्तार किया जा रहा है।
तो इसका जवाब अपने वोट की ताकत से दीजिए। बाकी मेरी बात ऑब्जर्वर से भी हुई है चुनाव के, हमारी बात डीसीपी से भी हुई है, थानेदार जो है यहाँ का उससे भी बात हुई है कि खुलेआम गुंडा। All right, Delhi BJP State President Virendra Sachdeva appeals to the people of Delhi to remain vigilant of the Aam Aadmi Party's tactics and vote in large numbers. Further, he has slammed the AAP government. He says that people are voting against the corrupt government of Aam Aadmi Party. He added that the Aapada or Farzi government has come to the extent where it is facilitating fake voting. Listen in. दिल्ली में परिवर्तन की लहर चल रही है। लोग भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ वोट दे रहे हैं, जिससे ये आपदा वाली फर्जी सरकार अब फर्जी मतदान और फर्जी हथकंडों पे उतर आई है। अभी जो जानकारी मिल रही है, नई दिल्ली की कस्तूरबा नगर विधानसभा में जाली मतदान करते हुए व्यक्ति पकड़े गए हैं और ऐसा दिल्ली के अनेक क्षेत्रों से खबर आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अपनी हार को सामने निश्चित मानकर जहां शराब काम नहीं कर रही, गुंडागर्दी काम नहीं कर रही, तो अब फर्जी मतदान पर उतर आए हैं। और मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने नई दिल्ली में कुछ लोग पकड़े भी हैं। दिल्ली And in further breaking news, the district election officer of North Delhi has released a statement with reference to a complaint alleging that a police personnel at Sainik Vihar was forced a voter to exercise vote in favor of a particular political party. Upon receiving the complaint, the flying squad was immediately dispatched to the location. The agents of the political parties at the location confirmed that all voters are casting votes themselves at the polling station, and this video that has been shared is completely false. In other news, Union Home Minister Amit Shah has chaired a security review meeting on Jammu and Kashmir in the national capital, focusing on the region's security situation. Jammu and Kashmir's Lieutenant Governor Manoj Sinha was also present at the meeting. The discussions likely revolved around enhancing security measures and addressing ongoing challenges in the region. So we've been informed that the Union Home Minister has chaired a key security review meeting in Jammu and Kashmir, and we've also learnt that LG Manoj Sinha was present in the national capital for this meeting as well. The meeting was to address the security challenges faced by Jammu and Kashmir. And in other news, US aircraft carrying 104 illegal Indian immigrants has landed at Amritsar airport. The military aircraft, which left Texas, is now in the city of Amritsar, where authorities say that they have put measures in place to process the deportees. Illegal immigrants from Gujarat, Haryana, Maharashtra, Uttar Pradesh and Chandigarh are also being deported by the US. The deportees include 25 women and 12 minors, with the youngest passenger being a 4-year-old from Gujarat. Additionally, 48 individuals below the age of 25 have been deported as well. The list includes 33 people from Gujarat, 33 from Haryana, 30 from Punjab, 3 from Uttar Pradesh, 3 from Maharashtra and 2 from Chandigarh. Big development taking place where a US jet carrying illegal Indian immigrants has now landed in India. This aircraft has landed at Amritsar airport, and the military aircraft is carrying 104 illegal Indian immigrants from the United States of America. My colleague Aditya with us on the broadcast. Aditya, take our viewers through the details, please. Well, actually, the US plane that was carrying
Indian illegal migrants from America have just landed at the Amritsar airport, sometime back, we can see, what happened, the Indian immigrants that have been deported by the America are taken out of the aircraft, and, the local police, the Punjab Amritsar police was on the spot to receive them. Even the family members had come to receive them at the airport. So, let us just put this into perspective. There were several Indians from different states who were on board that US C-17 military aircraft transport. What had happened that there were 33 Gujaratis, 33 from Haryana, 30 from Punjab, 3 from Uttar Pradesh, 3 from Maharashtra, and 2 from Chandigarh. So it needs to be seen by when would all of the Indian immigrants, that were on board will be able to meet with the family members, and what followed in this regard. Yes, back to you in the studio. Okay, all right, Aditya. Thank you so much for joining us on the broadcast with those details. With that, viewers, we sip into a very quick break. घंटे वाली बिजली चो कोई कट लग्या नहीं लग्या कट दी गल तां छड्डो बल्ब ने चमक्का भी नहीं मारना चमक्का ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी आंदा नहीं हैगा जदी आ भगवंत मान दी सरकार बनी है जी मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था माँ 3500 रुपया कहना ऐतकी जीरो आया माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया बनना चाहिए अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और NewsX का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। We dream of exploration. We dream of space travel. We are Karnataka. We are the birthplace of India's space program, where efficiency and innovation have taken the world of aerospace to a whole new level, where the ecosystem supports every possible dream. From the most sophisticated defense aircrafts that protect nations, to commercial planes that safely transport millions of people every day, from satellites that help connect the world, to extraordinary machines that travel the universe. What we design and build here impacts global aerospace in diverse, critical ways. The biggest brands come to us because we focus on the tiniest details.
Because a million parts work together with zero error margins. A million parts that need to be crafted with perfection and precision. The smallest ideas turn into larger-than-life creations in our thriving ecosystem. With our artisanal talent pool, BJP's National General Secretary is with me. Arun Singh ji is there with me. Sir, you have casted the vote and right now we are in मयूर विहार. दिल्ली में मुद्दे जो हैं वो बहुत कंट्रोवर्शियल बन चुके हैं. मयूर विहार, पटपड़गंज की सीटों पे भी बहुत बड़ी चर्चित बातें रही हैं. क्या सोच के वोट हुआ है और क्या अपील करते हैं? देखिए, दिल्ली में रहने वाले लोग सबने देखा है कि दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ है. दिल्ली में अभी भी अधिकांश एरिया में स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिलता, सड़कें टूटी हैं और ट्रैफिक की समस्या है. लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा भी नहीं मिल रही है और केवल अरविंद केजरीवाल इनकी सरकार को झूठ बोलती है और झूठ बोल करके के साथ साथ केंद्र से झगड़ा करती है. ये बहुत बड़ा इशू है कि आप झगड़ा करके तो किसी प्रदेश का विकास नहीं कर सकते. केंद्र सरकार से झगड़ा करना, मोदी जी को रोज सुबह से लेकर शाम तक गाली देना, इसीलिए लोग बदलाव चाहते हैं. और बिल्कुल हवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे दिल्ली में चल रही है और आज देखिए घरों से निकल करके लोग मतदान कर रहे हैं. लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कोई होता है तो आज का ही दिन है और लोग हर्ष उमंग के साथ निकल भी रहे हैं और बड़ी संख्या में निकल करके मतदान करना चाहिए दिल्ली के भविष्य के लिए. और जो यहाँ पे जो विभिन्न प्रदेशों से आकर के जो लोग रह रहे हैं उनकी सुविधाओं की चुनौती कैसे दिख रही है सर केजरीवाल और संदीप दीक्षित के सामने? आज काफी देखिए, नहीं अरविंद केजरीवाल जी की जमानत जब्त हो रही है. अच्छा, और सर वोटिंग चल रही है, क्या लग रहा है सर? बहुत अच्छा माहौल है, लोगों में बड़ा उत्साह है चेंज करने का. और सर लगातार आम आदमी पार्टी सवाल कर रही है कि किस तरह से बाधाएं उत्पन्न की जा रही है क्योंकि वो हार रहे हैं इसलिए ऐसा बोल. दिल्ली में पोलिंग जारी है और हमारे संग अब जुड़ रही हैं कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और कालका जी की प्रत्याशी अलका लांबा. अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. आपने भी अपना मत का अधिकार जो है वो प्रयोग किया है. आपके मन में आज क्या मुद्दे चल रहे थे, क्या विषय था? देखिए, मुझे मालूम था कि मुझे खुद पहले उदाहरण बनना है, तो मैंने अपना वोट कास्ट किया और सुबह से मैं यही उंगली जो हमारे लोकतंत्र की ताकत है इस स्याही को दिखा रही हूँ कि निकलिए घर से बाहर. और मुझे खुशी है कि पूरी दिल्ली और कालका जी सड़कों पर है, अपने एक वोट का अधिकार का इस्तेमाल करके वो बदलाव और विकास के लिए वोट कर रहा है. और मुझे यकीन है ये बदलाव को अब कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि 10 साल देख रहे हैं भाजपा आम आदमी पार्टी रात तक अभी तक लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ FIR हो रही है, हिंसा की इन्होंने, और इन लोगों ने शराब पकड़ी गई, पैसा पकड़ा गया, लेकिन अलका लांबा ने पूरा चुनाव शांतिपूर्ण, प्यार, भाईचारे से लोगों के बीच में रहकर लड़ा है. नोकझोंक की भी खबरें आ रही हैं, दिल्ली के काफी इलाकों से नोकझोंक की खबरें भी आ रही हैं आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में. मैं वही कह रही हूँ, ये सब चल क्या रहा है? किस चीज के लिए आप लड़ रहे हो? आप सत्ता और कुर्सी के लिए लड़ रहे हो, आप जनता के लिए नहीं लड़ रहे. अगर आपकी लड़ाई जनता के लिए होती तो हवाएं जहरीली ना होती, यमुना का पानी पीने का जहरीला ना होता, अपराध ना होता, महंगाई बेरोजगारी नहीं होती. लेकिन आपने जनता के लिए नहीं लड़े, आप आपस में लड़ते रहे और अभी तक लड़ रहे हो. और दिल्ली मेरी थक चुकी है इनकी तू मैं लड़ाई, हिंसा, आरोप प्रत्यारोप से, बहानों से. अब बहाने नहीं, बदलाव. दिल्ली में जब एक बदलाव की सरकार आने जा रही है, जो साफ पानी लाने जा रही है, जो साफ हवा लाने जा रही है, जो साफ यमुना जी को करने जा रही है, जो नई सड़कें बनाने जा रही हैं, जो दिल्ली को एक दिल्ली जैसा शहर बनाने जा रही है जो कि बर्बाद कर दिया है 10 साल में, तो हमें भी खुशी, हम उस बदलाव का हिस्सा हैं. लेकिन सीएम आतिशी ये कह रही है कि गुंडागर्दी हारेगी और दिल्ली जीतेगी, और केजरीवाल भी सेम बात कर. हाँ, तो हारेगी, हम तो मान रहे हैं भाई. ये गुंडों की सरकार कैसे बन सकती है जो चीफ सेक्रेटरी को पीट रहे हो, जो अपने MP को पीट रहे हो,
जो शीश महल के अंदर बुलाकर अपनी लेडीज़ मेंबर पार्लियामेंट को पिटवाते हो, जो लोगों को नशा बंटवाते हो, जो शराब एक के साथ एक बोतल फ्री देते हो, वो कैसे जीत सकते हैं? हम तो आतिशी जी की बात से 100% सहमत हैं। गुंडों की सरकार जा रही है, भाजपा की सरकार आ रही है। लेकिन जो केजरीवाल ने कहा है कि महिलाएं अगर जोर लगाएगी तो हम 60 से ज़्यादा जीत रहे हैं। तो महिलाएं नहीं जोर लगाएंगी ना, महिलाएं भी तो, उनके भी तो बच्चे हैं जिनको आपने नशा दिया, जिन्होंने गंदा पानी पिया, रात को 3-3 बजे तक जागी हैं वो पानी की उम्मीद में, तो नहीं लगा रही ना। किसके लिए लगा रही हैं? मोदी जी के लिए। इसीलिए तो जीत रहे हैं ना हम। सही कहा अरविंद केजरीवाल ने। और आप देखिए, अरविंद केजरीवाल के मुंह से आप कभी देखिएगा, उसके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, गुंडा 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 गुंडा। आप उसको कितना समझाने की केजरीवाल जी, आप पढ़े लिखे, लेकिन वो गुंडा है, उसके मुंह से गुंडा ही वर्ड निकलेगा। वो अपने आप को नहीं बदल पा रहा। अरविंद केजरीवाल जी के बच्चे भी चाहते हैं कि केजरीवाल जी बदलें, ये गुंडा वर्ड को छोड़े, लेकिन गुंडा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उनके मुंह से गुंडा के अलावा कोई वर्ड निकल ही नहीं सकता। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जैसे पैसे के बल पर जीत रहे हैं, रात में पैसे बांटे, कई सामान बांटे, कपड़े बांटे। अच्छा, पहली बात तो ये बार बार कहते हैं हम जीत रहे हैं। हमें एक बात नहीं समझ आती, जब जीत रहे हैं तो ये बहाने क्यों लगा रहे हो आप? दो बातें नहीं है, दो बातों में क्लैरिटी नहीं है उनके। रोज कहेंगे इनके पास सीएम का चेहरा नहीं है। जब हम जीत रहे हैं तो हमारे पास सीएम का चेहरा, हमें चिंता होनी चाहिए। अगर हम जीत नहीं रहे तो तुम्हें क्यों तकलीफ है सीएम के चेहरे की? तो इसका मतलब हम जीत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब को लूटकर अब दिल्ली के बाद पहला आदमी है जो पैसे दिल्ली लेके आया। अभी तो पंजाब के लोग भी जवाब देंगे, अभी तो दिल्ली के लोग इस साल जवाब दे रहे हैं। कितनी सीटें बीजेपी लाने जाए? 52 से 56 सीटों के बीच में, ऐतिहासिक। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र जैन है। सर, 3 बार आप जीत चुके हैं, चौथा बार क्या लग रहा है? क्या किस तरीके का माहौल है अभी पब्लिक में? बहुत अच्छा माहौल है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस बारी पहले बारी से भी बेटर है, 2020 से बेटर माहौल है और चौका लगाने की पूरी तैयारी है। कितने सीट तक अंदाजा लगा रहे हैं आप? मैंने कहा पिछली बारी से बेटर होना चाहिए। बेहतर हो पाएगा? बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा जन समर्थन है, पिछली बारी से काफी अच्छा है। आप मतदान देकर आए, पूरे परिवार के साथ में है, अंदर व्यवस्था कैसी है? क्योंकि हमेशा आम आदमी पार्टी जो है ईवीएम पे सवाल उठाती रही है। अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मैं अभी तक कभी लगभग 15-20 पोलिंग स्टेशन पे जा चुका हूँ, सभी जगह व्यवस्था ठीक है, अभी तक कोई शिकायत मिली नहीं है। अच्छा चल रहा है और हर तरफ से लोग सहयोग कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर इंसान को वोट जरूर डालना चाहिए। एक तरफ वोट चल रहा है, दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खां पे मुकदमा दर्ज हुआ, अरविंद केजरीवाल पे बीते दिनों मुकदमा दर्ज हुआ, क्या कहेंगे? मुझे अभी पता नहीं है, मैं देखो बूथ जा रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जो बता रहे हैं आप। मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार क्या अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे या कुछ और? देखो मैं बताऊँ, पॉलिटिकल इंटरव्यू आप 6 बजे आइएगा, पूरा पॉलिटिकल इंटरव्यू 2 घंटे का दो। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी हैं। क्या लगता है सर, क्या इस बार का माहौल कैसा है पूरे दिल्ली में? माहौल बहुत बढ़िया है। भाजपा के प्रति लोगों का उत्साह है, लोग भाजपा को जिताना चाहते हैं, भाजपा को लाना चाहते हैं, मोदी जी को दिल्ली सौंपना चाहते हैं। लोगों की दिली इच्छा है कि मोदी जी को दिल्ली सौंपी जाए, भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाई जाए। मुख्यमंत्री का चेहरा हमेशा ये सामने आता है, ये जानना चाहेंगे कि क्या वो सब हाईकमान का फैसला है। भगवान से और क्या मांगा है, क्योंकि टीका लगाया हुआ है आपने? क्या ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सुख और समृद्धि मिले और हम दायित्व का ईमानदारी से, सच्चाई से निर्वहन करते रहे। क्या इस बार का मुद्दा क्या खास रहा है पूरे दिल्ली में? यमुना प्रदूषण भी रहा, बहुत सारी चीजें रही। आप लोग किस चीज को लेकर के ज्यादा मानते हैं? दिल्ली की जनता ने कैसे आप लोग को चुनने की बात कर रहे हैं? कुशासन और भ्रष्टाचार, जिसके कारण आम आदमी पार्टी जो है वो बुरी तरह दिल्ली में हारेगी। तो ये थे विजेंद्र गुप्ता और उन्होंने साफ कहा कि भारी बहुमत के साथ में ये सरकार बनाने वाले। कुशासन का जो मुद्दा इनका रहा है उसके ऊपर ये चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज। Senior leader of the CPIM, Brinda Karat, with us. Brinda ji, what was the main issue you voted for this time? I voted to save Delhi from double engine disasters which we see in so many parts of India. This is the main issue here today. We have seen the rights of the people of Delhi being bulldozed by authorities who actually have no authority to do so. That is why I say the slogan must be to save Delhi, to save the rights of the people of Delhi from such double-engine disasters. Yes, you're referring to the LG.
free of central. I am saying what I had to say. Final question, ma'am. The opposition is fighting separate here, the Congress and the AAP. Do you believe that could help the BJP? I don't want to make any such comments right now. I've told you why and how I have voted. Thank you. That was Brinda Karat, of course, telling us that she's voted because she feels that the centre is trying to interfere in the Delhi government's functioning, and that was the issue that affected her the most when she cast her vote. With journalist Dinesh Thakur, Uday Pratap Singh. What would be the main issue that you feel you voted for this time? You see, the experience of the last 5 years is that the elected government of Delhi was not allowed to function as a democratic mandate that they'd received. They could not do it because of the interference of the centre through the Lieutenant Governor. So the vote today, which I have cast, is against this sort of interference by the centre and to assert the right of the people of Delhi to have their government, which is elected and which will function fully. Yes. So you're a senior leader of the opposition. What we've seen over here is the opposition is split. The AAP is fighting separate, the Congress is fighting separate. Will that help the BJP? That is happening in states. In some states, it's not necessary that all the India bloc parties should be together. But I don't think it will have any major impact as far as the fight against the BJP is concerned. Thank you very much. That, of course, was Prakash Karat speaking after casting his vote here in the New Delhi Assembly constituency. हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ग्रेटर कैलाश से बीजेपी कैंडिडेट शिखा राय जी। मैम, सुबह सुबह कालका जी मंदिर में आप आई हैं, जनता से क्या अपील करना चाहेंगी और किस तरीके का माहौल पूरी दिल्ली में देखने को मिल रहा है? जी, माँ कालका मैया के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आई हूँ, आशीर्वाद लेने आई हूँ और जनता से यही कहूँगी कि पोलिंग शुरू हो चुकी है और जो आपका मन बना हुआ है इस बार परिवर्तन के लिए, जो आप चाहते हैं कि दिल्ली को एक व्यवस्थित सुरक्षित सरकार दें और जनता ही यही कह रही है कि वो मोदी जी के हाथों मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी से ही हो सकती है, तो आइए मिलकर इस परिवर्तन का हिस्सा बने और पोलिंग बूथ तक जाएं। मैम, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए तो सौरभ भारद्वाज आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें कितना बड़ा कंपटीशन मानती हैं और क्या मुख्य मुद्दे रहे, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर थी? देखिए, मुख्य मुद्दों की बात करूं तो दुख होता है कि जो बेसिक एमिनिटीज, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वही मुख्य मुद्दा आज बनी हुई हैं। यानी पानी तक की व्यवस्था ग्रेटर कैलाश पॉश इलाके में नहीं है, पानी आता नहीं है, आता तो गंदा आता है। यानी इतनी ऐसी बात के ऊपर ये चुनाव हो रहा है, कोई काम नहीं हुआ, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों का मन बदलाव का है, परिवर्तन का है। मैम, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आप अपनी जीत को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट है और पूरी दिल्ली में भाजपा अगर सरकार बनाती है तो कितनी सीटों पे आप कॉन्फिडेंट? अगर नहीं भाजपा सरकार बना रही है, भाजपा की सरकार आ रही है और इस सीट में भी 100% बदलाव होगा। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ शिखा राय जी, जिन्होंने खास बातचीत हमारे साथ की। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी इंडिया न्यूज़। यस सर, आज वोटिंग का दिन है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को और कितने कॉन्फिडेंट है? मैसेज तो यही है कि कालका माई के चरणों में मैंने प्रार्थना की है कि माता रानी सबके ऊपर आशीर्वाद बना के रखे और जितने भी दिल्ली के लोग हैं सबके लिए एक अच्छी काम करने वाली, शिक्षा का ध्यान रखने वाली, स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाली, बिजली पानी का ध्यान रखने वाली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बने। सर, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप इस बार चुनावों को लेकर? कॉन्फिडेंट हैं, थैंक यू। कितना आंकड़ा अगर माने तो? What is Congress's stand in terms of this elections? You've been always said we are for a developed Delhi, but as I said, today is not a day to talk about politics and party. It's a day to ask people to vote for a good government. अच्छी सरकार बनाइए, अच्छे candidates पकड़िए. You are building your future. Think about that. And what are the people hoping for? Are they looking for development? What kind of development? I hope we are looking for development. And will be the local issues or national issues that people will? No, not national. In Delhi, people have always voted for local issues, but local issues are statewide issues, and they will vote for that. Thank you so much for talking to us. So yes, viewers, that was Sandeep Dixit who spoke to us exclusively and gave a perspective on the fact that yes, it's going to be local issues that people will be vouching for, and said that he's hopeful for this elections. This is me, Brian Andy Thomas, signing off with camera person Sudeep. BJP MP Bansuri Swaraj over here, who's of course just cast her vote. In fact, कोई नहीं
कोई नहीं, बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि लोकतंत्र का महापर्व है, कृपया आइए, भारी संख्या में आकर मतदान करिए, विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी दिल्ली बने, इसके लिए अपना डेमोक्रेटिक राइट जरूर एक्सरसाइज करिए। Ma'am, in English once, very quickly, you've just cast your vote. What would be your message to the voter? We're live right now on NewsX. What would you say to them? We're seeing a very early, slow trickle over here. Would you encourage more people to come? I will request every single Delhiite to come and kindly exercise his and her democratic right today, because this is a festival of democracy in Delhi, and in order to show and ensure that Viksit Bharat का संकल्प उसको हम सिद्धि तक लेकर जाएं, आपका यहाँ आना बहुत जरूरी है। What issue was in your mind, ma'am, when you cast your vote? What issues were in my mind? The fact that I want double engine की सरकार का जलवा in Delhi as well. One English bite, ma'am. So that, of course, is Bansuri Swaraj. She's just cast her vote over here. She's, of course, the BJP member of parliament from this seat, where Arvind Kejriwal, of course, is in the contest, and Parvesh Verma, of course, of her party. Also, of course, Sandeep Dikshit of the Congress Rishabh. She's saying that she's cast her vote on the issue of double engine sarkar. She's cast her vote on the issue of Viksit Bharat. Polling has commenced in the national capital, and it's in fact the early morning hour. Joining me right now is Delhi BJP President Virendra Sachdewa ji. सर, मतदान शुरू हो गया है और आज दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव के लिए जो जंग है वो छिड़ चुकी है। आपने मतदान किया है, मतदान दिखाइए और बताइए कि दिल्ली में अब जो लहर है वो किस तरीके से आने वाली है। देखिए, दिल्ली इस बार बदलाव चाहती है और मैं आपके माध्यम से सभी दिल्ली वालों से अपील करता हूँ, बाहर आइए, अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, बेहतर दिल्ली के लिए, विकसित राजधानी के लिए डबल इंजन की सरकार बनाइए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए वोट दीजिए, गंदे सीवर, गंदा पानी, बढ़े हुए बिजली के दाम, टूटी हुई सड़कों के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट कीजिए। कल जिस तरीके से शाम को देखा गया है, शाम को आप लोग भी गए हैं, कंप्लेंट भी आपने रजिस्टर कराई है, ईस्ट दिल्ली की ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर आपने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? और देखा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। कल लक्ष्मी नगर में हमारी एक पूर्वांचल बहन है विभा झा, उसके साथ मारपीट की गई है, एफआईआर दर्ज हुई है, तीनों आम आदमी पार्टी के गुंडे हैं। उसी तरह से हमने देखा मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, उनका सहयोगी 5 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा जाता है, साथ में जो दूसरा व्यक्ति पकड़ा जाता है वो दिल्ली के शिक्षा विभाग में कर्मचारी है। तो पूरी की पूरी अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर गुंडई, शराब और पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहती है तो दिल्ली की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। और दिल्ली के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इतने वोटर्स आ रहे हैं और इतनी बड़ी जंग छड़ी हुई है। ईस्ट में भी पटपड़गंज से लेकर मयूर विहार, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बड़े बड़े दावे हैं। बीजेपी के लिए क्या उम्मीद रख रहे हैं? पूरी दिल्ली में आप नरेला से शुरू कीजिए और करावल नगर तक जाइए, पूरी दिल्ली में बदलाव की लहर है। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट कर रहे हैं, लोग अरविंद केजरीवाल के झूठ के खिलाफ वोट कर रहे हैं, लोग विकास चाहते हैं और विकास और विश्वास का एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी, इसलिए लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेन इशू आपके मन में इस बार क्या था जब आपने वोट डाला? इस बार बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई, ये 2 इशू है, महंगाई और बेरोजगारी को देखें। सेम ही है। कुछ और भी है जो आपके मन में? महिला सुरक्षा भी? हाँ, महिला सुरक्षा भी है। समय महिला सुरक्षा तो बहुत ज़्यादा, बहुत सुनाई दे रहे हैं केसेस, महिला सुरक्षा भी। महिलाओं के लिए खास करके महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहता है। हाँ जी, ये तो है ही। घर उन्हीं को चलाना होता है। हाँ, सही बात है, वो तो है ही, घर महिलाओं को चलाना होता है। मेन इशू इस बार क्या था आपके लिए? नहीं, कोई इशू नहीं था, सब ठीक ही चल रहा है। हाँ। खुश है, संतुष्ट है इस वजह से आपने दिया, खुश है काम से? हाँ। आपसे पूछेंगे, एनी मेन इशू फॉर यू दिस टाइम? व्हाट वाज इन योर माइंड व्हाइल यू वर वोटिंग? First is that education, because I have a young child now. Education after Aap Sarkar has become much better, and also what we see around that electricity bill and water bill all have not been there for the common people in our city. What was the main issue for you? Good governance and a good leader, especially a very nice MLA. We want a very nice MLA, and I think Arvind Kejriwal has not fulfilled his promises, and my vote. मेन इश्यूज ये हैं कि सफाई होनी चाहिए और नालियाँ सारी बातें वो चौक ही पड़ी है, वो उनको सफाई चाहिए, रोड्स ठीक चाहिए हमारे को। Main issue is rampant corruption in government bodies in Delhi.
Being a lawyer, I get to deal with a lot of statutory bodies, and Delhi corruption has just gone from bad to worse in the last 10 years, despite all claims by the government in charge. So it's about time. Delhi deserves a change. It deserves a government that works for the people, and that's why we are here first thing in the morning to cast out. As I feel, again, Delhi, if you go to the roads of, you look at the roads of Delhi, right from the beginning, whether if the people, our government is taking out the issues of free electricity, free water, that should not be there. Necessities are okay, that should be there, normal charges being taken, fine. But the Delhi itself, maybe it is the case of women's, it's in protection, maybe it is a case of crime, everything needs to be worked on, improved. Delhi should look like a capital of India. Right now, तो अभी local issues हैं basically, तो we are talking about locals. तो दिल्ली की डेवलपमेंट थोड़ी सी डेवलपमेंट बेटर होनी चाहिए एज पर इट शुड बी लुक लाइक इंडियन कैपिटल। यहाँ सीवर लाइन, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, पार्किंग की समस्या, स्कूल यहाँ की जो है वो भी मेंटेन नहीं है। ये सब सारी प्रॉब्लम है। विधायक और कारपोरेटर मतलब सभासद कभी क्षेत्र में एरिया में कभी आते नहीं हैं। सीवर्स प्रॉब्लम, हमारे घर में पिछले 6 महीने बहुत गंदा पानी आया, हमने बहुत कंप्लेंट्स करी बट कोई सुनवाई नहीं हुई। So firstly, I believe I am the first time voter. I'm still exploring my political opinion, but one thing that I absolutely agree with everybody who has said is the water, because साफ पानी सबका एक basic minimum right है, and because of that a lot of health concerns are being there. And there was this one concern जो water clogging की बात हो रही है, वहाँ पर there was a MCD fault and hence all of this happened. There was a clogging in their system and उसकी वजह से all of the Jangpura was suffering because of it. People were in losses and that's not okay, I believe. Other than that, definitely women's safety. And one more thing, the free electricity wala point, I think I agree कि economy के लिए हमें we have to work for it. Other than that, I feel the free system, people are only the lower class is utilizing it. Nothing is happening for the middle class. Either the rich is getting richer or the poor are getting benefits. But we as middle class are getting sandwiched in between everything. A state that has been transforming human curiosity into innovations for more than 100 years. We are Karnataka of innovation. From 5G technology to high-performance chip designs for supercomputers, from cutting-edge medical technology to indigenous fighter helicopters, from designing and developing satellites to building greener and cleaner automobiles, from apps that make our day-to-day lives easier, that will drive the future. In reality, what we do here directly impacts the world. Our talent pool is our biggest strength, and together with our commitment and vision, Karnataka is uniquely positioned as a global innovation hub. Join us to shape the future. This budget has given us a very good allocation of 2,52,000 crore. मिडिल क्लास को तो टैक्स मुक्ति कर दिया. Biggest relief as far as income tax concession is concerned. A very major bonanza for the middle class. State governments are now being offered 1.5 lakh crore of interest-free loans. You're bringing in a new income tax bill, which is wonderful, and we're looking forward to that. The biggest boost this budget has given is perhaps to the middle class. More important is the implementation, the serious implementation on ground now. It's a well-rounded budget, while the social sector and growth being the major focus.
They say change is the only constant. And when change captures the imagination, it becomes a revolution. We in Karnataka are excited to be a part of the global dream of sustainable transportation. Innovations that will make vehicles cleaner, greener, faster, smarter. We were pioneers in developing electric vehicles. Today, our ecosystem drives the future. We help the biggest names build automotive solutions of tomorrow. The best infrastructure supports the greatest ideas. As brands push to solve the most challenging problems, we empower them. Our network of highly specialized technical institutions is the foundation of our skilled and talented pool of automotive engineers. Our human resources are our greatest strength. They are the ones who create. They are the ones who dream. We are home to some of the most enterprising startups in the world. These innovative minds are pushing boundaries, building on ideas that are redefining the world of automotives, creating change. We want to bring change through our visionary policies, through our robust ecosystem, through our extraordinary talent pool. We want to change the future of transportation. Hello and welcome. You're watching NewsX and our rolling coverage of the Delhi elections. Delhi has witnessed 33.31% voter turnout till 1 p.m. in the 2020 Assembly polls. Delhi had recorded a voter turnout of 62.59%, while only 56% of the voters participated in the 2024 Lok Sabha elections. Remember, 70 seats are up for grabs in the national capital, with the Aam Aadmi Party currently sitting on 62 seats and the remaining 8 with the BJP. Delhi is witnessing a three-way battle between the Aam Aadmi Party, the BJP and the Congress. Let's quickly go across to my colleagues Anand Singh, who joins us from Lodi Estate, and Manohar Kejriwal, who joins us from Moti Nagar. Anand, firstly over to you. Quickly tell us what's the update as far as the voter turnout is concerned, and let's also speak to some people at the polling station to understand what really is it that they've come out to vote for. Look, if we talk about the percentage of polling in the national capital, and especially this New Delhi Assembly seat, which is one of the high-profile assembly seats in the national capital, from where former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and three-time Chief Minister's son Sandeep Dixit is also in the fray, along with BJP's Parvez Singh Verma. So, looking at the trend in the New Delhi Assembly seat, which has maximum number of the bureaucrats and top politicians, so the polling over these polling booths in this particular Lodi Estate area is quite slow, and even as we can show you, you can see in the visuals that how people are now coming out to vote, and soon they will come after exercising their franchise. They will be coming out over here and we can speak to them, and we will try to understand that what were the issues that they had voted for in this assembly poll. So we will try to speak to some of the voters over here. As you can see, several of the volunteers are also helping the elderly people over here to vote. Sir, आपने वोट कर लिया इस चुनाव में? कर दिया। तो सर क्या मुद्दे रहे हैं इस चुनाव में आपके लिए? गरीबी इतनी है, ये गरीबी है। Okay, Anand, we're having some network issues with you there. We're able to hear you, but we can't see you at all. So let's try to fix those network issues. Meanwhile, Manohar Kejriwal joins us from Moti Nagar. Manohar, over to you.
विधानसभा क्षेत्र में हूं और ये कर्मपुला का इलाका है और ये सीट काफ़ी हॉट सीट इसलिए माना जा रहा है कि मदन लाल खुराना का एरिया है जो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जो है सो बीजेपी सत्ता में नहीं आई और इस बार उनके बेटे हरीश कुमार खुराना बीजेपी से चुनावी मैदान में हैं। वहीं आम आदमी पार्टी से शिवचरण गोयल चुनावी मैदान में है, वो 2 बार से मौजूदा विधायक भी है और यहाँ अभी तक वोटिंग परसेंटेज जो है मात्र 30% हुआ है। तो ऐसे में लोगों से हम लगातार अपील कर रहे हैं। देखिए लोगों ने वोट कास्ट भी किया, आपने वोट डाल दिया, एक बार दिखाएंगे फिंगर इस तरह से। हाँ, ये बताएंगे आपने वोट डाला, क्या इशू है, क्या मुद्दे हैं जिसको सोच करके आपने वोट डाला है? मुद्दे तो सारे वही हैं पुराने, बाकी ये है कि भाई इस बार थोड़ा सा चेंजिंग आएगी, इस बार सरकार बदलेगी। सरकार बदलेगी। और लोगों से बात करते हैं, आप लोगों ने वोट डाल दिया है? जी हाँ। क्या सोच करके वोट डाला? ये हम नहीं पूछ रहे हैं कि आपने किसको डाला, ये हमारा भी हक नहीं है, वो आपका राइट है। नहीं, वो बताएंगे नहीं हम किसको डाला। क्या मुद्दे, सीक्रेट है, क्या मुद्दे क्या है जो देश के हित में करेगा? मुद्दा कोई नहीं, बस जय श्री राम। चलो आपका क्या मुद्दा है? जय श्री राम। जय श्री राम मुद्दा है? मुद्दा नहीं है, जय श्री राम हमारे साथ है। हम इस देश की उद्धार तरक्की के लिए ही वोटिंग की है। आपका क्या नाम है? अनुपम। आप फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं। क्या कहना चाहेंगे, आपने वोट डाला है तो किस इशू को लेकर के सोच करके वोट डाला है ताकि एक युवा को सारी चीज़ें मिल सके? जी, तो हमने तो डेवलपमेंट को देखते हुए डाला। इस बार हमें डेवलपमेंट चाहिए जो पिछले 10 साल में नहीं देखी है। बहुत से मुद्दे हैं जैसा हमने देखे ही हैं, फ्री से कुछ नहीं होता। इस बार दिल्ली को वाकई में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। लेकिन महिलाओं को लुभाने के लिए सभी पार्टियों ने कोशिश की है, तो क्या वो एक मुद्दा है आपके लिए? पता नहीं, महिलाओं का सुनते आ रहे हैं, हमें नहीं पता क्या चल रहा है, कि वो पैसे वैसे दे रहे हैं, हमें नहीं पता। दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं हमें नहीं पता। महिला सुरक्षा को लेकर के भी इशू उठाया गया। देखो हाँ, सब वेस्ट है, ये सब धांधलेबाजी है जो सुनते आ रहे हैं। बहानों से कुछ नहीं होता, डेवलपमेंट चाहिए दिल्ली की पब्लिक को। और ये फ्री ये लेडीज़ को जो भी मंथली देना 2100 या जो, ये सब बेकार है। ये सब वोटों के टाइम पे ऐसा किया जाता है, बाकी 5 साल कहाँ जाती है जनता? एक वोटों के टाइम इनको हर चीज़ याद आती है कि पब्लिक के लिए ये करना है, वो करना है, चाहे फ्री में है चाहे जो भी हो। बाकी 5 साल कहाँ जाती है महिला या जनता? बिल्कुल, 5 साल लोग कहाँ जाते हैं, और लोग आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आपने वोट डाल दिया या डालने जा रहे हैं? डालने जा रहे। क्या इशू लेकर के जा रहे हैं? देखो जी, हमारा हक है वोट डालना, सही है। नेता काम किए हैं क्योंकि किशन गोयल ने, हम तब जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, आप अपना जो है सो हक अदा कर रहे हैं, आप अपने राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नेताओं को करना चाहिए। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? मेरे लिए कोई काम करना चाहिए। काम के मुद्दे ये कह रहे हैं पानी गंदा आ रहा, पानी तो हम नलके का रोज पीता हूँ, तो बिल्कुल साफ पानी आ रहा है। इसको राजनीति को नहीं बनाना चाहिए, खाना पीना सब है, मगर एक चीज है, एक नेता के ऊपर उठाते 10 साल लेकी रही, आज तक नजर नहीं आई। 1 साल में इसको हो गया मरने को, 11 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं की। चलिए, अब आप लोग ने वोट डाल दिया? एक महिला होने के नाते आपने क्या इशू जहन में रख करके वोट डाला है? ये पर्सनली है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं आपने किसको डाला, ये हमारा भी हक नहीं है पूछने का, लेकिन आप ये बताने की कोशिश करें कि मुद्दे आपके लिए क्या है, क्या आप चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, किस तरह के विकास चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, ताकि एक ही जो मिडिल क्लास है उनके लिए भी पब्लिक सोचे, ये गवर्नमेंट सोचे, बस यही है मिडिल क्लास के लिए। आपने भी वोट डाल दिया? हाँ जी सर। आपने क्या सोच करके डाला? यही पब्लिक की, दूर से वोट डालने आया, स्पेशल अपना अधिकार समझ के भी आया हूँ कि बदलाव चाहता हूँ, कि पब्लिक के लिए भी कुछ सोचें, ये आपस में ना ऐसा कुछ करें, पब्लिक के लिए करें। जो भी सरकार आए बस ये है कि पब्लिक के लिए सोचे, मिडिल क्लास के लिए। अभी जो ये है कि अपना वो झूठे वादे वगैरह करके बाद में सब भूल जाते हैं, ऐसा ना हो। लेकिन हम यही चाहते हैं कि सबके काम कुछ और होते हैं, काम होता ही नहीं है, वादे ज़्यादा हो जाती हैं और बातें भी ज़्यादा होती हैं।
बिल्कुल, जो पब्लिक को सुनने वाला है, झूठे वादे ना करें, उनका अब जो है और उनको लेकर के ये लोगों ने वोट डाला है। ये तमाम इश्यूज हैं और दिल्ली वासी जो है सो बहुत बारीकी से इन इश्यूज को देख करके ही वोट डाल रहे हैं। जी Okay, Manohar, thank you so much for joining us. Let's quickly go back across to Anand. Anand, over to you. Yeah, Devika, look, now we have with us one of the voter who had just casted his vote over here. Sir, आपका नाम और जब आप वोट कर रहे थे आज, तो किस तरह की चीज़ें आपके मन में चल रही थी? जब मैं वोटिंग करी तो मैं अपना सारा का सारा फोकस लास्ट टाइम के जितने भी काम हुए हैं उसी पर देखते हुए कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, क्या क्या नहीं हुए, आगे क्या कौन सी पार्टी हमें बेनिफिट दे सकती है, ये सब सोचकर ही वोट किया है। जिस तरह से लगातार करप्शन के मुद्दे उठे इस बार चुनाव में, पॉल्यूशन का मुद्दा उठा, यमुना की गंदगी का मुद्दा उठा, तो लगता है पिछले 10 सालों में काम हुआ है दिल्ली में। जिस तरह से तमाम पार्टियां वादे करती हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे अभी, तो कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? नहीं देखो, ये तो पार्टी से एग्ज़ाम, जब ज़्यादा एग्ज़ाम होता है ना उससे पहले तैयारी करनी पड़ती है, और उस तरह से ऐसी जब चुनाव आता है ना तो सब ये एक दूसरे पर एलिगेशन ये वो, लेकिन पब्लिक को जहाँ तक है फ़ायदा तो होता ही है हर चीज़ के। कहीं से कुछ काम तो आपको भी पता है काम होता है या कम होता है, कुछ एलिगेशन दूसरी पार्टी भी लगाती है कि भाई ये काम नहीं कर रहा है। और जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि मुझे बीजेपी से फंड नहीं मिल रहा है, इधर से फंड नहीं मिल रहा है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से करते हैं। उन्होंने भी काफ़ी लाइट के सिलसिले में भी बहुत काम किया है, पानी वानी के भी, जैसे बिजली का बिल भी अब नहीं आता है, कम आता है। अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कौन पड़ेगा? बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि काफ़ी करप्शन हुआ केजरीवाल जी के टेन्योर में, शराब का घोटाला हो गया। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया, फिर सारी पार्टियों ने काफ़ी प्रोमिसेस भी किए, गारंटीज भी लोगों के लिए दी। तो आप चूँकि अपनी बेटी के साथ भी आए हुए हैं सर वोट देने के लिए, तो किस तरह से इसको भी कुछ सिखाना है आपको आने के लिए, कैसे अपनी एक जो राइट है उसको किस तरह से सही तरीके से उपयोग करना है? हाँ, अभी तो खैर छोटी है, लेकिन उसको भी अभी किस तरह से वोटिंग हो रही है, किस तरह से करना है, किस तरह से पोलिंग होती है, सब उसमें सारा बताया है मैंने अभी फ़िलहाल। आगे इसको थोड़ा थोड़ा ग्रो होगी तो उसको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा कि क्या होता है। अभी तो बहुत छोटी है इसको, लेकिन फिर भी बताते हैं कि अभी तो खाली फ़िलहाल इसको अभी यही बताया है कि अभी वोटिंग देखा सिस्टम क्या है, किस तरह से वोटिंग होती है। सर तमाम जो करप्शन वगैरह के मुद्दे उठे इस बार चुनाव में, तो इसको कैसे देखें? इसमें देखो अब कितनी सच्चाई कितनी नहीं है, हमें तो इसके बारे में पता नहीं है। ये जब कोर्ट में मैटर जाएगा, जब सॉल्व होगा वहीं से पता चल पाएगा। ये तो जब सारे विटनेसेस और जितनी भी एविडेंस वगैरह आते हैं उसी के बाद आम आदमी को तो इसके बारे में आप समझ सकते हैं, कुछ नॉलेज नहीं होती है। वो अपने काम में भी इतना बिजी होता है, अपने रोटी के चक्कर में इतना बिजी है कि उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन हाँ, एलिगेशन तो होते हैं सब जगह से, इधर से उधर होते रहते हैं। अब पता नहीं, अब देखिए कोर्ट में केस जाएगा, गया हुआ है, अब वहीं से जो डिसाइड होगा वही बेटर है। Thank you very much, sir. So, Devika, you heard that how one of the voters over here, he said that the works have, every government who comes to power keeps on working. However, it depends on the public to access that how much work has been done in the last 5 years. So those are the things that they are coming up with in their mind, that how they are going to utilize their vote in this assembly polls. And as you can see, I will ask my VJ to show you the visuals over here, that now the crowd is trickling slowly and slowly. People are coming out, they are voting over here at this particular booth where Priyanka Gandhi Vadra earlier in the day also casted a vote along with her husband and son Rehan Vadra. So now the people are coming, and even the plant samplings are being provided to the voters over here who have come out to vote for the Delhi Assembly polls. So we'll try to speak to some more people as they are coming out from the polling booth, and we'll try to understand that what was going in their mind when they were voting over here. So we'll just try to speak to them, and we'll try to understand that what were the issues that they felt were more compelling in this assembly polls. भाई साहब, आपने वोट कर लिया, तो क्या मन में चल रहा था जब आप वोट करने आए थे? क्या मुद्दे थे आपको लगा इस बार चुनाव में? हमें तो केजरीवाल को ही जिताना था, और केजरीवाल ने हमारे लिए बहुत अच्छा कर रखा है। बहन बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा कर रखा है। हम तो सोचते हैं अगली बार भी जब वोटिंग हो तो केजरीवाल सर ही आए।
मगर बीजेपी तो कहती है कि शीश महल बना लिया, महल में अब वो रहते हैं, महल से राजनीति करते हैं, आपदा हो गई है दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी। तो ये सारे आरोप जो केजरीवाल जी के पार्टी पे लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर, और केजरीवाल के ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है बीजेपी, तो ये सारे कैसे आरोपों को आप कैसे देखते हैं? देखो, ये बीजेपी जो कहेगी वो सब कुछ झूठ है। जो केजरीवाल कर रहा है वो दुनिया को दिख रहा है। आप ये बता दो कि बीजेपी वाले ने आज तक क्या करा है और क्या करके दिखाया है। केजरीवाल ने हमारे लिए इतना सब कुछ करा है, गरीबों के लिए करा है, तो इसलिए हम तो यही कहेंगे हमारे नेता केजरीवाल ही होने चाहिए। तो लग रहा है इस बार फिर से झाड़ू चलने वाला है दिल्ली में? दिल्ली में झाड़ू ही आएगा। और संदीप दीक्षित भी खड़े हैं चुनाव में इस सीट से। हमें फुल मुंह में से मालूम है केजरीवाल साहब आएंगे तो आएंगे। ठीक है। So, Devika, we are joined by some more voters over here. You can see the plant saplings in their hands. As I will also request them to show their inked fingers. Sir, वो निशान दिखा दीजिए वोट का। मैम आप भी दिखा दीजिए, भैया आप भी दिखा दीजिए। So you can see the voters who have just voted. They have came out of the polling booth. So we'll speak to them and try to understand that what's the mood. मैम आप गृहिणी हैं, तो इस बार जब चुनाव में वोट देने के लिए निकली आज, तो क्या आपके मन में चल रहा था? मन में तो वही है कि जो जनता की पसंद है या जनता जो चाहती है, वे जो रोजगार है, मकान है, और जो कच्चे हैं उनके पक्के होने के, बस यही सब मुद्दे हैं जो जनता चाहती है सरकार से। अगर ऐसी सरकार कदम उठाती है तो अच्छी बात है। तो महंगाई का मुद्दा एक बहुत बड़ा रहा है इस बार, और सारी पार्टियों ने कहा है कि आ जाएंगे हम सत्ता में वापस तो 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। कोई पार्टी 2100 रुपये महिलाओं को बोल रहे हैं, कोई 2500 बोल रहा है। तो ये सारी घोषणाओं को आप कैसे देखती हैं? घोषणाएं तो अभी घोषणा ही हैं, उसके बाद में जब सरकार आती है और इन पर कुछ कार्रवाई होती है तब तो देखेंगे। अभी तो सर, जब आप वोट करने के लिए आए तो आपके मन में क्या चल रहा था? हमारे मन में तो ये है कि कोई भी पार्टी आए, काम करे पब्लिक के लिए। देश के बेरोज़गार जो युवक हैं, बेचारे पढ़ लिख के बेरोज़गारी में घूम रहे हैं, उनकी रोज़गार के बारे में और महंगाई के बारे में सबसे मेन मुद्दा तो यही है, महंगाई और बेरोज़गारी। और इसके लिए काम करे गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा है। ठीक है। तो क्या लग रहा है सर, ये जो सारी चीज़ें हैं, जितनी घोषणाएं हुई हैं, ये कितनी अच्छी हैं आप लोगों के हिसाब से? ये घोषणाएं तो खैर ये सभी पार्टी कर रही हैं कि उधर बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, सभी घोषणाएं कर रही हैं। अब घोषणा पे कितना खरा उतरते हैं ये तो अब देखने वाली बात है ना। So Devika will go back to some of the senior citizens over here and look at the enthusiasm, the way in which they have taken the responsibility of carrying the message of the election commission that voting is your right and you must come out. As you can see the elderly couple over here, so we'll try to speak to them and understand what was going in their mind when they came out to vote for. Paji, आज आप वोट देने के लिए आए, तो आपके मन में क्या चल रहा था? मन में तो ये चल रहा है कि जो मतलब अच्छा काम करेगा वही मतलब उनको ही आना चाहिए। जो परमात्मा की तरफ से सच्चा इंसान है, बिल्कुल सच्चा ओरिजिनल, उनकी ही जीत होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। तो जिस तरह से सारी पार्टियों ने इतने तमाम वादे किए हैं, एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी भी की, चुनाव के ठीक पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? अरे मेरे हिसाब से तो मतलब पीछे तो जो पार्टियां हैं उन्होंने तो काम कुछ खास अच्छा किया नहीं है। जैसे अपने केजरीवाल की सरकार है, नहीं अच्छा किया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि शायद मतलब बीजेपी वाले मतलब अच्छा काम कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मोदी जी हैं बहुत मतलब अच्छे भक्त हैं। उनके मतलब देखने से ही पता चलता है कि मतलब वो अपना सही मतलब काम करा सकते हैं दिल्ली का, खास करके कि बहुत ज़्यादा गंदी है, सड़कें टूटी पड़ी है, पानी ठीक नहीं है। तो बाकी मतलब यही है सब कुछ। मैम आप भी वोट दी हैं आज, आप खुद एक वॉकिंग स्टिक का सहारा लेकर आ रही हैं यहाँ पे। अभी जब आप अंदर जा रही थी तो हमने देखा किस तरह से पुलिसकर्मियों ने भी यहाँ से आपकी मदद की थी अंदर तक ले जाने में। तो जब आप वोट देने के लिए गई तो क्या आपके मन में चल रहा था? मेरे मन में तो यही चल रहा है हम मोदी को देंगे। अच्छा,
और कुछ नहीं चल रहा हमारे मन में। क्या कारण है? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि हमने काफी काम किया महिलाओं की सुरक्षा के केजरीवाल ने लिए। कोई काम नहीं करा। आपने रोड देखी है, आपने जमुना देखी है, सब कुछ देखा ना आपने। क्या करा है केजरीवाल ने? लोगों के बच्चे बिगाड़ते दारू पिला पिला के। 16-16 साल के बच्चे लागे दारू पीण, एक बोतल के साथ, एक पेटी के साथ पेटी फ्री। क्या करा केजरीवाल ने? कुछ नहीं करा। So Devika, you heard some of the voices from this polling booth, and very interestingly, every one of them mentioned about the pollution, the issue of Yamuna river, how dirty it has been left in the last 11 years despite being promised that it will be cleaned, and they even mentioned about the issues of unemployment and the corruption prevalent in the national capital. Back to you. Okay, all right, Anand, thank you so much for that thorough report. Let's quickly go across to my colleague Javed, who also joins us from Okhla. Javed, over to you. देखिए, मैं इस वक्त जामिया विधानसभा में मौजूद हूँ। मेरे साथ तमाम ये वोटर्स हैं जो इस वक्त अपने अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका और इस बार आप लोगों का क्या मुद्दा रहा है? रियाज अहमद। हमारा मुद्दा विकास, एजुकेशन, इंक्रोचमेंट। इस बार क्या कुछ बदलाव है क्या? क्योंकि यहाँ पर एमआईएम की भी एंट्री हुई है, तो ऐसे में बीजेपी, एमआईएम, कांग्रेस और आप, तो क्या नहीं, यहाँ पे जो अभी सिचुएशन है, यहाँ पे विकास के मुद्दे पे हुई है इलेक्शन, और माशाल्लाह बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है। झाड़ू का यहाँ पे चल रहा है। मैं किसी पार्टी की बात ऐसे नहीं कर रहा हूँ, किस मुद्दे? विकास मुद्दा रहा है, एजुकेशन मुद्दा रहा है, लेडीज का मुद्दा रहा है। यहाँ पे आप तो नॉर्मली जो आम आदमी देखना मतलब विकास और डेवलपमेंट और एजुकेशन है। किन मुद्दों के साथ आप लोगों ने इस बार ओखला विधानसभा में वोट दे रहे हैं? विकास के लिए, विकास जो देख किया। क्या मुद्दा है आप लोगों का इस बार वोट देने का? क्या एमआईएम ओवैसी की पार्टी यहाँ पर है, कांग्रेस है, बीजेपी है और आपको बता दूं बीजेपी है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो इस बार ओखला की जो जनता वो किन मुद्दों पर वोट डाल रही है? भी मुद्दे ऐसे नहीं है, बस लोगों की जो जरूरत है, आम आदमी पार्टी जो पूरे दिल्ली को जीत के आएगी और पूरे दिल्ली। मैं पार्टी की बात कर, मुद्दों की बात करें। आप किस मुद्दे पे? क्योंकि हम पार्टी नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा, मुद्दा तो ये है कि इस इलाके में जो छोटी छोटी जरूरियात हैं, रोड है, मतलब अगर सीधी बात करें तो डेवलपमेंट की बात है, सफाई है, नाले की बात है। जी। तो इन मुद्दों के साथ आपने इस बार अपने उम्मीदवार को चुनने की कोशिश की है? बेशक, जब तक अमानतुल्लाह खान है। तो देखिए, इसमें यहाँ पर तमाम जो लोग हैं सबकी अपनी अपनी मुद्दे हैं और मुद्दों के हिसाब से सबने अपने उम्मीदवार को यहाँ पे चुना है। और देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम जो वोटर्स है वो काफी तादाद में इस वक्त जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है यहाँ पर, और काफी तादाद में लोग जो है यहाँ पर जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और ये ओखला विधानसभा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर एमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भी एंट्री हुई है और दिल्ली के 70 विधानसभा के 2 सीटों पे, मुस्तफाबाद और जामिया ओखला विधानसभा पे उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतारा है, जिन पर सवाल भी उठाया बीजेपी ने कि क्योंकि सीएनआरसी और दिल्ली राइट्स को लेके मामले में आरोप में वो लोग इस वक्त जेल में बंद है। कैस्ट्रोल पेरोल पे वो लोग बाहर आए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ओखला विधानसभा में बीजेपी भी कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन जो लोगों का रुझान है, जो लोगों की अपनी राय है, उनका यही कहना है कि वो जो है विकास और जो सफाई, जो डेली जो वर्रा के लोगों की जिंदगी से रूबरू होने की मुद्दे हैं, उन पर लोगों ने अपना यहाँ पर अपने उम्मीदवार को वो सपोर्ट करें, यानी कि उन मुद्दों पर अपने उम्मीदवार को वो वोट डाल ले। जी। Okay, Javed, thank you so much for joining us. We also have with us Uday Pratap Singh joining us from Jangpura. Uday, over to you. Of the clash right now, it's in the Musaddi Chowk area of Jangpura, and I will just speak to the BJP candidate also in just a second. Arvind Singh Marwa, he's also just reached the spot, but this is the spot of the this clash, that video which went viral, of course, earlier. The former Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia, had reached over here. He leveled allegations on Arvind Marwa and his supporters, saying that they were taking in women to this building over here, which I'll ask my video journalist to just show you, and in the pretext of giving them food, were also giving them money in lieu of votes. He also objected to the colors of the tables, saying that why are the tables all saffron,
why is the BJP getting 3 or 4 tables and not us? However, this is all something that the BJP has denied, saying that no money was distributed. In fact, Delhi police also reached the spot. Delhi police has also denied finding any sort of cash over here. Also, in fact, the BJP said that Manish Sisodia behaved poorly with the agents of their party, and also with misbehaved with a couple of the women as well. I'm just going to, in fact, go across and speak to Mr. Marwa as well, and try and get in his word on this, what exactly happened over here. Remember, of course, Jangpura is seeing a tripartite contest. Farhad Suri of the Congress is taking on Tarvinder Singh Marwa of the BJP. Tarvinder Singh Marwa has been former MLA from this area, from the Congress, though he switched over to the BJP. Now you have former Deputy CM, also Manish Sisodia. He's moved his seat from Patparganj to this seat of Jangpura. And which is why, of course, the clash is close, but the clash, of course, is interesting over here. The police now has reached in huge numbers. They have managed to bring about a sort of peace and calm now. However, of course, to ensure the peaceful polling goes ahead, reinforcements have also been rushed into this area. Okay. Quickly getting in now, तरविंद सिंह मारवा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। आप यहाँ पे एक वाकया जो हुआ था, वो वीडियो जो है वो वायरल हो गया है, उस वाकया पे क्या कहेंगे? क्योंकि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी ने आप पे जो आरोप लगाए हैं, उसका आपके कार्यकर्ताओं ने तो हमें जवाब दे दिया, मगर आपसे भी सुनना चाहेंगे। देखो ये क्या है, विनोद सिसोदिया हो, इसका बाप केजरीवाल हो, ये ड्रामे की एक नौटंकी है। वो यहाँ पर आया, अपने साथ 3 SHO थे और पूरी 50 की बटालियन थी, और उसके बाद 50 उसके गुंडे थे साथ, जो मतलब बॉडी गार्ड वाले। आया, हमारा टेबल लगा हुआ था, एक हमारी बिटिया छोटी सी वहाँ टेबल पे पर्ची बना के दे रही थी, उसके पास गया, पहले उससे बदतमीजी की, फिर उसके थप्पड़ मारा उसने। इतनी हरकत, नीच हरकत जिसको कहते हैं, क्योंकि ये मेंटली जेल से आके डिस्टर्ब हो गया, इसको हॉस्पिटल में दाखिल कराओ। और अभी 3 SHO थे, और इसने पुलिस को कम से कम नहीं तो 50 लाख रुपए दिया, यहाँ के SHO को, यहाँ के DCP सबको मिलाकर, क्योंकि हमारे जो टेबल लगा है, इंडिपेंडेंट के टेबल लगे हैं। रंग पे थोड़ा विवाद हुआ है। रंग का क्या मतलब? कोई भी चादर लगा सकता है, हमसे मान के लगा ली उसने, उससे क्या होता है? जब इंडिपेंडेंट का टेबल है तो आप हमारा क्यों बता रहे हो? और वो ये कह रहे हैं कि जो लेडीज को वो ले जाया जा रहा था इस बिल्डिंग के भीतर, और वहाँ पैसे दिए जा रहे थे। वो लेडीज हमारी वर्कर है, वो अंदर खाना खाने के लिए जा रही, बाहर सड़क जाम हो जाती, क्योंकि हमारी वर्कर 100-150 वर्कर थी, उनको 10-10 भेजकर खाना खिला रहे थे। पैसे की तो इनसे पूछो, झुग्गियों में पैसा बढ़। असल में क्या हुआ, वो अकेले आता तो कुछ ही नहीं था, 50 पुलिस, 50 उसके जो गुंडे कहूँगा, बॉडी बिल्डर, आप वायरल में देखो, उसके साथ पुलिस हमारे टेबल को तोड़ रही है। मैं तो चुनाव आयोग को, SHO सबके खिलाफ डालूंगा, एडिशनल DCP तक डालूंगा। मैं नहीं किसी से डरता, मैं चुनाव आयोग को अपनी CD भेजूंगा, जो 2-3 SHO थे और जो हमारे टेबलों में आके हमारी बिटिया को मनीष सिसोदिया ने थप्पड़ मारा, लेकिन किसी SHO ने उसको रोका नहीं, सबसे पुलिस की। पर इसका वीडियो है नहीं, तो क्या वो लड़की है? वीडियो पुलिस हमारे जब टेबलों पे आ रही थी, उसका वीडियो है। हमारे टेबल के आगे लेने क्या आया? ओके, ये बताओ ना, हमारा टेबल लगा हुआ है, इंडिपेंडेंट का हमारे साथ लगा हुआ है, तो हम क्या जिम्मेवार हैं? हमारे टेबल पे आया क्यों? वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस भी जो है वो एक्ट नहीं कर रही, उनके कार्यकर्ताओं को ढकेल रही थी, और पैसे जो हैं वो मिले नहीं उनको। बिल्कुल झूठ बोलता है सरेआम। आप वीडियो बनाओ, वीडियो में देखो सरेआम। Okay, all right. Udit, thank you for bringing us that perspective live there from Jangpura. Meanwhile, we've also spoken to the BJP candidate from Moti Nagar, Harish Khurana. He's urged Delhi voters to, of course, exercise their right to vote. Let's quickly listen into what he said.
अभी हम मौजूद हैं मोती नगर विधानसभा में, जहां पर वोटिंग चल रही है और बीजेपी कैंडिडेट हरीश खुराना ने वोट कास्ट किया है और हम इनसे सीधे बात करेंगे। क्या वोटर से अपील करेंगे आज की? देखिए, 1 बजने वाला है। मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं, जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला घर से आएं, वोट डालें। ये लोकतंत्र का अधिकार है आपका, इसको इस्तेमाल करें। और जो दिल्ली में इस वक्त माहौल है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो मोती नगर हो, लोग चेंज चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं और इस विकास के लिए ये वोट हो रहा है। जो नज़र आ रहा है, लोगों के अंदर रिस्पॉन्स है, लोगों के अंदर जो जोश है, वो जोश ये है कि ये जो विधानसभा थी मोती नगर, ये खुराना जी का कर्म क्षेत्र रहा है। हमारी पहचान जो है वो खुराना जी की इसी क्षेत्र की वजह से थी। इसलिए आज वो दौर, वो जो काम हुए हैं, उसके बाद सुभाष जी ने उनका काम, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया। लेकिन 10 साल से समस्याओं का अंबार लगा हुआ था, तो लोग अब डेवलपमेंट के लिए चेंज आते हैं। हमने बात करी डेवलपमेंट की, हमने कोई और एजेंडा तय नहीं किया। हमने कहा हम क्या क्या काम करेंगे, उस पर हम स्टिक ऑन रहे और उसी पे काम किया हम लोगों ने। क्योंकि आपके पिताजी दिल्ली के 1993 से मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री माने जाते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली का जो विकास मैन उनको कहा जाता था। लेकिन बीजेपी का गढ़ होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। सर देखिए, उनके पास मुद्दे नहीं है। हम बात कर रहे हैं सड़कों की, टूटी सड़कें क्यों हैं, वो आरोप लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि पानी साफ क्यों नहीं आ रहा, वो आरोप लगा रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि आपने दिल्ली को यमुना साफ करनी थी, वो ईवीएम पे दोष करेंगे आज के बाद। काम उन्होंने किया नहीं, इसलिए उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, लोग आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में देखना चाहती है। केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री देखते हुए वो वोट कर रहे हैं। और जो डबल इंजन की सरकार दिल्ली में जो डेवलपमेंट करेगी, निश्चित तौर के ऊपर ना सिर्फ दिल्ली बल्कि मोती नगर विधानसभा का भी भला होने वाला। Meanwhile, AAP MP Raghav Chadha stated that a lot of complaints are coming from different parts of New Delhi constituency. It added that biggest complaint is all our polling agents are sitting inside several stations. Several complaints have alleged that relievers are not allowed to go inside the polling booths. If reliever is not allowed to go inside and polling agent is not allowed to come outside, discrepancies cannot be highlighted. Listen in. नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कई जगह से कंप्लेंट्स आ रही हैं। सबसे बड़ी कंप्लेंट जो आ रही है वो ये है कि जितने भी हमारे पोलिंग एजेंट्स अंदर बैठते हैं पोलिंग बूथ पर, उस कमरे में जहां पर मतदान किया जाता है, हर पार्टी का एक पोलिंग एजेंट बैठा होता है, सुबह से बैठे हुए हैं। समय समय पर उन्हें ब्रेक लेकर बाहर आने के लिए, चाय नाश्ते के लिए, रिलीवर को उसकी जगह पर बिठाया जाता है। हर पार्टी अपना रिलीवर अंदर भेजती है ताकि जो पोलिंग एजेंट है उसको 1-1.5 घंटे का ब्रेक मिले, रिलीवर जाकर बैठे, बाद में फिर पोलिंग एजेंट जा सकता है। रिलीवर और पोलिंग एजेंट दोनों को पोलिंग एजेंट का दर्जा भी दिया जाता है। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कई जगह से ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं। लगभग आधे बूथ्स पर ये कंप्लेंट आ रही है कि रिलीवर को CPIM MP P. Santosh Kumar has spoken on the FIR against AAP National Convener Arvind Kejriwal, stating that the FIR is registered with political motives. He added that since there is voting in Delhi, BJP is trying to encash with this FIR. Listen in. Earlier also, Arvind Kejriwal's statement was overstepping. Arvind Kejriwal's statement on this issue was avoidable and in a way overstepping. But this particular FIR is registered with ulterior political motives. But the point is that many of our ministers, union ministers, including the Prime Minister himself, had made certain comments in the past. For example, against the Muslims, against other sections of the society. Quite derogatory, deplorable. In other news, Congress MP Manakam Tagore has questioned the government's silence over the deportation of Indians from the US. He criticized Prime Minister Narendra Modi and External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar for not responding. He has also shared a picture of handcuffed men and called the deportation process inhumane.
Manohar with me on the broadcast. Manohar, take our viewers through the details, please. देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इसे लेकर के सीपीआई सांसद पी संतोष ने अटैक करते हुए एफआईआर को ही उन्होंने कहा है कि ये चुनाव से प्रेरित है। हालांकि अरविंद केजरीवाल का बयान जो है वो एक तरह से गलत बयान है, लेकिन उन्होंने समर्थन किया है। उन्होंने केजरीवाल का समर्थन करते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर उनका बयान जो है सो टाला जा सकता था, या विशेष एफआईआर जो है सो राजनीतिक मकसद से दर्ज की गई है। चूंकि दिल्ली में आज वोटिंग है, इसलिए एफआईआर को जो है सो भाजपा भुनाने की कोशिश में जुटी है। तो इस तरह का एलिगेशन लगाते हुए संतोष कुमार ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। Okay. All right, Manohar, thank you so much for joining us on the broadcast. In other news, OpenAI is willing to collaborate with India as OpenAI CEO and IT Minister Ashwini Vaishnav have met in Delhi. After meeting OpenAI co-founder and CEO Sam Altman, Ashwini Vaishnav shared on X that Altman has praised Prime Minister Narendra Modi's vision on AI and the broader goal of democratization of technology. Vaishnav mentioned that they had a productive discussion about building an AI ecosystem, including GPUs, models and applications, with OpenAI expressing willingness to collaborate on all three aspects. Altman also highlighted that India is a crucial market for AI and should lead in the AI race, emphasizing the potential for India to become a global leader despite the current cost of AI models. Aditya, my colleague, joins us on the broadcast. Aditya, take our viewers through the details of this meeting. Well, absolutely, because the OpenAI Chief Executive Sam Altman has met with India's IT Minister Ashwini Vaishnav and discussed India's plan to create a cheap AI ecosystem. You know, it is at the moment it is a very pertinent thing. AI is, entered particularly all the domains of the human existence. After the meeting, Vaishnav said in a post that he had a super cool discussion with Altman on India's strategy of creating the entire AI stack, GPU, models and apps, and that OpenAI was willing to collaborate on all three. Altman's India visit, his first since 2023, comes at a time when the company is facing legal challenges in his country. It is the second largest number by the number of users. The meeting between the IT Minister Ashwini Vaishnav and Sam Altman will definitely see, India further progressing in the domain of artificial intelligence. As we have seen, China has already taken many strides as far as the domain of artificial intelligence is concerned. Recently, what has happened, the DeepSeek, the Chinese AI firm, a startup have troubled the US, the major US AI company. So this is a very important development that has happened, Megha, and it needs to be seen by when more advances in the AI, India is expected to definitely collaborate in this domain. Yes, Megha. Aditya, thank you for joining us on the broadcast. Following the directions of TDD Chairman B.R. Naidu, TDD has initiated action against employees adhering to non-Hindu religious practices while working in the institution. Authorities have identified 18 employees who, despite being employed by TDD, are following non-Hindu religious traditions. Orders have been issued for disciplinary action against 18 identified employees for the same. My colleague Raj Kiran with us on the broadcast. Raj, take our viewers through the details, please. From last few years, Telugu Desam Party has alleged that in GTD, Tirupala Tirupati Devasthanam, that non-Hindu community people are working there. They have alleged from last few years, they have alleged that in YSR government in Andhra Pradesh, they have hired many employees who are non-Hindus and they belongs to the other communities like Muslims as well as Christians. So after the TTD came to the power, they have decided that the people who are working in the Tirumala Tirupati Devasthanam who are non-Hindus will be given VRS. Now, after appointing the TTD chairman, B.R. Naidu, he has taken a big step in this
and he has identified 18 employees who are working in Tirumala Tirupati Devasthanam who are non-Hindus. They belongs to the other community. Now they are giving a VRS. So now it is a big step that, and moreover, and they are going to identify more people who are working in a lower cadre. These 18 people are working in a higher cadre people, but the more people are still working in the Tirumala Tirupati Devasthanam who are non-believers of Hindu Balaji Bhagwan. So now a strict action is taken from the Tirumala Tirupati Devasthanam board. Now 18 people have been identified and giving the VRS, the TTD source has said. All right, Raj, thank you so much for joining us on the broadcast. With that, we sip into a very quick break. पिछली बार 8 घंटे वाली बिजली चो कोई कट लग्या नहीं लग्या कट दी गल तां छड्डो बल्ब ने चमक्का भी नहीं मारना चमक्का ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी जीरो आया माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और NewsX का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक महाकुंभ 2025 का साक्षी बन रहा है प्रयागराज का संगम तट। 45 दिनों तक चलने वाले पृथ्वी के सबसे बड़े मानव समागम में करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाकर बन रहे हैं सांस्कृतिक एकता के सहभागी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से महाकुंभ बना है दिव्य भव्य डिजिटल। कुंभ सहायक चैटबॉट ने 11 भाषाओं में हर सेवा की जानकारी देकर एकता के महासंगम को बनाया है स्वच्छ सुरक्षित सुव्यवस्थित। नए घाट रिवर फ्रंट रोड पांटून पुल फ्लाईओवर चमचमाती सड़कें पार्किंग हजारों बस और ट्रेन नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल आधुनिक टेंट सिटी जैसी सुविधाओं से पुण्य स्नान हुआ है आसान। महाकुंभ का है अटल संदेश एकजुट हो अपना देश। This budget has given us a very good allocation of 2,52,000 crore. मिडिल क्लास को तो टैक्स मुक्ति कर दी। Biggest relief as far as income tax concession is concerned. A very major bonanza for the middle class. State governments are now being offered 1.5 lakh crore of interest-free loans. You're bringing in a new income tax bill, which is wonderful, and we're looking forward to that. The biggest boost
this budget has given is perhaps to the middle class. More important is the implementation, the serious implementation on ground now. It's a well-rounded budget, while the social sector and growth being the major focus. अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और NewsX का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। केजरीवाल जी जरा अपने झूठ के जाल में थोड़े लपेट में आ गए। जितने भी देश के भ्रष्ट लोग थे वो बीजेपी में जाके संत बन गए। Everybody wants to get their own tax revenues back, and this is Aam Aadmi Party's personal tax. People are saying, Somnath ji, be rest assured, we'll give you another chance. चुनाव जो है मैं नहीं लड़ रहा, यहाँ की जनता लड़ रही है और जनता ही यहाँ पे मुझे विधायक के रूप में देखना चाहती है। 66% of you feel that the roads in Delhi are not up to mark. ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का
कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। Polling is underway in the Delhi Assembly elections, and right now we are in the East Delhi constituency where the Karol Bagh candidate on the BJP ticket, Dushyant Gautam, is here. Sir, आपने मतदान कर दिया है और आज बिल्कुल देख सकते हैं आप, और आज दिल्ली के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 2025 के चुनावों के लिए भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं। दिल्ली के लोगों को, वोटर्स को क्या कहना चाहते हैं, किन मुद्दों पे दिल्ली के वोटर्स आगे जाके वोट भी करें? दिल्ली का हम स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से भारी भरकम वोटिंग हो रही है, साफ साफ जाहिर हो रहा है कि दिल्ली बदलाव चाहती है, और ये वोटिंग हो रही है अपने बच्चों के भविष्य की दिल्ली बनाने के लिए, अपने सपनों की दिल्ली बनाने के लिए हो रही है। जो पीने का पानी, गंदा पानी मिला है, उससे छुटकारा चाहिए लोगों को। कहा था हम लोग लगा के पानी पिएंगे, आज गरीब से गरीब आदमी को पानी खरीदना पड़ रहा है। हमने कहा था अच्छी सड़कें देंगे, आज टूटी सड़कों पर, और कहा पेरिस जैसी सड़कें देंगे। पेरिस में ऐसी सड़कें होती हैं, पेरिस को भी बदनाम करने का काम किया है। पॉल्यूटेड दिल्ली मिली है, प्रदूषित दिल्ली मिली है आपको। कहा था जमुना के अंदर हम गोते लगाएंगे, आज जमुना के अंदर क्या हालत हो रही है कि जमुना को पानी को देख ही नहीं सकते। इतना झूठ, और उसमें भ्रष्टाचार किया गया सरेआम। हमारे बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री पकड़ाई गई। हमारी संस्कृति, जो कल्चर, नेचर है, उसको खत्म करने का काम किया गया। इसलिए दिल्ली आज जो भारत का दिल हुआ करती थी, वेंटिलेटर पर लाके इन्होंने खड़ा कर दिया है। आज दिल्ली उससे निकलना चाहती है, और उसके लिए सीनियर सर्जन मोदी जी ने जो डबल इंजन की सरकार के उदाहरण दिए, वो कामयाब हो रहे हैं। और दिल्ली की अगर बात करें तो हम भी इस दिल्ली में ही खड़े हैं जहां आपका वोट लगता है। पटपड़गंज में बहुत चेंजेस हुए हैं। पटपड़गंज में जिस तरीके से रविंद्र नेगी आए हैं और यहाँ पर अवध ओझा हैं, एक तरीके से देखा जा रहा है लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, और दूसरी जगह पे लोग अरविंद केजरीवाल की काफी बात भी करते हैं। पर इस दिल्ली के मुद्दों को देखकर क्या आपको लगता है यहाँ पे जो इतने शराब के घोटाले के लिए आए हैं, आरोप प्रत्यारोप, ये आरोप भी लगे हैं कि बीजेपी जो है वो मीट और चीजें तमाम बांट रही है, ऐसी वीडियोज कांग्रेस ने भी डाली है। ये वोटर का अपमान है। वोट का अधिकार मिला है, वोट के अधिकार से वो परिवर्तन चाहता है, और जो उसको कहते हैं कि दारू लेते हैं, मीट लेते हैं, ये वोटर का अपमान है, और ये उनकी हताशा है। हार के नज़दीक पहुंच चुके हैं, वो हार रहे हैं, इस कारण से अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं। आप पे भी, मीडिया पे भी लगाएंगे, जब एग्जिट पोल दिखाओगे आप पे आरोप लगाएंगे, संवैधानिक संस्थाओं पे लगाएंगे, इलेक्शन कमीशन पे लगाएंगे, और फिर ईवीएम की बारी आएगी। ये इनका सीरियल है। ये जहाँ हारते हैं, गोवा में भी जमानत जब्त कराई, उत्तराखंड के अंदर में प्रभारी, उत्तराखंड के अंदर ये हालत कहा इन्होंने, हरियाणा में भी यही कहा। बाद में इनका यही होता था, ये अपने कर्म नहीं देखते, जो इन्होंने कर्म किए हैं, कर्मों का फल मिलता है यहाँ पर। तो आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी हार मान ली है? बिल्कुल हार मान ली है। तीनों बड़े बड़े कैंडिडेट ही उनके हताशा के साथ बैठे हुए हार मान। सुबह तो ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज तमाम मीडिया कर्मियों के सामने भी ये बात कर रहे हैं कि जो पुलिस है वो रोकने की कोशिश कर रही है, वो वोटर्स की पार्टिसिपेशन कर रही है, कि उनकी गाड़ी आगे नहीं जाने दे रही है, लोगों को पीछे जाने के लिए मजबूर कर रही है कि चाहे वो वोट ना दे। ये ऐसी स्टेटमेंट्स का क्या धारणा लगती है? धारणा लगती है हार रहे हैं वो। मेरी गाड़ी यहीं पे है, ये गेट तक, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई है मुझे। आप मीडिया वाले भी अंदर खड़े हो, कोई मना नहीं कर रहा आपको, कोई रोक नहीं रहा है। इसलिए साफ साफ जाहिर होता है जो उन्होंने लोगों को काम नहीं किया। अरे वरना वो कहते हैं हमने देखो सड़कें बनाई है, इसके लिए वोट दीजिए, पानी दिया इसके लिए वोट दीजिए, हमने दिल्ली को सुधारा है इसके लिए वोट दीजिए। इसलिए उसके लिए वोट नहीं मांग रहे, और उसमें हताशा है, उसको निकालने के लिए अनेकों ने संस्थाओं पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के जो वोटर्स अभी भी आ रहे हैं और वो देख रहे हैं क्या क्या मुद्दे हैं, समझ उनमें आ रही है, उनके लिए एक ऐसा क्या मैसेज है गौतम जी जो आप बताएंगे, और दिल्ली के वोटर्स को देख के बताइए कि क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं दिल्ली के जनता से कहना चाहूँगा कि अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। अपने बच्चों को कैसी दिल्ली चाहिए वो दिल्ली का देखेगा। आपको पीने का पानी चाहिए, सड़कें अच्छी चाहिए, पोल्यूटेड दिल्ली को बचाना है हमने, और कहीं ना कहीं अच्छे स्कूल भी चाहिए। इसलिए आप उसको देखते हुए वोट दीजिए। आपका मन बन चुका है कि डबल इंजन की सरकार की जो प्रामाणिकता तौर पर उसने काम किया है, मोदी जी के नेतृत्व में हमने विकास किया है, विश्व में नाम भी किया है। और हम पड़ोस में हरियाणा देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश देख लीजिएगा, सभी राज्यों के अंदर, उत्तर प्रदेश देखिएगा, अनेकों अनेक कामों के हमने रिकॉर्ड बनाए हैं। बहनों को ठगने का जो काम किया है मोदी इन्होंने, केजरीवाल ने, उनको 1000 रुपये दूंगा, 1000 रुपये दूंगा, हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। हर राज्य में करके दिखाया है। उस प्रामाणिकता पे भारतीय जनता पार्टी आगे सत्ता के अंदर आने के बाद वो सारे काम करेगी। और दिल्ली की जनता से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों के भविष्य की दिल्ली के लिए वोट दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुरक्षा, सफाई और सुधार,
ये मुद्दे हैं और जिस तरीके से बीजेपी के करोल बाग कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के दुष्यंत गौतम अभी इधर आए हैं यहाँ ईस्ट दिल्ली में मयूर विहार फेज 3 में ही हैज जस्ट कास्ट हिज वोट एंड राइट नाउ दीज आर द 3 important words and if we can say the perspective on which in fact the BJP is also rallying no matter the resistance from the Congress and the incumbent Aam Aadmi Party. What the voters think and what the voters and core voters in the national capital will want to have is something that we can see on 8th of February. But right now in fact voting is going on and this is what the pulse of the voting day in the national capital looks like. This is Simran with video journalist Himanshu for NewsX. इमरान क्या लग रहा है बल्ली मैदान में? सबसे पहले बताइए कि किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है? देखिए ये तो आवाम बताएगी, ये आवाम बताएगी साहब। क्या इस बार लोगों में नाराजगी रही है इमरान हुसैन या वाकई लोगों का एक बार झुकाव फिर आपकी तरफ है? आम आदमी पार्टी को दिल्ली की आवाम 70 में से 70 सीटें देने जा रही है और मैं ये समझता हूँ अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे लोगों से बात की इमरान हुसैन, जो उन्होंने बताया कि इस बार भी जिस तरह से सफाई, शिक्षा और बाकी जो डेवलपमेंट है उसको लेकर लोगों ने इस बार फिर अपना रुझान रखा है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ बुजुर्ग से बात कर रहा था, उन्होंने बताया, हालांकि चुनाव का वक्त हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बार भी शिक्षा और काम को लेकर उन्होंने वोट दिया है। तो जिस तरीके से एक उम्मीद, केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं और जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, तो लोग उन पे भरोसा करते हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जी के कामों पे लोग मोहर लगा रहे हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। अगर ओखला की बात करें तो कल रात अमातुल्ला खान पे विपक्ष और तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से अमातुल्ला खान ने अपनी बात रखी, तो क्या उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन उन पे भेदभाव का? आज तो वोटिंग का दिन है और आपके चैनल के माध्यम से मेरी पूरी दिल्ली के लोगों से और खासकर बल्ली मारान के लोगों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और एजुकेशन के लिए वोट डालें। आज हम वोट डालने आए, सभी पूछ रहे हैं इस पे बटन दबाओ, लेकिन उस टाइम हमें कोई नहीं पूछना आना, हम इतने पानी में डूब जाते हैं। हमको नीचे सोचना होता है, हमारे बच्चे जाए कहीं बह ना जाए। ऐसे नाले रहते हैं, ऐसे गंदगी रहती है, बहुत गंदा माहौल है हमारे यहाँ श्रीनिवासपुरी का। तो बहुत, मैं R21B से आती हूँ। तो पिछले 5 साल में कुछ काम हुए? कोई भी काम नहीं हुआ मैडम, कोई भी काम नहीं हुआ। जी माता जी, आप मैं कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, पानी भी नहीं है पीने वाला यहाँ पे हमारे वहाँ में। तो अगर अगले 5 साल की सरकार को कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सारी परेशानी हमारे जरूरतें पूरी करें, जो हम चाहते हैं वो पूरी करें। हम यही कहेंगे आने वाले जो भी विधायक या मुख्यमंत्री आते हैं, दिल्ली को थोड़ा सही बनाएं और क्राइम मुक्त बनाएं। मैम, ये भी बहुत बड़ी बात है कि अब हम यहाँ पर अकेले नहीं आ सकते घूमने फिरने के लिए। 9 बजे के बाद हम बिल्कुल भी एंट्री नहीं कर सकते, इतना क्राइम भी है। And I'm joined by a lot of voters who have cast their vote and have come out of the polling booth here. I'll directly connect with the women voters first. आपने वोट डाला? हाँ जी, डाला मैंने वोट। किन मुद्दों पे वोट डाला? विकास के लिए। विकास के लिए। आपने किन मुद्दों पे वोट डाला? जानी वोट डालना, बीजेपी को डालने जाऊंगी, सब कह रही हूँ खड़े होकर। आपने किन मुद्दों पे वोट डाला? विकास भी गिरा है, वही करेंगे सब। मुद्दे बताएं, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये है कि हमारी सड़कें चाहिए, पानी चाहिए, बिजलियाँ चाहिए और ये डिस्पेंसरी वगैरह टूटी पड़ी हैं, ये स्कूलें चाहिए, ये सभी चीज चाहिए। क्या मुद्दे हैं दादा? मुद्दे सबसे ज्यादा यही है, विकास कोई है ही नहीं है। 10 के 12 सालों से कोई विकास नहीं है। सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, पानी आता नहीं है, आता है तो गंदा पानी आता है। कोई विकास नहीं है? कोई नहीं है। 10 साल से कोई विकास नहीं किया इन्होंने, सिर्फ खाली लूटा है। एक से संग इतनी प्रदूषण इतना उड़ रहा है। आपको विकास दिखाई दे रहा होगा, जो कि यहाँ पे पहले हाजी यूनुस जी हमारे विधायक थे। देखो कितना विकास हो रहा है यहाँ पे, सांस लेना दुर्भर हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, निकले आदमी यहाँ पे मर जाएगा। कोई संख्या में वोटिंग चल रही है मुस्तफाबाद का ये एरिया। एंड किन मुद्दों पे वोट दिया है? किन मुद्दों पे वोट है भाई? अपने ये विकास के मुद्दे। आपका किन विकास के मुद्दे पे वोट? तो देखिए यहाँ पर एक आम राय, जन सहमति एक तरह से बन रही है कि अब विकास का एक बहुत, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, द डेवलपमेंट। they are saying that development is very important, and for when I asked what
all comes under development. It's roads, infrastructure, schools, health, sanitation. These are the issues which the voters here in Mustafabad are talking about. With video journalist Kunal, I am Sambhav Sharma from Mustafabad, NewsX. अब बिल्कुल आप सोच सकते हैं ये जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए किस तरह की दिक्कतें होती है, उसको वो मुद्दा बना करके वोट कास्ट करने के लिए गए हुए हैं और लोग आ रहे हैं। इनसे हम सीधे बात करेंगे क्योंकि ये आदर्श पोलिंग स्टेशन है। चुनाव रुक जाइए, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। आपने वोट डाल दिया? हाँ जी। क्या मुद्दे आपके लिए है? सर मेरा कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है तो आपने सोचा होगा ना कि हमारा विधायक कैसा हो, हमारे लिए क्या काम करे? नहीं, मेरा कोई मुद्दा नहीं है। नहीं मुद्दे हैं। चलिए तो ये है, आप लोग रुक जाइए, आप लोग वोट डाल करके आ रही हैं? पहली बार वोट डाला? हाँ जी। क्योंकि इस बार दिल्ली में 52,000 जो है पहली बार वोट डालने वाले मतदाता हैं और आप लोग युवा भी हैं, क्या कहेंगे आप लोग? क्या वोट डाल के बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत अच्छा लग रहा है मैं पहला वोट डालकर। क्या आपने सोचा वोट डालते हुए कि कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए जिसकी वजह से आप वोट डालने आई हैं? ऐसा तो हमने कुछ सोचा नहीं, पहला वोट था, हम खुद नर्वस थे अभी। अच्छा। थैंक यू। अभी हम जा रहे हैं। क्या नाम आपका? खुशी। काफी खुश लग रही पहली बार वोट डाल करके। हाँ, तो क्या आपने सोचा कि क्या बेटरमेंट होना चाहिए एक महिलाओं के लिए दिल्ली में? महिलाओं के लिए अच्छा होना चाहिए दिल्ली में, बस सुविधाएं होनी चाहिए महिलाओं के लिए और कुछ भी नहीं। क्या सुविधाएं? अब जैसे महिलाएं रात को बाहर जाती हैं उनके लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए, बाहर जा सकती है, काम कर सकती है, ये सब। क्या नाम आपका? अनु। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए? मतलब सारी क्या बोलते हैं इसको, सेफ्टी होनी चाहिए सब चीज़ों की और थोड़ा। चलिए तो ये आप देख सकते हैं। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन मौका है, पहले टाइम वोटर हैं तो इनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ हैं जी। पिछली बार 8 घंटे वाली बिजली चो कोई कट लग्या नहीं लग्या। कट दी गल तां छड्डो, बल्ब ने चमक्का भी नहीं मारना, चमक्का। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ 3500 ਰੁਪਈਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और NewsX का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी।
and welcome. You're watching NewsX with me, Devika Chopra. And our top focus is the Mahakumbh Mela. Wearing a saffron coloured jacket, blue track pants and a Rudraksh mala around his neck, Prime Minister Narendra Modi took a holy dip at the Triveni Sangam and offered prayers to Goddess Ganga. PM Modi was amongst the nearly 55 lakh people who took a dip at the Mahakumbh Mela in Uttar Pradesh's Prayagraj. Arriving at the Prayagraj airport at 10 a.m, Prime Minister Modi reached the Rail Ghat and went to the Sangam Nose, the strip of land at the confluence of the Ganga, Yamuna and the mythical Saraswati, in a boat along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. The Prime Minister ventured into the water alone, took a dip at the Sangam and recited mantras. People from all walks of life and many countries have joined the world's largest religious gathering. Let's put that into perspective. The population of Russia is 14.38 crores. As of today, 38.29 crore devotees have already taken a holy dip at the Mahakumbh Mela, which usually draws crowds of 60 to 70 lakh people daily. Meanwhile, the Vatican receives over 68 lakh visitors on a yearly basis. That is how grand the Mahakumbh Mela truly is. Before we take this conversation forward with our guests, I'm being joined by my colleague Arzu Seth from the Mahakumbh Mela itself. Arzu, over to you. Well, yes, Devika, today marks a significant day as the Prime Minister himself took a holy bath in the Triveni Sangam. He arrived in the morning in the Prayagraj, and after that from the Rail Ghat, he took a boat and then reached to the Sangam Nose, where he took a holy bath and also performed the rituals and did a Ganga Aarti. Also, if we talk about after having the experience of the Mahakumbh, he took to Twitter and he tweeted that the blessed to be at the Mahakumbh in Prayagraj, the Snan at the Sangam is a moment of divine connection, and like the crore of other who have taken the part in it, it has also filled with the spirit of devotion. Also, may Ma Ganga bless everyone with all the peace, wisdom, good health and harmony. So this is what the Prime Minister wrote on X, and he in fact felt the same devotion as the crores of people who are visiting at the Mahakumbh felt. And also, if I talk about the today's data, over there 10 lakh Kalpvasis who are there at the Mahakumbh, who are performing the Kalpvas, who will be staying here for the all 45 days and will be performing those rituals, will be taking the bath in the Triveni Sangam daily and will be performing the puja morning, in the evening they will do the havan. So these all rituals they are going to perform, and the number is 10 lakh. Also, if we talk about the pilgrim visited, 49.24 lakh people, the pilgrims have visited today, and also total Snan today until now is over 59.25 lakh. So also, if we talk about the total Snan till now since the Mahakumbh has begun, it has crossed the mark of 38 crores. So we can clearly understand, there was a expectation that around 40 crore the devotees will be visiting the Mahakumbh. That's mean 400 million. But now only the mark of 38 crore have passed, and there are still two important dates that are left, and that is Magh Purnima and other is Mahashivratri. So there will be two important Snan that will take place when it is expected that crores of devotees will be reaching to the Prayagraj to take a holy dip. So this can clearly be seen that the mark of the expectation is also going to cross very soon here in the Prayagraj, as the crores of devotees continues to visit to be the part of the world largest spiritual gathering. Also, right now I am at the Mahakumbh Mela area only, and would like to give the glimpse also. As you can see, thousands and crores of devotees are still coming after taking a holy bath from the Triveni Sangam. This is a particular way. The Sangam is around 2.5 kilometers from here, and all the devotees walking around the street to reach to the particular spot to take a holy bath. As also when we talk to the devotees, they are telling us how important it is for them. And also if we compare, there are several devotees not only from the country but across the world have come here to be the part of the Mahakumbh, to understand the India's rich culture heritage.
and we in fact interacted with a lot of foreigners, the foreign visitors, and they in fact told that we also want something like this in our country. But yes, this is the Bharat who can handle this, who can conduct this massive gathering, and which is the largest in the world. And also we'll try to have a conversation with the devotees also. But yes, when we compare, when we put this data in the perspective of to understand, some of the country's population is equal to the number of visitors that are coming in a single day at the Mahakumbh. So this can clearly be understood how massive the Mahakumbh is at this time, the Mahakumbh 2025. Let me hook across some visitors also who are coming here after the taking a holy bath in the Triveni Sangam. So let me also go across the visitor here. आप लोग संगम में स्नान कर लिया है? हाँ, कर लिया। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा। है? कितनी भीड़ है अभी भी? बहुत सारी। है? बहुत। आप लोग कहाँ से आए? देवघर से आए। कैसा लग रहा है संगम में स्नान करके? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोग को त्रिवेणी घाट जाना था, तो वहाँ पे आज नाव नहीं चल रही है, इसके कारण हम लोग जा नहीं पाए। अच्छा, तो कौन से घाट पे आज स्नान किया? संगम घाट पे किए। संगम घाट पे? जी। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए? आसनसोल से। कैसा लग रहा है स्नान? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अरेंजमेंट वगैरह कैसे? बहुत बेस्ट है। कैसा लग रहा है? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। सब पहली बार आए हैं कुंभ में? हाँ, पहली बार आए। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। लोग आए हैं आप लोग सब? हम लोग आए 10 से आए, 8-10 लोग आए साथ में। So Devika, clearly we can see, the people in large number, in a groups, they are coming here to be the part of the world largest spiritual gathering, and they are also sharing their experience with us, that they tell us about their experience and what energy they feel after taking a holy dip. In fact, we can clearly see these pictures also that carry their, आप गंगा जल लेके जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? पहले ये बताइए, अनुभव कैसा था आपका? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पहली बार आए हैं। पहली बार आए? हाँ, पहली बार। महसूस होता है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एनर्जी फील होती है, क्या एनर्जी है वो? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आने में, बहुत मन था, मम्मी से कहा मैंने आने के लिए, मम्मी ने भेजा भी कि जाओ, आया मैं। और करके तो बस मतलब लास्ट टाइम चलने वाली थी, मैं बैठ गया ऐसे ही। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, और हाँ। अगर बात करें तो सुविधाओं की कैसे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कुछ नहीं प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, बढ़िया है, सब कुछ सही है। अच्छा, हाँ। तो आपको लग रहा है कि आप लोगों को क्या सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो आप लोग दौड़े चले आए, मम्मी से जल्दी से पूछा और निकल आए, क्या कुछ अट्रैक्ट? अब 144 साल बाद आएगा ना, अब ये लास्ट बार है मतलब हमारा, तो फिर तो बच्चे ही हमारे बड़े बूढ़े वही हो जाएंगे, तब आएंगे। ठीक है, इसलिए आ गए, फिर मौका नहीं मिलेगा मुझे आने का, इसलिए आ गए। और महाकुंभ एक मतलब अमृत की बूंद गिरी है, यहाँ अमृत है, समझो, ऐसा समझो, इसीलिए और आए हम। मैंने देखा था यूट्यूब पे कि मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे करके तो बूंदे गिरी हैं अमृत की, उसीलिए मैं आया यहाँ पर, और अच्छा लग रहा है बहुत। आए हैं और घर वालों के लिए लेके जा रहे हैं। कितना महत्व है महाकुंभ आप लोग के लिए, क्या अहमियत? महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आते। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी भीड़ हो रही, श्रद्धालु है इतनी, पहली बार मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूँ कि इतनी भीड़ है, अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ मैं। सब आए हुए हैं, इतना अच्छा आए तो मोदी जी भी आए थे, और वो टेनिस स्टार वो सानिया नेहवाल वो भी आई थी आए तो। हाँ, और बड़े बड़े। आप लोगों ने देखा? नहीं, हम मिस कर दिए, देखे तो नहीं हुई हम लोगों की, लेकिन यहाँ की व्यवस्था को देख के बहुत ही अच्छा लगा, और बीजेपी सरकार का मैं थैंक्स कहना चाहूँगा इस कुंभ को कराने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अच्छा, कैसा लगा, कैसा अनुभव था आपका? अब तो लौट रहे शायद वापस? मैं वापस जा रहा हूँ मैं, और यहाँ का अनुभव जो है मेरा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग पूरी फैमिली के साथ आए थे, विद फैमिली के साथ में, अब यहाँ से वापस से हम लोग वापस जा रहे हैं। हम लोग बताइए कि कैसा भीड़ संगम, कहाँ पे आपने स्नान किया, किस घाट पे? हम लोगों ने त्रिवेणी संगम पे ही स्नान किया है। भीड़ जो थी नॉर्मल डेट के हिसाब से मतलब ठीक थी, लेकिन मतलब अब जब मेला है तो भीड़ तो होगी, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा था। कैसा अनुभव है? बहुत बढ़िया लगा मुझे। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आए आप? हम लोग बरेली से आए। बरेली से आए? जी हाँ। क्या मकसद था आने का, क्या सोच कर आए? हम तो केवल तीर्थ करने आए यहाँ पे। बढ़िया लगा मुझे, इसलिए आए थे। अच्छा। हाँ। यहाँ से क्या कुछ लेकर जा रहे हैं, क्या ज्ञान की प्राप्ति कर? हम तो ज्ञान की प्राप्ति का, हम तो हर चीज बहुत खुशी लेके जा रहे हैं यहाँ से। हाँ, हम देख रहे हैं पूरे भगवा रंग पहना हुआ भी आपने। हाँ। Absolutely. So the divine, the spirituality can be seen all around, and the devotees, in fact, are very happy to share those moments that they have witnessed here, they have felt here, and even you can see continuously the people are coming, the devotees are coming after taking a holy Okay, Arzu, I will come back to you in just a few moments from now.
But let me also bring in our guests into the discussion, Uma Anandan and Swami Vishal Anand with us on the broadcast. That we begin this conversation with Uma Anandan. Uma Anandan ji, of course, the Prime Minister has made his visit to Prayagraj. He has taken the holy dip as well. How do you think this helps in furthering the message of the Mahakumbh, which is, we keep saying that it's the largest religious gathering, but it's honestly the largest spiritual gathering in the world? Can you repeat? Yes, Uma Nandani, can you hear me now? Hello? Can you hear me? Yes, Uma ji, we can. Yeah, I can hear you now. Yes. See, definitely, yes, definitely it's, the Mahakumbh, everybody has been waiting for this. It is more to do with, I think, you cannot explain the feeling when I see the people. I'm leaving next week for that. I'll be there next week, there, with a lot of, hope. And this is the first Kumbh I'm attending. I'm going to attend in Prayagraj. So definitely the whole world is watching. You have all the dignitaries, not just from the Hindu world alone. You have others from other religions coming here. There is some sense of purpose that they've realized, and that is why they are coming here. The entire world is watching. People may distort the version, may distort the, the significance behind this, because they wouldn't like to accept the essence of Sanatana Dharma. And this particular participation in this, I think it is really a gift even to watch. I think it is the blessings, even if you have a darshan of the people who have participated in the Mahakumbh, I think that by itself requires a lot of divine blessings. And definitely to see the leader of our country taking his, wearing his belief. He may, even though we are secular, the leader belongs, he has his own religion, and wearing it in his sleeve, and to see him perform the puja, worshipping Ma Ganga, I think all this makes it a very, very special event. And I really feel that by next week, I hope I'm able to have this sense of fulfillment. And I think the words cannot explain the feeling that each one of us undergo in participating such events. And Mahakumbh is definitely the one and the only event over which the entire world, the entire population of Europe put together, and now they are telling me we'll cross the 500. Yeah, I think definitely we'll cross this in the next few days. And by the end, I think it would be once again the largest gathering that this world has witnessed. It is only growing. The numbers are growing day by day and event after event. So whatever you may do, whatever people may do, Sanatana Dharma is here to stay. And people who can't even, destroy dengue or mosquito or fly, telling that they're going to destroy Sanatana Dharma, I think our gods and our belief is having the last laugh in this. Okay, all right, Uma Nandanji, I will come back to you in just a moment. Swami Vishal Anand also with us on the broadcast. Swami Vishal Anand, I just want to understand from you the significance of the 5th of February, the fact that the Prime Minister has chosen this particular date to visit Prayagraj and to take the holy dip. If you can shed some light on it for our viewers. Yeah, Megha, this is a very auspicious day as per if we see the astrological calculations. आज गुप्त नवरात्र की अष्टमी है, आज अष्टमी का दिन है और अष्टमी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने स्नान किया है। और मैं इसके साथ एक और बात जोड़ूं, जब स्नान की बात आपने की, होली डिप की बात की, तो लास्ट टाइम जब प्रधानमंत्री जी प्रयागराज में गए थे और उन्होंने जब स्नान किया था, तो उस समय उन्होंने काले वस्त्र धारण किए हुए थे, जिसको महाभारत में वीर संकल्प कहा जाता है। और उसके 2 दिन बाद आपको याद होगा बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की थी। प्रधानमंत्री बहुत मौन थे पूरे कुंभ की विजिट के दौरान, और वहां से आए और 2 दिन बाद हमें सुबह उठ के 6 बजे खबर आ गई थी सभी न्यूज चैनल्स पे कि पाकिस्तान पे भारत ने एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक की है। तो ये जो प्रधानमंत्री की कोई भी मूवमेंट होती है तो साधारण नहीं है।
वो जब जाते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जब कोई सत्ता का नेतृत्व करने वाला, जब राजा या सत्ता का जो नेतृत्व करता है वो जब जाता है, तो उसका अर्थ ये होता है कि पूरी प्रजा ने, जब राजा ने स्नान किया तो पूरी प्रजा को उसका पुण्य मिलता है। सो एक सिंबॉलिक है कि जब मोदी जी स्वयं वहां जा रहे हैं, आज से पहले अगर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हिंदू धर्म का या हिंदू परंपराओं का सेक्युलरिज्म पे के नाम पर वो इनका बहिष्कार कर देते थे, ना किसी उसको किया जाता था, ना किसी त्योहार को खुशी से मनाया जाता है। यहां तक कि श्री राम मंदिर की भी जब बात आई तो लोगों ने कितनी बातें कही कि हॉस्पिटल बना देना चाहिए, स्कूल बना देना चाहिए। आज देखिए श्री राम मंदिर से इतना डेवलपमेंट हुआ है पूरे क्षेत्र का कि अब उस पैसे से ना सिर्फ उस क्षेत्र को बल्कि पूरे देश को हजारों स्कूल और हजारों हॉस्पिटल मिल सकते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल टूरिज्म अपने आप में बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने इस कुंभ के दौरान 5500 करोड़ का 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स भी जो प्रयाग क्षेत्र के लिए अनाउंस किए हैं, जिसमें नए रोड्स बनेंगी, ब्रिजेस बनेंगे, स्पिरिचुअल टूरिज्म को पूरा रिवर फ्रंट डेवलप किया जाएगा, किया गया है ऑलरेडी और भी अच्छे तरह से किया जाएगा। तो जितनी डेवलपमेंट, जितनी ग्रोथ हो रही है, ये अपने आप में बहुत लैंडमार्क डेवलपमेंट है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई। आज 100 से ज्यादा देश के लोग भारत में आकर, हम पहले बात करते थे कल्चरल कैपिटल की, आज भारत दुनिया की कल्चरल कैपिटल बन चुका है। आज 100 से ज्यादा देशों से लोग भारत आकर होली डिप ले रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और आपने किसी भी व्यक्ति से ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी को ऐसा महसूस हुआ हो कि जो वहां पे अरेंजमेंट्स हैं या जो वहां पे व्यवस्थाएं की हुई हैं वो किसी भी तरह से कम महसूस हुई होंगी। तो जो लोग भी आज हिंदुत्व पे, सनातन परंपराओं पे, सनातन धर्म पे उंगली उठाते थे, जो ये कहते थे शक्ति की समाप्त हो जाएगी, शक्ति का नाश कर देंगे, जो ये कहते थे हिंदू एक मॉस्किटो की तरह है, जैसा अभी उमा जी ने बताया, मच्छर की तरह है, डेंगू के मच्छर की तरह, इसे खत्म कर देना चाहिए, आज उन लोगों के मुंह पे ताला लग गया है। वो सारी अगले 10 साल तक तो कम से कम कुछ नहीं बोल सकते। तो हमें जहां पर ये चीजें होती हैं, जहां पे हमारी सॉफ्ट पावर की हम बात करते थे, और एक कितना बड़ा भारत ने एक ही झटके में इतनी बड़ी एम्प्लीफिकेशन ऑफ सॉफ्ट पावर हुई है कि पूरी दुनिया को हमने दिखा दिया दैट वी आर द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड सनातन हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म द एंटायर वर्ल्ड। बाकी लोग सिर्फ बातें बातें करते रह गए। आप देखेंगे किसी भी दूसरी फेथ के लोग मक्का में नहीं जाते, किसी दूसरी फेथ के लोग रोम में नहीं जाते, वेटिकन में नहीं जाते। आज दुनिया की हर एक फेथ से लोग प्रयागराज आ रहे हैं। ये भारत की डेवलपमेंट का एक अनूठा वो है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो विरासत के साथ साथ वो भी हैं। जिस दिन यहां पे प्रयागराज में कुंभ का इनॉग्रेशन हो रहा था, प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में दुनिया की सबसे बड़ी टनल का इनॉग्रेशन कर रहे थे। तो अपने आप में लोग बात करते हैं कि विरासत से क्या होगा। अरे भाई, विरासत के साथ ही विकास होगा। हमने बहुत सारी, आप मेघा अगर दुनिया में देखें, दुनिया की जिसको डेवलपमेंट हम कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये तमाम चीजें, दुनिया के जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाउन्स थे वो सब आज घोस्ट टाउन्स बन चुके हैं, जो आज से 100 साल पहले बहुत बड़े टाउन्स थे। और जितने बड़े टेंपल टाउन्स थे वो आज भारत के इससे बड़े जितने बड़े बड़े टेंपल टाउन्स थे वो आज भारत की इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं, वो भारत की इकोनॉमी को चला रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए, जिसको हमें बड़े गर्व के साथ हमें इस करना चाहिए। बल्कि वी शुड फील प्राउड ऑफ आवर रिच एंशिएंट कल्चर, कि हमारे पूर्वज हमें क्या धरोहर दे गए हैं, और आज हमारे पूरे यूथ को, पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को आगे बढ़कर इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। Okay, Dr. Uma Nandan, bring you back into the conversation. Your thoughts on the same as well. The fact that there is now rapid development, that is a development push that is also taking place as we continue to open up this large spiritual gathering to the world. Dr. Uma. Uma Nandan ji. Okay, all right. We seem to be losing that connection there. With that note, viewers, we will slip into a very, very quick break.
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬੱਲਬ ਨੇ ਝਮੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਝਮੱਕਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬੱਲਬ ਨੇ ਝਮੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਝਮੱਕਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था? माँ 3500 रुपया। कहना ऐसी जीरो आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और NewsX का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है।
संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। This budget has given us a very good allocation of 2,52,000 crore. मिडिल क्लास को तो टैक्स मुक्ति कर दिया। Biggest relief as far as income tax concession is concerned. A very major bonanza for the middle class. State governments are now being offered 1.5 lakh crore of interest-free loans. You're bringing in a new income tax bill, which is wonderful, and we're looking forward to that. The biggest boost this budget has given is perhaps to the middle class. More important is the implementation, the serious implementation on ground now. It's a well-rounded budget, while the social sector and growth being the major focus. केजरीवाल जी जरा अपने झूठ के जाल में थोड़े लपेट में आ गए। जितने भी देश के भ्रष्ट लोग थे वो बीजेपी में जाके संत बन गए। Everybody wants to get their own tax revenues back, and this is Aam Aadmi Party's personal tax. People are saying, Somnath ji, be rest assured, we'll give you another chance. चुनाव जो है मैं नहीं लड़ रहा, यहाँ की जनता लड़ रही है और जनता ही यहाँ पे मुझे विधायक के रूप में देखना चाहती है। 66% of you feel that the roads in Delhi are not up to mark. From the banks of the holy Ganga, where millions gather in devotion. A spectacle of spirituality once every 12 years. We delve into the heart of the Mahakumbh Mela. Hi, I am Arzu Seth reporting from Kumbh in Prayagraj, the world's largest public gathering and collective act of faith. Watch the rituals, the celebrations, the profound devotion. Real-time updates. This is the first time when the robotic fire tenders will be used. In-depth reports. Thousands of police personnel are also sitting here taking the instructions that what needs to be done. An expert analysis. We are in the war room where the preparations are being checked. Only on NewsX. I'm Uday Pratap Singh reporting from New Delhi constituency for NewsX. I'm Simran Babbar reporting for NewsX from Patparganj and Gandhinagar in East Delhi. Hello and welcome. You're watching NewsX with me, Devika Chopra, and our focus right now is the Mahakumbh Mela. Wearing a saffron-coloured jacket, blue track pants and a Rudraksh mala around his neck, Prime Minister Narendra Modi took a holy dip at the Triveni Sangam and offered prayers to Goddess Ganga. Prime Minister Modi was amongst the nearly 55 lakh people who have taken the holy dip today at the Mahakumbh Mela in Uttar Pradesh's Prayagraj. Arriving at Prayagraj at 10 a.m., Prime Minister Modi reached the Arel Ghat and went to the nose of the Sangam, the strip of land at the confluence of the Ganga, Yamuna and the Saraswati. In a boat along with UP Chief Minister Yogi Adityanath, the Prime Minister ventured into the waters alone and took a dip at the Sangam as he recited mantras. What is the significance of the Prime Minister's visit? Why has he chosen the 5th of February to make that visit? We will, of course, have that conversation, but quickly I need to bring in my colleague Arzu Seth, who joins us live from Mahakumbh Prayagraj. Arzu, over to you.
Well, Devika, as you mentioned, it was a significant day today, as on the occasion of the Magh Ashtami itself, a big day when the Prime Minister himself took a holy bath in the Triveni Sangam. He arrived in the morning in Prayagraj, and after that he took a boat from the Arel Ghat, from where he reached to the Sangam nose, in Triveni Ghat, where there is a merger of Ganga, Yamuna and Saraswati, and there he took a holy bath in the Triveni Sangam and also performed the rituals. The Rudraksh Mala was in his hand while he was taking a holy dip, and also performed the Aarti in the Ganga, offered the prayer to the Ganga Maiya. Also, when we talk about after taking a holy dip, he also shared the pictures of him performing those rituals. He also in fact mentioned that it was a blessing to be the part of the Mahakumbh. Also, like the crore of devotees, he was also the one of them who witnessed the divine culture and the divine beauty of the Mahakumbh. Right now we are in the Mela area only, and you can see a massive crowd right now. Also the massive devotees who are coming here, the influx of devotees who are coming back after taking a holy dip in the Triveni Sangam. And also we can clearly see on the other side also there has been from the one side when the devotees are coming after taking a holy dip, on the other side these are the devotees who are coming to enter. This is the entry point from where the devotees are coming in the Mela area. So from one side when the devotees are going, from the other side the devotees are also coming in large number, and till now more than 38 crore people have already took a holy bath, have visited the Mahakumbh, and the expectation was 40 crore, but this mark is going to cross very soon. So might be as the expectation was 400 million, this time it is going to cross 500 million, as there are important days that are still left. The two important dates that are still left. The one is Magh Purnima and another one is the Mahashivratri. So these are the two important days which are still there, and now also we can clearly see on a daily basis lakhs and crores of devotees are still coming to be the part of the Mahakumbh. We will try to have a conversation with some of the devotees who have come here. Sir, कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? बाबलू है। कहाँ से आए? दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए। कैसा अनुभव रहा आपका? आपने स्नान कर लिया है? हाँ, सुबह का टाइम किया था। सुबह के टाइम किया था। कैसा अनुभव रहा आपका? सही है। ये पहली बार देख रहा हूँ ना इतना समझाऊँ। हाँ, पहली बार इतना क्या बोले उसको, इतना पब्लिक इकट्ठा हुआ पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार देख रहे इतनी भीड़ एक साथ। हाँ, एक सीधे। Definitely. So this is a new for everyone, because this is the world largest gathering and people are seeing this thing for the first time in their life. कहाँ से हैं आप? प्रयागराज से। प्रयागराज से ही है। कैसा देख रहे हैं? अपने ही प्रयागराज में रौनक लग गई है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही अच्छा, हर चीज अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है? यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, इंतजाम, सुख सुविधाएं, कोई चीज की दिक्कत नहीं है। ये जो थोड़ा घटना हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है। हाँ, और सब कुछ अच्छा है। अच्छा, ये बताइए, जब से घटना हुई उसके बाद से आप लोगों को लग रहा है कि ज्यादा सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है, प्रशासन ने और ज्यादा कठोरता दिखाई है और ज्यादा सुविधाओं में सुधार कर दिया? हाँ, जो थोड़ा से बीच में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई इसके बाद प्रशासन और जितने भी अफसरान हुकूमत है सभी अलर्ट एकदम पे हो गए थे। अब कोई भी घटना नहीं होगी बाद में। हाँ, ये हमारा लोग का विश्वास है। बार आप डुबकी लगा चुके हैं? आप तो प्रयागराज तीसरा मर्तबा है हमारा। तीसरी बार का महाकुंभ? हाँ। अच्छा। हाँ। इस बार क्या बदला हुआ नजर आ रहा है? इस बार सब कुछ बदल गया, हर चीज। अच्छा। धर्म से लेकर, भक्ति सैलाब से लेकर, सुविधा से लेकर, सुरक्षा से लेकर सब कुछ बदल गया है। Definitely, this is the massive this time. कहाँ से आई हैं आप? यही प्रयागराज से। प्रयागराज से। कैसा अनुभव रहा? आपने स्नान कर लिया? अच्छा, बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मेला आपकी बदला हुआ है। अच्छा, क्या बदला हुआ है? हर चीज यहाँ प्रदर्शनी वगैरह, मेला वगैरह, सब स्नान बहुत अच्छा है। अच्छा, पहले आप कितनी बार आ चुकी हैं कुंभ में? आप तो भी पहली बार आई हैं, फिर एक आध दो बार आएंगे और आएंगी बात। अच्छा, ये बताइए कि मेले की वजह से पूरे प्रयागराज में भी आपको कहीं ना कहीं डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, कई सारी रोड्स बनी हुई है। हाँ, माहौल तो अच्छा है, हर जगह सुविधा व्यवस्था, हर जगह चेक इन, पब्लिक को व्यवस्था दिया जा रहा है, पुलिस वगैरह, लेडीज पुलिस सब लगी है। So there are youngsters also who have come here. Hello, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अपर्णा है। आप लोग कहाँ से हो?
प्रयागराज में स्टूडेंट है। प्रयागराज से ही है। कैसा लग रहा है और यंगस्टर्स के लिए महाकुंभ क्या अहमियत रखता है? आप लोग क्या समझ रहे हैं महाकुंभ से? ये कुंभ जो है एक हमारे कल्चर को शो करता है और यहाँ पे सच बताओ तो आने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम लोग अपने कल्चर को दोबारा मतलब ये करें और इतने सारे पीपल्स को साथ मतलब इतने सारे लोग यहाँ जो इकट्ठा होते हैं उनको देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि देश में हाँ अभी अभी हमारा कुछ कल्चर है। कभी पहले एक साथ इतने लोग देखे हैं? नहीं इतना पहली बार। Thank you for bringing us that ground perspective, which was extremely important. Let me now go across to our guests with us on the broadcast. Ambassador Bhaswati Mukherjee. We also have with us Dr. D.K. Hemahari, co-founder of Bharat Gyan, and Swami Shailesh Anand Giri, a Hindu Dharm guru, with us on the broadcast as well. Let me begin with Ambassador Bhaswati Mukherjee. Ambassador Bhaswati Mukherjee, of course, there has been coverage in the past of the Kumbh Melas, of the Mahakumbh Mela that happens every 12 years as well. But this time, because of social media, because of the internet, it seems as though there has been a completely different reach that the Mahakumbh Mela has had. In your perspective, what really has India been able to achieve in terms of showcasing what we have to offer as far as our place in the world as one of the cradles of spirituality is concerned? Very well put, Devika. We have been able to show the beauty of Sanatan Dharma, India's culture and civilization heritage, and what Vasudeva Kutumbakam means. World is one family only for the generous hearted. Where do you find those generous hearted? You find them here in India, in Prayagraj, on the shores of the mighty Ganges, which has seen civilization through millennia. We are talking about 400 million people having come, having bathed, having been given hospitality. Across the internet, there is a beautiful article written by a man of Pakistani origin, praising the Kumbh and saying this is a place where there is no animal sacrifice, no blood, everything peaceful. People volunteering to give food, give shelter, help anybody who is feeling afraid, etc. That is the beauty which a Pakistani has brought out, not an Indian. And that actually demonstrates that India has come of age. Your reporter was asking about the mishap that happened. We actually don't know whether the mishap was engineered or it was a real mishap. But even if a mishap happened, and I grieve for all those who lost their lives, in a population of 1.3 billion, where we are expecting 500 million to take the dip, including I hope myself, I hope to go there also. I was asking Swamiji just now before we came on air, that this is an amazing demonstration of faith, of spirituality, of peace, of devotion, and where best but in the Kumbh, the Mahakumbh, which comes once every 144 years. I think that we will find a huge gathering for Mahashivratri, just like as you rightly said, today was the Magh Ashtami, and it is very, very touching to see photos of our Prime Minister Shri Narendra Modi taking the dip, etc. He is also demonstrating the beauty of Sanatan Dharma, a religion that does not convert, a religion that is totally peaceful, a religion that just wants to be left in peace to showcase itself as to how human civilization can coexist with each other if everybody followed the Sanatan Dharma. Thank you, Devi. Okay, I'll go across to Dr. D.K. Hemahari as well. Dr. D.K. Hemahari, in your perception, why exactly has the Prime Minister chosen the 5th of February to be the date when he visits the Mahakumbh? And what message do you think he has been able to send? This is of course not the first time that Prime Minister Modi has made a visit to take a holy dip. But as far as the Mahakumbh Mela is concerned, what message do you think the Prime Minister has been able to send out, not just to India, but to the world through his visit? Thank you, Devika, for having me on the show. And regarding the importance of this particular thing and this Mahakumbh, and you just highlighted that this particular Kumbh, we are seeing such unprecedented footfall, and that is because it is the 144th Kumbh.
and none of us in this generation have seen it before. So we are not able to compare, and of course social media is adding to it. But regarding today's what's so special, see this, and first of all, what we are trying to, the message we are trying to give the world and also to ourselves is that we can be proud of this continuity that we are seeing. It's a continuity of millennia, and imagine a civilization across generations is remembering that this is the 144th Kumbh and I should therefore go to Prayag, and therefore everybody wants to be there during this Kumbh. And on this particular day, what is so special? So we are talking about continuity, and that means, and we're also talking about remembering. So who are we remembering? What are we remembering? We are remembering our ancestors. All our ancestors who have given us this knowledge, this culture, all the values, this dharma that we live with. And how best, this is a civilization. One thing we must remember about the Bharata civilization. It is a civilization which uses debt as its model. Debt meaning indebtedness, rina. So everything you do is to write off your debt, one form or the other. And Pitra Rin is very, very important in all of this. And when you say Pitra Rin, one of the configurations, a stellar configuration that keeps coming every time to remind you of your Pitra Rin is the star Bharani. Because this is the star for the divinity Yamadevata. I mean, we normally just say Yama means god of death and so on, paint a very scary picture of Yama. But look at the beauty in the word Yama. Yama means regulating. It is controlling. So this is the divinity who is regulating the order in the universe. He is the divinity he is the aspect of order in the universe that takes your soul from one life to another. He regulates your soul through life and after life also. And the star associated with this divinity is Bharani. And every Kumbh, and especially at Prayagraj, you also have the Vata Vriksha over there. It is very important for doing Pitra Karma, that is the rituals for ancestors, the Shraddh for ancestors. And therefore, if you look at it, today's day, when the Nakshatra Bharani, the moon is aligned with Nakshatra Bharani, it actually is reminding you, it is that much highlighting the focus of the Kumbh. And not just Kumbh, Kumbh has got many, many dimensions, and coming here for remembering ancestors and doing your Shraddh is one of the aspects of Kumbh. And from that perspective, today's day of Bharani Nakshatra has that kind of a significance, and that is perhaps why the PM could have chosen. But every day, believe me, in this world, God created every day is special. It has its own significance, and every day there is something or the other for us to do to write off our debts to everybody. There are so many kinds of debts. We don't live alone in this world. We live only because of everybody else and who are here to support us. And we have to pay our debts to them. So this is a beautiful occasion that reminds you of that. And this is a message that we can give to the world as well, that we are a very continuous civilization, and we are a civilization who believe that we live with the support of others. So we have to help others so that in that way we help ourselves. And another beautiful thing which Ambassador brought out about the freedom. See, just recently we celebrated our 26th on Jan, we celebrated Republic Day, and it is the 76th year. We completed 75 years of living under this constitution in a very peaceful, democratic manner. That's a great record. Now, if you look at the constitution, one of the principles in the constitution is liberty. Now, when you talk about liberty and you use the English word liberty, immediately everybody thinks of, okay, slavery or not being bound or not being oppressed by somebody else. But liberty in our constitution, if you read the subsequent words in that line, it says that it is the liberty for everybody in this land to practice their faith. So this liberty that we are talking about is of a very different sense, and it is talking about a total all-encompassing liberty of thought, liberty of action,
And so that is a beautiful thing. Everybody is coming to Kumbh, and which is what Ambassador very beautifully pointed out about all people from different parts of the world writing and coming to this Kumbh as well. So this is a very, very beautiful occasion, which we are very fortunate to see in 100, and something that our maybe just previous generation, many of them didn't get to see. Okay, all right. I want to bring Swami Shailesh Anand Giri into the conversation as well. Swami Shailesh Anand Giri, we'd of course like to understand from you what next can the people who are hoping to visit Prayagraj expect? What are some of the crucial dates that are coming up, some of the crucial activities that are also coming up? Yeah, Devika, first we must remember that all the Shaiva akhadas, like I am the Mahamalleshwar of Juna Akhada, we have left Prayagraj for Kashi because we celebrate our Shivratri at Kashi, and I am coming here to Ujjain to celebrate my Shivratri at Mahakaleshwara. So, as far as the different aspects of the creation, operation and destruction, I have witnessed everything there at Prayagraj, and it was really divine that how God might have created this world and operates it and then sometimes ends it also. So it was a nice witnessing there. But for the people, they must understand, look, this massive Kumbh Mela teaches you the way of life to make you get self-realization about the importance of our Vedic Sanatana Hindu Dharma. How does it denotes about the sacrifice and the services, seva, just both great ladies have just said before. Look, one more thing we must understand is that when we are at Kumbh Mela, we are not just bodies. We are beyond bodies, we become minds. And not just mind, we become our intellect. And forget about all these three, we become souls. So this Prayag Kumbh Mela at the Sangam becomes a very massive storage of multi-millions of souls. Those have become like Mahaparamatma. That is, we are going to travel towards the Parampita Paramatma. So this divinity that is present in the God and that is into yourself, that means the divinity within the Pind as well as the Brahman, Yatha Brahman Tata Pind. This has been witnessed there at Prayagraj. So every day of this Kumbh Mela for the people is very important. This Purnima is coming. That is one of the most important occasion, and after that 26 will be there. That will be very important occasion. At the very first two baths, I was little bit tense that this Kali Yuga is coming, so many of obstacles are coming in the path of saints even, not only the common people, but in the path of saints also there were so many obstacles to take a bath. But as soon as this Vasant Panchami bath was there, I was very happy. And I said, one of your reporter, your channel's reporter only asked me, how do you feel, Swamiji? I said, in the words of Maithili Charan Gupta, that you तो हर दिन मनती है राखी होली और हर रात मनती है दिवाली, लेकिन क्या हर रोज छिटकती जैसी आज छिटकती पूरम में लाली. So I was very happy, not only me, everybody was very happy at the Vasant Panchami, and it was like shading off our past and wearing a new attire. That is like spiritual rejuvenation. So this is the time when Hindu Renaissance has begun, and today when Modi was giving up some gesture about the modern dress up, dressed into orange, shorts into blue, he was saying that the youngsters who are very logical, who are very rational, they must understand the scientific implication of our Sanatana Vedic Hindu Dharma. And I was delivering all my commentary there at Prayagraj all of the day, all of this Kumbh Mela till today, and will be delivering till 26. And all that means is that whole world is seeking the truth from India only, like Vivekananda said, संपूर्ण विश्व प्यासों की तरह भारत की ओर तक रहा है, एक चमत्कार यहाँ से निकलेगा, संपूर्ण विश्व को सरोबार कर देगा. So we should not make a wall of well around us, be very open. Our Sanatana has to spread, and it is already spreading. So it's again, I would like to repeat, it's a Hindu Renaissance period. Let us be a part of it. Let us spread our words to the whole of the world, that what is Sanatana Vedic religion, and it is the global Oriental Brotherhood. It's not like any particular religious brotherhood. It's like Oriental Brotherhood that we call Vasudhaiva Kutumbakam. And we think that when we are at Kumbh Mela or doing any of the rituals we are performing, we say Loka Samasta Sukhina Bhavantu. Not only for the goodness or wellness of Hindus, but all of this planet, all of this universe, best aspirations we have got into our mind.
that they all should live a very happy life. So this message has to be spread via all of people visiting there at Kumbh Mela, and I am very sure that this is the new beginning. And the gesture that Prime Minister has shown today, that is on the 8th day, that is the Baglamukhi day from the Dashmahavidya and the Ashtami from the Gupta Navaratri. So it's a very, you can say it's having a very deep meaning, that giving a signal that there will be end of evils very soon, where so much of, I would say directly that Bangladesh, these Bangladeshis Muslims have done a lot of, you can say, problems created to these Hindus, and they killed the Hindus. So those who will fight on the name of religion will be ended. This is just a directly hint from the Prime Minister's body language, as well as the day he has chosen to take this bath. Yeah, Devika ji. Okay, all right. I leave the last word with Ambassador Mukherjee. Ambassador Mukherjee, do you think that there has also been some sort of a different impact on the youth of India this time around as far as the Mahakumbh Mela is concerned? There is a huge impact, and unless the youth of India understands Sanatan Dharma and follows it, there cannot be any more the continuity of Indian civilization as we've seen it through millennia. The youth have to understand that there is much more than just making money and having a good life. Because right now, I'm sorry to say that along with Sanatan Dharma, the youth of India have become completely capitalist, following the dictates of American-style capitalism. I'm not even talking about Trump. So we need these kind of gigantic occasions, as Swamiji has so beautifully described, to make our youth understand that they are here today, they represent the continuity of the greatness of Indian civilization and Sanatan. And if they don't understand it, then how will they teach their children and grandchildren? This is a continuous flow of civilization, as my co-panelist said. That is why she's so right that I did the final puja of both my parents, and there was no Kumbh Mela at that time. So I went to Gaya as is my duty, because I don't have a brother, and I did the puja. That is part of the duties that we have towards our ancestors, and we have to teach the same to our children so that they can teach the same to theirs. And therefore, I think Prime Minister's gesture today was extremely important, because the youth follow him. He has a huge following on X, and whatever he writes is followed by the youth of India. So his gesture was a very beautiful one, and I think we have to do much more also to teach the greatness of our culture, civilization and our Sanatan Dharma to our young people, and reform the education system so that they understand the greatness of India. If they don't understand the greatness of India, then how will they be able to propagate it abroad? If we don't even know it in our own country, how will we explain it? Sometimes I meet foreigners who know more about Indian civilization than many young Indians. We must rectify this as soon as possible, Devika, because we are no longer, as Swami Vivekananda said, that the colonizer came and enslaved our minds. But now, so many years later, we must liberate our minds and go back to what is the greatness of India. And this Mahakumbh demonstrates the greatness of India. Jai Hind. Right, absolutely. With that, we've run out of time, but I thank all of our guests for joining us on the broadcast to take this conversation forward. And viewers, we slip into a very quick break. Hi, this is Brian Anthony Thomas reporting from Lodi Estate for NewsX. I am Aditya Kumar reporting from Sakurbasti and Rohini seat for NewsX. Hello, I am Sambhav Sharma from Mustafabad for NewsX. I am Anand Singh reporting from Karol Bagh for NewsX. This budget has given us a very good allocation of 2,52,000 crore. Middle class को तो tax मुक्ति कर दिया. Biggest relief as far as income tax concession is concerned. A very major bonanza for the middle class. State governments are now being offered 1.5 lakh crore of interest-free loans. You're bringing in a new income tax bill,
which is wonderful, and we're looking forward to that. The biggest boost this budget has given is perhaps to the middle class. More important is the implementation, the serious implementation on ground now. It's a well-rounded budget, while the social sector and growth being the major focus. केजरीवाल जी जरा अपने झूठ के जाल में थोड़े लपेट में आ गए। जितने भी देश के भ्रष्ट लोग थे वो बीजेपी में जाके संत बन गए। Everybody wants to get their own tax revenues back, and this is Aam Aadmi Party's personal tax. People are saying, Somnath ji, be rest assured, we'll give you another chance. चुनाव जो है मैं नहीं लड़ रहा, यहाँ की जनता लड़ रही है और जनता ही यहाँ पे मुझे विधायक के रूप में देखना चाहती है। 66% of you feel that the roads in Delhi are not up to mark. From the banks of the holy Ganga, where millions gather in devotion, a spectacle of spirituality once every 12 years, we delve into the heart of the Mahakumbh Mela. Hi, I am Arzu Seth reporting from Kumbh in Prayagraj, the world's largest public gathering and collective act of faith. Watch the rituals, the celebrations, the profound devotion. Real-time updates. This is the first time when the robotic fire tenders will be used. In-depth reports. Thousands of police personnel are also sitting here taking the instructions that what needs to be done. An expert analysis. We are in the war room where the preparations are being checked. Only on NewsX. अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और NewsX का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। पिछली बार 8 घंटे वाली बिजली चो कोई कट लग्या नहीं लग्या। कट दी गल तां छड्डो, बल्ब ने चमक्का भी नहीं मारना, चमक्का। सानू बिल्कुल भी बिल नहीं आंदा। असीं बहुत खुश हां कि भगवंत मान सरकार ने साडे ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। जो साडे सीएम भगवंत मान जी ने उन्होंने हरेक वर्ग ਨੂੰ देखते हुए सारे ਜਿਹੜੇ वादे है वो पूरे करते हुए साडा बिजली का बिल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ है वो 0 आया है। मैं एक दिहाड़ीदार बंदा हैगा ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी आंदा नहीं हैगा जद आप भगवंत मान की सरकार बनी है जी। मुंडा सानू छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था, माँ 3500 रुपया, कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया बनना चाहिए। Hello and welcome. You're watching NewsX with me, Devika Chopra, and our rolling coverage of the elections in the national capital, where 70 seats are up for grabs, and New Delhi, as well as Delhi NCR, of course, is witnessing a three-way battle between the Aam Aadmi Party, the Bharatiya Janata Party, and
the Congress. Aam Aadmi Party, remember, won the elections last time with 62 seats. The Bharatiya Janata Party bagged the remaining 8 and the Congress stood at 0. This time around, a fierce battle continues. And of course, the voters have now given their mandate. We are just less than an hour away from the votings officially closing for the Delhi elections. Let's quickly go across to my colleague Pia Man, who joins us with the key numbers of the voter turnout. Indeed, let's take a look at the statistics that have come out. As per the ECI, the overall voter turnout in the national capital stands at 46.55% as per 3 p.m. In New Delhi constituency in particular, the statistic stands at 44.83%. Meanwhile, in Kalkaji, 41.17% of the voters have inked their finger. In Jangpura, 44.07% of the voters have cast their mandate. In Malviya Nagar, the number stands at 41.77%. Meanwhile, in Patparganj, the number stands at 46.63%. In Rohini, in fact, the voter turnout stands at 48.97%. In Rajouri Garden, 45.21% people have inked their finger. In Greater Kailash, 41.62% of the electorate has cast its mandate. In Shakur Basti, the statistic stands at 46.39%. And meanwhile, in Okla, the number stands at 42.70%. But that's not all. Last but not the least, in Balli Maran, the number stands at 45.67%. Back to you, Devika. Thank you so much for that, Pia. Let's quickly go across to my colleague Uday Pratap, who joins us from one of the key constituencies. Uday is standing by at Sundar Nagar, at Kasturba Nagar. Let's quickly cut across to Uday. Well, absolutely, Devika. I'm in fact standing voting now, and if we talk about the roughly the figures over here, it's about 40. Okay, Uday, we'll try to stabilize that connection with you. We're facing some problems there. Let me quickly go across to my colleague Anand Singh, who also joins us on the broadcast. Anand, over to you. Yeah, Devika, look, I am standing just outside one of the polling booths here in Lodi Estate. That is the Atal Adarsh Vidyalaya over here. And as it's already now 1700 hours, means 5 p.m. Only 1 hour of the voting is left on this particular, all the 70 seats of Delhi. And on this particular seat, if we talk about the New Delhi Assembly seat, then it is one of the most high profile seats in this assembly polls, as former Chief Minister Arvind Kejriwal, 3-time Chief Minister Sheila Dikshit's son Sandeep Dikshit, and BJP's Parvesh Verma, they are all in a triangular fight over here. So we will speak to some of the voters over here and try to understand that what were the issues that drove them to come to a conclusion that for which party they should vote for. So we'll speak to some of the voters over here and try to gauge the mood in the heart of the national capital. Ma'am, very good evening. First of all, you voted just now. So what were the things that came into your mind before you went inside the polling booth today? See, India is the, very democratic country. So we have rights to vote. So it's our right to give vote and choose our own government. So there are different people standing. I just don't want to name them. So BJP, Congress, and you can say Arvind Kejriwal, that is Aam Aadmi Party. So I have voted for my own government. So let's see. I don't think much government has chosen, much of the people has chosen that particular person, but I have chosen that person because I want someone new. Because from past few years, we can see BJP is winning, and we can see that he has done a very good job. So हम ये देख रहे हैं सर कि every task every individual is doing, right? But हमें वो चीज़ नहीं मिल पा रही है. हमारी इंडिया आज भी पीछे है. Why? If I ask you,
There are several of the promises that all the political parties have made in this election. So how do you look at these promises, that the guarantees that especially they have announced for women? Some parties saying 2100, some parties saying 2500. Even the charges of corruptions have came up on several of the politicians, and they are trading barbs at each other. Sir, I don't want to speak, for the opposition party, but I want to say about that 2100 and 2500 जो मिल रहा है वुमेन्स के लिए, ठीक है, वो अनएजुकेटेड वुमेन है जिनको मिल रहा है और वो ले रही हैं, बट पंजाब का क्या हुआ? वहाँ पर भी तो प्रोमिसेस किए थे ना, उन लोगों को बाद में पैसे मिले, गो एंड आस्क देम, उन लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिला. एंड द पीपल सेइंग के नहीं अब नहीं देना वोट, ये नहीं करना, और नाउ फिर दिल्ली में स्टार्ट कर दिया 2100 देंगे 2500 देंगे. ठीक है, लालच मत दो, जो करके दिखाना है गवर्नमेंट को पब्लिक के लिए वो करो ना. बच्चे अभी भी अनएजुकेटेड घूम रहे हैं, इस स्कूल में एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, तो कहाँ गई गवर्नमेंट उस टाइम पर जब लाइनों में खड़े होते हैं? अभी हमारे वोट के लिए हमारे घर तक आएंगे, ठीक है, वोट दो, बट जब हमें चाहिए होगी, हमें ज़रूरत होगी हमारे बच्चों के एडमिशन्स के लिए, तो सरकार कहाँ जाती है, कहाँ है वो? Okay, ma'am. Thank you very much. So we'll speak to some of the young youths over here, to whom we will speak and try to understand that what were the things that were going into their minds when they came out to vote today. What were you thinking when you came to vote today? Okay, so firstly thank you for giving me this opportunity. So when I came here to vote, I had a lot of things in my mind. I thought because I don't know what the government is going to do after winning the voting, right? But I think they should work on education system, because if our education system is strong, then our India will grow, right? So I feel that there are some engineering courses or colleges, they are asking for high pay, like their high fees. So I want they should work in that department, because there are a lot of students, those who are not able to pay that much money, and that's why they are lacking education, right? So you are youth, you mentioned about that, how the fees in the engineering college and medical college should be brought down, and government should work on that area. But if we talk about the employment opportunities and basically the issue of unemployment, as you are youth, so number of youths are not able to get jobs. So how do you look at these issues? Were these issues in your mind when you came out to vote for? Yes, obviously. I think, obviously, because students, they are not having right skills, right? If they have right skills, then getting a job will be easier, right? Nowadays, what is happening, our education system is quite theoretical, right? It is not practical. But when we transform into practical, then I think most of the students will be eligible for getting job, right? But nowadays, what is happening, there are a lot of institutes, they are asking for money, and they are running their skill course, right? But if we can provide those skills from the school life, then it will slightly change. Okay. So we'll go across to one of the more voters over here. He is also one of the young voters. So what was going in your mind when you came out to vote today? I think keeping basic needs, whatever we as human need, let's say basic needs are the health sector. We need our education should be, better, and transportation should be easy and convenient, and other things, which are very basic. So. Okay, Anand, we seem to be having some issues there with you. Mehndi Gar, my colleague, joins us from the New Delhi constituency. Mehndi, over to you. Well, Devika, as Delhi goes into the final hour of voting, we are on the polling booth in the New Delhi Assembly, and you can see that still people are coming out of the polling centres after, casting their vote. We'll try to have an understanding with them as well. Sir, आपने अपना vote cast किया? जी. क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में वोट डालने से पहले न्यू दिल्ली विधानसभा को लेकर? वोट डालना जरूरी है, इसलिए डाल दिया, हमारी ड्यूटी है. वोट डालने के साथ हमें कॉम्प्लीमेंट्री एक प्लांट मिला, और क्या चाहिए. तो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी उससे आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखेंगे? बस थोड़े सामाजिक मुद्दों पे ध्यान दे, थोड़ा पॉवर्टी वगैरह लाइन पे ध्यान दे, और एजुकेशन को लेके ध्यान दे, ताकि पॉवर्टी लाइन ऑटोमेटिकली कम हो दिल्ली में. और दिल्ली क्योंकि सेंट्रल है, तो दिल्ली का जब ग्रोथ होगा तो ऑलरेडी पूरा इंडिया ग्रोथ करेगा.
That's right. So on, the developmental issues, people have voted in the New Delhi Assembly, and talking about this particular Assembly seat also, Devika, it is a VVIP seat because, all the VIP candidates, whether it's Aam Aadmi Party's convener Arvind Kejriwal, from BJP Parvesh Verma is contesting, and from the Congress Party Sandeep Dikshit is contesting from this particular Assembly, and people are talking about various issues. And when we talk to the people as well, Devika, then yes, the local issues were in the minds of the people before casting their vote. We'll try to have an understanding with some more voters as well. मैम, आपने अपना वोट कास्ट किया? नई दिल्ली विधानसभा को लेकर क्या बड़े मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि ठीक होने चाहिए, जिन पर सोच विचार और ज्यादा करना चाहिए सरकार को? वैसे तो काम बहुत है। तो किस तरीके की एक्सपेक्टेशन या आपकी उम्मीद है आगे आने वाली सरकार से? क्या क्या चीजें बेहतर होनी चाहिए, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ी हुई है, तो क्या लग रहा है? पानी का भी है और शिविर का है, ये चीज़ तो होना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी मैम, किस तरीके से उम्मीदें रखते हैं आगे आने वाली सरकार से? बस यही है, जितना बोलते हैं उतना कह दें। हाँ। और शिकायत का मौका कम दें, शिकायत का मौका ना दे, अच्छा करे, अच्छा काम करे, यही उम्मीद रखते हैं। Right. So yes, Devika, people are expecting that the promises that are being done by the political parties should be fulfilled. Okay. All right. Let me quickly go across to my colleague Uday Pratap Singh, who joins us from Kasturba Nagar. Uday, over to you. Absolutely, Devika. We are in the Defence Colony neighborhood of Kasturba Nagar. That's, of course, the polling booth that you can see behind me. In fact, it's you have just cast your vote. Yes. What were the main issues in your mind today? Well, I think we have the issue of how Delhi has been treated in the last few years. From the time we saw in the last 15 years, I think it's gone downwards. It's all south. And in fact, especially in Defence Colony, I remember I've grown up here, I was born here, and it used to be such a spick and span colony, and today everywhere there's dust and there's water and sewage overflowing, which you could have never imagined in our wildest of dreams. And I would say this colony has been orphaned, if nothing else, and that was the main issue. Plus, I remember in 2010, I joined the Jamuna Bachao thing when Kapil Mishra was a part of AAP and as a student, and here we are. We've seen what Yamuna is, okay, even today. So those are some main issues that we're voting for, right? Sir, the same question for you. What was on your mind today? My answer is also same as Kanupriya, but we really want a change after 28 years. Because it's the air pollution, right, and plus Jamna Bachao Andolan. Yeah. I am especially for Jamna Bachao Andolan. Correct. That has been a big issue for you. It's a big issue for me personally. I'll say that now is time that people want a change, and the time for the change has come, and definitely there will be a different scenario now, and it will be better for the Delhiites. The capital city of the free of pollution. Okay. Quick question today, both on your while voting. वोटिंग के लिए बस इस बार कोई नाम मत लीजिए, मगर बस कोई मुद्दा अगर आपके मन में हो। यही है कि आपको भी पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना अभी जो बजट ही आया है उसी को देख लो, तो इस बार सरकार विधानसभा में हम लोग भारतीय जनता पार्टी बनाती है और बहुत बढ़त है। देखिए ये बीजेपी का ही माहौल बना हुआ है, और वजह क्या है? व्हाट इज द मेन इशू आपके लिए क्या रहा जिसकी वजह से आपने Okay, I have to quickly go across to my colleague Sambhav Sharma, who joins us from Seelampur. Sambhav, over to you. Yes. Well, as I am here in Seelampur and the voting is still underway, I am joined by few of the voters. आप सब लोगों ने अपने वोट कास्ट किए हैं? Yes. आप देख सकते, as you can see here, I'll try to connect with few people here. आपने अपना वोट डाला? जी। किन मुद्दों पे आपने वोट डाला? देखो जी, शिक्षा पे डाला है वोट हमने, और मोहल्ला क्लिनिक पे डाला है, और आम आदमी की जो है आम आदमी पार्टी पे डाला है। आपने किस चीज़ पे डाला है? क्या विचार था जब आप वोट डाले? भाई विचार ये है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने,
बहुत स्कूलों की हालत और अस्पतालों की हालत बहुत ज़्यादा सुधार दी है। महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, जैसे कि बसें हैं और बिजली वगैरह है, पानी है, और अब महिलाओं को सम्मान राशि 2100 रुपये महीना भी देने की उन्होंने बात की है। तो इंशाल्लाह वो सब देंगे और बहुत अच्छा काम किया है। आपने वोट डाला है? जी वोट डाला है। हाँ, किस मुद्दे पे वोट डाला है, किस उम्मीद से वोट डाला है? इसमें आम आदमी पार्टी को वोट डाला है और बसें की सर्विस है, शिक्षा है और 2100 रुपये महीना महिलाओं को देने के लिए बोला गया है। सब इन बातों के लिए आप काफी एक्साइटेड दिख रहे थे शुरू से। आपसे बात करते हैं, आपका नाम? सलमान खान। सलमान खान, अच्छा सलमान जी, आपने किन मुद्दों पर किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डाला? मुद्दे देखो हमारे ऐसे हैं, मुद्दे हमने केजरीवाल ने जो हमें बताए थे वो मुद्दे हम बताते हैं। मेन बात अस्पताल देखो आज के टाइम में कितना सुधार हो गया, ठीक है। और दूसरी बात देखो स्कूल की सुविधाएं कितना अच्छा हो गया, ठीक है। और मेरे बच्ची का नाम जो उसमें संजय पब्लिक स्कूल में नाम आया था और 8वीं तक वो फ्री पढ़ रही है। और ये सब केजरीवाल की देन है जो हमें इस लायक हमें समझा जा रहा है। अच्छा, एक एलिगेशन लगाया गया, एक तरह से आरोप था, दोपहर का समय था, एक तरह से क्लैश यहाँ देखने को मिला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। ये क्या था, क्या मसला क्या था? यहाँ कुछ लोगों से पूछते हैं। मसला ये था सर, ये अफवाह उड़ाई गई थी कि फर्जी वोट डाला जा रहा है यहाँ पर। ये फर्जी वोट डाले जा रही है, अफवाह उड़ाई जा रही थी और यहाँ पर बहुत सारे प्रशासन उनके साथ दिया था, मगर ये हमारे साथ कोई नहीं था। एक भी वोटर को बिना चेकिंग किए नहीं जाने दिया जा रहा है, मोबाइल अंदर नहीं लेके जाने दिया जा रहा है, तो फर्जी वोट कहां से डल जाएगा? ये एक हार का डर है जो बीजेपी को सता रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसे जो एलिगेशन लगाए कि यहाँ फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। बुरके में महिला फर्जी वोट डाल रही है, हमारी महिलाएं फर्जी वोट नहीं डालती। बाहर महिला अगर मारी तो मार्क्स दिखा रही है दुनिया की नजर में, अंदर जाके तो मार्क्स उतार ही रही है ना। बोर्ड आईडी दिखा दी है, आईडी कैसे वो हो जाएगी फेक, फर्जी कैसे हो जाएगी ये तो बताओ। गेट के ऊपर 10 पुलिस वाले एसएचओ साहब खुद खड़े हैं, तो कैसे फर्जी वोट डल सकता है? ये तो बस वही है कि उन्हें दिख रहा है कि हमारे हालात कमजोर हो रहे हैं, इधर उन्हें दिख रहा है कि हमारे हालात कमजोर हो रहे हैं, तो उसे कैसे भड़काओ? वोटिंग को कम करनी है इनकी। बीजेपी यहाँ से हार रही है, सीधी बात है। अनिल गौड़ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, वो एक तरफा हार रहे हैं। पिछली बार जो है, एक मिनट, पिछली बार जो है कौशल मिश्रा को यहाँ से 37,000 समथिंग वोट मिले थे, तो इस बार जो है ये 20,000 वोट भी पार नहीं कर पा रहे हैं। ये 20,000 वोट भी पार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये लोग जो है डर रहे हैं, इनको हार का डर सता रहा है, इसलिए वो ये लोग जो है कहीं ना कहीं जाके छोटी मोटी वो करते हैं। यहाँ पे छोटे मोटे ऐसे बातें होते रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सब प्रशासन ने सब संभाल रखा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, प्रशासन ने बढ़िया संभाला। बाकी यहाँ से झाड़ू एक तरफा जीत चुकी है। Heavy security deployment is seen here in Seelampur area. I'll request my video journalist to pan the camera and show our viewers the wide angle shot of the area. Heavy security deployment, police personnel, Delhi police being deployed here, and this is the last leg of polling, as the polling will be closed at 6 p.m. and voters here are very excited. I'll try to more people, few young. किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है? Okay, let's go back across to Mehndi, who's with us on the broadcast. Mehndi, joining me from New Delhi constituency. Mehndi, over to you. Well, yes, Devika, we are in the New Delhi Assembly constituency, and as you know, some 40 minutes around is left as the voting ends in the national capital. You can see that security has also been tightened in, the particular polling booths that are here in the national, in the central Delhi area, in the New Delhi Assembly seat. Less voters are being observed in the polling stations as of now, but we'll still try to have an understanding whosoever comes out of the polling station after casting their vote. But yes, if we talk about the major issues, then the people of Delhi, and specifically if we talk about the New Delhi constituency, then people were talking about the local issues, the development that should be done in the New Delhi Assembly seat in the upcoming 5 years as well. So yes, the local issues were in the minds of the people, but we'll try to have an understanding as some voters are coming out of the polling booth as well. And talking about the local issues once again, Devika, then yes, the sanitation, the traffic issues, the pollution, and
the river Yamuna still remains in the minds of the people before casting their vote, and it is very much expected that on these major issues that were the talk of the town, we can say from the last 1 month in the national capital, can be the game changers and can be the resulting factors to be turned out. The results will turn out according to these issues, because yes, the voters think about these issues. And now talking about the voter turnout, Devika, then yes, around 3 p.m. the voting turnout was observed to be around 46.55%, which is crossed. So yes, there is an expectation that the voting turnout, voting percentage also turns out to be around 50%. But as of now, very less voters are being observed in the polling booths as well, because some few last we can say minutes are left as the national capital goes into last half hour of the voting today, and 8th February will be the day when the results will come out, and the people of Delhi will get their particular MLAs from different 70 constituencies, and also the chief minister of the national capital. Yes, Devika. Okay, all right. With that, Mendi, we're going to slip into a very quick break, but we're coming up with more of our reporters and voices on the other side. Viewers, stay tuned. Invest Karnataka 2025 is our chance to showcase Karnataka's best to the world. The business community, startups, academia, and even youngsters, I invite everyone to be part of this mega platform. From February 11th to 14th, let the world witness why Karnataka is the best destination to invest. अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और NewsX का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। पिछली बार 8 घंटे वाली बिजली चो कोई कट लग्या नहीं लग्या। कट दी गल तां छड्डो, बल्ब ने चमक्का भी नहीं मारना, चमक्का। सानू बिल्कुल भी बिल नहीं आंदा। असी बहुत खुश हां कि भगवंत मान सरकार ने साडे ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। जो साडे सीएम भगवंत मान जी ने उन्होंने हरेक वर्ग ਨੂੰ देखते हुए सारे ਜਿਹੜੇ वादे है वो पूरे करते हुए साडा बिजली का बिल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ है वो जीरो आया है। मैं एक दिहाड़ीदार बंदा हैगा ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी आंदा नहीं हैगा जद आह भगवंत मान की सरकार बनी है जी। मुंडा सानू छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था, माँ 3500 रुपया, कहना ऐतकी जीरो आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। केजरीवाल जी जरा अपने झूठ के जाल में थोड़े लपेट में आ गए। जितने भी देश के भ्रष्ट लोग थे वो बीजेपी में जाके संत बन गए। एवरीबडी वांट्स टू गेट देयर ओन टैक्स रेवेन्यूज बैक एंड दिस इज आम आदमी पार्टीज पर्सनल टैक्स। पीपल आर सेइंग सोमनाथ जी बी रेस्ट एश्योर्ड विल गिव यू अनदर चांस। चुनाव जो है मैं नहीं लड़ रहा, यहाँ की जनता लड़ रही है।
और जनता ही यहाँ पे मुझे विधायक के रूप में देखना चाहती है। 66% of you feel that the roads in Delhi are not up to mark. I am proud to highlight Karnataka's crucial role in driving innovation in the aerospace and defense sector. Karnataka contributes to 65% of India's aerospace-related exports and caters to 70% supplier base for India's aerospace and defense industry. Supported by robust infrastructure, skilled talent, and global partnerships, Karnataka is shaping the future of India's aerospace aspirations. Invest Karnataka 2025 will further solidify our state's position as a preferred investor destination for aerospace and defense companies. This budget has given us a very good allocation of 2,52,000 crore. मिडिल क्लास को तो टैक्स मुक्ति कर दी. Biggest relief as far as income tax concession is concerned. A very major bonanza for the middle class. State governments are now being offered 1.5 lakh crore of interest-free loans. You're bringing in a new income tax bill, which is wonderful, and we're looking forward to that. The biggest boost this budget has given is perhaps to the middle class. More important is the implementation, the serious implementation on ground now. It's a well-rounded budget, while the social sector and growth being the major focus. From the banks of the holy Ganga, where millions gather in devotion. The spectacle of spirituality once every 12 years. We delve into the heart of the Mahakumbh Mela. Hi, I am Arzu Seth reporting from Kumbh in Prayagraj, the world's largest public gathering and collective act of faith. People of Delhi are coming in huge numbers to cast their vote, and right now we are in the east part of the national capital from the Patparganj constituency, where joining me is former mayor of the national capital विपिन जी. आपने वोट कास्ट कर दिया है, आज बहुमत में लोग वोट कर रहे हैं, अच्छी परसेंटेज अब तक रिकॉर्ड हुई है और आगे भी होप करते हैं कि लोग वोट करेंगे, आगे आएंगे. क्या मुद्दे हैं ऐसे जो दिल्ली के लिए सबसे अहम है इस समय? क्या सोच के मतदान करने के लिए लोग आए, उन्हें बताएं. देखिए, दिल्ली में बहुत बड़ा उत्साह है और लोग उत्साह के साथ आज अपना मतदान कर रहे हैं कि दिल्ली में स्वच्छता के लिए, दिल्ली में साफ पानी के लिए, दिल्ली में सीवर की सफाई के लिए मूलभूत सुविधाएं जो है वो अच्छी हो, और लोगों को ये उत्साह है कि ये जो व्यवस्था है मूलभूत, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ही दिल्ली में दे सकती है. इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों उत्साह में मत कर रहे हैं. मैं भी अपना देखिए मतदान किया, अपने सभी दोस्तों के साथ जा करके, आप लोग भी दिखाएं अपना उंगली, सभी लोगों ने जा करके मतदान किया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ताकि एक नरेंद्र मोदी जी के सिपाही दिल्ली का मुख्यमंत्री बने और दिल्ली को एक स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनाने का कैंपेन में तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, एक से बढ़कर एक नारे भी लगे हैं. लिकर स्कैम को लेकर बात उठी है तो कांग्रेस ने भी उंगली उठाई है बीजेपी पे कि वो इन्फ्लुएंस कर रही है, और ऐसे तमाम मुद्दे हैं दिल्ली में जो विकास से भी आगे हैं और बड़े बने हैं कैंपेन में भी, और प्रत्याशी भी बोल रहे हैं. तो कितना फर्क पड़ता है इन सब बातों का? देखिए, केजरीवाल जी का झूठा वादा, अब जनता सारी चीजें समझ गई है कि कोई भी वादा उनका जो कहा हुआ पूरा होता नहीं है. उन्होंने कहा था दिल्ली वालों को कि हम दिल्ली को साफ पानी देंगे, उन्होंने पानी नहीं पिला पाया. दिल्ली वालों को बोले थे कि हम जमुना जी सफाई करके देंगे, जमुना जी सफाई नहीं हो पाए. वो बोले थे दिल्ली में हमारी सरकार है, हमको निगम भी दे दीजिए, मैं कूड़ा से साफ कर दूंगा. लेकिन आज दिल्ली कूड़ा हो पड़ी है. हमारा गाजीपुर लैंडफिल साइट आप देखिए, जितना था उससे भी ज्यादा बड़ा लैंडफिल साइट बन गया. तो लगातार जितना उनका वादा किया हुआ था, कोई वादा पूरा नहीं हुआ. उन्होंने महिलाओं के लिए अभी 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं. लोकसभा चुनाव में उन्होंने 1000 रुपए का वादा देकर सबको पर्ची भरवाया, उन्होंने नहीं दिया. पंजाब में उनकी सरकार है, वहां पर उन्होंने 1000 रुपए का फार्म भरवाया, लेकिन उन्होंने 1 रुपए नहीं दिया. लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जो कहती है वो करती है.
Absolutely, Devika. In fact, I'm at the spot of the clash right now. It's in the Musaddi Chowk area of Jangpura, and I will just speak to the BJP candidate also in just a second. Arvind Singh Marwa, he's also just reached the spot. But this is the spot of the this clash, that video which went viral, of course, earlier. The former Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia, had reached over here. He leveled allegations on Arvind Marwa and his supporters, saying that they were taking in women to this building over here, which I'll ask my video journalist to just show you, and in the pretext of giving them food, were also giving them money in lieu of votes. He also objected to the colors of the tables, saying that why are the tables all saffron? Why is the BJP getting 3 or 4 tables and not us? However, this is all something that the BJP has denied, saying that no money was distributed. In fact, Delhi police also reached the spot. Delhi police has also denied finding any sort of cash over here. Also, in fact, the BJP said that Manish Sisodia behaved poorly with the agents of their party, and also with misbehaved with a couple of the women as well. I'm just going to, in fact, go across and speak to Mr. Marwa as well, and try and get in his word on this, what exactly happened over here. Remember, of course, Jangpura is seeing a tripartite contest. Farhad Suri of the Congress is taking on Arvind Singh Marwa of the BJP. Arvind Singh Marwa has been former MLA from this area, from the Congress, though. He switched over to the BJP. Now you have former Deputy CM, also Manish Sisodia. He's moved his seat from Patparganj to this seat of Jangpura. And which is why, of course, the clash is close, but the clash, of course, is interesting over here. The police now has reached in huge numbers. They have managed to bring about a sort of peace and calm now. However, of course, to ensure the peaceful polling goes ahead, reinforcements have also been rushed into this area. अभी हम मौजूद हैं मोती नगर विधानसभा में, जहां पर वोटिंग चल रही है और बीजेपी कैंडिडेट हरीश खुराना ने वोट कास्ट किया है, और हम इनसे सीधे बात करेंगे। क्या वोटर से अपील करेंगे आज की? देखिए, 1 बजने वाला है। मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं, जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला, घर से आएं, वोट डालें। ये लोकतंत्र का अधिकार है आपका, इसको इस्तेमाल करें। और जो दिल्ली में इस वक्त माहौल है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो मोती नगर हो, लोग चेंज चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, और इस विकास के लिए ये वोट हो रहा है। जो नज़र आ रहा है, लोगों के अंदर रिस्पॉन्स है, लोगों के अंदर जो जोश है, वो जोश ये है कि ये जो विधानसभा थी मोती नगर, ये खुराना जी का कर्म क्षेत्र रहा है। हमारी पहचान जो है वो खुराना जी की इसी क्षेत्र की वजह से थी। इसलिए आज वो दौर, वो जो काम हुए हैं, उसके बाद सुभाष जी ने उनका काम, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया। लेकिन 10 साल से समस्याओं का अंबार लगा हुआ था, तो लोग अब डेवलपमेंट के लिए चेंज चाहते हैं। हमने बात करी डेवलपमेंट की, हमने कोई और एजेंडा तैयार नहीं किया। हमने कहा हम क्या क्या काम करेंगे, उस पर हम स्टिक ऑन रहे और उसी पे काम किया हम लोगों ने। क्योंकि आपके पिताजी दिल्ली के 1993 से मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री माने जाते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली का जो विकास मैन उनको कहा जाता था। लेकिन बीजेपी का गढ़ होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। सर देखिए, उनके पास मुद्दे नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं सड़कों की, टूटी सड़कें क्यों हैं, वो आरोप लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि पानी साफ क्यों नहीं आ रहा, वो आरोप लगा रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि आपने दिल्ली को यमुना साफ करनी थी, वो ईवीएम पे दोष करेंगे आज के बाद। काम उन्होंने किया नहीं, इसलिए उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, लोग आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में देखना चाहती है। केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री देखते हुए वो वोट कर रहे हैं। और जो डबल इंजन की सरकार दिल्ली में जो डेवलपमेंट करेगी, निश्चित तौर के ऊपर ना सिर्फ दिल्ली बल्कि मोती नगर विधानसभा का भी भला होने वाला। Polling has commenced in the national capital and it's in fact the early morning hour. Joining me right now is Delhi BJP President Virendra Sachdeva ji. सर, मतदान शुरू हो गया है और आज दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव के लिए जो जंग है वो छिड़ चुकी है। आपने मतदान किया है, मतदान दिखाइए और बताइए कि दिल्ली में अब जो लहर है वो किस तरीके से आने वाली है। देखिए, दिल्ली इस बार बदलाव चाहती है और मैं आपके माध्यम से सभी दिल्ली वालों से अपील करता हूँ, बाहर आइए, अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ, पड़ोसियों के साथ बेहतर दिल्ली के लिए, विकसित राजधानी के लिए डबल इंजन की सरकार बनाइए। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए वोट दीजिए। गंदे सीवर, गंदा पानी, बढ़े हुए बिजली के दाम, टूटी हुई सड़कों के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट कीजिए।
कल जिस तरीके से शाम को देखा गया है, शाम को आप लोग भी गए हैं, कंप्लेंट भी आपने रजिस्टर कराई है, ईस्ट दिल्ली की ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर आपने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? और देखा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। कल लक्ष्मी नगर में हमारी एक पूर्वांचल बहन है विभा झा, उसके साथ मारपीट की गई है, FIR दर्ज हुई है, तीनों आम आदमी पार्टी के गुंडे हैं। उसी तरह से हमने देखा मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, उनका सहयोगी 5 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा जाता है। साथ में जो दूसरा व्यक्ति पकड़ा जाता है वो दिल्ली के शिक्षा विभाग में कर्मचारी है। तो पूरी की पूरी अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर गुंडई, शराब और पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहती है तो दिल्ली की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। और दिल्ली के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इतने वोटर्स आ रहे हैं और इतनी बड़ी जंग छड़ी हुई है। ईस्ट में भी पटपड़गंज से लेकर मयूर विहार हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बड़े बड़े दावे हैं। बीजेपी के लिए क्या उम्मीद रख रहे हैं? पूरी दिल्ली में आप नरेला से शुरू कीजिए और करावल नगर तक जाइए, पूरी दिल्ली में बदलाव की लहर है। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट कर रहे हैं, लोग अरविंद केजरीवाल के झूठ के खिलाफ वोट कर रहे हैं, लोग विकास चाहते हैं और विकास और विश्वास का एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। इसलिए लोग डबल इंजन की सरकार। BJP's National General Secretary is with me. Arun Singh ji is there with me. Sir, you have casted the vote and right now we are in Mayur Vihar. दिल्ली में मुद्दे जो हैं वो बहुत कंट्रोवर्शियल बन चुके हैं। मयूर विहार, पटपड़गंज की सीटों पे भी बहुत बड़ी चर्चित बातें रही हैं। क्या सोच के वोट हुआ है और क्या अपील करते हैं? देखिए, दिल्ली में रहने वाले लोग सबने देखा है कि दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ है। दिल्ली में अभी भी अधिकांश एरिया में स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिलता, सड़कें टूटी हैं और ट्रैफिक की समस्या है। लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा भी नहीं मिल रही है और केवल अरविंद केजरीवाल इनकी सरकार को झूठ बोलती है और झूठ बोल करके के साथ साथ केंद्र से झगड़ा करती है। ये बहुत बड़ा इशू है कि आप झगड़ा करके तो किसी प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। केंद्र सरकार से झगड़ा करना, मोदी जी को रोज सुबह से लेकर शाम तक गाली देना, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। और बिल्कुल हवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे दिल्ली में चल रही है और आज देखिए घरों से निकल करके लोग मतदान कर रहे हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कोई होता है तो आज का ही दिन है और लोग हर्ष उमंग के साथ निकल भी रहे हैं और बड़ी संख्या में निकल करके मतदान करना चाहिए दिल्ली के भविष्य के लिए। और जो यहाँ पे जो विभिन्न प्रदेशों से आकर के जो लोग रह रहे हैं उनकी BJP MP Bansuri Swaraj over here, who's of course just cast her vote. In fact, कोई नहीं, बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि लोकतंत्र का महापर्व है, कृपया आइए, भारी संख्या में आकर मतदान करिए, विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी दिल्ली बने, इसके लिए अपना डेमोक्रेटिक राइट जरूर एक्सरसाइज करिए। Ma'am, in English once, very quickly, you've just cast your vote. What would be your message to the voter? We're live right now on NewsX. What would you say to them? We're seeing a very early, slow trickle over here. Would you encourage more people to come? I will request every single Delhiite to come and kindly exercise his and her democratic right today, because this is a festival of democracy in Delhi, and in order to show and ensure that Viksit Bharat का संकल्प उसको हम सिद्धि तक लेकर जाएं, आपका यहाँ आना बहुत जरूरी है। What issue was in your mind, ma'am, when you cast your vote? What issues were in my mind? The fact that I want double engine की सरकार का जलवा in Delhi as well. One English might come. So that of course is Bansuri Swaraj. She's just cast her vote over here. She's of course the BJP member of parliament from this seat where Arvind Kejriwal of course is in the contest, and Parvesh Verma of course of her party. Also of course Sandeep Dikshit of the Congress Rishabh. She's saying that she's cast her vote on the issue of double engine sarkar. She's cast her vote on the issue of Viksit Bharat. We are in Patparganj Assembly constituency of the Delhi voting, where in fact voting is underway. Over a lot of participation by the voters has been witnessed, but what importantly has been coming to surface at this point of time is a case of the discrepancy for the voters. Now this is the voter that we have in fact got a hold of, who has come to vote and has been told at the polling station here in Patparganj that his name has been deleted from the list, while he has that slip
through which he can cast his vote. And right now let us also speak to the person who is in charge of the polling booth. जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, तो ये क्या है ऐसा? अगर इस लिस्ट के अंदर जो पोलिंग एजेंट से निकली है, बहुत सारे नाम डिलीटेड में आए हुए हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर डिलीटेड लिखा हुआ है। हाँ, ये आम आदमी पार्टी हमारे पे हमेशा आरोप लगाती रही है कि हमारे वोट काट दिए गए, हमारे वोट काट दिए गए। ये हमारे भाजपा का पिछले 38 साल से वोटर है और ये देखिए इसकी स्लिप निकल रही है, यहाँ पर लिस्ट में नाम डिलीटेड दिया गया है। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये भाजपा काम करवा रही है या आम आदमी पार्टी ये काम करवा रही है? आप इनके मुंह से खुद पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है जब ये अंदर गए हैं। आपको क्या बोला गया जब आप अंदर गए? अंदर गए बोला कि वहाँ डिलीट हो गया है। तो आपने बोला कि हमें दिखाओ? नहीं, हमने वहाँ तो बोले कि हम तो हर साल वोट डालते हैं यहाँ पर, 34 साल से हम रह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो बोला कि वहाँ जाके बाहर पता लगाओ। अच्छा, तो आपको ये स्लिप मिली? लेकिन स्लिप लेके गए थे हम। हाँ, स्लिप लेके गए थे। स्लिप लेके गए? हाँ, स्लिप लेके गए। लेकिन आपके घर में कोई पूछताछ करने नहीं आया? कोई पूछताछ हमारे घर पर आई नहीं कोई। अच्छा, कोई और अपने आप डिलीट हो गया आपके कहने के? हाँ, अपने आप हुआ है। अच्छा, तो आप जब अंदर गए तो आपको बोला कि आप वोट नहीं कर सकते? नहीं, वोट नहीं डाल सकते हो। आप वोट नहीं डाल सकते। And we can see actually this is a list that we have surfaced from the polling agent, and the list has many names deleted. Now it is also of the concern that if at all these people have turned up like this person here on the polling assembly constituency or not, or if at all they have been removed from the list. This is the latest revised list that the polling agents have on the day of the polling, and they cross check and then they give the slip. This person has got the slip, but the name from the list has been deleted, and now in fact the polling officer is also polling BJP polling observer is there with me right now. जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आ रही है, तो अब इस पे इनका वोट नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं इस लिस्ट में से जो आए हो यहाँ पर और फिर वो वोट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से वोट भी पूरे तरीके से नहीं पड़ पाएंगे। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आज सुबह से हम इतने परेशान हो रहे हैं। जो हमारा रियल कास्ट वोटर है, जो हमारा झुग्गी झोपड़ियों से बेचारा सुबह काम करके शाम को आता है और वो इतनी अभिलाषा रखता है कि 10 साल में जो इतनी हमारी दिल्ली पीछे जा चुकी है उसके लिए वो चाहते हैं कि विकास हो और सारी चीजें। ये आदमी वोट नहीं दे पा रहा है। आप खुद लगाइए कि अगर ये हालात दिल्ली में रहेंगे, क्योंकि हम सुबह से परेशान हो रहे हैं, मैक्सिमम वोट हमारे टर्न बैक बिकॉज ऑफ ओनली दे हैव डिलीटेड देयर वोट्स। तो मैं इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार इसको रिवाइव करिए और आने वाले टाइम में ऐसा ना हो, इस पे आप हमारे को आश्वासन दीजिए। Well, this is the kind of instance that has come forward from this particular constituency and this particular booth in fact, the Chila village, where the polling discrepancy has witnessed the discrepancy in the voter list and the person who is there on the ground. They are turning back, is what people can understand. A huge number of people could have also turned back because there are lots of people whose names have been marked as deleted in the list. This is Simran for NewsX with video journalist Himanshu. Voting is underway in the parts of the national capital, and what we are in fact witnessing is a good voter turnout, specifically focused in the East Delhi constituencies in the national capital. And when we talk about from in fact this constituency where the BJP candidate from Karol Bagh, Dushyant Gautam, has also cast his vote, voters are coming out, women are there are children, there are first time voters, the elderly, the physically disabled, everyone is coming out to vote, and in fact the huge participation has been witnessed also in the parts of national capital. आज वोट डाला है आपने, मतदान बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे हो रहा है, लोग भी आ रहे हैं, किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए वोट डाला गया? मैम देखिए, अब मुद्दा तो एकदम क्लियर है कि हमें बच्चों को स्कूल, हमें इलाज, हमें सड़क, हमें नाली, जो बेसिक मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात विडंबना ये है भारत देश की कि आज तक आप देखिए कि स्कूलों में आज भी आप प्राइवेट स्कूल बहुत धड़ल्ले से चल रहे हैं और स्कूल की फीस बराबर बढ़ती जा रही है। सरकार का ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि स्कूल फ्री होने चाहिए या कम दाम में। दूसरा, इलाज, अस्पतालों पर किसी का ध्यान नहीं है। हमारे बड़े बड़े नेता सभी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर इलाज इतना महंगा हो गया मैडम, इतना महंगा हो गया कि आप जाइए तो पता लगता है कि भैया लूट लेंगे वेंटिलेटर पर, अनावश्यक खर्च और ये सब चीजें। तो मेरा ये गवर्नमेंट से निवेदन है आपके माध्यम से कि स्कूल को फ्री किया जाए,
अस्पताल सोशल संस्था माना जाए, कोई भी व्यक्ति उससे प्रॉफिट ना कमा पाए। क्योंकि कारण क्या है, आम आदमी को इन दोनों से बड़ी दिक्कत हो रही है, जो आम आदमी की जेबें इन दोनों पे खर्च हो रही हैं। पर देखा जाए तो मुद्दे जो हैं दिल्ली में और भी हैं, वेलफेयर स्कीम के हैं, सब कुछ तो फ्री मिल रहा है, दिल्ली की सरकार कहती है, तो वोटर्स उससे भी तो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ये तो आप लोगों की मांग है, पर जो दिल्ली की सरकार फ्री में बस, फ्री की बिजली, फ्री का आपका पानी, इन मुद्दों से क्या फर्क नहीं पड़ता आम आदमी को? देखिए मैडम, क्या है कि जो फ्री की बात कर रहे हैं, तो फ्री तो इसी तरह है कि वो अपने घर से तो कोई पैसा ला नहीं रहे। हमारे आपके टैक्स के पैसे को जो यूटिलाइज करते हुए आपको संस्थानों पर बर्डन जो दिया जा रहा है, वो पैसा आपकी टैक्स के कहीं विकास कार्यों में खर्च होना था, उसको आपको फ्री के कार्यों में खर्च किया जा रहा है। कोई व्यक्ति अगर अपनी जेब से कहीं अमेरिका से पैसा लाए, जर्मनी से लाए, समझ में आता है। हम आप जो टैक्स देते हैं उसी को वो फ्री कहते हैं। फ्री कहाँ हुआ? हमारा आपका विकास का पैसा नदी नालों और जो स्कूलों और सरकारी व्यवस्थाओं, अस्पतालों व्यवस्थाओं पे खर्च होना था, उससे कहा गया बिजली फ्री कर दी, उससे कहा गया पानी फ्री कर दिया, उससे कहा बस फ्री कर दिया। तो आपका रेवेन्यू कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हुआ है और उसकी वजह से आपके विकास कार्य। देखिए, बिल्कुल इंडिया न्यूज़ लगातार वोटर से अपील कर रहा है कि वो पोलिंग स्टेशन आए और वोट करें, और इसका नज़ारा आप देख सकते हैं, लोगों में उत्साह है। दिल्ली वासी सुबह से ही 7 बजते ही पोलिंग पहुंच चुके हैं, ये आप देखिए, और ज्यादातर महिलाएं दिख रही हैं। स्टेशन पे जो पहला वोट डाल रहा है उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया गया है, ये आप देखेंगे डीएम की ओर से। जो डीएम ऑफिस है, आप देख सकते हैं, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस, उषा मित्तल है, इनको दिया गया। इनसे हम सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उषा मित्तल। उषा जी, एक सर्टिफिकेट मिला, कहते हैं कि ये लोकतंत्र का महापर्व होता है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये हमारा मूलभूत अधिकार है और हम के लिए वोट डालने आए हैं। मैं एज प्रिंसिपल रिटायर हुई हूँ, तो इससे पहले मैंने सेक्टर ऑफिसर की ड्यूटी 3 बार करी थी, पर अब रिटायरमेंट के बाद ये मेरा दूसरा टर्न है जब मैं अपनी वोट डालने यहाँ पर आई हूँ। और मैं सबको अपील करूँगी, वोट किसको दे ये उनका अपनी समझ है, पर वोट डालने हर व्यक्ति को अवश्य आना चाहिए, क्योंकि ये सर्वप्रथम अधिकार है। क्योंकि आप जो है सो चलने फिरने में असमर्थ हैं, और उसके बाद भी व्हील चेयर पर आप आई हैं, पहला वोट डाला है आप? हाँ जी, व्हील चेयर मेरे लिए कोई ये साधन नहीं है। यदि शायद मैं पहले आती तो इससे भी पहले आती थोड़ा सा, बट आई वॉज वेटिंग फॉर माई हेल्पर, इसलिए मुझे टाइम लग गया में। तो व्हील चेयर डजेंट हिंडर मी इन कास्टिंग वोट। अब बिल्कुल आप सोच सकते हैं, ये जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए किस तरह की दिक्कतें होती है, उसको वो मुद्दा बना करके वोट कास्ट करने के लिए गए हुए हैं। और लोग आ रहे हैं, इनसे हम सीधे बात करेंगे, क्योंकि ये आदर्श पोलिंग स्टेशन है। चुनाव रुक जाइए, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। आपने वोट डाल दिया? हाँ जी। क्या मुद्दे आपके लिए है? सर मेरा कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है? तो आपने सोचा होगा ना कि हमारा विधायक कैसा हो, हमारे लिए क्या काम करे? नहीं, मेरा कोई मुद्दा नहीं है। नहीं मुद्दे हैं। चलिए, तो ये है। आप लोग रुक जाइए, आप लोग वोट डाल करके आ रही हैं? हाँ जी। पहली बार वोट डाला है? हाँ जी। क्योंकि इस बार दिल्ली में 52,000 जो है पहली बार वोट डालने वाले मतदाता हैं, और आप लोग युवा भी हैं, क्या कहेंगे आप लोग? क्या वोट डाल के बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत अच्छा लग रहा है मैं पहला वोट डालकर। क्या आपने सोचा वोट डालते हुए कि कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए जिसकी वजह से आप वोट डालने आई हैं? ऐसा तो हमने कुछ सोचा नहीं, पहला वोट था। वैसे स्टेट इलेक्शन है तो इसमें लोकल इश्यूज रहेंगे कि एग्जैक्टली आपके लिए काम कौन कर रहा है ऑन ग्राउंड, क्योंकि अगर नेशनल इशू देखा जाए तो वहाँ पे तो आप सेंट्रल को वोट देते हैं, बट यहाँ पे आपको देखना है कि आपके लिए आसपास आपके काम कौन कर रहा है। वैसे अभी के टाइम पे ये है कि आप एजुकेशन पे ध्यान दो, स्कूल्स बनवाओ, एजुकेशन पे ध्यान दो, एंड देन आप जैसे पब्लिक फैसिलिटीज़ जितनी प्रोवाइड करोगे पब्लिक के लिए उतना अच्छा है। एंड सेकेंडली दूसरी चीज़ ये है कि आप देख लो टैक्स कहाँ लग रहा है, कौन सी स्टेट में ज़्यादा लग रहा है, कौन सी स्टेट में कम लग रहा है, तो आप उस हिसाब से कंपेयर कर सकते हो कि अभी तक दिल्ली में जिस हिसाब से फैसिलिटीज़ दी गई हैं और क्या दे दी जानी चाहिए, तो उस हिसाब से आपको वोट देना चाहिए। यही है बेसिकली। इशू तो लोकल इशू रहेंगे अभी जो विधानसभा के चुनाव हैं उसके लिए। और मैं जो अभी यहाँ पे एज्यूम किया है, इतने साल से रह रहा हूँ, थोड़ा सा जैसे पानी सीवर लाइन ब्लॉक हो जाती है, ये सब चीज़ें पानी का इशू है, मेजरली अभी पानी का इशू है। और बाकी तो बहुत सारे छोटे छोटे इशू हैं। फ़िलहाल
जो है, मेरा मानना ये है कि अभी जो गैप चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो पूरा होना चाहिए। कंबाइन होकर तभी गवर्नमेंट ठीक से काम कर पाती है। हमारे यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा, जैसे बारिश हुई थी बहुत पानी भर गया था। ये सीवेज का है, ये सामने डी ब्लॉक में हमारा सी ब्लॉक है, हमारा नहीं आता इस टाइम, इस बार ही आया, पर लास्ट बहुत लोगों का नुकसान हुआ। हमारा ही जिसमें नहीं आता, फर्स्ट टाइम बहुत कम आया था पानी, फिर भी 20,000 का नुकसान हो गया। और सामने वालों के तो सारे फर्नीचर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो बहुत नुकसान हुआ, लाखों का लोगों का नुकसान हुआ। वो नहीं होना चाहिए, उसमें तो ज़्यादा होना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो फ्री वीज है ना, हम तो इससे परेशान हैं। हम टैक्स पेयर जो अननेसेसरी देते रहते हैं और हमारी कॉलोनी का डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि फ्री वीज में सारा बांट देते हैं और एडवर्टाइजमेंट अपनी सेल्फ प्रेस करते रहते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वी आर टोटली अगेंस्ट इट। ये अबॉलिश सुप्रीम कोर्ट से हो जाना चाहिए, मतलब दे शुड नॉट बी अलाउड। दूसरी बात ये है कि जो जिनकी कैंडिडेट्स की इमेज टार्निश है, उनको मतलब परमिशन नहीं मिलनी चाहिए इलेक्शन करने के लिए। You think the issues will be local or national? This time it is of course local, I mean for Delhi, but what I said, it is valid for the whole India. तो आपके जहन में क्या बातें चल रही थी जब आप वोट देने के लिए आए थे? जीवन जीने के लिए दो मूल चीज़ें हैं, हवा और पानी। ये दोनों शुद्ध होने चाहिए। बिल्कुल ही खराब स्थिति में है इस समय दिल्ली में। अच्छा, तो क्या लगता है पिछले 10-11 सालों में काम नहीं हुआ है? क्योंकि सारी पार्टियां जो हैं, उन लोगों ने सबने काफ़ी वादे किए हैं दिल्ली को लेकर। इन दोनों मुद्दों पे कुछ भी काम नहीं हुआ। पिछले हम 30 साल से इसी एरिया में रहते हैं और इन दोनों मुद्दों पे कोई भी काम नहीं हुआ। पानी भी और ज़्यादा प्रदूषित हुआ है, हवा आप सब लोग देख रहे हैं। आप भी सुबह सुबह आई हैं वोट देने के लिए। चुनाव आयोग भी कहता है पहले मतदान फिर जलपान। तो क्या मन में चल रहा था आपके जब पोलिंग के लिए आई? पहला नंबर तो सब लेडीजों के लिए मतलब सुरक्षा, बच्चों के लिए सुरक्षा, पढ़ाई लिखाई का, मतलब यही बिजली पानी और हवा तो बहुत बड़ी मुद्दा है। आपने अपनी इंक भी दिखा दी। तो क्या मुद्दे थे जब आप गए थे पोलिंग के लिए अंदर? तो क्या आपके मन में चल रहा? मैंने अपना वोट प्रदूषण को साफ करने के लिए दिया है, इसलिए हर कोई इंसान चाहता है। Karnataka is the 4th largest automobile producing state in India, contributing 8.5% to the nation's vehicle production. The state also has the highest number of EV charging stations, boasting an impressive 5,765 public stations. We were the first to introduce an EV policy in 2017 and will soon unveil a clean mobility policy at our upcoming Global Investors Meet. Backed by our progressive policies, world-class infrastructure and a skilled workforce, Karnataka is paving the way for growth in both traditional and EV sectors. Join us at Invest Karnataka 2025 and be a driving force in the future of automotive and EV innovation. अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और NewsX का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। पिछली बार 8 घंटे वाली बिजली चो कोई कट लग्या नहीं लग्या। कट दी गल तां छड्डो, बल्ब ने चमक्का भी नहीं मारना, चमक्का।
ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था? माँ 3500 रुपया कहना ऐसी जीरो आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। I'm Uday Pratap Singh reporting from New Delhi constituency for NewsX. I'm Simran Babbar reporting for NewsX from Patparganj and Gandhinagar in East Delhi. Tawid Hussain reporting from Okhla Vidhan Sabha for NewsX. Hi, this is Brian Anthony Thomas reporting from Lodi Estate for NewsX. I am Aditya Kumar reporting from Sakurbasti and Rohini seat for NewsX. Hello, I am Sambhav Sharma from Mustafabad for NewsX. I am Anand Singh reporting from Karol Bagh for NewsX. Karnataka is India's ultimate startup destination with over 14,000 registered startups and 45 unicorns. Bangalore, proudly known as the nation's startup capital, ranks 3rd globally in the number of startups, cementing its place as a powerhouse of innovation. The city also has 144 incubators and accelerators and 1,500 plus VC funds. Karnataka's success is further driven by strong industry, government collaboration, a bold entrepreneurial spirit, and cutting-edge R&D hubs of global giants. As we approach our global investors meet, I eagerly look forward to recognizing and rewarding the startups shortlisted through Venturize, our international startup challenge. Venturize is set to boost startup ecosystem and drive innovation and entrepreneurship across the country. Join us as we accelerate growth and shape the future through Invest Karnataka 25. Hello and welcome. You're watching NewsX. I'm Megha Sharma. Voting now is over. It has concluded and the Election Commission has recorded a total turnout of 57.7%. This was up until 5 p.m. All eyes are set on the exit polls in the next hour. But before we reflect on the numbers, we are roping in our experts and analysts to gauge the pulse of the people. Before we go to the expertometer, let's get Pia on the telecast with us. And Pia, give us the numbers 6 p.m. What is the total voter turnout? Now, the latest numbers recorded by the Election Commission, the voter turnout stands at 57.70% as for 5 p.m. Meanwhile, in New Delhi, 54.27 people, percentage of the population has inked their finger. In Karkaji, 51.81% of the people have cast their mandate. In Jangpura, 55.23% is the voter turnout. In Malve Nagar, 52.07% of the people have cast their mandate. Meanwhile, in Patparganj, 57.74% is the statistic recorded till 5 p.m. today. In Rohini, meanwhile, the number stands at 60.22%. Let's also take a look at Rajouri Garden in particular, where the voter turnout stands at 58.96%. In Greater Kailash, the number dips a little bit to 52%. Meanwhile, let's also take a look at the number recorded in Shakur Basti. 59.21% of the people have inked their finger till 5 o'clock. In Okhla, 52.77% people have cast their mandate. And last but not least, in Balli Maran,
59.56% of the people have cast their vote. Back to you, Megha. All right, thanks Pia for giving us all those numbers. Let's begin with our expertometer. Expertometer is to gauge the pulse of the people, but particularly the 5 guests who join me very shortly, and we ask them to stick their neck out and give their best estimate of how the numbers will tally up. This is right before the poll of polls that will be conducted, and you will be privy to all the numbers in just about an hour's time. But let's start with NewsX Expertometer. Joining me on the telecast first up is Sumit Peer. Sumit, thank you very much. And let's take a look at the numbers. So what is your estimate of the numbers that each of the 3 parties will be able to garner, and who do you think will win the election? Megha ji, thank you as always having me on your show. Pleasure always to be with you. Well, looking at that today, it's going to be a very sensational election. My numbers are, I'm pessimistic with my numbers. I am giving 37 to BJP. I am given 2 to Congress and giving 31 to Aap. That is my number. That is how, to me, the number breakdown looks like. BJP is going to make it because I've been seeing the mood. I have been analyzing the trends. I don't feel like that there is a lahar or a wave for Kejriwal. The kind of a wave which I've seen in the previous elections. Well, that wave is completely missing, and his image has taken a major dent. And if you look at the voter turnout, 57.7%, it's not a major change in the voter turnout as well. So let's not expect a altogether different result. That is where I would put my numbers on. Okay, all right, and let's take a look at specific VIP constituencies and the star candidates who are fighting the election. It is the New Delhi constituency. Let's start with that. Obviously, the Aam Aadmi Party national convener Arvind Kejriwal is fighting the election. He has won it successively in the previous elections as well, in 2015, in 2020, and now talking about 2025. What do you think? Do you think there is going to be a tough fight that will be given by the BJP's Parvesh Verma and of course Congress, Sheila Dikshit's son Sandeep Dikshit fighting the election this time? There's definitely going to be a very, very tight fight because Sandeep Dikshit is a heavyweight, Pravesh Verma is a heavyweight, Kejriwal is a heavyweight. We have to see where do the trends go. But I think looking at, because it's a triangular fight now, it's not a two-way fight, I am seeing advantage to Pravesh Verma. If he can pull his cards a little bit, I think Kejriwal, the kind of fiascos he has been trying to create for a lot of few days is in big trouble. Unfortunately, Mr. Dikshit may not be able to make it, but he is going to give a run for money to Kejriwal. And if he gives a run of money to Kejriwal, it's advantage Mr. Verma. That is how the equation looks to me. Okay, I'm also going to pick one very interesting constituency, which is the Okhla Assembly constituency. This time around, of course, Amanatullah Khan, the veteran of the Aam Aadmi Party who has been winning Okhla constituency for the last 3 terms consecutively. But this time around, there is the AIMIM who has decided to field a candidate from the Okhla constituency. How is this going to tally up? And will it be to the benefit of Aam Aadmi Party? Will there be reduction of votes for Aam Aadmi Party and Amanatullah Khan this time? I think this will be completely advantageous to the Congress Muslim candidate. And don't be surprised, Meghaji, if Okhla and Selampur goes Congress's way. The 2 seats which I'm giving them is for considering Okhla and Selampur only. I'm not betting my neck on any else seat because there is a chance, because there's a lot of anti-incumbency against Amanatullah Khan. Congress putting a Muslim candidate, and then you have this AIMIM fielding its own candidate. So these 2 seats might go to Congress, and I've seen Rahul Gandhi campaign in these 2 seats. So why did out of the whole Delhi he pick these 2 seats? And if you look at the selection of candidates, if you look at the mathematics around it, it looks like Congress might be able to open their account with 2 seats in these 2 seats, Okhla and Selampur. Okay, all right, but let's talk about, you talk about Greater Kailash, you're talking about Jangpura, the only candidates that people are well aware of, heard their names, like Greater Kailash, it's Saurabh Bharadwaj, Jangpura, it's Manish Sisodia. When you talk about BJP and the Congress, nobody even knows who these individuals are. I think it's not a question of when it comes to BJP, individuals do matter, but individuals don't determine everything. BJP works on Modi ki guarantee. BJP works on the organization. BJP works on the cadre. Whereas Aam Aadmi has to
typically stick to the personality, while in Congress also it's a 70-30, 70% personality, 30% party. So if you look at that way, the candidates are fielded by, like for example, if you look at Pravesh Verma, everybody knows Pravesh Verma. For example, if you look at Ashish Sood from Janakpuri, people know Ashish Sood in that area. If you look at Sirsaji, people know Sirsaji in that part of Delhi. He might not be known in Jamna Par, but in his part of Delhi, West Delhi, Sirsaji is well known. So if you look at the BJP's selection of candidates, Meghaji, either it's a heavyweight, like Dushyant Gautam, who is as a general secretary is fighting the MLA ka chunav, or then you have a completely different face which doesn't carry a lot of the baggage of the past. Then you have the Modi ki guarantee, which is basically where the magic wand is. And if these three can things work well, and luckily Congress is fighting an election this time for a change. Last two elections, Congress has been giving it a miss. Congress fighting an election, and is an advantage to BJP. There's no doubt about that. Okay, and when finally let's also talk about Kalkaji. Distinguished big names over here. Alka Lamba from the Congress. Atishi is from Aam Aadmi Party. She is the interim chief minister of Delhi right now. Ramesh Biduri of the BJP. Do you think the BJP and the Congress have tried to give a tough fight to Atishi from this constituency? Definitely, Ramesh Biduri is a heavyweight, but if you ask me my assessment, I will still say it's an advantage to Atishi, because the constituency, if you understand the dynamics of it, that is very well placed for Atishi. But Alka Lamba and Biduri are going to give a tough fight to Atishi. If there can be any surprise, it won't be Alka Lamba, it will be Ramesh Biduri. So if there's either it is, in my assessment, I would say 70% it goes to Atishi, 30% is Biduri. Alka ji to uske baad number aata hai. She's not, even that 30%, but she's going to give a tough fight, like Kejriwal will get a tough fight from Sandeep Dixit. Okay, now, I want to make a general analysis of your prediction. You've said that BJP will get 37, Aam Aadmi Party will reduce to 31, so which is almost half the number of seats that it won, because it won 62 last time around, and 31 is just half the seats. Just half the seats that as per your prediction it will be able to get. Congress at 2. So what is this game changer that BJP will bring around according to you? Because the last time around it had only been able to win 5 seats, which was in fact a number increase, because last time around it had only won 3. You see, Meghaji, there are just 5 simple factors. First factor is the image of AAP and Kejriwal and all is dented. It is not there what it used to be. There's anti-incumbency. Congress is fighting a good election, which I compliment them for, which is an advantage to BJP. Fourth factor which is going to matter is, look, BJP needs 6% vote share to win the election. 3% had already happened, and 6% it happens, it will win. If it is able to make it to 10%, it will sweep. Now the question is the Muslim vote. There is around 10-12% Muslim vote, and there is 5% Sikh vote. Does it split? If Muslim and Sikh vote splits, how much does it split, or which way does it split? That is where the balance 3-4-6% is going to come from. Because even if it splits, even if you maintain your same vote percentage, other vote share splits. Look, last time Muslims en masse voted Kejriwal, and 80% of Sikh brothers voted Kejriwal. But when I talk to my friends in the Sikh community, they are not going to do that same, and even Muslim community is divided. So let's see if Congress is able to pull that 3-4-5% of the Muslim vote out of 10% of Aam Aadmi Party. So it's like, I don't have to increase my line, but if the other 2 lines become smaller, it's an advantage to me. So this is where the equation is going to be. I'm for sure 3% vote swing has happened. I will be watching out. Is it 6? I bet it should be around 6. Can it go to even 10? If it's 10, it will be a complete role reversal. My numbers will look very less for BJP then if the 10% vote swing happens or the vote division happens. We have to wait and watch another 1 hour. We'll come to know. How does it look? All right. Thanks, Sumit, for joining us and being part of the NewsX Expertometer. Next up, let's invite Ajay Kumar Jha, who's a political analyst. Thank you, Ajay, for joining us, and let's put out those numbers that you have predicted. You said BJP is going to get round about 38 to 40 seats, Aam Aadmi Party 30 to 31 seats, and the Indian National Congress maybe 1 seat at the maximum. So if you could help us analyze what is the reason that you've given this seat distribution to these 3 parties? Actually, this is my revised estimate, ma'am. The previous day I had given AAP 36 to 38, BJP 32 to 34, and Congress Party 1 to 2. But today I have revised it.
and now it has turned in a different way. BJP, I find, is now going to form government if everything goes as per my analysis. I understand there are various factors which we should take into account. It is understood that the voting percentage counts most, but the turnout of voters, which section of the voter is turning out, that is very important. Actually, what is happening these days, even in the developed countries, we have seen that the educated class people, they are not coming out to vote as much as the underprivileged, or I won't say that uneducated, but those people who are still on the lower rung of societal development, they prefer to come for voting more in comparison to the middle class and the affluent class people. That is one thing. So which class of the people are turning out to vote for whatever party they wish to? So in my understanding, even this time, in spite of the fact that BJP just a few days ago when budget came out and there was a big impression that BJP is going to get because of the middle class people who have been given so much support or so much new privileges or in terms of income tax or whatever. So it is going to go in favor of BJP. Yes, it must go, but depending upon how many of them come out, because in the middle class, who are the people? Middle class, most of them are either service goers, office goers, corporate people, and such people who are entrepreneurs in their own way, in their own right. Okay. They are the people. Okay, all right. So, it's interesting because, I'm going to also speak to the other political analysts and commentators who will be joining me very shortly after you. And all of you have accorded an increase of about 28 to 30 seats to the BJP. A few here and there notwithstanding, but I am interested in knowing that what do you think has been done by the BJP that is, according to you, making the mind of the BJP of the Delhiite, of the voter, to then decide to go and vote for the BJP if these numbers is what we go by. Ajay Jha, the question is for you. Oh, sorry, I didn't call. Yeah, what did you ask, ma'am? Why? What is it? What is it that is drawing, according to you, the people of Delhi, the voters of Delhi, to vote for BJP this time around, as per the division of votes, as per the division of seats that you have brought down? Oh, there are clearer factors. First of all, the middle class is very important. Delhi itself is largely a middle class and lower class people city, where the number of middle class we know has been increasing over the years, and at the same time the number of other sections of people down the line, their number is also increasing. Now this time the most important factor, which I think would be in the context of if we go by the lower class people, those who are not so much privileged, they would be divided. They would not be in the same like the previous elections where it went almost en masse, en bloc. They voted for Kejriwal, and Kejriwal in fact gave them full support also, because he provided all sorts of the basic requirements, at least in case of electricity, water and all. Water not in terms of the fresh water or clean water, but in terms of at least they are getting it. But electricity was one, and free ride to women on buses, and then again pilgrimage, free pilgrimage to the elderly people, and all those things. Those things actually it went well with them, and so that was en bloc. This time I don't think it is going to go en bloc of in this section. It will be divided. It will be divided depending upon. Okay. I also want to understand from you today.
more or less the elections, the voting that happened was calm, composed. There were no unprecedented developments that took place. The police and the paramilitary were in total control of the situation on the ground. But still, there were certain isolated incidents where allegations were made by the BJP that there was fake voting that was taking place in Seelampur. Then Saurabh Bharadwaj came out and accused the Delhi police that the police were blocking the voters from going to the polling stations and voting. There was allegations of money being distributed. This was an allegation made by the BJP against the Aam Aadmi Party. So do you think this was just a tactic by the politicians to target each other on the day of election? Or do you think there may have been these isolated incidents where politicians may have tried to leverage their position by way of money or fake voting and so on and so forth? Yes, Mr. Ajay. Yes, actually, but such cases cannot be said that it has been seen everywhere. But isolated cases might have been seen, and it has been seen, no doubt about it. But the most important part is how much it goes down the psyche of the people. If it really is giving some kind of understanding among such people, no, some mischief is being created by BJP or by Congress, then it can work. But I don't think it. Now, people have understood over a period of time, last 10 years, that what gimmicks AAP has been playing all along and what good they have been doing for them. Both things have been going together. So even the lesser privileged people, they have the wisdom to understand what actually the matter is. The only thing which guides them or which leads them to the voting booth is what benefit they are getting, number one, and what aspirations do they have for future. So far as the future aspirations also, my reporters were on the ground for the entirety of the day across the length and breadth of Delhi. They were in New Delhi, they were in Patparganj, Okhla, all these constituencies, and they were speaking to people. And I heard a number of voters who came out to vote. They were from, particularly the middle class. Some of them said that, they had problems of water that was not clean in their homes. They talked about broken roads, they talked about waterlogging, they talked about cleanliness of their community and the RWAs. Those were issues that they raised. And then there were certain communities and certain voters who came out and said that they are happy that they have been getting subsidies and schemes, and education is something that they are very happy about, and the medical assistance and health facilities that are being provided to them, they are satisfied with it. So again, do you think this is a mixed bag? Do you think one political party may have been catering to one section of the society versus the other? Certainly, that is what I was referring to. The society, the different sections of society, they are divided in their opinion this time, very much divided. Even the underprivileged people, they are divided for the simple reason that, okay, they are getting those things. But this is the time when Prime Minister himself has come out with the assurance that whatever benefit they are getting, they would be getting even in their term, even in BJP's term, if it comes to power. Right. So the faith in Prime Minister is so much that many people can be driven by his assurances, number one. So at least that part is very clear to them that this we are going to get in any case. But at the same time, they would also be getting another other benefits also, because Prime Minister has promised that they would be getting fresh water, Jamuna clean, and all those things which have not been done as yet. But what they had been getting or they have been getting, it would continue to be provided to them. So that much, and the kind of all right, fair enough. You've put out your points of view, and we'll obviously be able to find out what happens on 7th of February when the results are announced by the Election Commission. Joining me also on the telecast right now is Ashutosh Sharma. Ashutosh Sharma, thank you very much for joining us on NewsX Expertometer, and let's quickly break down the figures that you at this point in time have estimated
are going to be sealing the fate of the BJP, the Congress and the Aam Aadmi Party? Yeah, as per my survey, as per my estimate, I had given that BJP is going to get 28 to 32 seats, and our party is going to get anything 32, 36, 38 seats. And Congress, they might open an account with 1 or 2 seats. That was my earlier estimate, but I'll like to revise it now. The things have changed by the time the election voting has closed. The percent, I would say now the BJP has a slight edge over our party. So I'm going to give BJP anything between 36 to 42 seats, and Congress might open an account with 1 or 2 seats, and rest of the seats are going to our party. This time, the people have realized, those who have voted AAP earlier for last 2 terms, that our party has failed to provide the basic needs to the resident of Delhi, what they had promised. Many of the things they were talked on paper, they were talked in television, and in fact, those things are not being provided. Delhi is facing with the acute problem of water problem. A resident of Delhi are not getting the fresh, pure water. That's very dirty and polluted. Air of Delhi is very polluted, and sometimes the peak of air pollution was so bad that even it was difficult. It made life of Delhi like hell. It looked as if the Delhi people are living in the chamber of gas. So roads are in very pathetic condition. The sanitary services are not up to the mark what had been promised. The schools, as it was promised by our party, they're going to open 500 schools and 20 other technical colleges, that extra. Everything remained on paper. Nothing is being delivered to the people of Delhi. The teachers, those who are in schools, they have not yet got their salaries. And many other promises of there remain to be fulfilled. So now people have lesser faith. I am talking to the local people. I am traveling by. Okay, but do you think the society is segmented? The people who vote for Arvind Kejriwal or have been voting for Aam Aadmi Party for the past so many years, and there are different sets of concerns. Do you think certain sections may not bother about whether the Yamuna is clean, whether the air pollution in Delhi is killing people, is causing so many medical issues, health problems amongst people? Till the time they are getting the freebies, till the time the welfare projects are putting money into their accounts, till the time they are getting free health benefits, free education. See, how long can you sustain on freebies? How long can you continue to give freebies? I mean, there are section of society which like to have freebies. Now, what our party has been offered, BJP is also countered the same, or rather they bettered our party. Our party was giving 2,100 rupees to the ladies, and BJP has offered 2,500 rupees. So when it comes to the offers, I think both the parties, they are trying to offer better than the other one. But now the faith, the resident of Delhi, that is swing in favor of BJP. I am talking to the normal people. I am talking to the dwellers, those who are living in the chuggis. I am talking to the common people, auto rickshaw drivers, taxi drivers, and they said they're not satisfied with the AAP. What they had promised, the aim and objective what they had shown 10 years back, they have remained to still unfulfilled. So they want to see the change, and they want a better life in Delhi. Even the people living in the slums and jhuggis, they are living in clusters. Those who had voted in big terms to bring our party to the cabinet, to form the cabinet. They voted not only once, they voted twice, they voted 3 times. Okay. But all the policies which are being made by our party, they remain unfulfilled. Okay. Except free buses, water and electricity. Many more things are yet to be done, and now people have realized the magic of Modi. BJP is a more united party, and whatever the Prime Minister says, he fulfills. So people's people's interest, that it is swing to BJP. So I think the BJP is going to form the government in Delhi. Okay. And So let's also talk about the VIP constituencies. You know, all the big faces. Let's talk about Arvind Kejriwal and Parvesh Verma and Sandeep Dixit. Yeah, well, in New Delhi. Arvind Do you Kejriwal think there is a chance that the BJP's candidate or Congress's candidate could upset
Arvind Kejriwal's chances of winning from this seat? Yeah, well, I was coming to that. It is difficult for Kejriwal to defend his seat. I mean, he's going to get a big fight. Number one from Sandeep Dixit, because he's coming after a long time. Earlier, Congress didn't have its existence. For 10 years, there was no name of Congress in Delhi. Now, the Sandeep Dixit, whatever vote he's going to get, that is going to benefit BJP. And it might be difficult for Kejriwal to save his seat from New Delhi. Okay, and let's also analyze and figure out what is the fabric of the Okhla Assembly constituency, because the first time around it is AIMIM who is also fielding a candidate. Who is it going to benefit? Yeah, AIMIM doesn't have much weight in Delhi. They're outside Delhi, they are very strong, but in Delhi they have yet to make an impact. But certainly they are going to be change in these two seats. One of these Congress candidates might get this seat, grab this seat, Amanatullah Khan. Instead of Amanatullah Khan, they are going to get a replacement of that. Okay, and what about Greater Kailash and Jangpura, Seelampur, and also when we talk about all these big candidates, big names, they are celebrated names, people know them, Manish Sisodia and Saurabh Bharadwaj, and when we compare these individuals, these candidates to the BJP candidates and the Congress candidates, nobody has heard about them. Let me talk one by one. Let's come to the Jangpura seat. Manish Sisodia failed to deliver the goods to the local residents in Patparganj. He was winning the seat for last two successive elections, and the scenario of the roads is very pathetic, and the hygiene conditions are very bad. So he knew that he's not going to win the seat from this constituency, so he changed the area. He's shifted to Jangpura, and Jangpura is going to get a big, tough time to defend his seat. I don't think it will be easy for Manish Sisodia to defend his seat. Okay. So okay. And what about Greater Kailash, Saurabh Bharadwaj? Today, Saurabh Bharadwaj, created a row. He was accusing the Delhi police of actually blocking the way of the voters, stopping them from casting their vote. Well, he's been in the habit of making such remarks. I mean, there's nothing new with what he's saying. He's been talking like that for last so many. I've seen his debates. I've seen his comments. So he used to making these kind of remarks. But the people of the Greater Kailash area, they know what they're going to get if they elect Saurabh Bharadwaj again. And if the BJP is in the center, what can Saurabh Bharadwaj provide to them? So people are sensible and they will give cast their vote very sensibly, and they might see some change in this time. And what about Kalkaji, which is a Atishi's bastion? We have Alka Lamba from the Congress. The BJP is fielding Ramesh Biduri. Yeah, that's right. Remark of Ramesh Biduri a few days back, what he made a sarcastic remark against Atishi, that's not good. Certainly Atishi is going to have an edge over Ramesh Biduri. Though Ramesh Biduri is a heavyweight, he was a member of parliament earlier and he has a good hold in the area, but Atishi's work people have seen, and here the Atishi has an edge over the BJP candidate. Okay, all right. Thank you, Mr. Ajay Kumar Jha, for joining us and sharing your perspective, your projections as to who wins the election in the national capital. Joining me also right now on the telecast is Advocate Manasvi Thapar. Thank you very much, Manasvi Thapar, for joining us on Expertometer. And first up, what are your projections? Who's going to win the election? I feel that BJP is having an edge over Aam Aadmi Party, but though it's going to be a close fight. But why do I say that is because BJP has been consistent in its vote bank. So what is happening right now is the vote share of Aam Aadmi Party is predominantly a vote share which is anti-BJP, which was consolidated by the departure of Congress from Delhi. So what happened in 2013, 15, 20 was that Congress did not have that momentum. Congress was reduced in the last election to less than 5% of vote share. And Aam Aadmi Party had generated around 50% of vote share in 2020. And on the other side, BJP had a positive of 35% of vote share, which was stable. So now coming 2025, what happens here is Congress is fighting this election with this whatever strength they have, but in the full strength mode, they're fighting this election. So the vote share of Aam Aadmi Party and Congress is a common vote share.
So what is going to happen this in this vote share? The division is going to happen in this vote share for the first time after 2015, I would say. For the first time that the real division of the vote share would happen. The Congress vote share, which was taken up by Aam Aadmi Party, is going to go back to the Congress shelter. And Aam Aadmi Party will have a Congress vote share and the newly acquired Aam Aadmi Party vote share, whichever would be there. But BJP's vote share is a stable vote share, which was around 35% plus 38% in the last election. So BJP has that edge because of the consolidated, stable, unified vote share which they have. And that is what is the result in the Lok Sabhas. What we have seen is in the last three Lok Sabhas, BJP is getting 7 out of 7 in these elections. So that's an edge over BJP. Lok Sabha consolidation is there. The Vidhan Sabha, be it in 2013, then in 15, then in 2020, the BJP vote share has increased, though minimally, but has increased. Now with the division of vote share and things which Aam Aadmi Party has to face this time is corruption charges, the Sheesh Mahal charges. What happens in Indian politics is perception plays a very important role. In Indian politics, what we have seen is people forgive corruption, but people cannot forgive arrogance. And this for the Aam Aadmi Party is the toughest election in their lifetime. Is why? Because for the first time, a common Admi was given the center stage, was an idea. Aam Aadmi Party was an idea. And it turned out to be a political gamut in 2020 onwards. So what happened is people would not like the idea of perception of Aam Aadmi living in a sheesh mahal. So this is going to change the perception of Arvind Kejriwal. And this is the biggest battle he's fighting in his electoral political career. So that's very important for the survival mode of Aam Aadmi Party because it is just there in Delhi. If they are in Delhi, they can stand nationally. If they are not in Delhi, it's a survival thing for Aam Aadmi Party. So this is a testing time, and I feel with BJP having that edge, I think BJP will, if they are close to 30, they are going to form the Sarkar either ways. There's no doubt about that. If they're touching 30 marks, they're going to fall. What will change the fate of the BJP? Do you think it is primarily because of anti-incumbency that BJP will bear the fruits of that because Aam Aadmi Party is apparently not performing well enough? Not because of that. BJP works on two ways. One is they work on the positive aspects of BJP, which is projecting Prime Minister Narendra Modi with larger-than-life persona, with unified BJP. That's the perception which BJP brings in, and that's the white marketing of BJP which goes hand in hand. There's a black marketing also of BJP, which they make sure that there is against Aam Aadmi Party narrative being carried out. The narrative of Aam Aadmi Party being carried out by BJP is the Sheesh Mahal, Kathni aur Karni mein farak of Aam Aadmi Party, bringing out the old speeches of Arvind Kejriwal, bringing out that all the promises made by Arvind Kejriwal have failed. So that kind of momentum in the eyes of people, and Aam Aadmi Party journey has been only 11 years. So people could relate that what this particular person, Arvind Kejriwal, had said in 2013, then 15, then 20, and how much has it delivered. So BJP has worked more on that. That anti-incumbency factor was not there in 2020, or even we could say in 2025. But BJP has created that vacuum that you have to ask this tough questions to Arvind Kejriwal. You have to ask this questions to Manish Sisodia. You have to ask Aam Aadmi Party how much have they delivered. So it is not the people which are asking much. It is BJP which has created through social media, through its karyakartas, that these questions are now the mainstream questions of Delhiites. So this is what is going to be a challenger for the narrative which has been set by BJP against Aam Aadmi Party for Aam Aadmi Party. That's the basic challenger. And other cutting leg for Aam Aadmi Party is the Congress standing out. Congress is going to damage, and Congress vote share is in the last election was 4.3%. So Congress, if just double ups their vote share, is going to create a huge damage for Aam Aadmi Party. If they just get into the double digits of it, if they get 10-11% of vote share, it's going to give a huge damage to Aam Aadmi Party. So why did this happen also? Okay, and while we're talking about your projection, I would like to tell you, Manaswi, that the first poll by the Matriz agency is now out, and what it projects is BJP at 40, Aam Aadmi Party at 29, Indian National Congress at 1. So that's the division of seats that has been done by Matriz. We'll take a look at the other poll surveys.
that are going to be released through the next 1 hour, and we'll collate it and we'll put that figure on our screens in just a short time. Manas, we also want to understand from you, what are these, these VIP constituencies with VIP candidates, star candidates. Arvind Kejriwal, a big wig, hasn't lost an election in Delhi up until now. He is being pitted against Parvesh Verma and Sandeep Dixit. What are the chances that there can be the Congress or the BJP who could take away seats and votes from him? I feel this is the toughest election for Arvind Kejriwal, no doubt about it. In 2013, when he fought an election, the narrative which he had created that fighting against Sheila Dixit, he was a giant killer, he was the crusader against corruption. And that kind of narrative he could build up. And then in 2015 also, he carried that wave that I will leave the Sarkar, I'm not here for Sarkar. And people trusted him, people voted for him. And 2020 when he said that you vote only if I work. So he was a giant player in politics. He was undisputedly the champion of Delhi elections, and he understood the pulse of Delhi voters, and people voted in favor of him. He was a great political study till 2020. So what happened after 2020 to 2025 is also a new study, that what you say, if you don't deliver in right now in today's time, and the perception has to be matched up. What you say, and you have to be in that perception. You may fly first class, but your perception has to be that you are economy person. If you want to project that kind of life in public life. But what happened? There was a complete 360-degree turn of Arvind Kejriwal, and that perception factor is going to go against him. Okay. So now, the perception factor, also the targeted jibes of Prime Minister Narendra Modi just in the Parliament yesterday about the Sheesh Mahal jibe. He was talking about luxury shahs that were being installed at Arvind Kejriwal's residence, and that's the one of the key points that had been the issue that had been raked up again and again and again, not just by the BJP but the Congress as well. I'm going to again put out the numbers. Manasvi, we've gotten Matrice, we've gotten JVC and P Mark. They all have released the numbers. According to Matrice, BJP is projected to get anywhere between 35 and 40 seats. Indian National Congress between 0 and 1. Aam Aadmi Party between 32 and 37. JVC again gives a majority to BJP at between 39 and 45. Congress between 0 and 2, and Aam Aadmi Party between 27 and 34. P Mark has once again given a majority to the BJP with between 39 and 49. Congress between 0 and 1, and Aam Aadmi Party between 21 and 31. So this is very interesting, Manasvi, the fact that BJP, that had only been able to garner about 7 seats in the previous election 2020, is suddenly the front runner. Suddenly the political party that is getting the maximum number of votes. Now it may not get the votes that were gained by the Aam Aadmi Party, which was almost all of them. 62 last time around, and in 2015 it was 67. So that may not be the case, that BJP sweeps the election if these projections are correct, but it has been able to achieve a little more than the halfway mark as per these numbers. So there is no doubt about it. Why? Because since 2013, though BJP has been on 2013, they were the largest in numbers. So since 2013, they may not have formed the Sarkar, but their vote share has been consistent, has been very strong, and the cadre base, even they are losing elections since 3 decades, is there. So there is a momentum of cadre. While on the other side, Congress's cadre after 2013 has been decimating every year. So they don't have a cadre. The fight is with the Congress and BJP. If you look vis-a-vis, the fight of the cadre, the Karyakarta, is much stronger for the BJP, while Congress does not have a cadre in Delhi. While in the heart of Delhi, while we say that Sheila Dixit ji has been the best chief minister of any state during her time, she was the best among all equals. So that's the kind of thing which she had done for Delhi. But that perception of Sheila Dixit ji, Congress could not bring out on table. And while BJP thrives and drives on Prime Minister Narendra Modi ji's narrative, they also have a very strong cadre, which has been there since 2013. And consequently, the vote consolidation have also continued, though they have been limited to less than 10 seats every year. But the vote share continues, the cadre continues. That's the biggest advantage for BJP. And now
When Aam Aadmi Party was on the wrong footing since 2022, BJP could suddenly garner the votes and now convert that vote share into seats. That's going to be the biggest advantage for BJP. That 5-7 seats, which would be the turning point for BJP, would be that the cadre and the strength of that continuous building of that vote share. That's going to be the changing point for BJP. Okay, so there are more numbers. We spoke about Matrice, JV, C and P mark. Now we are also getting to know there are 3 more agencies that have released the numbers. That's People's Insight. People's Insight has once again given the maximum number of seats to BJP between 40 and 44. Indian National Congress remains between 0 and 1. Again, dismal performance projection by People's Insight. And Aam Aadmi Party's seat share has reduced, and it has projected that Aam Aadmi Party may win between 35 and 29 seats. People's Pulse has given the highest number of seats to BJP. It says that BJP might just win seats between 51 and 60. Congress will not open an account as per the projection of People's Pulse, while Aam Aadmi Party will be reduced to seats between 10 and 19. Now, Chanakya, meanwhile, has also released the numbers, and we'll put them out shortly on your screens. And this is interesting, Manaswi. One of the polls has actually stuck its neck out and said BJP is going to win up to 60 seats. What is the possibility of it? I feel that is too ambitious as a poll analyst. I think that's going to be too ambitious for that to come true. If that comes true, I think whatever happened in 2024, people have to forget that. The momentum of Prime Minister Modi is the highest anyone could have in an Indian political career. So that kind of momentum he would have built up now, if that is the possibility. But I feel that is not the possibility. I feel BJP is going to give a Kante ki takkar to Aam Aadmi Party, and they're going to win, but not more than 45 seats. That's what I think as of now. But I don't know. The latest numbers of EC is yet to come out. But that's not a possibility from my point of view that they could cross more than 45. But definitely, with my understanding of the situation and the ground report which I am getting, it is the BJP which has an edge. They are easily crossing the 35 mark. That's for sure. Okay. I also want to now understand, these star candidates. Arvind Kejriwal, we're talking about Atishi, Saurabh Bharadwaj, Manish Sisodia. Do you see there is even a little bit of chance that Arvind Kejriwal loses his New Delhi seat? I don't think that he'll lose, but he'll win through a very thin margin. He's a star campaigner. He's been the chief minister candidate of Delhi, and he has a vote bank. He has a vote share. People trust him. But I don't feel that he's going to lose that seat for sure. But I feel it's going to be a neck-to-neck fight. But Arvind Kejriwal has an edge over it for various reasons. For various reasons of what he has done for Delhi, what perception he has created, coming from an ordinary background with no background to become the chief minister of Delhi, creating that perception, having his own ideologies and theories, but he still worked out. So he has given an entire new chapter for Indian politics, be it what we call Rebdi, freebies, which BJP has incorporated in all the schemes since 2019. So his agenda of politics has worked out for India, and there is no denial for that, giving free electricity, giving free buses to women, and giving free education, getting education infrastructure. So there is a Arvind Kejriwal factor in Indian politics. So that we cannot throw it suddenly. So he's going to win for sure, but the margin is going to be considerably reduced from 2020. Okay, let's also bring in Sunny Dhiman into the conversation. Sunny, before I start this conversation with you and get your analysis, I'm going to once again put out these numbers. Let's start from the start. Actually, let's take a look at Chanakya's numbers first. Chanakya has released the numbers, and Chanakya pits BJP between 39 and 44 seats. Indian National Congress is likely to win between 2 and 3 seats if Chanakya's projections turn right. And Aam Aadmi Party is likely to win between 25 and 28 seats. People's Pulse puts the number of the BJP between 51 and 60. That's the highest that any agency has up until now given to any political party in the current scheme of things, particularly for the BJP. And Indian National Congress at a 0, Aam Aadmi Party between 10 and 19,
People's Insight again gives BJP between 40 and 44. Indian National Congress between 0 and 1, and Aam Aadmi Party between 25 and 29. P-Mark gives BJP between 39 and 49, Indian National Congress between 0 and 1, Aam Aadmi Party 21 and 20, between 21 and 31 seats. Now JVC gives BJP 39 between 39 and 45 seats, Indian National Congress between 0 and 2 seats, and Aam Aadmi Party between 29 and 34 seats. And Matrice finally giving BJP the maximum number of seats once again between 35 and 40, Indian National Congress between 0 and 1, and Aam Aadmi Party between 32 and 37. So there seems to be a neck and neck fight as per I think almost more than half the projections that are giving a neck and neck fight between the BJP and the Aam Aadmi Party, but are favoring BJP more than the Aam Aadmi Party. So Sunny, now let's understand from you, what's your analysis of these numbers and what do you think, how do you project Delhi has voted? Yeah, good evening, Ms. Sharma. So according to my projection, I have been on ground. I have conducted a survey last year as per my agency, and also my statistical analysis. According to me, there are at least 25 seats where BJP will win with more than 10% vote share margin. And apart from that, so these are the seats where BJP is clearly winning. So BJP will open its account roughly around 25 seats, and there will be fight between Congress, AAP, and obviously BJP on other seats. So there is a clear indication that the numbers will speak louder than words here, which will come tomorrow, not tomorrow, but day after tomorrow on the 7th. But the real issue which you asked, that the voting behavior, so there is a disillusionment among Delhi people. What India Against Corruption has given India and Delhi itself. The person who was the mascot of anti-corruption movement in India, which was part of the Vivekanand Foundation's projection, because they want to remove Sheila Dikshit from Delhi, and she was one of the best chief minister of India. I'm sorry, Sunny, I will have to interrupt you. I'll have to take this short break. Come right back. Stay on with me, Sunny. I'll get you into the conversation. But those are the numbers flashing at the bottom of your screens. Interesting analysis. BJP and Aam Aadmi Party seem to be in a neck and neck fight. In fact, a number of almost all these agencies are favoring BJP and have slashed down the number of seats that Aam Aadmi Party had previously won to almost half. Will these projections actually be the reality of how Delhi has voted? We'll get to know only on 7th of February. Stay tuned on NewsX. Karnataka has established itself as the leading hub for electronic system design and manufacturing in India, contributing 10% to the nation's electronics output. We are also home to 400 plus MNCs with global R&D centers. With over 100 fabulous chip design houses and 40% national share in electronic design, Karnataka stands as a prominent hub for chip innovation in India. Invest Karnataka 2025 will bring more global players to benefit from the state's strong and tech-enabled ecosystem. अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और NewsX का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर।
ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। पिछली बार 8 घंटे वाली बिजली चो कोई कट लग्या नहीं लग्या। कट दी गल तां छड्डो, बल्ब ने चमक्का भी नहीं मारना, चमक्का। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ 3500 ਰੁਪਈਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ। From the banks of the holy Ganga, where millions gather in devotion, a spectacle of spirituality, ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬੱਲਬ ਨੇ ਝਮੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਝਮੱਕਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ 3500 ਰੁਪਈਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ। From the banks of the holy Ganga, where millions gather in devotion, the spectacle of spirituality. Invest Karnataka 2025 is our chance to showcase Karnataka's best to the world. The business community, startups, academia, and even youngsters, I invite everyone to be part of this mega platform. From February 11th to 14th, let the world witness why Karnataka is the best destination to invest. Welcome back. You're watching NewsX. I'm Megha Sharma, and the poll of polls is on NewsX. So all the poll agency numbers are at this point of time trickling in. There are as many as 8 poll agencies who have already put out their numbers, and here's a look at that. Well, first up is actually let's start off from the bottom. Most of those numbers that have now been flashed. DV Research is now the latest one to join the poll agencies that have released their numbers. As per DV Research, it's the BJP is all set to get seats between 36 and 44. The Indian National Congress will not open its account. Aam Aadmi Party between 26 and 34. Poll Diary has also released the numbers. Poll Diary has predicted that BJP will win the seats between 42 and 50. The Indian National Congress may win seats between 0 and 2, and Aam Aadmi Party will be stuck between 18 and 25 seats. Chanakya Strategy has also released the numbers, and it has predicted that BJP will be able to get as many as 39. This is somewhere between 39 and 44 seats is their projection. They have projected that the Indian National Congress may win between 2 and 3. They have also projected that Aam Aadmi Party may win as many as 25 seats. The margin is between 25 and 28 seats. People's Pulse has also come out with this number. It has projected, it has estimated that BJP is going to win anywhere between 51 and 60 seats. Indian National Congress will not win a single seat. Aam Aadmi Party is likely to win between 80 and 19 seats. People's Insight has given an edge to the BJP. It has projected that BJP may win anywhere between 40 and 44 seats. Indian National Congress may win between 0 and 1 seats. Aam Aadmi Party may win between 25 and 29 seats. PMAR, on the other hand, has once again given an edge to the BJP. It has projected that BJP may win seats between 39 and 49. Indian National Congress may open an account with 1 seat. Aam Aadmi Party may win between 21 and 31 seats. Then we have JVC poll survey, poll agency putting out the numbers where the BJP is likely to win between 39 and 45 seats. Indian National Congress may win between 0 and 2 seats. Aam Aadmi Party may win between 27 and 34 seats. And finally,